इसको और पहले विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर टोटल ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और उनका स्कोर, जबकि नए न्यू बैटर मैदान पर आते हुए शाहिद शेख का साथ देने के लिए मैदान पर भूषण गोड़े, एक बहुत ही नामचीन खिलाड़ी, बहुत ही नाम टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी का, वो मैदान पर सामने उतने ही बेहतरीन गेंदबाज रमीज अपने बॉलिंग मार पर। ओ इस बार एक बैठक शॉट स्लॉग स्लिप का डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, एक नजाकत भरा छक्का 6 रन के लिए। स्लॉट में गेंद मिली और एक बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट पर 6 रन। स्कोर पहुंचा 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, पुलर लेन की गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई विकेट कीपर के हाथों में। कल के दिन के अगर 6 ओवर के मैचों के अगर जानकारी बता दे तो आखिरी मैच में बड़ा टोटल रहा था 104 रन का, जो बड़ा हाईएस्ट टोटल रहा था 6 ओवर में। और क्या बल्लेबाजी रही थी मुन्ना शेख की, सिंगल डबल और बाद में अपने टीम को आगे बढ़ा। 3 ओवर में सिर्फ 12 रन थे। ऐसा लग रहा था कि एक लो स्कोर का आखिरी मुकाबला हो रहा है मैदान पर, लेकिन वहीं पर जो कि अपने टीम को बिल्कुल आगे बढ़ाया और एक बड़े स्कोर पर जो कि सुरक्षित बोर्ड पर खड़ा कर दिया। 2 ओवर समाप्त हुए और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 23 विदाउट लॉस। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। कोरगांव एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं और खास करके यॉर्कर गेंदबाजी बिल्कुल जो कि उनका प्रमुख ब्रह्मास्त्र है गेंदबाजी में। फिलहाल खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर ओ बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। पर हाफ वॉली पर लेकर एक बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार चौके के लिए, शाहिद शेख के बल्ले से निकलता हुआ सामने सामना करते हुए महेश भाईडकर राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने रनअप पे थोड़ा सा चूक के फील्डिंग में तब्दीली, पावर प्ले का समाप्त खेल। अब लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सोमेश प्रभु देसाई गेंद को आते उठाते फील्ड करते, 1 रन का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों के पास। आराम के साथ 1 रन पूरा किया, इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 रन पर। खेल जारी तीसरे ओवर का 28 लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 रन 1 विकेट पर ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मुकाबला टॉस जीतकर एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम पहले फील्डिंग करते हुए मैदान पर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक हल्के से गेंद को पुश किया ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर जब तक गेंद को आते उठाते, बहुत ही अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक सिंगल के लिए कदम बढ़ाया अपने दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर पर सुरक्षित, और महेश भाईडकर धीरे धीरे आते हुए अपने लंबे रनअप पर अगली गेंद करने के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट सामने शाहिद शेख बल्लेबाजी करते हुए उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए।
अच्छी गेंद थोड़ा सा हवा में मार बैठे एक्स्ट्रा कवर पर नो मैच लैंड में और गेंद निकलती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा 33 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा विकेट है, बैटिंग पिच है, कल के दिन में शानदार बल्लेबाजी हुई है। शायद 80-90 का टोटल भी इस मैदान पर इस विकेट पर मैं तो नहीं कहूंगा सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि रात की बात अलग थी, लेकिन रात की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टोटल जो बना कल के दिन में वो रात के आखिरी मुकाबले में रहा था, आखिरी मैच में रहा था। तो शायद रात और दिन के हम बात बिल्कुल नहीं कर सकते मैदान में। फिलहाल महेश बाइडकर सफलता की तलाश में सामने एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम। पहला विकेट जरूर मिला है मनोज नार्वेकर का, लेकिन ये जोड़ी साझेदारी बना रही है मैदान पर, बहुत ही शानदार। अल्टी पल्टी करना चाहते थे, एक पुलर लेन की गेंद थी, बिल्कुल ऑप्टम को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में और एक डॉट गेंद। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 33 पर 1 विकेट के नुकसान पर। खेल तीसरे ओवर का चलता हुआ और बल्लेबाजी करते हुए ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम मैदान पर। ऑफ साइड पर एक स्लिप पर, एक कवर पॉइंट पर, एक स्वीपर कवर पर, एक मिड ऑफ पर फील्डर, ऑन साइड पर एक मिड ऑन पर फील्डर, ये बिल्कुल नजदीकी शॉर्ट फाइन लेग पर एक फुल टॉस गेंद। देखना होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद सामने सोमेश प्रभु देसाई, हाथों में गेंद जो कि निकलते हुए और इसी के साथ एक फुल टॉस गेंद थी जिस गेंद पर बड़ा शॉट होना चाहिए था। उससे पहले एक चौका मनोज नार्वेकर, भूषण गोले 7 पर खुद के व्यक्तिगत और उनके साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर सरफराज नवाज उर्फ चप्पू मैदान पर। 3 ओवर आधे ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की शुरुआत और स्कोर बोर्ड पर टोटल 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की शुरुआत। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। हरीश सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। Good morning to all the viewers and listeners on Tennis Cricket. This inside edge very nicely fielded at a short third man, short fine leg in fact, and it was a short third man that covered the little mess from the short fine leg inside edge. At the score is 34. Fourth over in progress started by Ramiz. He is going to bowl his second over. One from Sandesh Thakur first up, then it was Ramiz getting the wicket, then Mahesh Baidkar. Where is the ball gone? The ball has not gone anywhere. Korgaon Express, Mahesh Baidkar takes a wicket off the last ball. Shahid Sheikh, a very important man in Oxford Titans camp. Now it is Bhushan Gole and Sarfaraz Nawaz, Chappu. A street smart cricketer, very good with the ball, good with the bat, handy, and that's the reason why Oxford Titans had him. Even in the auctions, they had taken him in the squad.
This is in the air. Where is the ball gone? It's gone for 6 runs. Yes, yes, timed it well. Yes, timed it well, Sarfaraz Nawaz, and gets his first 6. The night time and the lights had come into effect. We saw so many games with low scoring. Only the last game gave away some runs on the board, and Hello. yes, we are back. The score now moves on to 42. Fourth over in progress. Good comeback here by Ramiz. This in the air. Yes, timed it well. No one there, and that goes for the second 6. So Chappu has decided it's now time that he is going to all go all runs blazing again. Score is 42. And we have seen somewhere around 80 is a pretty good score. You cannot say that's a great score, but somewhere it is given a cushion to the bowlers. If one over goes weak and it is being belted by the batsman, you get an opportunity to make a comeback. So certainly 80 is at par score. 95 plus is a pretty good that we have seen when 99 was scored by Dynamic Royals yesterday. And it is all possible to get the tournament of this magnitude. It was all possible because of the sponsors, SportsNinja.in, the title sponsors, along with co-sponsors C Easy, Shagun Hotel, supported by US Pizza, Amstrad, 6 Star 6, Wildfire Energy Drink, Al Barka Hotel, Ehab Interiors, SES Engineering, Usha Stores, Ulstone, Star Fisheries, Edmund Fernandez, Akash Fishmill, Quality Exports, Kukalim, Jersey Partners, Savli, Goa. In comes Arshad with a chance for an out. Oh! That is a frivolous mistake. This should have been easy run out, and in return give away 2 runs. He was there to grab the ball. He should have been much more calmer, composed over there, trying to grab, and otherwise I felt that he will not have made it in. So 2 runs takes the score to 50. So 50 up here for Oxford Titans. This is outside edge and this will be taken. So Arshad Davidar comes and strikes a very important breakthrough here. Bhushan Gule has to depart. It was a slower flighted ball and went for that cover shot. The ball went away sharply as a leg spinner and easily taken by the keeper. By the looks of it, the first 2 balls from the bowler, bowling from round the wicket, right arm bowler. Looks like both the balls were pretty slower balls, like a leg cutter. We've not seen the quicker ball yet.
So that might be his forte, bowling those cutters, flighting from round the wicket, asking the batsman to drive the ball, and that's exactly what he did at the previous ball. I was mentioning about the partners who had contributed immensely for the success. Decorators Gauri Radio, Light and Screen Surbhi. The umpiring panel of Aslam Sheikh, Asadgiri Naik, Babu Dabolkar and Babu Naik. Scorer none other than Viraj Tendulkar, clean handwriting. Commentator Ashok Naik, Sagar Gosavi and yours truly Harish Kakurkar. Online scorer Shivam Mishra. YouTube Gaurav Sawant. And DJ Dilip. So that's the team. So sponsors are also important. We have taken the names and will continuously take because without whom this tournament could not have gone to such a higher scale. In comes Arshad. New batsman coming in, Pritham Bari. It's the fifth over. Arshad started well. This is very nicely played in the air and that goes for 6 runs. I had seen Bhushan Gole while having a talk with Pritham Bari, maybe telling that he is bowling the flighted balls. Don't go for the shot, just try and wait for the ball to come to you, and that's exactly what he most of the times whenever a 6 is being hit, the same ball is used by the batsman. This time maybe, don't know, it must have hit somewhere, or maybe Pritham feels that it's better to take a different ball. But I have taken the names of all those involved, but the most important ones are the organizers. GCC Fathoda, this is season 2, although before this tournament and season 1, they have organized a lot many tournaments, but at local levels, Panchayat, Municipality, then they decided, their team decided they are going to go at a larger scale, at a larger magnitude. In fact, not only cricket, but they are doing a fantastic job in social work. And blood donation camp is one of their events. Every year they conduct, and also lots of work for the society, and also preserving the language Kokni. Also lots of help given, if you remember, flood relief camp was there in Uzgaon. They had done a commendable job and given the necessary items to those affected. So it's not only about cricket, they are there in the social field from years. And they were also one amongst the COVID warriors. That was a bad time not only for cricket lovers but humanity as a whole. And they have decided that if at all they are going into cricket, they are going with such a larger magnitude. It was 2.5 legs last year, now it is 5 plus. Oh, this was a very good ball. He went for the slog sweep. If he had taken the same shot like Pritham Bari coming and playing it a wide long on or maybe a mid-wicket region, that would have been much better shot. That ball turned sharply away from the right hander. The score remains on 57. And that will finish the over. So just 1-6 in that. And 2 dot balls to finish this over number 4. 5, in fact, the score is 57 for the loss of 3. So this is the first ball going to Dhar.
one, but pretty decent. So if they can get a good over here, getting somewhere around 15, 18 runs, it will certainly take the score to more than 70 with the bowling lineup that they have and a thinking captain playing different strategies while on the field. So this is the last over, sixth over. Some talk going on between the captain and the umpires. In comes, don't know what exactly the talk is about. Certainly a wonderful Saturday started well. So I think they are continuing. There's just a small discussion, a small maybe some sort of query to the umpire. Umpire successfully managed to answer that. Aniket Raut. Oh, bowled a full toss ball. He missed the chance of scoring a 6, and this will be just a single. Oh, there should be run out. There should be a run out. And we have to see who is run out exactly, whether it is Pritham or whether it is Sarfraz Nawaz. Sarfraz Nawaz going back in the pavilion. So now new batsman coming onto the wicket. Rajesh, a powerful striker from Bari. Number 23 on his jersey, but Pritham Bari wanted the strike. Anyhow, he would have gone for the second run. Missed an opportunity of a full toss. Here is the opportunity to put pressure on this bowler, young bowler Aniket Raut. Will be bowling the second ball of the last over. Good ball, very good ball. Dot balls definitely helps. And when batsmen decide that I'm going to go after every ball, there are enough wickets left, and it's just about sixes and boundaries to up the ante here in the fag over. Darsaka Sunrisers captain Matsa Tosakyo begin. 58 is the score. Oh wow! This is the longest and the biggest six from last 2 days. This has went, I guess, almost 50 meters back. What a timing, what power here from this man, Pritham Bari, and that's the reason he wanted the strike. This ball flies big way, but none better than this. This is almost a colossal strike here from this man of Oxford Titans, taking the score to 64. Still 3 balls left. Still 3 balls left. This will definitely pressurize the bowlers. Where is the total going to be now? Yes, once again he might go for the second run. This is rightly played in the gaps. The throw has come right, but it is come way too slow. So not a great throw, giving once again 2 runs and giving strike to Pritham Bari.
That is exactly what Oxford Titans would like at this stage. Takes the score to double six. Double six for the loss of 4. Wonderful breeze also flowing on this ground, not only for us, but it's soothing for all the players. A big appeal, but there is no LBW, so certainly Pritam Bali doesn't want a single off the leg by. So dot ball here for the bowler, and never mind. Sometimes you will hit for 6. A 1-6 in the over is definitely not a bad thing in tennis ball cricket. Every bowler is being hit for 6s. It's just that he needs to finish well here. 66 at the moment. If they can restrict them to under 70, I think job is well done by the bowlers, and it's up to the batters now later on to chase this down. But Oxford Titans will have other ideas. They say whatever runs they get, we are going to defend it. Wide signal here. So wide signal, and umpire has taken a review of the above the waist height no ball, and the third umpire Sadgiri Naik will be in action. Okay. So it's a legal ball, means it's a wide ball, not a no ball. The batsman had come down the track almost 3-4 steps, and the ball was dipping. That's the reason why the third umpire decided it was not a no ball. Exactly, we have to tell what has happened. Sometimes by staying on the ground, you don't come to know what is the situation exactly. Well, the viewers and the replays might show you a better position from Tennis Cricket on YouTube. In comes the last ball. And last ball is definitely going to be a dot ball. Good comeback here by Ankit Raut in his last over, and they have managed to restrict Oxford Titans to 67 total. Is this going to be enough for Oxford Titans, or SI Indians are going to win their first match in the second edition? They are the new inclusion in this South Goa Premier League, and this is going to be the first match. 68 is the target set. Wonderful batting there from Manoj Narvekar. Just get 8 runs. Shai Sheikh was the best, but nobody could go through to score their 30s, 40s, the big innings. It was all in 10s, 18-10, 13-16, and bowlers managed to make a good comeback. Pick of the bowlers certainly you can say was Mahesh Baidkar, just gave away 10 runs and a wicket. Arshad Davedar bowled with 9 runs in his and also took a wicket. Aniket Raut was also pretty decent, 10 runs and a wicket in the form of run out. So pretty decent bowling here from the bowlers. Meanwhile, I am in the further updates for the next 3 overs. I am handing over the mic to Ashok Naik. This is the second call here for Sunrisers. Dharsaka Sunrisers, this is the second call. And before the third call, if you don't come for the toss, then the toss will be gifted to Al Zargam Royal Challengers. This is the second call to Dharsaka Sunrisers. Please take a note. आणि एक कॉल थर्ड कॉल जेन्ना जातले ताच्या पयलीं जर तर तुमी येना जाल्यार आमी टॉस हँड ओवर करतले अल झरगम रॉयल चॅलेंजर्स. वी हॅव बीन कॉलिंग फॉर क्वायट सम टायम नाव.
सकल सनराइजर्स, लास्ट कॉल दाट सकल सनराइजर्स। चलिए ओपनिंग जोड़ी, चलिए जल्द से जल्द मैदान पर। 68 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम के सामने। थैंक यू हरीश सर। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो 18 रन बनाए थे। शाहिद शेख ने 2 चौके 1 छक्का लगाया, भूषण गोले ने 1 छक्का लगाया, सरफराज नवाज और चप्पू 2 छक्के और प्रीतम बारी ने लगाए थे 2 छक्के। गेंदबाजी में बहुत ही जो कि अच्छा स्पेल रहा, जिन्होंने रमीज ने एक विकेट चटकाया, लेकिन थोड़े से महंगे भी हुए साबित। 2-3 छक्के लगे और महेश बाहिड़कर को 1 विकेट मिला। अर्शद दाबेकर जिनको 1 सफलता, 67 रन टोटल स्कोर और 68 रनों का टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलती हुई ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम के आने वाला मैच होगा दाट सकल सनराइजर्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, इन 2 टीमों के बीच में। ओपनिंग बैटर मैदान पर तो ओपनिंग जोड़ी मैदान पर इमरान मुल्ला और उन्हीं के साथ रमीज, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। टारगेट 68 रनों का। रमीज, ये ओपनिंग जोड़ी इमरान मुल्ला के साथ रमीज, ओपनिंग जोड़ी मैदान पर 68 रनों का टारगेट। 6 ओवर का मैच, आने वाले मैच के लिए एक बार हम कॉल कर रहे हैं, जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हरीश सर और स्कोरिंग की जानकारी विराज तेंदुलकर और ऑनलाइन स्कोरर हमारे शिवम मिश्रा। हमारे कमेंट्री बॉक्स में मान्यवर कक्ष में मैडम सौ शिल्पा मांजरेकर, जिनका भी हार्दिक स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स में से। शिल्पा मांजरेकर मैडम, आपका एक बार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। तो जुड़ जाते हैं एक बार फिर से मैदान पर इस शानदार आयोजन साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दूसरा, आज का दूसरे दिन दोपहर के सत्र में ये पहला मैच। आज बिल्कुल सही वक्त 11:05 को मुकाबला शुरू होता हुआ और सामने से देखना होगा फातोडा स्टेडियम की ओर से पहले ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन आते हैं अपने पहले ओवर लेकर बॉलिंग बार पर। मैडम आपसे तशरीफ है, बैठिए मंच पर, चलिए बैठिए वहां पर। थैंक यू सर। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का, सामने से पहले ओवर की शुरुआत होती हुई। एक मिनट हरीश सर। और पहली गेंद पर एक आसान सा मौका, एक बिल्कुल आसान सा मौका था पहली गेंद पर। ये कैच बिल्कुल महंगे साबित होते हैं, इस तरह से जो आसान लगते हैं, हाथों से फिसलते हैं। और मनोज नार्वेकर जो कि हमेशा विकेट कीपिंग के बिल्कुल भूमिका में रहते हैं, विकेट कीपर होते हैं और विकेट कीपर को आप अलग जगह पर मैदान पर खड़े करोगे तो निश्चित रूप से परेशानी होगी। हरीश सर आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। हरीश सर। यस सर। क्या प्रीतम बारी गेंदबाजी पर, और जब कैच छूटे तो सबसे नाखुश होते हैं वो होते हैं गेंदबाज।
So now it's time for the toss for the first match between Al Zargam Royal Challengers, their first match, second match of the day, and Darsaka Sunrisers. Ajay Kevati is going to call. Head is the call. Tails it is. You'd like to? Field first. Okay. Why the decision of fielding first? Because on this ground chasing seems to be very easy. Means any target can be chaseable over here in the morning session. So what are the which are the outstation players along with you? Can you take the name of all the three players? So the outstation players are Mr. Ajat Qureshi, then Ajit Mohite, and Firoz Sheikh. Okay, all these three names. So they are also a wonderful team, and they will also like to start on a winning note. Starting on a winning note is always advantageous because once you win, there is a uplifting of the team, there is a boost of the team, so that they can do well in the further matches. Yes, it eases the pressure for the further matches. Winning on first game is always better for the team, for their morale, and it's good for the momentum in the further matches. Which are the local players that you personally as a captain would like to bank on to perform almost consistently in all the matches? We have outstanding players, all of them. That's why we are a team. Specifically, we have good bowlers in the phase of Vishal and Gauresh. They have performed very well. Last year also Vishal performed very well, and Gauresh is performing very good in all over India play. All over. Yes, thank you. So good luck to you. Meanwhile, Ajat, yeah, yes, thank you. Good luck to you. Meanwhile, what you will have done if you would have won the toss? If we won the toss, we are elected to field only, but we have a good batting side, so we'll try to give a best target for them, and we have a good local players who playing in our team, so we'll like to give a best target for them. And sometimes you should not always think that everything goes on toss. Cricket is not about toss. Cricket is about you are getting 6 overs. Yes, put a good score under the belt and try and take early wickets and pressurize the side which is chasing. That also can help you. Yeah, because we wanted to that only. We put a good score on that. So how much we score, they have to chase. In crucial, in power play, at least we'll get 2 or 3 wickets in 2-3 overs. Automatically the game will be in our side. So I asked him the same question. Which are the 3 outstation players in your side? We have Fardeen Kazi, Karan More, and Shresh Kadam. Okay, so 3 wonderful players they also have. So it's going to be a good fight. But one important point that I've noticed on this ground today, there are the number of jerseys of Al Zargam Royal Challengers look to be huge. So there are huge supporters of Al Zargam, and that's going to be playing an important role. We have a good supporters, and thank you for all the supporters for supporting Al Zargam and SI Indians. Thank you everyone. Please give them some energy drink before your match starts. Yeah, thank you. So thank you, Ajay. थैंक यू सर, हरीश सर, धन्यवाद. पहला विकेट वापस रमीश आउट होकर वापस और न्यू बैटर मारुति हुग्गी इमरान मुल्ला का साथ देने के लिए. दोनों बल्लेबाज एक रन पर खुद के व्यक्तिगत टीम का स्कोर. 2 रन प्रीतम बारी सामने से गेंदबाजी करते हुए. छोटी गेंद पुल किया इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए. गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए. पहला चौका निकलता हुआ बल्लेबाजी में ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम की ओर से. अच्छी गेंद यॉर्कर लेन के हल्के से खेला गेंद को मिड ऑन पर. जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्डिंग करते, बहुत ही अच्छी तालमेल के साथ एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 रन जुड़ गया. पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर प्रीतम बारी का एक सफल ओवर, एक सफलता मिली और स्कोर 7 रन 1 विकेट पर. दोनों टीम आइए प्लीज फोटो सेशन के लिए बिल्कुल हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए. दोनों टीम आने वाले मैच के दार्शकल सनराइजर्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, दोनों टीम आइए प्लीज. जल्द से जल्द हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में आपकी पूरी टीम फोटो सेशन के लिए आइए जल्द से जल्द.
देरी मत करो क्योंकि टॉस हो चुका है। इस मैच समाप्ति के बाद तुरंत मैच खेला जाएगा। दोनों टीम कैप्टन आपके लिए जानकारी, फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 68 रनों का टोटल मैच को जीतने के लिए। 6 ओवर का मैच, 5 गेंदबाज, 1 ओवर पावर प्ले का, दूसरे से पांचवें तक एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर और 30 मिनट का समय आपको दोनों अंपायर हमारे दे चुके हैं। अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे मुख्तार कादरी, एक बहुत ही चतुर खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। टीम के फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं क्योंकि पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। अब फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। गेंदबाजी में भूषण गोले दिखाई देते हुए खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए 7 रन 1 विकेट पर एक चौका। इमरान मुल्ला की बल्लेबाजी में 6 पर खुद के व्यक्तिगत। मारुति हुग्गी बल्लेबाजी कर रहे 1 रन पर। कमेंट्री बॉक्स की ओर से भूषण गोले खुद का पहला टीम का दूसरा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ खेला जरूर। कवर पॉइंट पर लगभग फील्डर गेंद को फील्ड करते और आसपास अगर कहीं अब्बास आप हो तो आइए प्लीज। शमीम आपका इंतजार कर रहे हमारे मान्यवर कक्ष में, आइए अब्बास सर, जल्द से जल्द शमीम के साथ आप संपर्क करें। फिलहाल एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में मैदान पर और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 60 रनों के अभी भी दरखास्त है मैदान पर। भूषण गोले गेंदबाजी कर रहे, 2 बैटर है इमरान मुल्ला और उन्हीं के साथ मारुति हुग्गी। और पहले विकेट के रूप में सस्ते में लौटे रमीश अपना खाता नहीं खोल पाए इस मैच में। एक लंबा रनअप 15-16 कदमों का, फिर से थोड़ा सा अपने फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए मिड विकेट बाउंड्री पर एक सामने बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। छोटी गेंद इस बार, बहुत ही बढ़िया शॉट्स कर ले, बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में बड़े आराम के साथ 1 रन। इस 1 रन के साथ खुद का स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मारुति हुग्गी जो लेफ्ट हैंडर बैटर, 2 पर सामने, 7 पर एक चौका इमरान मुल्ला और अपने बॉलिंग बार पर धीरे धीरे आते हुए भूषण गोले अगली गेंद लेकर। जीसीसी फातोड़ा आयोजित ये साउथ गोवा प्रीमियर लीग बहुत एक सुंदर आयोजन। कल का पहले दिन रात का सफर, आज का दूसरा डे नाइट का क्रिकेट का एक महासंग्राम और कल आखिरी दिन रात का इस मैदान पर खेल होगा। इस बार अल्टी पल्टी, आखिर में गेंद बल्ले पे लगी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से 1 रन जुड़ गया बड़े तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 1 रन स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। अब्बास भाई एक बार फिर से हम कॉल आपके कर रहे हैं, आइए प्लीज शमीम के साथ आप संपर्क करें। लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, इमरान मुल्ला, मारुति हुग्गी और राउंड विकेट भूषण गोले। और बढ़िया गेंद इस बार हाफ वाली पर लेकर खेला, इस बार गेंद को ऑन साइड पर और जब तक लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, एक सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में और फिर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल आगे स्कोर पहुंचा 1 विकेट पर 12 रन। दोनों टीम आइए जल्द से जल्द फोटो सेशन के लिए आइए, दोनों टीम देरी मत करो, दोनों टीम, क्योंकि आने वाला मैच इस मैच समाप्ति के बाद तुरंत होगा। आनंद सर, आनंद बद्री सर, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए जल्द से जल्द दोनों टीमों के लिए। बड़ा शॉट,
देखना होगा गेंद वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर, ओ दूसरे प्रयास में थोड़ी सी गेंद दूर हो गई, एक रन दूसरे के लिए पलटे, बहुत ही शानदार थ्रो, लेकिन लगभग अपने क्रीज में आखिरी पल में सुरक्षित पॉपिंग क्रीज में, लेकिन एक शानदार कोशिश थी वाइड लॉन्ग ऑन पर। बिल्कुल दूसरे प्रयास में अगर थोड़ा सा फील्डर, अगर साथी फील्डर बैकअप अगर जल्दी होता तो लगभग कैच का मौका बन गया था। कोशिश बढ़िया थी दोनों खिलाड़ियों की, दाद तो देनी पड़ेगी। और इसी बीच में 2 रन जुड़ते हुए मारुति हुग्गी के स्कोर के खाते में खुद का व्यक्तिगत 6 रन पर सामना करते हुए भूषण गोड़े की गेंदबाजी का, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया शॉट इस बार, फिर से एक बार शायद क्या छूटा, कवर पर गेंद को हाफ वाली पर लेकर ड्राइव किया था इस बार, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर, शॉर्ट कवर पर एक लगभग मौका था, गेंद हाथों से आखिर में छूटी। और इसी के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ। 2 मौके बने थे इस ओवर में लगभग गेंदबाजी में, लेकिन फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। स्कोर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 14 रन 1 विकेट पर। टारगेट टोटल है 6 ओवर में 68 रनों का, और तीसरे ओवर में देखना होगा कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। दो ओवर का खेल समाप्त हुआ 14 रन, और बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। तीसरे ओवर की शुरुआत, बैटिंग पावर प्ले का ओवर, सामने से अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग होनी चाहिए, फील्डिंग अगर साथ दे तो मैच बहुत ही अच्छा बन सकता है मैदान पर, क्योंकि टारगेट है 6 ओवर में 68 रनों का। आने वाला मैच होगा धाड़ साकड़ सनराइजर्स वर्सेस अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, इन 2 टीमों के बीच में। टॉस हो चुका है, फोटो सेशन हो रहा है, ये मैच समाप्ति के साथ अगला मैच तुरंत खेला जाएगा दोनों टीमों के लिए। जानकारी फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन, बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और सामने से फातोड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी के मोर्चे पर सरफराज नवाज उर्फ चप्पू गेंदबाजी करने के लिए। कल के दिन हम चर्चा कर रहे थे बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, लेकिन एक खिलाड़ी का तो नाम बिल्कुल लेना ही पड़ेगा, वो था अब्दुल सलाम उर्फ शकील। बिल्कुल परेशान थे, जो कि चोटिले हो चुके थे, लेकिन क्या खेल किया इस खिलाड़ी ने, बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, फील्डिंग भी की, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट कल के दिन में अब्दुल सलाम, जिसका भी नाम जरूर लेना पड़ेगा कमेंट्री बॉक्स में से। 14 रन टोटल 1 विकेट पर। तीसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर सरफराज नवाज और चप्पू गेंदबाजी करते हुए, खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर अपने बॉलिंग बार पर। बैटिंग पावर प्ले का इस बार पीछा किया था ऑफ स्टंप पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद के लाइन से चूके पूरी तरह से, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टोटल स्कोर हो चुका है 14 रन। ओवर पिच गेंद इस बार अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेला, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बन गया फिर से स्कोर के खाते में। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर, वो जारी मैदान पर, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन। मारुति हुग्गी 6 पर खुद के व्यक्तिगत, 9 पर इमरान मुल्ला एक चौका अब तक उनके बल्लेबाजी में। लेफ्ट हैंडर बैटर मारुति हुग्गी के लिए राउंड विकेट सरफराज नवाज अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, थोड़ा सा कप्तान मुख्तार कादरी फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑफ साइड पर बिल्कुल जाल बिछाया है, ऑफ साइड पर इस बार ऑन साइड पर गजब का टाइमिंग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए।
नवाज ओ कवर पर फील्डर इस बार एक सिंगल, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, और जब तक अपने आप को संभालते गेंद को उठाते फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ एक रन पूरा किया। कैच बिल्कुल मौका था बना कवर पॉइंट पर, लेकिन कैच आधे ओवर समाप्त, आधे ओवर का खेल, बाकी 3 ओवर। कहीं ना कहीं फील्डिंग साथ नहीं दे रही है मैदान पर। आज अगर पहले मैच की मैं बात करूंगा, सामने पहले इनिंग में भी ये बात देखने को मिली थी, जो कि फील्डिंग की खराबी इस दूसरे इनिंग में भी कहीं ना कहीं फील्डिंग परेशान कर रही है, गेंदबाजों को साथ नहीं दे रही है। फिलहाल 3 ओवर 30 रन 1 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत, खुद का दूसरा ओवर, प्रीतम बारी एक बार फिर से स्क्रीन पर अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स के ओर से, और सामने बल्लेबाजी कर रहे 2 चौके 1 छक्का अब तक लगाते हुए लेफ्ट हैंडर बैटर मारुति उग्गी सामना करेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है इमरान मुल्ला। 38 रन 18 गेंदों में मैच को जीतने के लिए किस तरह से समाप्त होगा आज के दूसरे दिन का। कल के अगर पहले मैच की मैं बात करूंगा, क्या शानदार मैच रहा था 6x6 क्रिकेट टीम का, जो कल के पहले दिन का मुकाबला रहा था, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहा था। अच्छी गेंद हल्के से ढीले हाथों से गेंद को ड्राइव किया। इस बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी मैदान पर। यही बल्लेबाजी कल के आखिरी मैच में मुन्ना शेख ने की थी। यादगार बल्लेबाजी रही थी, शानदार अर्धशतक बनाया था। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की, शायद युवा खिलाड़ियों ने अगर उस इनिंग को देखा होगा तो शायद आज बहुत, मैं तो कहूंगा आप बहुत कुछ सीख जाएंगे उस बल्लेबाजी के साथ। किस तरह से अपने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया, किस तरह से बड़े इनिंग को तब्दील किया, सिंगल डबल, और जब मौका मिला तो बड़े बड़े शॉट लगाए और एक अच्छा टोटल बनाया। टूर्नामेंट में कल के दिन के पहले दिन में हाईएस्ट टोटल बनाया वो आखिरी मुकाबले में। फिलहाल रुक करते एक बार फिर से मैदान पर एक सिंगल बन गया। 31 रन 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। 31 रन 1 विकेट पर टोटल स्कोर। चौथे ओवर की शुरुआत, प्रीतम बारी अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए, और सामने इमरान मुल्ला। ओ आड़े बल्ले से एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बिल्कुल गेंद के लाइन पर नहीं थे। अच्छी गेंद, बिल्कुल सही लाइन पर, गेंद में रफ्तार थी और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक मात्र विकेट शुरू में, रमीज बिल्कुल बिना खाता खोले आउट होकर वापस। लेकिन उसके बाद ये 2 बल्लेबाज बहुत ही शानदार साझेदारी बनती हुई। मौके जरूर बने थे लेकिन हाथों से गवा दिए, और इस बीच में प्रीतम बारी अपने बॉलिंग मार्ग पर फिर से बिल्कुल रिप्ले देखने को मिला। उसी तरह से गेंद थोड़ी से फिर से उछाल लेती हुई, हरकत करती हुई, बल्लेबाज को बेट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कमेंट्री बॉक्स में हमारे 2 स्कोरर, उसी के साथ स्क्रीन पर भी बिल्कुल जो पूरी जानकारी TennisCricket.in से गौरव सावंत, उनके कुणाल जो हमारे बिल्कुल बगल में, वो स्क्रीन पर बिल्कुल जो कि शानदार जानकारी देते हुए इस मैदान पे रिप्ले किस तरह से जो कि खेल होता है, शॉट के बारे में, कैच जब छूटता है, विकेट के बारे में, ये रिप्ले भी बिल्कुल देखने को मिल रहा है मैदान में कमेंट्री बॉक्स में। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से बीट हुए, बोल्ड हुए उस गेंद पर, और दूसरा विकेट SI इंडियंस क्रिकेट टीम का वापस।
दूसरे विकेट का पतन मैदान पर। 31 रन, 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। 31 रन 2 विकेट पर। टारगेट है 68 रनों का। आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में बल्लेबाज इमरान मुल्ला और लेफ्ट हैंडर बैटर मारुति उग्गी का साथ देने के लिए न्यू बैटर अनिकेत राउत मैदान पर। प्रीतम बारी अपने बॉलिंग मार पर सफलता दिलाते हुए, कहीं ना कहीं सफलता की तलाश थी मैदान पर विकेट की, वो दिलाते हुए अपने टीम को अपने बॉलिंग मार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने न्यू बैटर अनिकेत राउत उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। 31 लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। आते आते हाफ वॉली पर एक अच्छा शॉट कारपेट के साथ, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला अनिकेत राउत ने और टीम को आगे बढ़ाते हुए टोटल स्कोर 32 रन पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। 32 लॉस ऑफ 2 विकेट, 32 रन 2 विकेट पर। पहला मैच शानदार मुकाबला दोनों के बीच में चलता हुआ, खेल जारी चौथे ओवर का। कहीं ना कहीं सामने से एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम को संघर्ष करना पड़ रहा है रनों के लिए। बिल्कुल सामने से बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अभी भी बाकी फील्डिंग अभी भी बाकी, और देखना होगा किस तरह से फिलहाल मुकाबला मैदान पर समाप्त होता है। लेफ्ट हैंडर बैटर मारुति उग्गी स्ट्राइक पर, उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर प्रीतम बारी। आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड नहीं करते, लेकिन शायद ये बिल्कुल खराब क्रिकेट, गलत क्रिकेट मैदान पर। रन नहीं था वहां पर, रन के लिए निकले। एक बड़ा विकेट इस ओवर में, थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा था, रन रेट बढ़ रहा था, उसी दबाव में दूसरे रन के लिए निकले बल्लेबाज और तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। एक रन जुड़ गए जरूर स्कोर में, एक विकेट खो दिया। 33 रन 3 विकेट पर। 33 लॉस। So 4 overs, 33. It means 35 runs required in 2 overs. Not an easy ask. Someone has to go for those big ones. Big ones, at least out of these 12 balls, 3 sixes minimum, 4 better. So where are the 3 sixes going to come from? In comes the new bowler. Vicky Vikram. Amazing super giants were going for him in the auctions, but then Oxford Titans, they wanted a left arm bowler in their ranks. That's the reason why the captain Mukhtar Qadri went for him and took him in his side. This is the first opportunity here. Vicky is a fairly good bowler. I've seen him bowling very good for his team over the years. Junaid Bhai and Iqbal, welcome on the second day on Saturday to watch this SGPL season 2. या तानी माचेर बसला गया, सुंदर मैच चालू असा, जबरदस्त. Here comes Vicky, and this is played straight to the man, and there is a review here for above waist. No, I think a full toss missed here by the batsman. Even if there was a no ball or not a no ball, but he should have gone full-blooded shot. For that, he just went down the ground. It's okay, not a no ball. Just a single. Once again, a very good bowling here from Vicky.
He knew the batsman was shuffling across, bowled it full outside off stump, and ball moving away. The normal bowling of the left arm medium pace bowler, bowling from around the wicket this time. This time he strikes it, and this time they wanted it badly. This was a low full toss ball, and he was waiting for that wonderful swing of the bat in the cow corner region for a maximum. Twenty-eight more runs required in 9 balls. 28 in 9 is the equation. They cannot keep it in the last over. 17-18 runs in the last over is very, very difficult for any teams or any player for that matter. He's going for the switch hit, but there is a man in the covers region. He will get only a single. A switch hit should not be like you are given an invitation for the batsman. Yes, I am already waiting for you for the switch hit. It should come at the last moment. It should come as a surprise. The bowler should not come to know when you are going for the switch hit. Once again, very good bowling. That was a nothing shot. So good bowling here from Vicky. They just cannot afford to give dot balls at this stage. They just needed 6s, which is not coming. Just 1 6 won't help them. They need at least 3 more. This is in the air. This will be a catch. The ball has not gone anywhere. Mid-off takes an easy catch, and the struggle for the batsman has ended by point. And now SR Indians, the target looking very, very difficult. 27 in 1 over required. Score is 41, 27 required in 1 over. So Maruti Hugi was playing well with that 6 and 2 boundaries. I think there was no need of that run out. That run out changed the complexion. I can understand there were dot balls, but there were also weakling in the bowling attack. We were supposed to bowl the 4th and 5th or 6th over. You should have seen how Munna Sheikh batted yesterday. You must have taken some leaf out of the books from his innings yesterday. You can wait for those weaklings. You can wait for those 5th and 6th over, and you can get a big momentum, big lift to your innings. By losing the wicket of a player who was coming back strongly, Maruti Hugi, that ended whatever the hopes were there, and finally you have kept yourself 27 runs, which means 4 sixes, and this over is going to bowl by Niket Gaukar. Bala is injured. That's outside edge. It will be just a single. So very nice piece of bowling here. Bowling outside off stump. The bowler should be aware, even if 6 boundaries come off the 6 balls, it won't matter for the bowling side Oxford Titans. It is the 6s. They require 6s. 26 runs required in 5 balls. And this time, once again, so Bala's injury, he was picked up by this team, Oxford Titans. But then Bala was injured, and here Niket Gaukar getting a chance, a big opportunity for him. And he is also getting an important bowl here. Good over so far. This is in the air, fielder underneath. Will he take that? And what a lovely piece of fielding.
Outstanding here from Chappu. I thought it is going for 6 run. He timed the jump very well, and from the left hand, while he was in the air, puts it back in the field. This is the reason why you require good men at long on long off mid wicket region. Great job here from Chappu. Once again, back of the end, slower ball. Many of the local bowlers have done a very good job. Nitesh from Sangam had bowled decently, very good in fact, and one of the bowlers from the same area. From Wadham, this might be a wicket. Fielder coming, no timing whatsoever, in the air for a long time, and straight in the hands of Vicky. So SI Indians, apart from Maruti's who gives 1 6 and 2 4s, the batting has not worked for them. And the target was not much. Target was just 68 runs, but they have made a mess of it right from the start. It was over of Bush and Gole, just went for 7 runs. Pretty decent from Pritham Bari as well. Pritham Bari certainly at the top of the chart as far as run getter and also wicket taker. Certainly my player of the match contender. Well, finally it is up to the jury. In comes Somesh Prabhudesai. It's all too late here. It's all too late. And Oxford Titans will feel happy, will feel positive after winning this match comprehensively, beating SI Indians. This is an outside edge and he has to go back. Niket is very, very happy with his performance. Why not? The batsman just comes and goes, walks in, walks out. Badri tuka organizer tuka bitoras
So now let's march at the presentation area. So we have the guest at the presentation area, Mr. Junaid will be honoring Pritam Bhari for his cameo all-round performance as he has bagged the man of the match. So we can see a beautiful trophy that has been handed over to Pritam Bhari for his all-round performance. प्रीतम आधी गोव्यात स्वागत आहे आणि आज शनिवार म्हणजे आपल्याला माहित आहे गोव्याचं कसं असतं ते सो काय विचार आहे मॅच संपल्यावर काय करायचं आहे सर मॅच संपले आता पहिली मॅच जिंकलाय आता सेकंड मॅच जिंकायचा प्रयत्न करू आता पहिली मॅचमध्ये थोडा मिस्टेक झाली होती आता दुसऱ्या मॅचमध्ये प्रयत्न करू चांगलं आहे नुकतं मला हेच जाणवायचं होतं की अजून मॅचेस बाकी आहेत म्हणजे तुम्ही काही दुसऱ्या मूडमध्ये आहे का पण एनिवेज बेस्ट ऑफ लक मी तुम्हाला जास्त वेळ ठेवणार नाही आणखी बेस्ट ऑफ लक थँक्यू प्रीतम भारी सो दॅट वॉज द मॅन ऑफ द मॅच thinking of the matches that are going to come and after that once his team is in a better position then he'll be thinking of enjoying Goa. So that was the man of the match. So here comes the second match of the day. Dhaka Sunrisers versus Al Zargam Royal Challengers. Toss won by Dhaka Sunrisers, captain electing to field first. Here is opportunity to have a first look at these teams. 12th man of both the teams matcha beginniyat. Dar saka 12th man matchdarat. Al Zargamacho 12th man anga pavilla asa. So let's start with the proceedings of this match. Fardeen Qazi and Amit Damsekar. So good pair here at the start for Ar Zargam Royal Challengers. Well, that's one of my favorite jerseys in IPL of Royal Challengers Bangalore, red and black. So they have not won the toss, but they must have seen what has happened in the first match. Oxford Titans just managed to score around 67 runs, and they defended it with ease. So if you bowl well, if you take catches, and top of that, Oxford Titans had dropped 5 catches. So if you bowl according to the plan, if your fielders take the catches, certainly even a total of 70 is quite defendable. At the start itself, you should not think of what sort of total we are going to chase. If your wickets in hand after 2 overs or 3 overs, you can go after the bowling and go for that onslaught.
So two very good players, Fardeen Qazi and Ahmed Amshekar. Well, Fardeen Qazi needs no introduction. We'll come to know his stats and also the big matches, big tournaments that he has played, won for his teams. Ahmed Amshekar, one of the very good leather ball players, and also plays well in tennis, all forms of the game. Stylish, elegant, graceful. There is a time, opportunity here. Al Zargam Royal Challengers had bidded for him in the auctions, and he has to showcase his talent. Man of the series in Kukolim Premier League, where outstretched players from all over India had come, and the local team from Kukolim had won that tournament. He was adjudged the man of the tournament. A consistent performer. He will be at the non-strikers end. He has got a very good partner in Fardeen Qazi. And the bowler, Gaurish Nagvekar. What to say about this man? Pace, spearhead, fast, quick, and does a name for himself. He's a very, very good pick, mind you, for Dharsaka Sunrisers. Watching him for a couple of tournaments in this season. Not only with the ball, he comes, opens the ball, and then comes and does the job with the bat as an opener. Dharsaka Sunrisers मागचा 12th man झाला तुमचं. परत एकदा रिक्वेस्ट तुमका 12th man अजून पाहू ना. So today the jerseys have been changed here for umpires. It was red and now today it is green. Sports Ninja are the title sponsors, and you can see that Sports Ninja logo on the front side. The co-sponsors CZ and Shagun Hotel, supported by US Pizza, Amstrad 6-6, Wildfire Energy Drink, Alberca Hotel, EHAB Interiors, SES Engineering, Usha Stores, Alstone, Star Fisheries, Edmund Fernandez, Akash Fish Mill, Quality Experts of Kukalim, Jersey Partners, Savli Goa, Decorators, Gauri Radio, Light Screen, Surbi. Broadcasting partner TennisCricket.in, and umpires Aslam Sheikh, Sadgiri Naik, Babu Dabolkar, Babu Naik here from Fatora, scorer Viraj Tendulkar, commentator Ashok Naik, Sagar Gosavi, and myself Harish Kakurkar, online scorer Shivam Mishra, and YouTube Gaurav Sawant and DJ Dilip, and of course none other than the organizers Ismail Shamim Karimbai. And this is played very nicely. A good running between the wickets. He was backing the batsman from the non-strikers, and pretty decent bowler. He's got good height, 6 feet plus, bowls with heart, bowls with pace, more accurate most of the time. Consistency is the key that defines the difference between a good player and an ordinary player. Oh, what a lovely hit here. This is the class of Ahmed Amshekar. I told you, he is not bothered about who is going to bowl from the other end. And he plays the shots with straight bat. Ever so elegant, ever so graceful. You must have seen many shots being played yesterday and today. This was one of the best. Certainly the replay also shows how he played that. He has played much pace bowlers in leather ball cricket in his career. Ame, number 69 on his jersey. Oh, take that! Just take that! My goodness, Gaurish Nagvekar now has to think what he is coming next. I told you, he's one of my favorites, Ahmed Amshekar. And that's the reason why he has got all the shots in his book, and he's showcasing the talent as SCPL. What a pick to have, this man, a talented youngster, and recently he has he's also married, so that adds. Lady luck also helps sometimes. We have seen many big players also getting married, and that has worked for them in their life. So here 2 shots showing.
Amit Damshekar is in full flow. So 13 on the board, just 3 balls bowled. Gaurash Nagwekar. In comes the 4th ball. Where is going to bowl? Oh, and this time I guess yes, outside edge. Wanted to play over the long off fielder, but Amir certainly has given them a good start. Was looking good, but a short cameo from Amir comes to an end. Kunal, Gaurav Sawant and tennis cricket team have given us a wonderful arrangement here at the screen, and we can visualize what is happening. In comes Gaurish. This time on his legs, played for a single. Certainly, if a player comes and scores 2 sixes and goes for the 3rd ball, I think job is well done. Sometimes partnership is also required. Sometimes you have to wait for the weaklings, but they have got enough batting depth. In comes Karan More as number 1 spot. 1 down player. Score moves on to 14 with that single. Having one more look at Fardin Qazi. Oh, mighty! This is humongous strike here from Fardin Qazi. I guess after Pritam Bari 6, this will certainly be at the top of the chart. Look at the distance crossed and an expensive. So lovely start here for Al Zalgam Royal Challengers. 3 sixes coming in the first over. 2 from Amit Damshekar, 1 from Fardin Qazi. A strong looking team, strong batting order. In comes Vishal Gowdy. Well, Vishant, the owner of Darsaka Sunrisers, who had kept money for this man, Vishal Gowde. He wanted him in this side, and here is the first look. We have seen him before. That's a lovely shot. That's a lovely shot. No one moved, in fact. Lots of room, lots of gap there in the offside as well. And ample of space is crisply hit here by the batsman. You can see that Karan More played that in the extra cover region, giving him a good start, good boundary, good feeling.
You can certainly see from that shot he's a wonderful leather player. Oh, that's in the air. That might be a catch. And lovely effort. You cannot blame the fielder over there. Ijaz Qureshi, great effort, valiant effort. He was close to the boundary rope. Otherwise, this could have been 6 runs. The timing of the jump was also right. But sometimes you have to keep yourself safe from the holdings that are behind. And also you have to see that your foot does not touch the rope. So he has done a fabulous job. Ijaz Qureshi, man of the series in the trophy in Ratnagiri, and also Cartridge. So very good player, very good fielder as well. Wonderful to have in your team, Karan More. Oh, take that! My goodness gracious me! Normally some of the players are even playing with a normal shot over mid-wicket region won't go over and cross over that distance, and he has done that with a switch hit. The viewership will certainly increase in tennis cricket if this man continues the form like this. Fardeen Qazi is a young man, and many had asked me yesterday which team Fardeen Qazi is playing. Well, certainly he has started well here for Al Zargam Royal Challengers. What a classy batting display here so far in just 2 sixes. This is once again very nicely hit. Oh, this is super class. This is super stuff. This is outstanding, outrageous batting here from this man. How can you blame the bowler? Nothing wrong happening here by the bowlers. They are bowling pretty well, pretty decently. But this is something out of the box. This is class, is something different. Takes the score to 37. We can show this shot all day, all night long. This time he was asking for wide. He removed his back leg later on. Umpire is also very smart. Here is that 6, that replay. Look at that on one knee. And he embellished that with a wonderful pose after that. This time he premeditated to play that shot. If he had hold his ground, he could have got it as a full toss and could have hit it anywhere. When the batsman is in full flow and is good on both sides of the wicket, it makes life difficult for the bowlers as well. Score is 38 after completion of 2 for the loss of 1. मेनुद्दीन बाबा तुका माचेर आपयतात आणि बॅटिंग ओवर बॅटिंग पावर प्ले हो घेतिल्लो आसा. इन कम्स फिरोज शेख. And wildfire and आयचे जे कॉम्पिटिशन आसा काल कोण सिक्सरी मारता ताका वायल्डफायर एनर्जी ड्रिंक प्रत्येक सिक्सरी फाटल्यान फ्री आशिल्ली. आज कोण बॉलर जो क्लीन बॉल करता क्लीन बॉल ताका एक वायल्डफायर एनर्जी ड्रिंक फ्री आसतली. वायल्डफायर म्हळ्यार रानांतलो उजो. स्कोर इज 38. आत्ता परत सांगिल्लें स्कोर 38 म्हणून ओवर जातकीच परत एकदा सांगता 38 फॉर द लॉस ऑफ 1 इन 2 overs. इन कम्स फिरोज शेख टू बॉल द थर्ड ओवर फ्रॉम over the wicket, left arm over to Karan More. Oh, once again this is good shot. What a class this man is having. What can I say about this man? Fardeen Qazi is certainly coming up
storming, blazing on this ground. 6 runs. So these 6 runs taking the score to 44. Viraj Tendulkar doesn't like mistakes in his scoring. Certainly one done here. But not his fault. This is in the air. Oh, such a pity end. Such a pity end. What was turning out to be a classy knock here from Fardeen Qazi. He's not happy with himself. And I guess many of the players and supporters and also many of the viewers are unhappy with that shot. And finally he departs. But nevertheless, he has shown his class, how and in future how he's going to play, how he's going to bat, and many more are going to watch him play in the further course of this tournament. There's a second wicket going down at the score of 44. In comes Navdeep. Well, certainly if you can see the top of the order of many of the teams, there are some specialist tennis players. But if those tennis players are good in leather ball, they will be good in playing shots on the offside. And when most of the time when the bowler bowls on the offside, then it becomes much easy for them, as there are a lot of options for them. Leather ball players are always elegant, classy. You have seen one look at Karan More, some good shots, very good shots in fact from Fardeen Qazi and Ahmed Amsekar. This is going to be a wide, easy signal by the umpire. Still to bat Shreyas Kadam. They have told Navdeep to go up the order. This was a quicker ball. This was not a normal leg ball, that slower ball, leg cutter that he bowls. So mixing it up well. You need to mix up well against these good bowlers, good batsmen. In fact, certainly the top order of Al Zargam looking very, very strong at this moment. But whatever the start has been given by the top order has to be used and used well by the middle and lower order batsmen, certainly to get somewhere around 80 plus, considering the start. 45 at the moment, the score. Ah, that's a lovely hit. This should be 6 runs straight over the screen, and Navdeep also coming into the act. So 50 up here for Al Zargam Royal Challengers, 50 up in just the third over, 51 to be precise. Whichever batsmen are coming, they are going for the sixes and they are timing it well. Al Zargam Royal Challengers supporters are also ecstatic, they are happy. And the pepare will continue throughout the day. Big appeal, but chance of a run out. Karan More makes it well in the end. Leg by signal here by umpire, taking the score to 52. Still, we are going to have a look at amazing super giants who are yet to play their match, and they will be playing against Oxford Titans after this match gets over. Oh, once again, lovely pull shot. Well, I want Gaurav to show the replay over there. It was above his shoulder and close to the head height. And how well he has managed to play that. Wonderful position to play that pull shot, and easily glides it down the backward square leg region for 6 runs. The sixes are running thick and fast. They are flowing from the bat of top order batsmen of Al Zargam Royal Challengers. And I guess the bowlers will have a lot of challenge in the coming 3 overs.
After completion of 3 overs, the score is 58. And 58, here is the replay. You can see that the ball was ducked in a short. It was above his head height, and he was into the position, and quick hands made that possible. So after 3 it's 58 for the loss of 2, and it will be change in commentary and change in bowling as well. Mohit Gawkar will be bowling, and I am handing over the mic to Sagar Gosavi for further updates. Thank you, Harish, and very good afternoon to all the viewers and the spectators at the moment on the ground, as well as who are still at their home watching this match live, courtesy TennisCricket.in. So here's Mohit Gawkar. Right arm on his arm. This is the first delivery. Lovely strike from Navdeep. Ball is going to land safely outside the boundary rope. And the ball travels up, and above the country box. With that, a big 6. Score moves to 64. This is the effect of the good start that Faldin Ghazi and Ahmed Damsekar has given in the beginning. So now the incoming players, they are following the footsteps of their openers. Lovely start, and the party continues with the bat as well. Navdeep joining the party, growing the ball out of the ground. Another good delivery. There's a hint of helicopter ball racing towards the wide edge, long on region. Well fielded there by tallest guy on the ground. That will fetch a single. That single will post the total to 65, and that will bring Karan More at the striker's end. So in the previous edition, the same guy who is bowling at the moment was the player of the tournament in the edition 1. So now he has been taken for a troll, courtesy of big 6, but a lovely escape, and with that score moves to 66. Slightly quicker, but onto the legs, no harm done. We had to wait for umpire's signal just to confirm whether it is not off the bat, straight onto the legs. Leg by is the signal. With that extra, score moves to 67. So meanwhile, we welcome Junaid ABF. Welcome, sir, on this ground. Do enjoy these matches, and please take your seat on the days. Meanwhile, a lovely slog sweep. Good attempt. Could not stop the ball, as ball fell little short of the player. Travels the distance boundary to take the total to on the final delivery of the over.
down for the loss of 3 wickets. Wicket on the very last delivery, and that too, it's of Karan More, outstation player. So new man in is Shreyash Kadam. But so Shreyash Kadam is the same guy who has the record of hitting the longest six at the Sharjah Stadium, and that too against a Pakistani player. That was an international tournament, and he is the only player to hit that big six, as none of the international player has ever hit a six against that bowler. So such is the capacity, but he is at the non-strikers end. Meanwhile, there's a fall of 1 more wicket. Navdeep Gaonkar played a small cameo of 11 runs and is back to the pavilion. Courtesy Firoz Sheikh takes a wicket on the very first delivery. So as the good batting continues. So now new man in is Anush Kerkar, another good prospect. But let's see what will be his approach. Whether he is being sensible at the moment, as a good batsman is at the opposite end, or he is also in a mood to join the groove, join the party with a bat, with striking abilities. So let's see what will be the strategy as the wicket goes on the very first delivery in the 5th over. So requesting Amazing Super Giants captain and Oxford to kindly come for toss. Meanwhile, this is a good batting, a sensible batting. Takes a single to open his account and bring Shreyash Kadam, the hard-hitting batsman, onto the striking end. So lot of hopes from the dugout of Al-Zargham Royal Challengers from this guy. Anyone request the captain of Amazing Super Giants to kindly take your team for a photograph that will be taken by none other than the professional Amani events under the guidance of Anand Divjikar. Meanwhile, was shuffling slightly towards the off stump. The bowler is a sharp, delivers it near the guideline, and as per the modern rules, if a batsman shuffles towards the off stump, then the guideline further moves ahead. So these are the modern rules that have been implemented to help the bowler to deliver in the zone. This time this is a wide signal from the umpire as it was pitched way outside the off stump. That extra takes the team total to 74. Firoz Sheikh feeling the pressure at the moment as Shreyash Kadam is at the striker's end. Another ball straight up wide is the signal from the main umpire. So consecutive wides takes the total to 75. 5th over in progress, wicket on the very first delivery. Meanwhile, a good pitch delivery down the leg stump. Again, a stretch of arms by the main umpire. Wide, consecutive wides delivered by Firoz Sheikh. And that takes the team total to 76. Meanwhile, we have to wait for umpire signal as ball moved towards the point region. It's off the leg, no bat involved. So an extra takes the total to 77, and with that single, Shreyash Kadam is off the strike. So now his partner, the man who has just joined the party, Anush Kerkar, is at the striker's end. Let's see what Anush can do. He has opened the account with a single. Definitely will be aiming to swing the bat as hard as possible, but let me tell you, Firoz Sheikh is not going to give so easy. Beautiful connection. Fielder running to catch the ball. Is it going to be caught? No, I don't think so. There was a
definite attempt. And we have to wait for umpire signal as definitely he will be rope. No chance for the fielder. He has made a definite attempt but could not stop the ball from falling on the rope. And that gives a big six. With that six score moves to 83. Another good attempt. Lovely pacey delivery through the gap between the bat and the legs. Quick to the keeper. A dot ball to end the fifth overs after completion of 5. Score is 83 for the loss of 4 wickets. DJ. हर दिन लाख The team Amazing Super Giants, please accompany your captain for a photograph. The toss will be taken between Amazing Super Giants and Oxford, which will be the following match after this match. Meanwhile, the final over of the inning. Chetan Bharat to deliver. Fuller pitch, equally well played into the vacant zone. Ball races a bounce away. And that confirms 4 runs to be added to the total. With that, team total moves to 87. So good start for the final over. Lovely strike. Cross-batted strike over the long off region. A bounce to cross the fence. Wonderful strike from the batsman. Shreyas Kadam still not able to get the proper elevation. Waiting for that opportune moment. Let's see whether he can connect in this final over. Strong character. Again, shuffling slightly towards the off stump. No proper connection, and a wide is the signal from the umpire. With that wide, team total moves to 88. Meanwhile, another strike along the carpet. Ball has been hit into the gap between the corner and the square leg. No chance for any. And 4, is it going to be broken? Let's see whether this team is going to get the highest runs, as the 4 illegal deliveries are yet to come. .92 on the card. Change in pace, working at the moment onto the body line. Wonderful bowling, not hesitating to deliver the fuller length. Chetan Bharat taking up the challenge against one of the strongest batsmen. But look at the cool and calm composure of the bowler, delivering in the right areas. Wonderful strike, look at that strike. Heaves the ball over the corner, no chance for any fielder rather than being a spectator to watch the ball falling out of
Of Shreyas Kadam, as he is popularly known as Helicopter Boy of Mumbai. And now that helicopter is flying in Goa as well. What a strike! Another wonderful strike straight down the ground. Are they going for the second? Oh my dear! Fumble and the ball goes through the play. I can't believe my eyes. On the board. Helicopter Boy of Mumbai playing. Another good strike. Look at that hit. It has been miles in the air and even traveled the distance. Highest total so far in this tournament, 108 on the board. What a player. Shreyas Kadam doing the job of a finisher for his team. Plays the similar kind of shot that the helicopter boy who has introduced that shot at the international level is none other than the legend MSC, and now the similar fashion, and even he has finished the match in a similar style. What a player to be witnessed on the very ground of Goa, that too at Margao. So with that big six, team total moves to 108. 109 is the target in front of Darsagal Sunrisers. Let's see what happens as we'll come back after a short break in the second innings in the run chase. And for that, I would like to invite Ashok Chinaik with his sweet से 1058 तुरंत प्लीज आपकी गाड़ी वहां से सही जगह पर पार्किंग कीजिए। तो आइए कैप्टन ऑक्सफोर्ड टाइटंस
रही, फरदीन काजी ने बनाए 26 रन, बाद में करण मोरे ने 2 चौके 1 छक्का लगाए 17 रन बनाए, नवदीप गांवकर ने बनाए 13 रन और आखिर में श्रेयस कदम के बहुत ही शानदार आक्रामक बल्लेबाजी 22 रन बने और इसी के बदौलत एक बड़ा टोटल सामने 108 और 109 रन मैच को जीतने के लिए मैदान पर 36 गेंदे 109 रनों की जरूरत। और आने वाले मैच के लिए एक बार फिर से टॉस के लिए हम कॉल कर रहे हैं अमेजिंग सन जो कि और उन्हीं के साथ ऑक्सफोर्ड टाइटंस, ये दोनों टीम आने वाला मैच खेलेंगे जो तीसरा मुकाबला होगा। टारगेट 109 रनों का मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर में पावर प्ले में गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने से पातोड़ा स्टेडियम की ओर से दिखाई देते हुए सतीश यादव गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले का ओवर लेकर अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। Two very close friends, very close friends, Naresh Asolekar and Mukhtar Kadri. और पहली गेंद पर बड़ा शॉट, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद मिली सामने न्यू बैट जो कि ओपनर बैटर मैदान पर अजीत मोहिते और उनके साथ लेफ्ट हैंडर एजाज कुरैशी। क्या बिल्कुल आजकल बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी हो या राजापुर में हाल ही में बिल्कुल समाप्त हुए कातरी एनसीसी कातरी की टूर्नामेंट हो, दोनों टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार खेल, वो खिलाड़ी अब इस बार मैदान पर कल के दिन में उनका जो कि It's time for toss. We have Parag Raikar, Ashutosh Hangle, member of GCC, and Karim Bhai for the toss ceremony. Parag is going to flip, and Parag is the one who has given us the wildfire drink, energy drink. Naru, toss chikla, fielding. Fielding, obviously. ऑब्वियसली सध्या ते ऑब्वियस कोण जिंकता ते टॉस फिल्डिंगच घेता. सो म्हाका दिसता तुजे आउटस्टेशन प्लेयर्स कोण? तीग जाण आउटस्टेशन दर्शत बांदेकर, जिग्नेश पटेल आणि सुमित दोगडे. ओके, तीग जाण बरे प्लेयर्स आसात. सो खंयच्या एक जर 2 प्लेयराची तूं नांव घेतलं लोकल आमचे टॅलंट जाका तुका दिसता की ह्या टुर्नामेंटाक एक तांणी परफॉर्म करपा जाय आपल्या टिमीक, अशें सगळ्यांनी करपाचें आसतात पूण एक 2 जाण बॉलर आसता जे एक ओवर घालता तेय बी इम्पॉर्टंट आसता. तशें 5व्या 6व्या जाग्याचेर जो बॅट्समॅन वता तोय बी इम्पॉर्टंट जावपाक शकता. अपाली आणि मतीन हे दोगी जाण सामके की फॅक्टर आसा पळया, तांकां सांगलां कशें खेळपाचें तें. ओके, आणि तुका तूं टॉस जिखलो आसा, तुजी पयली मॅच, कालची मॅच तुवें पळयल्यो आसतल्यो कशें जाल्यो त्यो, आनी आयची आतां तुजी पयली मॅच, आनी तुका एक 4 टिमी तुजे त्यो ओपोजंट आसा ते कशें आसा ते तुवें म्हाका दिसता 2 गेमीन तुका कळ्ळें आसतलें. हय ऑब्वियसली, कित्याक पयल्या मॅच्यो आनी 4य टिमीचे जे प्लेयर आसा ऑब्वियसली आउटस्टेशनय बरे आसात आनी लोकलय बरे आसा. पळया कशें आसा की ही मॅच कोणाची तो कोण बरो खेळटलो तो जिखतलो. करेक्ट, गुड लक टू यू नरू. तसोच काद्रीबाई, तुकाले 99.9% ऑफ टायम टॉस जिखल्यार तुवें बी फिल्डिंगूच घेता आशिल्लो. ऑफकोर्स आतां कितें करतलें, टॉस जाल्लें नॉट इशू. आमी फर्स्ट मॅच बॅटिंगेन जिखला, लास्ट इयर असो फर्स्ट मॅच बॅटिंग जिखलेले आनी नेक्स्ट सेकंड मॅच बी आमकां बॅटिंग पडलेली. आयज पळया कितें जाता. आनी तुजें जे आज परफॉर्मन्स आशिल्लें स्पेशली बॅटिंग जशी जाय आशिल्ली तितली क्लिक जावना, डिसंट स्कोर पोस्ट केल्लो, पूण बॉलिंग जबरदस्त आशिल्ली आनी बॉलिंगेन म्हाका दिसता तुजें बरें परफॉर्मन्स केलें आसा. तुका दिसता की तुजे वेटेज जी आसा ती बॅटिंग वेटेज आसा काय तुजे टिमीची बॉलिंग वेटेज चड आसा? ना मातशी पीच मातशी होली आसली ती,
ते आमी बी जाणा आसले पीच ओलिया तो बी जाणा आसलो पीच ओलिया टॉस वॉज व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर द फर्स्ट मॅच आमी ते मातशे फर्स्ट टॉस हारले न्हू तेन्ना मातशें आमकां बी जाणा आसलें 2 ओव्हरी आमकां स्कोर जावपा वेरी टफ आहा बॉल स्किटी जाता आसलो बॉल स्पिन जायनासलो आतां बॅट टमटमीत जाला लेट्स ऑफ फॉर द बेस्ट 36 बॉल वी हॅव टू बॅट आमची बॅटिंग बरी आहा अजून क्लिक जावं ना शाहीद शेख आहा चप्पू आमचो लोकल प्लेयर बरो आहा सानूज आमचो बरो प्लेयर आहा लोकल मनोज आहा नो डावट आमची बॅटिंग लायन बरी आहा लेट्स अप फॉर द बेस्ट आणि म्हाका एक सांग तूं जेन्ना सदांच पळय टुर्नामेंट आसता तेन्ना पयली मॅच जिखप ही सदांच बरी आसता कारण एक टिमीचे कॉन्फिडन्स बूस्ट जाता एक जेलिंग बरें जाता सो हाव इज द मूड इन द कॅम्प Of course, first match was very, very important for us, and we have scored only 6 because it's very small ground. But our bowler has bowled very decent bowling. Because of that, we won the match. Now, this match we cannot predict 60, 50 or 60 runs because they having a good, good batting lineup. We have to bat very well. That is important for us. And amazing Super Giants are a very good team. तुका म्हाका दिसता ओदोळे आमी उलयताले की ही मॅच सामकी इम्पॉर्टंट आसा कारण जसो तूं आसा आज गोंया भितर व्हडलें नांव केलां तशेंच नरेश असोळडीकारूय एक वेटरन लेवलाचेर भरपूर एक्सपिरियन्स लेवलाचेर आसा तो तुजी आनी ताजी कॅप्टन्सीची जी बी टक्कर म्हाका दिसता की जातली फुडल्या मॅचीक ऑफकोर्स अमेझिंग टीम टॉप जावपाची टीम आहा आयचे एका ग्रुपान अमेझिंग विल बी द टॉप टीम आयज हांकां मारता आमचोय बुस्टअप व्हडलो जातलो बुस्टअप जातले आमी दॅट इज इम्पॉर्टंट नो डावट नरेश इज अ गुड कॅप्टन गुड प्लेयर आनी गुड बॅट्समॅन ऑल्सो नॉट अ इश्यू बिकॉज ऑफ दॅट ओनली आयज ते सांग्यार फायनल पावले बिकॉज ऑफ नरेश ओनली दे हॅव रीच इन फायनल नो डावट ही इज अ गुड प्लेयर Absolutely. So good luck to you, Kadribai, in the next match. Very important match. Over to Ashok sir. थैंक यू हरीश सर और आनंद दिवजीकर ने बिल्कुल अभी अभी जानकारी दी है साउथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दूसरा है और सबसे युवा कप्तान है वो दो ये है नरेश असोंडेकर और मुख्तार कादरी दोनों मिलाकर बिल्कुल तो फिलहाल मैदान पर रुक करते स्कोर हो चुका है 18 रन बिना किसी नुकसान से टारगेट है सामने 109 रनों का और क्रिकेट के और अशोक सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्तार कादरी और अगर नरेश असोलेकर मिला हो तो 90 प्लस स्कोर श्योर है हाँ बिल्कुल सर क्योंकि वो दोनों की एज मिला है तो 90 प्लस है बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी उनको खेलने के लिए बिल्कुल क्या फील्डिंग करते क्या गेंदबाजी करते बल्लेबाजी करते लेकिन एक जानकारी दर्शकों के लिए क्रिकेट का मजा ले लो मैच देखो लेकिन आपके लिए भी एक इनाम यहाँ पर जो कि पुरस्कृत किया गया है इस जो कि पूरी मैनेजमेंट के टीम में बहुत ही जो कि कई हाथ जुड़ चुके कई मेहनत हो रही है उनमें से एक नाम है सर अहमद खान जिनका और एक हाथ से अगर आप दर्शक जो बाहर के बाउंड्री लाइन के बाहर के अगर गेंद को कैच करोगे एक हाथ में कैच पकड़ना चाहिए आपको मिलेंगे 200 रुपए का इनाम ये इनाम जारी रहेगा लगभग शाम तक मुकाबले में जो होंगे उस शाम तक सर अहमद खान जिनके ओर से अहमद भाई आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद 200 रुपए का इनाम एक हाथ से दोस्तों कैच लेना चाहिए यह बात याद रखिए के अहमद खान के थैंक यू और कैच लेते लेते एक बात भी ध्यान रखो एक दूसरे को मत थोड़ा सा इधर उधर जो कि ढकलो बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते मैदान पर बैटिंग पावर प्ले का इशारा और कल जो सिक्सर के लिए इनाम रखा था जो एनर्जी ड्रिंक का आज मात्र वो इनाम जारी है लेकिन वो गेंदबाज को जो गेंदबाज बोल्ड करेगा उसके लिए ये इनाम रखा है जो एनर्जी ड्रिंक का गेंदबाज के लिए इनाम है लेकिन सिर्फ बोल्ड करने वाले गेंदबाज को ये इनाम फिलहाल सामने स्ट्राइक एंड पर बैटर सज्ज सामना करते हुए बॉलिंग मार पर अनुष केरकर और ओपनिंग जोड़ी में शानदार शुरुआत बड़ा टोटल है पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत अजीत मोहते 2 छक्के एक लाजवाब एक चौका लगाते हुए एजाज कुरैशी जो लेफ्ट हैंडर बैटर नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इसे बीच दूसरे ओवर की शुरुआत मैदान पर होती हुई छोटी गेंद पुल किया इस बार बड़े खूबसूरती के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई इसी मारिका से बाहर 6 रन के लिए वाले बाबू बगल में स्क्रीन TennisCricket.in से आप रिप्ले जरूर देख सकते हैं किस तरह से ये बल्लेबाजी रही पहला मैच दूसरा मैच इस बार पीछा किया था ऑफ स्टंप पर गेंद को शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कट करना चाहते थे ऑफ साइड पर
और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एक शानदार शुरुआत 109 रनों के जवाब में अजीत मोहिते और उन्हीं के साथ एजाज कुरैशी, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान से 25 रन। तो अंपायर का इशारा हमारे थर्ड अंपायर की ओर, वाइड बॉल के लिए ना सर, नो बॉल, ओके, नो बॉल के लिए ये इशारा। और हमारे तीसरी आंख असलम भाई, वो भी जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, नो बॉल के लिए ये इशारा हो चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर। करना था कर लिया। धाड़सकल क्रिकेट टीम, धाड़सकल सनराइजर्स आज का दूसरा मुकाबला मैदान पर जारी। अनुष्कर का राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवरपिच गेंद बाहरी किनारा, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद खड़ी हो गई फील्डर गेंद के नीचे, और एक बड़ा विकेट मिलता हुआ मैदान में। पहले विकेट का पतन होता हुआ धाड़सकल क्रिकेट टीम का। लगाया, एक चौका लगाया, 23 रन पर खुद के व्यक्तिगत आउट होकर वापस बैटर अजीत मोहिते सफलता मिली। अनुष केरकर को लॉन्ग ऑफ पर खेलना चाहते थे, ओवरपिच गेंद हाफ वाले पर लेकर थोड़ा सा बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद खड़ी हो गई एक्स्ट्रा कवर पर। एक बहुत ही शानदार कैच और सुपरमैन मैदान पर, न्यू बैटर समर्थ गावस, पिंच हिटर, वन डाउन बैटर मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 25 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टारगेट है सामने 109 रनों का मैच को जीतने के लिए। अनुष केरकर अपने बॉलिंग मार पर एक बहुत ही कीमती सफलता अपने टीम को दिलाते हुए, और सामने सुपरमैन समर्थ गावस स्ट्राइक पर बैटर। मिस टाइम शॉट देखना होगा, मौका बनेगा, अब खुद निकले अनुष केरकर गेंद के नीचे, बहुत ही बेहतरीन कैच। आते आते बिल्कुल दूसरा धक्का लगता हुआ धाड़सकल क्रिकेट टीम को। थोड़ी सी लेग कटर, और फिर से मैं तो कहूंगा बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, थोड़ी सी ऊपर लगी गेंद, और समर्थ गावस बहुत निराश करते हुए सभी दर्शकों को। और न्यू बैटर मैदान पर मोहित गावकर। ओपनिंग जोड़ी के बीच में एक अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। अजीत मोहिते ने 23 रन 25 रन पर पहला विकेट, लेकिन तुरंत दूसरा विकेट खोते हुए धाड़सकल क्रिकेट टीम बहुत कुछ दारोमदार रहेगी इस जोड़ी पर। एजाज कुरैशी और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर मोहित गावकर, सामने से अनुष केरकर हैट्रिक की गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट ऑन ए हैट्रिक। अच्छी गेंद, थोड़ा सा आपेश हवा में जरूर निकली थी मिड ऑफ पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते। एक बार फिर से सभी दर्शकों के लिए जानकारी, के जी अहमद खान जिनके ओर से 200 रुपए का इनाम रखा है। कैच आपको बाउंड्री से बाहर का एक हाथ से पकड़ना चाहिए
और कल के दिन में जो सिक्सर के लिए एनर्जी ड्रिंक था, आज मात्र वो एनर्जी ड्रिंक मिलेगा वो गेंदबाज को। जो गेंदबाज बोल्ड करेगा बल्लेबाज को, उसके लिए ये इनाम रखा है। दूसरा दिन दोपहर के सत्र में कड़ी धूप, आज निश्चित रूप से कल हवा का झोंका था, हवा बह रही थी बहुत, आज बिल्कुल गर्मी महसूस हो रही है। जो कि मैदान में कमेंट्री बॉक्स में फिलहाल मुकाबला जारी दोनों टीमों के बीच में, और सामने बैटर है एजाज कुरैशी, उनके लिए राइट आर्म राउंड विकेट अनुश केरकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा। सिलमिडॉन पर गेंदने के लिए जब तक गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक सिंगल के साथ एजाज कुरैशी ने अपना खाता खोला, स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल रन के साथ टोटल आगे 27, लॉस ऑफ 2 विकेट, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टारगेट सामने रखा है 109 रनों का, सफर दूर का है, मंजिल दूर की है जरूर, लेकिन बल्लेबाजी है इस टीम की। और ये दो खिलाड़ी जब तक मैदान पर, शायद बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी जीत हार की। ओवर द विकेट राइट हैंडर बैटर के लिए, लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट अनुश केरकर, दो कीमती सफलता इस ओवर में। और छोटे गेंद इस बार हुक किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत लेफ्ट हैंडर बैटर एजाज कुरैशी, उनका साथ देने के लिए मोहित गांवकर और रोहन सालगांवकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर। वो गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला राउंड विकेट, टीम के ओर से तीसरा, सामने बैटर एजाज कुरैशी। और इस बार मिस टाइम शॉट, फाइन लेग पर एक आसान सा मौका और एक धक्का लगा टीम को। एजाज कुरैशी वापस सिर्फ एक रन बनाकर तीसरा विकेट, 31 रन 3 विकेट पर। कप्तान को बहुत जल्द आना पड़ा मैदान पर और वो आ चुके हैं सर्विस गावड़े स्ट्राइक पर सामना करते हुए। रोहन सालगांवकर एक बहुत ही अच्छी सफलता दिलाते हुए एजाज कुरैशी को बिल्कुल सस्ते में वापस डगआउट में भेज दिया। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन शायद उतना अच्छा संपर्क नहीं था। जब तक आते विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, एक रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 32 लॉस ऑफ 3 विकेट, 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
सामने से सबके अन्ना सरवन्ना दिखाई दे रहे, शायद कुछ अनफिट दिखाई दे रहे, लेकिन कल दाद देनी पड़ेगी शकील अहमद को, अब्दुल सलाम को। क्या खेल किया इस मैदान पर। सामने से थोड़ा सा फील्डिंग को एक बार फिर से ठीक ठाक। ऑन साइड पर डीप स्क्वेयर लेके एक डीप मिड विकेट, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक लगभग डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। इस बार पुलर लेन की गेंद, एक बैठक शॉट खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, बहुत अच्छी गेंद। इस बार बल्लेबाज को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया रोहन सालगांवकर ने। किफायती रहे पिछले ओवर में अनुष गेरकर, 2 सफलता कीमती विकेट चटकाए। शुरुआत की थी सतीश यादव ने, थोड़े से महंगे हुए थे, 2 छक्के 1 चौका लगा था। और फिर से खेलना चाहते, थोड़ा सा गति में परिवर्तन। इस खिलाड़ी की बिल्कुल ये खूबी है मैदान में गेंदबाजी में, जब जब आते हैं स्लोवर वन, कभी लेग कटर, कभी ऑफ कटर, कभी तेज गेंदबाजी, हमेशा परेशान कर रखते हैं बल्लेबाज को। और वही गेंद एक बार फिर से जो कि चकमा देती हुई बल्लेबाज मोहित गांवकर 5 पर 1 चौका लगाते हुए अपने इनिंग को। और सामने नॉन स्ट्राइकर इन पर कप्तान टीम के सर्वेश गावड़े। ओवर पिच गेंद मिली, हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, 1 रन तब तक मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 33, लॉस ऑफ 3 विकेट, 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर दार्शक सनराइजर्स क्रिकेट टीम जवाब देती हुई मैदान पर। अच्छी गेंद, फिर से हल्के से खेला गेंद को ऑफसाइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन और जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रही है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 34, 34 रन 3 विकेट पर। आने वाले 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी मैच का, और 75 रन जरूरी मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदों में 75 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। So the equation going in favor of the batting side, they posted a huge total on the board. 109 is the target in 6 overs. Ajit Moite looking very good at the start, but then it was just a walk-in, walk-out for the batsman. Nothing much to show, and here comes one more bowler. Ajay Kewat, the captain of the side, has come on to bowl around the wicket. If you look at both the teams, certainly the batting side, which batted very well, 108, they are concentrated more sort of in their batting department. Bowling is pretty decent, but they have not got outstation players who can bowl that over. So they are proper batsmen rather than all-rounders. So all depends upon the go-on bowlers. Oh, that's in the air. This should be a catch. Who is coming underneath? Easily taken by Shreyash. So Mohit Gaokar also departs, man of the series in the previous encounter. First showcase of talent for him, and falters
So Ajay Kewat starting well, getting a wicket, 4 wickets down, and in comes Babal Zori. So that was a slower ball. Once again, it's in the air, but in the gap as well. 6 runs. Left-handed tried a slower ball. It went and turned out to be a full toss and a good straight hit. The best part was hitting it straight. There were 2 men in the deep, long on and long off. It bisected both the fielders. Didn't cross that much of a distance, but you can see there from the replay, it was hit very straight. That takes the score to 41. This is once again, this will be taken. Yes, good catch. He had taken a start and that made that catch possible. So one more wicket going down. Hello, Tess, okay, we are back. So 2 wickets in 4 balls. So none of the batsmen, in spite of scoring a good 6 from Babal Zore, he departs. They don't have options left here. They just have to go after the bowling. There is no point in hanging around. And the run rate also doesn't matter. If all the teams are equal, 3 or 4 teams at 2 points, 4 points each or 6 points each, then it's going to be a bowl out, not the net run rate. It doesn't come into picture. .41 for the loss of 5 now. Turning out to be a one-sided contest. The density of batting in this team is so high that even if someone gets 80, 90, they will feel that they are confident enough to chase that down. I'm talking about Al Zargam Royal Challengers. This is very nicely played. Oh, misfielding. That happens in that region because you can see that a little bit rusty, that ground, a little bit rough, and makes it difficult for the fielder. So 4 runs here for the batsman, taking the score to 45. 11 runs of this over so far, but he also took 2 wickets. So another single from the bat of Vishal that will finish over number 4. It's happening slowly and steadily, but I guess the asking rate is increasing each and every over. They require almost 25 runs to win in the next 3. Almost 20, 22 runs. 46 for the loss of 5 in 4. 63 runs required in 12 balls. That's almost 30 runs per over. 10 sixes are required, which is not easy here considering number 6 and number 7 are batting. The batsmen who were supposed to rely on Ajit Mohite, Ijaz Qureshi, Samarth Gaus, Mohit Garkar are all back in the pavilion. So Al Zargam, one of the strongest batting teams here, certainly showcasing all the batsmen coming right, handy knocks from everyone. Highest total of this tournament has been posted. 108. It was 104 last night by Indians Capital, which was almost chased down by KKG Knight Riders, but now it has been surpassed. In comes Nihal Bind. So good start here, right in the block hole. There's a good opportunity here for the bowlers from Goa local talent. They will be getting definitely help from Karan More, Ijaz Qureshi. Sabir, one of the most experienced, has played a lot of cricket. He will give some inputs as well. So that help will come. But finally it's up to you how you bowl. This is a loose delivery here. Full toss down the leg side. Just a flick. Bat was required and he does it easily. So 4 runs taking the score to 51. But here
no jubilations from anyone, not even from Sunrisers, Dharsaka Sunrisers, and also from Alzargam Royal Challengers, as both know what is going to be the complexion and the result of this match. So everyone is quiet. This is in the air. This should be taken. Oh, it goes for 6 runs. How well he timed it. I thought it is going straight in the hands and just went flowing and flowing and flowing with that breeze also helping. 6 runs. Magnificent shot. Taking the score to 57. So now helmet has been asked here by the wicket keeper. स्पीकराकडे असा स्पीकराकडे now we got to see almost 4 teams today, and it is going to be amazing super giants in the next match. So all 5 teams will be looking after the completion of the 3rd match of the day. It's different altogether, playing in the sunlight and in the lights, floodlights. Once again, shot is shuffled across. The opportunity was there. Big opportunity for a boundary at least. Only 3 fielders on the leg side, and that region from the backward square leg towards the fine leg region. If he gets and finds the gap, easy boundary or a 6 in that region. I told you it's going to be finally the ball turned turtle over there. It was coming down towards the fine leg, then it went towards the square leg region. Easy for the fielder to stop it. Single will take the score to 58. Just 1 ball remaining of Nihal Bin's 5th over for his side. Vishal is playing on 6 and Sarvesh is playing on 13, not out. That's a lovely ball right in the block hole. Finishes well here. Nihal Bin after completion of 5. It's 58 for the loss of 5 and 51 runs required in 6 balls, which is an average of almost 51, which is not going to happen. Comfortable, and it will be one-sided victory here for all Zargam Royal Challengers, but they can certainly try some things. Try a bowler here. Maybe the bowler they have not thought of opportunity and chance here, so that he gets little bit of confidence. When time is required in the later on important matches, he can certainly be used at that time. This is the best time for that. There will be no pressure whatsoever on the bowler. He very well knows that match is well in. So Shreyas now. Shreyas Kadam. So he is bowling this 6th over. This is right ball. Clean 6. Absolutely clean 6. Shreyas is bowling, I think, just because they have got a free hand here to try one bowler which can be used, but he bowls a full length ball in the slot and cleanly struck here by the bat of Sarvesh Gowdy. Yes, clean bowled. Yes, and one bowler comes here. He will take the wildfire energy drink soon, as the offer was on throughout the day for the bowler who cleans bowled the batsman. Batsman shuffled across. You miss, I hit, says the bowler Shreyas, and a wicket here to his kitty. से कैच लेते हैं बाहर तो आपको 200 रुपये का इनाम घोषित किया है. अगर एक हाथ से लोगे तो ही मिलेगा इनाम. अगर 2 हाथ से लोगे तो बनोगे उल्लू और आपको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू.
So another 6. Although wicket has been taken by Shreyas, doesn't look to be a regular bowler here because he's bowling right in the slots where the batsman wants, and another batsman comes, hits a 6, Vishal Gavkar. So at least a good batting feel here for the lower order batsman of Dharsaka Sunrisers. Some confidence booster sometimes helps in the next matches. Pretty decent side Dharsaka Sunrisers, but the total being posted was a huge one. This time a slower ball, LBW appeal. There is no LBW because if the batsman goes for the referral, it becomes difficult for the umpires as we don't have that much of technology. Definitely we can try this technology maybe in the next edition. This was also a slower ball. Many new things coming up from the first edition to the second edition, and as far as I know, the organizers of South Goa Premier League, County Cricket Club, they are a great unit, and it's been ages they are organizing the tournament, and it's a vast improvement from the first edition to the second edition. And this is once again, this is humongous strike. Good thing here that all the batters who are coming in are hitting sixes. Good for Dharsaka Sunrisers, but it all ends well here for the bowling team, Al Zergam. In the end, Dharsaka Sunrisers managed to post a total of 77 runs, which is not a bad total being posted, but good, comfortable 31 runs victory here for Al Zergam Royal Challengers. And they have to now think what are the bowling options they have. Yes, batting is quite strong deep. The bowling, they have to see of the few more options. So congratulations for Al Zergam Royal Challengers for winning the first match. And I think everyone knows who is going to be the man of the match. There were some good performances. Finally, it goes to the batsman. There were good performance from many of the players from Shreyas Kadam, Fardeen Qazi, Ahmed Amshekar, but finally decided for a wonderful classy knock, and that has not only got us in the commentary box amazed by that skill, but also the viewers who are listening and who are viewing this telecast, and supporters here also like that innings is going to Fardeen Qazi for a classy knock of 26 runs. Fardeen, please come and take your man of the match award. And a wildfire energy drink, I request Shreyas Kadam. Shreyas Kadam, please come and take the wildfire energy drink. Fardeen Qazi is the player of the match. Fardeen, please come and take your player of the match award. It was a wonderful, wonderful knock. What a talent this guy. One youngster coming up the ranks. And Shreyas will have the wildfire energy drink. Keep firing for your team. KKJ Ahmad Khan and Siraj is going to
give away this man of the match prize, player of the match helmet. Just now was taken helmet. Fardin Qazi is the player of the match. A lovely knock. KKG owner Ahmed Khan and Siraj Bhai are going to give this man of the match prize for a wonderful knock, a short knock but a classy knock. फरदीन भाई, आप मुझे लगता है ये आपका पहला मैच है SCBL 2 में। पहले मैच में शायद हमने भी आपको मिस किया, आपके टैलेंट को। तो कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट, क्योंकि ये गोवा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है? नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मुझे भरत दा ने बोला कि ये टूर्नामेंट खेलना है तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था वो दिन से ही। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। रन भी हुए पहले मैच में, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे के मैच में भी रन हो। आप जब खेल रहे थे मुझे लगता था कि आपका जो फोर्टे है, ऑफ साइड में भी खेल सकते हैं, लेग साइड में भी खेल सकते हैं, और कवर्स की दिशा में भी आप अच्छा जो कवर ड्राइव होता है वो छक्के की वो भी लगाते हैं। तो आपका खुद का स्ट्रॉन्ग साइड कौन सा है जो आपको लगता है, ऑफ साइड या लेग साइड? नहीं, रन तो दोनों ही साइड करता है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है ना। मैं प्रीफर करता हूँ कौन सा साइड, जहाँ बॉल आएगा वहाँ बस मेरिट पे खेलता हूँ बॉल के। और मेरिट पे खेलते हैं जो, लेकिन वो जो आपने कवर्स में एक बढ़िया छक्का लगाया था कि एक्स्ट्रा कवर में अगर कोई छक्का लगाता है और वो भी टेनिस में, उस टैलेंट को हम बहुत ही सराहते हैं और मुझे भी वो शॉट काफ़ी बढ़िया लगा। और जो व्यूवर्स है हमारे बोल रहे हैं कि फरदीन को और देखना है, तो अगर ऐसी बल्लेबाजी चलती रही तो हमें भी अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी करूँगा कि पूरी 6 ओवर खेलूँ, टीम को जिताऊँ। एक अच्छा फील जा रहा था, क्योंकि आप जब खेल रहे थे अच्छा फील जा रहा था। वो जो कट शॉट खेला आपने, मुझे लगता था आपको थोड़ा ऊपर से खेलना चाहिए था, ऐसा कुछ मुझे लगा। कट ऊपर से मारना चाहिए था तो पूरा नीचे मारना चाहिए था, मैंने बीच में ही मारा। बीच में मारा, वहां ही गलती हुई, लेकिन आपको और 3 मौके मिलेंगे और जीते तो आगे भी हम आपका टैलेंट देखना चाहेंगे। गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद हरीश सर। थैंक यू फरदीन काजी। और रुक करते मैदान पर, मुकाबला चलता हुआ मैदान पर अमेजिंग सुपर जायंट और उन्हीं के साथ ऑक्सफोर्ड टाइटन, ये 2 टीम आमने सामने। पावर प्ले का पहला ओवर, जिग्नेश पटेल गेंदबाजी पर सामने वाले दूर वाले छोर से, और अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद इस बार, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग कर रही है अमेजिंग सुपर जायंट क्रिकेट टीम, और सामने बल्लेबाजी को मौका दिया ऑक्सफोर्ड टाइटन क्रिकेट टीम को। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, पिछला मैच थोड़ा सा एक तरफी रहा। मुकाबला एक बड़े स्कोर को बिल्कुल पीछा करना चाहती थी, लेकिन बहुत दूर रह गई। विकेट कीपर मतीन खान जो विकेट के पीछे, कप्तान टीम के नरेश असोंडेकर। छोटी गेंद इस बार खेलना चाहते थे लेग कटर, अब स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद कट और बाहर की तरफ निकली। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, एक सफलता
जो पहले ओवर में शाहिद शेख को बिल्कुल वापस किया 4 पर खुद के व्यक्तिगत, और सरफराज नवाज और उनका साथ देने के लिए मनोज नार्वेकर। और एक बड़े लंबे समय के साथ आज बिल्कुल हमारे सामने भरत लोहार दिखाई दिए। क्या बिल्कुल एक जमाना था, एक दौर था दोस्तों इन सभी खिलाड़ियों का। उन्हीं के साथ अमित गोलरकर हो, इंदुलकर हो, उमेश मांजरेकर हो, भरत लोहार हो, एक से बढ़कर दिग्गज खिलाड़ी थे जो मुंबई के और से जो कि खेला करते थे सिंधुदुर्ग जिले में। बिल्कुल इनको देखने के लिए कोने कोने से बिल्कुल दर्शक आ जाते थे। आज भरत लोहार बड़े लंबे अरसे के बाद दिखाई दे। एक बार स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से आप सभी का, इस हमारे कमेंट्री बॉक्स में से। फिलहाल पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। एक धीमी शुरुआत मैदान पर, सिर्फ 4 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स के ओवर से दूसरे ओवर की शुरुआत, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर। पहले ओवर के पावर प्ले की समाप्ति के बाद अपाली कलंगुटकर, टेनिस क्रिकेट में बिल्कुल इस खिलाड़ी की हमेशा चर्चा होती है। गोवा हो, सिंधुदुर्ग हो, पुणे हो, मुंबई हो, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी हो, राजापुर के हाल में बिल्कुल एनसीसी कातली की टूर्नामेंट हो, बिडबाओ का टूर्नामेंट हो, सांगेम प्रीमियर लीग हो, और आज इस मैदान पर जो कि साउथ गोवा प्रीमियर लीग में जो पर्व दूसरा इस मैदान पर पहला ओवर लेकर खुद का टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए एक अच्छी शुरुआत सामने से पहले ओवर में जिग्नेश पटेल ने दिला दी अपने टीम को, और अपाली कलंगुटकर अपने बॉलिंग बार पर अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से मिड विकेट पर गेंद को खेला। इस बार कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो बड़ा शॉट बल्ले पर बिल्कुल ओवर पिच गेंद मिले और शानदार शॉट 6 रन के लिए। डबल फिगर में 2 अंकों में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर सरफराज नवाज सामने दर्शन बांदेकर दिखाई देते हुए मैन फ्रॉम सिंधुदुर्ग। बहुत अच्छी गेंद, सांगेम प्रीमियर लीग में बिल्कुल क्या खेल किया इस खिलाड़ी ने। आज फिर से एक बार अमेजिंग क्रिकेट टीम के ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए पहला मुकाबला खेलते हुए इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद, इस बार बैठक शॉट मिड विकेट पर हवाई फायर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। कमेंट्री बॉक्स के सामने बिल्कुल सुरभि डीजे शब्बीर भाई आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। सुरभि लाइट्स, बड़ा शॉट कहीं ना कहीं अपाली कलंगुटकर आते आते पहली गेंद पर थोड़े महंगे साबित हुए। पहली गेंद तो थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली, ये तो बिल्कुल आपने गिफ्ट दिया बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद दी और फुल टॉस गेंद पर सरफराज नवाज कहां मौका छोड़ेंगे। 2 छक्के आते आते बल्लेबाजी में और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज नार्वेकर नॉन स्ट्राइकर इन पर उनका साथ देते हुए। बहुत अच्छी गेंद, कमबैक लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद, अपाली कलंगुटकर, गेंद निकली विकेट कीपर मतीन खान के हाथों में। फिर से पुल करना चाहते थे, सफल हुए थे, ज्यादा ऑफ साइड पर ऑन साइड पर मारना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। फिर से उसी तरह से कोशिश थी, इस बार फिर से जो कि चूक के गेंद के बारे में पूरी तरह से शरीफ पे टकराई। अपाली कलंगुटकर बहुत ही होशियार चतुर है, सामने बहुत ही अच्छे बैटर है सरफराज नवाज, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर परेशान करते हुए बल्लेबाज को अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स में से राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, सामने मौका बना था फॉलो थ्रू में लगभग, लेकिन अपाली कलंगुटकर गेंद को हाथों में लपेट नहीं पाए। एक ओवर समाप्त तो जरूर हुआ, 2 बड़े शॉट लगे इस ओवर में, लेकिन जाते जाते लगभग मौका बना था अपने फॉलो थ्रू में। स्कोर रुका हुआ 16 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होकर वापस 4 पर खुद के व्यक्तिगत शाहिद से सफलता मिली थी पहले ओवर में पावर प्ले में जिग्नेश पटेल को। अपाली कलंगुटकर का ओवर और 2 ओवर के बाद 16 रन बल्लेबाजी करती हुई ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। आज का पहला मुकाबला जीत चुके ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम सामने अपना पहला मैच खेल रही है अमेजिंग सुपर जायंट क्रिकेट टीम। और देखना होगा आज निश्चित रूप से जो कि धूप है, गर्मी है मैदान में,
पाने की मांग जरूर होगी मैदान में बार बार, और अंपायर का इशारा जो कि दिखा देते हुए बैटिंग पावर प्ले का शिवशरण और बाबू दाभोलकर, उन्हीं के साथ असलम शेख, सदगिरी नाइक, अंपायरिंग की बहुत ही शानदार जो कि ये 4 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर, सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, असलम शेख, और बॉलिंग में परिवर्तन दर्शन बांदेकर दिखाई देते हुए एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए, और स्ट्राइक एंड पर बैटर है मनोज नार्वेकर। आला रे आला, मने आला। वो बल्लेबाज मैदान पर बैटर मनोज नार्वेकर सामना करेंगे। दर्शन बांदेकर अपने फील्डिंग को सजा रहे हैं। ऑन साइड पर डीप मिड विकेट है और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन के साथ से अपने खाते की शुरुआत करते हुए मनोज नार्वेकर टीम को आगे बढ़ाते हुए इस सिंगल के साथ 17 रन टोटल स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद हाफ वाली पर लेकर गेंद को ड्राइव किया। इस बार एक अच्छा शॉट ऑफ ड्राइव का, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। लंबे कद के खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में, सैयद बद्दी है, अजीत मोहिते है, दर्शन बांदेकर है, गौरीश नागवेकर है, ये लंबे कद के खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। कोने पे लगी, बल्ले पे अधूरी, और जब तक काउ कॉर्नर पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन। बड़े शॉट पर बिल्कुल रोक लगा दी है, क्योंकि पिछले ओवर में 2 बड़े शॉट लगे। अपाली कलंगुटकर एक मौका बना था आखिरी गेंद पर फॉलो थ्रू में कैच का, और उसके बाद जब दर्शन बांदेकर अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। सरफराज नवाज और मनोज नार्वेकर कट के हवा में गेंद, पॉइंट पर मौका कैच का, लेकिन एक आसान सा कैच कवर पॉइंट पर छूटा। अपाली कलंगुटकर शायद ठीक शुरू में बिल्कुल पोजीशन में नहीं थे, कैच के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में जबकि हाथ डाला था, लेकिन अगेन हाथों से छूटी। एक मौका बना, एक सिंगल रन बन गया इसी बीच में स्कोर के खाते में। स्कोर टोटल 20 रन, 1 विकेट पर। पुलर लेन के गेंद मिली हेलीकॉप्टर नो मैच लैंड में, और जब तक वाइड लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। थोड़ी सी पुलर लेन की गेंद थी, और एक बहुत ही अच्छा शॉट था, मिनी हेलीकॉप्टर शॉट। कल आपने देखा होगा कृष्णा सातपुते सुबह के मैच में क्या बल्लेबाजी रही थी। तेज गेंद, इस बार पिछली गेंद थोड़ी सी रफ्तार के साथ इस बार ऑप्टम को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में। आधे ओवर, तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर समाप्ति के बाद बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर हो चुका है 21 रन, 21, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की शुरुआत। और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते एक बार फिर से सागर गोसावी के साथ। Thank you, Ashok Naik. Meanwhile, we are about to begin with the 4th over. Jignesh Patel to deliver the 2nd over of his individual quota and the 4th over of the inning. Jersey number 10, left arm around the stumps. Meanwhile, delivers slightly outside the off stump. Good effort behind the wicket keeper. Diving effort to stop the ball from crossing himself and traveling towards the fence.
So meanwhile, that was a direct throw, and even there was no hesitation from the umpire to raise the finger as Manoj Narvekar walks back to the dugout in form of run out, courtesy a very strong throw from the junior above 40 years, Naresh Asoldekar, captain leading from the front, and he doesn't miss easily. Direct hit onto the stumps to get rid of Manoj Narvekar. Let's see who is going to be the incoming batsman. And it is none other than Bhushan Gore. Just number 27 on his back, a tall guy. As he is looking very confident, he marches towards the striking end. But in front of him, another very shrewd bowler, Jignesh Patel. Bowling his second over of the quarter. Setting the field for himself. Meanwhile, we can see a number of local players as well who are very good bowlers. The moment, the player who is at the moment in front of the panel with jersey number 25, another good speedster, popularly known as Kakura Express. Let's see what he can do when he'll get a chance. Meanwhile, look at that strike onto the ground in a flash, and what a hit. The moment Bhushan Gore has come, his intentions were clear. If I am going to get the ball in my zone, definitely. This is amazing shot against the amazing Super Giants. Waited for the ball, low full toss. Look at that. It's a Baitak shot where he is in the Sukhasan and enjoying the Sukh that he has got by looking at that big six. Lovely strike from Bhushan. With that sixer, team total moves to 29. What a hit, and that too against a set bowler. So definitely, this is going to put little pressure on Jignesh as a good delivery has turned into the maximum. So Bhushan and Jignesh, this is going to be a very good contest. Who cuts the ball straight to the fielder at the short third man. No chance of any run. Meanwhile, this results in the dot ball. So bit of a contest going out in the middle. Bhushan so far leading with a 6. Meanwhile, wide is the signal from the umpire, and with that wide, a team total moves to 30. Meanwhile, another pull shot was the attempt. No connection whatsoever. Equally well bowled. Ball going away from the batsman. A hint of leg cutter. Normally off cutter by left-handed bowler. That turns into a leg cutter for the right-handed batsman. Wonderful strategy. Good thinking as to get a dot ball that is a cream on the cake. So let's see what is going to happen. Another good strike. Lovely cover drive along the carpet. Fielder patrolling the fence, gets the ball quite comfortably. Meanwhile, a single to take the strike in the further over. So this is a wonderful batting by Bhushan Gore. Knows that he have to take the strike for the maximum times. Doing it for his team. A single to end the over number 4. 31 on the board for the loss of 2 wickets. Final 12 deliveries remaining in this inning. So let's see who is going to bowl the second last over of the inning. So amazing Super Giants is a very good build-up team with pretty well all-rounders. Not the big names, but the characters who delivers at the time, and even the tallest guy who is running to take his charge at the long off region is the man to watch. He is the most dangerous with the ball, and even furthermore danger with the bat in his hand.
Darshan Bhandekar playing for Amazing Super Giants. So Bhushan Gore is another character similar to Darshan Bhandekar. Good contest, let's see. Gurushan is the bowler. First delivery goes towards the gully region where the fielder stops the ball from crossing himself. Slight fumble that allows both the batsmen to take a single. And now Sarfaraz Nawaz is on the striking end. The opener still out in the middle. Let's see whether he can do some hitting. Meanwhile, Gurushan is also a very shrewd bowler. There's chance of a catch. Ball takes the leading edge, travels safely towards the short fine leg fielder. Sarfaraz Nawaz could not do much rather than giving a catching practice to the short fine leg fielder. Third wicket back to the pavilion. To be the incoming batsman. Captain departs in the second last over. So new man is Pritham Bari. Man of the match of the previous match. Doesn't like to talk a bit, but he believes in the performance. Let's see what he's going to do. Much needed performance for his team. Was the man of the match in the previous stage of the league. Definitely all eyes will be on Pritham and Bhushan. Second last over in progress. Gurushan is popularly known as Ajanta Mendes of Goa. And I don't think anyone knows him by the name Gurushan. As mostly if you ask who is that bowler, then everyone will say it's Mendes. So Mendes from the stadium end, that's a nickname for Gurushan. Takes a wicket. Let's see what is going to be the incoming armory from Mendes on the following ball. As Pritham Bari doing a little warm-up before taking the strike. Taking the blessings. This is the simplicity of a batsman. And now he is on the crease. Lovely strike straight down the ground, straight towards the long off region for a single, and that will bring Bhushan at the striker's end. So Bhushan has shown his intentions on the very first delivery that he has faced. Definitely will be aiming to get some more boundaries or the sixes possible. So let's see what is going to be the incoming shot from Bhushan. Switch hit is attempted. What a connection! Just a drop. Just well short of that boundary rope. 4 runs to take the team total to 37. Second last over in progress. 37 on the board. And if we look at the score so far, this is the lowest, we must say, in the day, not at the night. But in the day, we have seen the big scoring, high scoring matches. Let's see whether Bhushan can make it big and can get some decent total at the end of the inning. There's another chance. Good bowling from Gurushan continues. Straight good catch has been taken by none other than wicketkeeper Mateen Khan. So Bhushan walks back towards his dugout as Gurushan takes second wicket in the over. What a lovely over in progress by Gurushan. Just 6 runs from it and 2 wickets. That adds the flavor of his bowling. Still one more delivery is remaining in the second last over. Can he make 3 from this over? The time will tell us. Meanwhile, another good batsman, hard-hitting batsman. Rajesh marching towards the crease. And he is the one who can clear any boundary. It doesn't matter whether it is a new ball or the old ball. The capacity, the strong shoulders, good forearms, very strong forearms, and a good wrist that takes the ball quite comfortably out of the boundary rope. So we have to see what he is going to do on the final delivery of the second last over. A word of advice from his partner at the other end, Pritham Bari. And now gradually
marching towards the striking end. Rajesh Gaonkar, the new man in. Gurushan, the bowler, in a hunt of the third wicket. Gurushan, let's see whether he can take the wicket or Rajesh is going to spoil this over. Final delivery is coming of the second last over. Full pitch delivery, ball takes the leading edge, travels to the third man, well fielded there by the fielder. A dot ball to conclude over number 5. So after completion of 5, 37 for the loss of 4 wickets. Still definitely not a decent total, we must say, after the end of 5, as the current run rate is slightly above 6 runs per over, which is a very rare occasion as far as tennis ball is concerned. And even if the tennis ball match is played by the brand name full toss, as the full toss ball flies much away compared to the other tennis ball. So here you can hit the ball quite comfortably. Even if you get a decent touch of the bat, the ball travels the distance. But all credits to the good bowling of amazing super giants. Good maintained by the guidance of Naresh Asoldegar, the captain, mixing up the armories, giving the chance for the better bowlers. He himself is a very good bowler, but look at the strategy that he has kept himself away from the bowling department, as good bowlers are on the roll. And now the Kakoda Express has been given the final over. A tall guy can generate enormous pace, but all depends on this day. First delivery onto the leg. The batsman has to only guide the ball towards the boundary. Pritham Bari does the same, gives the direction away from the fielder, and that's a boundary to start the final over of the inning, and with that boundary score moves to 41. So Sanil, in a hunt of a Yorker, delivers a low full toss, and Pritham Bari, as a cool and composed, just flicks the ball towards the vacant area. So here's the second delivery of the final over. Good delivery, Kohli, well played, chance of a catch. Fielder from the long on takes a simple looking catch, and the first wicket for Kakoda Express. Sanil Sawant strikes in the final over, and what a wicket to get. The outstation batsman, the man of the match in the previous match, could not do much rather than giving the ball height but not getting the distance. Gives a simple catch to the long on fielder, which is accepted with love, and that makes the 5th wicket to march back to the Pentel. So next man in, another hard-hitting batsman, a local guy from Sangam Taluka, Sanesh. He is also capable of hitting the tennis ball cricket quite comfortably. We have seen his innings in the SPL, where he has hit almost every ball to the fence. Sanesh, at the moment, team total is 41. Final over in progress. Again, wanted to flick the ball in the wicket area, not getting the proper connection. We have to wait for umpire's signal. It's off the legs. No bat in the ball. Leg by is the signal. The extra takes the team total to 42. And that brings Rajesh Gaonkar on the striking end. So this is going to be a very good contest. Two local lads against each other. Lovely delivery, the chance of catch, equally well played. The ball is going away from the long off fielder. Meanwhile, chance of a second, and definitely they are going to utilize these 2 runs. And with this couple of runs, a score moves to 44. Still not a single sixer from this over.
Meanwhile, chance of a catch. Ball takes a leading edge. Travels towards the covers region where a simple looking catch has been taken. Sunil Savant takes second wicket for himself. Score is still at 44 for the loss of 7. I beg your pardon, 6 wickets. So requesting the incoming batsman to kindly double up. And he is a newly married guy. Let's see whether the lady luck brings some favor for Angelo. Stayed away from Goa for almost 15 to 16 years. And back in his hometown. Recently married a couple of weeks before. Let's see whether he is charged and he can put the ball out of the ground. The time will tell us. Meanwhile, Calcutta Express is aiming for one more wicket. Angelo gradually on to the striking end. Meanwhile, again wanted to guide the ball towards the vacant area. Ball away from the stumps and away from the batsman towards the leg stump. Wide is the immediate signal from the umpire. With that extra, now the scoreboard has moved after a very, very long halt to 45. What a strike! Is it going to be a big, big six? Yes, it is. So Lady Luck has brought a fortune for Angelo. The connection is proper and a bright smile on his face. Big, big six to finish off in style. Angelo marking his mark on this ground. That sixer takes the team total to 51. And the target is of 52 runs in front of Amazing Super Giants. So meanwhile, I would like to request the captain of SI Indians and Dharsaka to kindly come for toss. Call is going out for SI Indians captain and Dharsaka captain to kindly come for toss. So just 51 on the board, 52 is the target. But let me tell you a thing about these Oxford Titans. They are not going to give things easy for the opponent as the mastermind is the captain of Oxford. None other than Mukhtar Kadri knows how to get the team out of crisis. So this is going to be a very good match, although not a big total, a stiff total, but still the capacity of the captain of Oxford Titans has been known over the years by different players. He plays in the most of the parts of Asia. Has an ample of experience, knows how to get the good things out of the armory of his bowlers and his batters as well. So a lot depends on Mukhtar Kadri. Meanwhile, it's time for me to enjoy my lunch. Handing the mic to Harish Kakodkar and Ashok Ji Naik as well. Meanwhile, final call is going out for captain of SI Indians and Dharsaka. Kindly come for toss as you are going to play the following match after this match.
SI इंडियन्स आणि दार्सकार सनरायझर्स मातशे बेगीन टॉसाक येयात. कॅप्टन SI इंडियन्स आणि दार्सकार सनरायझर्स मातसो कॅप्टन बेगीन टॉसाक यो. ऑलरेडी सेकंड कॉल जाल्लो आसा. मातशे टायम काडनाकात. 52 रन्स जाय जिखपाक. नेक्स्ट मॅच SI इंडियन्स वर्सीस धार सकाळ सनरायझर्स. कॅप्टन्स तुमकां परत एकदा सेकंड कॉल दिल्लो आसा. थर्ड कॉल दितले. बेगीन मातशे टॉसाक येयात SI इंडियन्स आणि धार सकाळ सनरायझर्स. Sumit Dongre and Rajat Kudalkar, the opening batters here for this team. Target is not much, 52 runs, but strange things have happened. If fielders do their job and the bowlers bowl according to what is the set plan, things can be defended. It can very well be done. But a strong batting unit of amazing super giants will certainly feel this is not a great total, and our bowlers have done a fabulous job. Now it's time to support what bowlers have done and finish this up by scoring these 52 runs. Captain of Dhar Sakaranga Pavillo asa, captain of SI Indians matsa begin yo. No team change for Dhar Sakaranga Sunrisers. Once again another call for SI Indians team. So 52 runs is the target, and here comes Pritam Bari. Very good job in the previous match, adjudged player of the match. But this time nothing much with the bat. Let's see whether this low total, how tricky it is. Sometimes low total can be very tricky and can make difficult for the batters to have in mind whether we are going to go aggressive way or to just reserve the wickets. That's a good shot. Well, he has decided there is no other second way. He is going to go all out against the bowlers. Attacking way is the best way, says the batsman, and gets the boundary of the very first ball, Sumit Dongri. SI Indians captain, if you don't come by next call, we are handing over the toss to Dhar Sakaranga Sunrisers. This is magnificent batting. Well, you don't have to run when he times it so well. Sumit Dongre says, if you bowl there in my zone, I am going to slaughter you all day long. Both the balls pitched up fully. He shuffled across and the great swing of the bat gets it over the long on region. So with the start that they have got, the intention is loud and clear from both these batsmen. In fact, the batsman at the striker's end, you can see he shuffled across and full-blooded shot. 10 runs in just the two balls. Pritam Bari has to think now. This time a wide signal. Well, if Gaurav can show me the run-up of Pritam Bari, this is very unusual. Sometimes, most of the times I think when he runs up, he juggles the ball in between. And it's something different. I have not seen many of the bowlers doing that.
That's now dot ball. Once again trying to find that gap in the mid-wicket region, trying to find open space since this is a mandatory power play over. Only two fielders outside. One is in the cow corner region, one at the deep extra cover. This is in the air. You can see from the sound. It has gone out of the reach. Will it be taken? Oh! He almost took it. Not an easy catch. It was in the air for quite a long time. And he managed to get himself into the position. But finally just ball popped out of his hands and gave 3 runs. 14 runs. So very good start, rollicking start. No other second way approach, directly in top gear. Sometimes when in your mindset you think yes, no, I cannot give away wickets, let's reserve wickets and keep it in the end for too late. It can damage your chances. So Sumit Dongre has decided attacking way is the approach here. Taking a single. टॉस हो चुका है. एसआई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. थैंक यू सर, धन्यवाद. So SI Indians once again winning the toss and deciding to field first against the Arsaka Sunrisers. Both teams have lost their first matches, so one team will at least win, and one win under the belt will keep their chances alive in this contest. First over completed is 16 without loss. Amazing super giants looking very, very strong both in bowling and batting departments. That's the reason why Mukhtar Kadri was telling this is a strong side. Looking at the perspective, Jignesh Patel, a wonderful all-rounder, and he will come somewhere in the middle order. Apali Kalangudkar, very good bowler. Darshan Bandekar, very, very strong in both departments. And Gurushan, Sanil Sawan, pretty decent in bowling and batting now. They have got Sumit Dongre, Rajat Kudalkar as openers, and Darshan Bandekar, Jignesh are still waiting in the dressing room. Naresh Solekar himself. So pretty strong, balanced unit is Amazing Super Giants. And a victory under the belt in the very first match will do no harm to the chances to prosper. This is poor bowling here. Poor bowling down the leg side, some loose ball, and it was swept away as if he's sweeping the spinner over there. Score moves on to 22. Bhushan Gole coming and bowling like a loosener. This won't do any favors here. Sumit Dongre looking in sublime form. And Amazing Super Giants will be very, very happy with the start that he has given them in this first match. If this continues, this team is going to be certainly will be in contest, and all eyes will be on this team, just like the batting of Al Sargam that we have seen earlier in the day. Oh, look at that! Look at that! How much a distance it has crossed. Magnificent hit. The ball is just landing on the ground, and finally it is hitting the bat, and only one way it is finding is out of the fence. The boundary ropes are falling short here, and the organizers have to do a commendable job to get the ball back in action quickly. The flow of the bat says it all. It's a clean flow. Wonderful swing. He sees the ball at the last moment. If he's there in his slot, then he just swings the ball bat, and clean swing it is. Once again, a change of the guard here, bowling round the wicket.
This is in the air. It has worked. No, it's out of the reach from Mukhtar Qadri, and they are going for the second run. And they have taken the second. Good running between the wickets here. Score moves on to 30. So just 22 more runs required. It looks as if, looking at the body language here of Oxford Titans, it's not positive. Nothing happening there. No talking, no chanting. Oh, this was also a fuller ball, but a slower ball. That's the reason why he could not get that swing for that slog sweep. Just going to be one leg by. Anyhow, is ticking the scoreboard along with that single, moving on to 31. Just the second over in progress. Over turning out to be very expensive. Rajat Kudalkar so far has just taken one single. Bulk of the scoring, 99%, has been done by Sumit Dongre. This is once again, has he timed it well? I think he has timed it well enough. Stylish shot here, just a flick. Once again, fuller length, and Bhushan Gore has been taken apart. Not only by Sumit Dongre, but here also a classy six from the bat of Rajat Kudalkar. So the batting looking very, very strong here of Amazing Super Giants. And Sumit Dongre telling we can continue with the ball that has been given by the umpire. Well, if they are doing so well and they are timing the ball does not matter. This is in the air. This will be taken. Who is going underneath? Keeper says it's mine, and he takes a good catch. And Rajat Haldankar departs. Rajat Kudalkar departs, and Shahid Sheikh takes a good clean catch. But it's all coming too late when the score is at 37. Just 15 more runs required after completion of 2 overs. Well, requesting please don't close the food counter. I am feeling hungry. I have still not had my lunch, and also the umpires. So please keep it open for some time. Wonderful lunch provided by the organizers. Typical Goan fish curry rice plate. And that's the staple food of every Goan. We like it almost every day in our food. Sometimes some people might be veg, but most of the time it is going to be fish curry rice. And in comes Vikram Naik. New batsman, yes, batting power play has been taken. Signal by umpire Aslam Sheikh. Sumit Dongre it is, and Mateen at the non-strikers end. New batsman. No pressure whatsoever. Any of the batsmen, just 15 runs required, and the balls left are 24. So Vikram, Vicky. Sometimes the nicknames also can be confusing. Many people nickname can be Vicky. Sometimes it can be Vikram. Sometimes it can be Vikrant, Vikas. Lots of names. A short name can be Vicky. And Viraj Tendulkar tells me that Vicky's name is Vikram Naik. A good bowler, and normally he plays for Amazing when he plays in Municipality Panchayat. Amazing team. They wanted to beat him, but finally he was taken by Oxford Titans. So he is playing against his own team. Well, Mukhtar Qadri, it was at the short third man region. Normally he has something or the other to speak when a match is like this going one-sided.
This is once again an outside edge, just out of the reach. Wonderful effort. You can see underarm throw and still hitting the stumps. Mukhtar Qadri there. Just going away with the momentum, taking singles, Mateen, and giving strike to once again Sumit Dongre. The viewers also very well know what might be the result here. They are just waiting for an exciting shot here from Sumit Dongre, which might come any moment. But Vicky has been excellent, not only in the first match, but here also he starts off well. That's a short ball. Is it going for 4 runs? Yes, it is. Shot onto his body, and he played a wonderful put shot throughout the ground. So that boundary will take the score to 43 in the 40s and just 9 runs short of the target. 2 balls still left. Sumit Dongre wants to finish this in this over itself. If there is a loose ball, certainly will go for maximum. Is it this ball? No, it's in the air. It might be taken. It will take a hard effort. And 4 runs. No, it is stopped inside. Good piece of fielding there from Rajesh, stopping the ball going towards the fence. So 2 runs, good effort. And taking the score to 45 means 7 runs required. Definitely the match is not going to finish if Vicky bowls a legal ball. And that dot ball will finish this over number 3. The score remains still on 45 and another 7 runs required in 3 overs. So that is 18 balls left. Next match is going to be very, very good match. Both the teams, SI Indians and Dharsaka Sunrisers, have lost their first encounter and they are going to play the next match. SI Indians captain won the toss, deciding to field first, as is the case and scenario in every match. So the group will be wide open. Al Zargam have won their one match. One match here will be won by Amazing Super Giant. 1 out of the 2 will be won by Oxford Titans. We have seen yesterday 3 matches won by KKG Knight Riders, 3 matches India and won by Dynamic Royals, both through to the qualifiers. So 3 matches makes you comfortable. Winning 3 matches, certainly you are in the race for going into the next round. Mateen wanted to take the single, gliding down. He wanted to give strike there. So good here. Sanesh Gavkar has been given and good to see from Mukhtar Qadri. He knows that the match is well gone, so no point in bowling Pritham Bari or Bhushan Goli here. So let's try our youngster. This time very nicely hit and fielded there. And Mateen wanted a second, but Sumit Dongre says single is enough. Let's see, I can try a good shot here and finish this off of this delivery. But Sanesh will have other ideas. If he can restrict them in this over, that's job very well done. That's a good slog sweep and very nicely fielded. Timing of the jump perfect. So far so good here from Sanesh Gavkar. That single takes the score to 47. Still 5 more runs. Can Mateen do it? Can Mateen get a boundary? Oh, and Mateen finishes off in style. High and long, and a comfortable victory in the end for Amazing Super Giants. Amazing victory in the end. The Super Giants have played like giants today against Oxford Titans, who actually are giants as a team, but not today. Amazing Super Giants, so congratulations for a fantastic one-sided victory. Bowlers have done a tremendous job, and finally the batter Sumit Dongre has played a wonderful knock, 35 not out, and we have to adjudicate who is going to be the player of the match.
So, की मैन ऑफ द मैच गुरुशंत बेंडिस बेंडिस मनी थैंक यू। तो और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है गुरुशंत को मैनुद्दीन के हाथों। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद एक बार फिर से। उन्हीं के साथ करीम भाई वो भी जुड़ चुके हैं मंच पर प्रेजेंटेशन बॉक्स में। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे अपने टीम के लिए। कई हाथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं में से एक नाम जरूर है करीम भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच और रुक करते एक बार फिर से। थैंक यू हरीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सागर गोसावी के साथ एक बार फिर से विराट तेंदुलकर कमेंट्री बॉक्स में। और मुकाबला शुरू होने जा रहा है जो दाड़ सकल और एसआई इंडियंस के बीच में। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। स्ट्राइक पर समर्थ गावस पहली गेंद का सामना करते हुए गेंदबाजी पर संदेश ठाकुर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। और इस बार पुलर लेन की गेंद लगभग वाइड यॉर्कर पर ऑफ स्टंप पर पीछा किया था जरूर समर्थ गावस ने। गेंद से दूर, बल्ले से दूर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम और बल्लेबाजी करती हुई धाड़सकड़ सनराइजर्स क्रिकेट टीम। चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, समर्थ गावस के बल्ले से निकलता हुआ यह शानदार शॉट। ओवरपेज गेंद, ये देखना होगा मौका बनेगा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद पर नीचे आते हुए कैच को पकड़ते हुए और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ धाड़सकड़ सनराइजर्स क्रिकेट टीम का। चार रन बनाकर खुद के
पहले विकेट के रूप में वापस समर्थ गावस, एजाज कुरैशी लेफ्ट हैंडर बैटर और वन डाउन बल्लेबाज मैदान पर आते हुए अजित मोहिते। शानदार शुरुआत संदेश ठाकुर गेंदबाजी पर। 12th मैन प्लीज आइए दाड़साकड़ सनराइजर्स आपका 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। कमेंट्री बॉक्स की ओर से संदेश ठाकुर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता अगली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पावर प्ले का ओवर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर दो फील्डर है बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात, उन्हीं के साथ घेरा लगभग डाला है ऑफ साइड पर खास करके। छोड़ा, इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद तेज गेंद करने की कोशिश, लाइन पर बट के वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बन गया। स्कोर के खाते में एक रन जुड़ गया। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 5 रन पर। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है मौजूद स्वीपर कवर पर, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला ऐसा इंडियंस क्रिकेट टीम का। सामने दाड़साकड़ क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई। अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लेन की गेंद, ऑफ स्टंप को बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छा ओवर अब तक चलता हुआ, एक चौका जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए संदेश ठाकुर धीरे धीरे आते हुए अगली गेंद करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर। 5 रन स्कोर, 1 विकेट पर। शानदार गेंदबाजी, बहुत अच्छा ओवर, लेग कटर, थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ का ठोकर निकली, उछाल भी मिली, ऑन द राइज ऑन साइड पर खेलना चाहते थे अजित मोहिते। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी मैदान पर करती हुई दाड़साकड़ सनराइजर्स क्रिकेट टीम। अगर पहले मैच की बात की जाए तो मैच हार चुके हैं दाड़साकड़ क्रिकेट टीम और ऐसा इंडियंस वो भी पहले मुकाबलों को हार चुके हैं। तो दोनों के लिए काफी निर्णायक महत्वपूर्ण मैच है। ये मैच जीतना पड़ेगा अपना आह्वान बरकरार रखने के लिए, नहीं तो ये मैच अगर हाथों से छूटा तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा आज के दिन रात के इस दूसरे दिन में। देखना होगा फिलहाल किस तरह से मुकाबला होता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने से पातोड़ा स्टेडियम की ओर से, दूर वाले छोर से महेश बाइडकर और मैडी गेंदबाजी पर एक तेज गेंदबाज, यॉर्कर के बिल्कुल स्पेशलिस्ट, वो अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने बैटर है लेफ्ट हैंडर एजाज कुरैशी, वो सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। इस बार ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक गगनचुंबी छक्का, 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर गेंद। ओवर पिच गेंद पर हाफ वाले पर एक तगड़ा शॉट एजाज कुरैशी के बल्ले से 6 रन के लिए स्कोर 2 अंकों में डबल फिगर में आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर फील्डर है तैनात, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल, खुद का 7 रन पर आगे बढ़ाते हुए स्कोर एजाज कुरैशी। स्ट्राइक एंड पर बैटर अजित मोहिते सामना करेंगे, अब तक खाता नहीं खोला है वो सामना करते हुए, और उनके लिए राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर महेश बाइडकर। लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट, राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट। फील्डिंग में तब्दीली हो चुके, पावर प्ले का खेल समाप्त, बैटिंग पावर प्ले का एक ओवर अभी बाकी और खेल मैदान पर जारी दूसरे ओवर का। बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को लगभग चलता किया इस गेंद ने, लेग कटर गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकले। लॉन्ग ऑन पर खेलना चाहते थे एक बड़ा शॉट, लेकिन विकेट कीपर ने कैच को तब्दील किया।
बल्ले का अधूरी हिस्सा लेते हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में और महेश वाइडकर एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अजीत मोहित बोल्ड हुए उस गेंद पर। अजीत मोहित बिल्कुल ऑफ्टों को उखड़ते हुए ये गेंद चली गई और इस विकेट के साथ महेश वाइडकर एनर्जी ड्रिंक के हकदार रहते हुए आज इस दोपहर के सत्र में तो दूसरा विकेट, स्कोर वहीं पर 12 रन पर रुका हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। सन्मेश नाइक आप जहां पर खड़ी हो, अनुष केरकर आपका बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, आपके पास उनकी गाड़ी की चाबी है। तो सन्मेश मोर्चे पर सर्विस कावड़े स्ट्राइक पर आते आते अल्टी पल्टी करना चाहते थे, बोल्ड हुए महेश वाइडकर और एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को और लगातार दूसरा जो कि एनर्जी ड्रिंक का हकदार रहते हुए महेश वाइडकर उर्फ मैडी ऑन हैट्रिक पर अपने बॉलिंग मार पर एक बिल्कुल ठीक ठाक थी टीम, लेकिन यहीं पर जो कि 12 रन पर स्कोर बोर्ड पर तीसरा विकेट चला गया। पर महेश वाइडकर और मैडी आने वाली गेंद होगी और सामने न्यू बैटर मोहित गांवकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। एक और से जो कि दूसरे छोर पर एक छक्का लगाकर 7 पर एजाज कुरैशी थोड़ी सी बातचीत की, उन्होंने जाकर बताया बिल्कुल कि किस तरह से सामना करना पड़ेगा इस गेंदबाजी को और हैट्रिक की गेंद लेकर महेश वाइडकर और मैडी अपने बॉलिंग बार पर, स्कोर 12 रन 3 विकेट पर। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कोई खास समझ नहीं पाए, फाइन लेग पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, विकेट कीपर के हाथों 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, बल्ले से लगी और बाद में पैरों से लगती हुई विकेट कीपर का थोड़ा सा बीट करती हुई गेंद। 1 रन जरूर बना लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ जरूर खेला था, अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ और स्कोर आगे निकला 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का मैच का जारी। जिस तरह से हम विकेट के लिए, बोल्ड के लिए एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहे थे, अगर दर्शकों में किसी ने भी बाउंड्री लाइन के बाहर की गेंद को कैच किया एक हाथ से तो के जी अहमद खान जिनके ओर से आपको मिलेंगे 200 रुपए का इनाम मिलेगा, जो इनाम लगभग 6 बजे तक बिल्कुल जारी रहेगा, यही बात ध्यान दीजिए। अच्छी गेंद, कलाई को उपयोग किया, मोड़ा इस बार फाइन लेग पर फील्डर शॉट, फाइन लेग पर गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन तब तक मौका बना दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने का। इस सिंगल के साथ एजाज कुरैशी पहुंचे व्यक्तिगत 8 पर मोहित गांवकर बल्लेबाजी कर रहे, 1 पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर समाप्त हुए, तीसरे ओवर की शुरुआत
कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी में परिवर्तन। संदेश ठाकुर ने शुरुआत की थी पावर प्ले का ओवर, बाद में महेश भाईडकर पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगा, छक्का लगा, लेकिन कमबैक किया 2 विकेट चटकाते हुए। तीसरा ओवर और कमेंट्री बॉक्स की ओर से अनिकेत राउत गेंदबाजी पर खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए 7 पर व्यक्तिगत एक छक्का लगाते हुए 8 रन पर एजाज कुरैशी और मोहित गांवकर 1 पर। दूर दूर जमाई गई फील्डिंग, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने रमेश दिखाई देते हुए फील्डिंग में, और थोड़ा सा परिवर्तन मैदान पर दिखाई दे रहा है। शायद थोड़ी सी बातचीत विकेट कीपर के साथ, कप्तान के साथ, और संदेश ठाकुर दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी पर, जो खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए टीम की ओर से पावर प्ले में शुरुआत की थी। शुरू में ऐसा लगा कि गेंदबाजी में अनिकेत आ रहे हैं, लेकिन उनको रुकाकर संदेश ठाकुर खुद आ चुके, खुद का दूसरा ओवर लेकर, और सामने बैटर है एजाज कुरैशी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और इस बार बाहर से दूर से खेला, क्या बिल्कुल डाइस लगाया था। अगर कैच को पकड़ते तो लगभग टूर्नामेंट का एक बेस्ट कैच हो सकता था मैदान में। बहुत ही शानदार, आप बिल्कुल रिप्ले पर देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से यह बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था एजाज कुरैशी ने, और इमरान मुल्ला कवर पॉइंट पर शानदार डाइस लगाया था। इस बार कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, गेंद दूर बल्ले से जो कि फील्डर से, और गेंद निकली बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, हाफ वाले पर फ्रंट निकले इस बार, और गेंद को बिल्कुल ड्राइव किया इस बार कवर, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में से 4 रन। दूसरा बड़ा शॉट एजाज कुरैशी के बल्ले से, पहला जो कि एक छक्का लगा था, अभी अभी लगा चौका, और 4 रन के साथ स्कोर आगे निकला 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करते हुए धाड़साकल सनराइजर्स क्रिकेट टीम, दोनों टीम शुरू का मैच निश्चित हाथों से छूटा है, तो यह महत्वपूर्ण मैच है। बढ़िया कवर ड्राइव, एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, लाजवाब टाइमिंग, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट, हाफ वाले पर एक बार फिर से बल्ले के बीचों बीच, और एक बेहतरीन चौका, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद 4 रन के लिए, चौके के साथ स्कोर 22, लॉस ऑफ 3 विकेट, 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। संदेश ठाकुर धीरे धीरे अपने बॉलिंग बार पर खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर। अल्टी पल्टी, इस बार टाइमिंग लाजवाब, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ देखना होगा, लेकिन फिलहाल फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते बैकअप हो रहा है कवर पॉइंट पर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और आगे बढ़ता हुआ टोटल 24, 24 रन 3 विकेट पर। चौबीस रन तीसरा ओवर जारी मैच का, 3 विकेट पर। और गति में परिवर्तन, स्लोवर 1 आगे निकलकर गेंद को हल्के से पुश किया, अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आधे ओवर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बल्लेबाजी कर रही है पहले जो कि टॉस हारने के बाद धाड़साकल सनराइजर्स क्रिकेट टीम, मुकाबला जारी एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम के साथ। 24 रन 3 विकेट पर सफलता दिला दी 2 महेश भाईडकर ने, और इसी बीच में 8450 WFF बॉलर गाड़ी प्लीज, आपकी गाड़ी थोड़ी सी दोस्तों सही जगह पर पार्किंग कीजिए, ट्रैफिक के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही जगह पर पार्किंग की। आइए एक बार फिर से चौथे इनिंग की शुरुआत होते हुए गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ, और कमेंट्री बॉक्स भी जुड़ जाते। आइए बिल्कुल एक शानदार मीठी आवाज
हमारे सागर गोसावी उर्फ सैगी के साथ। Thank you, Ashok Shinaik. So after completion of 3 overs, score is 24 for the loss of 3 wickets. And all credit goes to Mahesh Baitkar, that is Maddie, who have taken those 2 beautiful wickets. Both the wickets are clean bowled. One was on a change of pace and other a yorker. So first delivery, Aniket Rao delivers a leg cutter ball deviating away from the batsman. Travels safely in the hands of keeper. So starts with the dot ball and good bowling continues from SI Indian bowlers. So definitely they have lost the first match, but now definitely in the second match with a plan, executing with the ball at the moment. Short pitch delivered down the leg stump, stretch of arms by the umpire, confirming that this is an extra. A single to the total, as a total for the most to 25. So 3 batsmen who are back to the pavilion: Samrat Gavas, Ajit Moite and Sarvesh Gowdy. Short pitch, decent strike, fielder has been plotted. Oh my dear, maybe the son playing the trick and he has taken the blow onto his back. Definitely the thought must have come, it's better to save my face rather than saving the back. As the people, they look into your face at the first and then at the other body parts. So quite thinking from the fielder at the very last moment, decided to take the blow on the back. No arm turn, definitely saved. 3 runs for his side. Great effort. And with that, team total moves to 26. So that brings left-handed batsman Ijaz Qureshi on the striking end. He is open and still out in the middle. Change in pace. Look at that. Immediately onto his knee. And a slog sweep. This is the most popular shot so far in the modern era of a tennis ball cricket. Heaves the ball over the square leg region. Big 6. And with that big 6, a team total moves to 32. So finally some fireworks to be seen from the bat of Ijaz Qureshi. He has been adopted by Dharsagar Sunrisers as he is the most reliable outstation player at the moment. Short pitch delivery again, gets the treatment, pulls the ball along the carpet into the vacant zone as the ball travels inside the pendle, and it will be brought soon. Boundary to mark the total for the Moto 36. 36 on the board. 4th over in progress. 2 more overs to be bowled. Even Dharsagar Sunrisers are also with a plan. They have played cautiously in the initial half of the inning, now cutting loose. Another good strike, change in pace. Much more early sighted by Ijaz Qureshi. Knew well the ball is going to land. Immediately brings the bat, take it on the speedy spot, and again the ball disappears over the square leg region for a big 6. Bigger 6, far much better than the previous one. Score moves to 42. So this over is proving to be healthy for the batting team, as the ball has travelled much out of the boundary rope and the match ball has been brought. So let's see what is going to come on the next delivery. So this is a wonderful strategy, and a lot many youngsters should learn how to build an inning.
Initially gave respect to the good deliveries that have been bowled to them, and now cutting loose on the deliveries that are in the zone. Wonderful, wonderful display of batting by Ijaz Qureshi. Another short pitch delivery, away going delivery. Now losing the concentration. Chasing a wide delivery, ball takes the leading edge of the bat and a wonderful catch taken behind the stumps. Wicketkeeper in act. That makes Ijaz to come back, but he has played his role. 34 runs, a cameo of 34 runs from Ijaz Qureshi. Waited for the opportune moment. Zore out in the middle. Let's see whether he can live up to that reputation. So far, not able to connect the way he connects the tennis ball. But he has to wait for a chance. First delivery shot pitch, chance of a catch, ball going away from the fielder. Fielder from the circle running, have run but not able to stop the incoming boundary. Final over in progress. I beg your pardon, second last over in progress. Mohit Gaukar on the strike, Arshad the bowler, and the first delivery, a leg cutter, immediately shifts towards the off stump and guides the ball towards the fine leg region. Boundary taking the total to 46. Arshad the feather, outstation player into act. Lower full toss gets the treatment. Mohit again a slog sweep, slightly shuffling towards the off stump and gets the perfect connection. Sixer from Mohit takes the team total to 52. 50 up for Darsagar Sunrisers in the fifth over. One more over to be bowled after this over. So this is a good strategy. As initially they were quiet, they were going at a healthy run rate of 8 runs per over, and now accelerating in the depth. A boundary and a big six to start the fifth over. So far 10 runs from the over. Can Mohit make it big, as he was the player of the tournament in the first edition of South Goa Premier League? Again shifting outside the off stump, waited for the ball to come, and a bounce again to make the ball travel the distance. 4 runs takes the team total furthermore to 56. Finally, some decent total is happening on the scorecard. Some hammering is happening in the second last over, as our station player Arshad Davidar has been welcomed with the boundaries and a sixer. So now fielder has been placed patrolling the fence. Again, there is a chance of a catch. Fielder from long on comes and takes a simple looking catch. Mohit Gaukar back to the pavilion. Let's see who is going to be the incoming batsman. 56 for the loss of 5 wickets. DJ.
Another low full toss gets the treatment. Again, a rock sweep onto the back foot. Big six from the incoming batsman. Vishal Gaude is a better all-rounder. Can deliver when a ball is handed to him and also delivers when a willow in his hand. Sixer from Vishal Gaude on the very first delivery that he has faced. That takes the team total furthermore to 62. Another heave. Fielder under the ball only to watch the ball sailing past him. 6 of the final delivery of the 5th over. Arshad Davidar is being very expensive, and that sixer takes the team total to 68. So one more over to be bowled. DJ, it's your time for some music. Is running. Let's see who is out. That will be the confusion as Babel is started going towards the non-striker's end. And bails have been dislodged at both ends. So let's see who was inside the crease as all eyes on the big screen. So the wicket is at the non-striker's end. So Babal Zore has to walk back. So run out at the striker's end. So Babal Zore run out at the striker's end as he was short of the crease when he was running to take the run. Could not get inside the crease, so he has to depart.
So new man in is Vishal Gaonkar, captain of the batting team. Let's see what he can do. Big guy, a tall guy. Meanwhile, a good yorker. There's a appeal. Vishal wants the striking end. Meanwhile, this is a good and looks to be there's a run out again at the striker's end. As a captain departs, Vishal Gowde has to stay at the non-striker's end. This is where the batsmen have to be shrewd. When you are not connecting, you have to take a single and rotate the strike. These are the basics of cricket. And in the fast running era of modern cricket, sometimes we tend to forget the basics. And there's a saying, if your base is solid, then you can build a taller building. So that is a perfect set of example in this last over, where two run-outs that have happened at the striker's end, and a batsman who have connected 2 sixes from 2 deliveries still at the non-striker's end. Firoz Sheikh is the new man in. Another inside edge, nope. It's clean ball, and Ramesh will fetch energy drink from the proprietor of Wildfire for taking a wicket as a clean bowled. So this is a good comeback from the fielding team, SI Indians. Second last over was expensive. So this energy drink is sponsored by Mr. Parag. As every bowler who is going to take a wicket in form of clean bowled will fetch energy drink named Wildfire. Meanwhile, a wonderful strike to the covers. Fielder has been plotted, and what a strike. What a strike to get that distance at the So requesting the captain of Al Zargam Royal Challengers and captain of Amazing Super Giants to kindly come for toss. Score is 74 and the target is of 75 runs. Requesting the captain of Al Zargam Royal Challengers and the captain of Amazing Super Giants to kindly come for toss. For the further proceedings of the second innings, it's over to Harish Kakodkar.
बॅट्समॅन मातशे बेगीन येयात. SI इंडियन्स बॅट्समॅन मातशे बेगीन येयात. अंपायर्स आनी बॉलिंग टीम ऑलरेडी ग्राउंडार आसात. सो बॅट्समॅन मातशे बेगीन येयात. तशेंच नेक्स्ट मॅच अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्स आनी अमेझिंग. अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्स आनी अमेझिंग मातशे बेगीन करात. टॉस आमी कॅप्टनाक रावल्या. अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्स कॅप्टन आनी अमेझिंगाचो कॅप्टन. बरी मॅच जातली. दोनूय टिमी बऱ्यो स्ट्रॉंग आसा. बरे बॅटींग ऑर्डर. सो एक बरी संद आसा आमकां पळोवपाक. एक बॅटींग जर तर भरपूर धावांचो डोंगर जर पळोवपाक जाय जाल्यार ह्या मॅचीक पळोवपाक मेळटलो. अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्स आनी अमेझिंग. कॅप्टन मातसो टॉसाक यो. This is the second call, and now I am going to take the last call. Al Jargam Royal Challengers and amazing captain macho begin yo. So it's time for the toss. Naresh Sorlikar of Amazing Super Giants and Ajay Khewat of Al Zargam Royal Challengers. It's time for the toss. Ahmad Khan of KKG along with Ashutosh Angle, the member of GCC Fatoda, are there for the toss. Let's see what's up there in the toss. Who is going to win this one? Important match, the next match for both the teams. Tails, it is youngster winning the toss once again. And we all know the decision, but let's hear from you. Yeah, we're taking bull. Absolutely, you're going to bowl. That was expected. So what will be the total in your mind to restrict the better betting team? As we already stated in the last match, around 50 to 60. At the same, we are trying to bowl very well. And what will be in your mind as how to get those wickets of prolific batsmen? Yeah, definitely we will plan the batsmen, even Fardi Kazi and Yosh Reyes also well played. So we'll try to bowl them out early. And are we going to see you in action, because it's been a long time? This is your home ground. Not yet rolled your sleeve. Yes, definitely. Okay, anyways, best of luck, Captain. Toss is not in your favor, but what would have been your call if you have to win the toss? If we are on the toss, we are also choose to the field only. But we have a good batting side. Last match we batted first. So this match also we are planning to bat and put a good score on the target. So our bowler last match bowled very well. So we'll try to score maximum runs in this match. And definitely you are playing against a top side. These are the two most expected teams to be in the playoffs. So how I'm not going to ask your planning, but are you confident enough against a good team? Yeah, we are confident because our player also played almost all good games. They playing regular good tournaments. They have more experience. So we're looking good performance from our player. We'll see. And definitely there will be some target in your mind, as you can see a big team, balanced team. So what do you think, what target will be comfortable for your bowlers? Yeah, 80 plus we are looking for. We'll see. Okay, anyways, best of luck for the match. Meanwhile, as usual, not a rare scenario. Naresh Soldigar winning the toss and immediately decides to bowl first. Even if you change the coin, Naresh will still win the toss.
And what a start. Run out. They had that run out in the previous match also, and now starts off with a run out. Not a good start here for SI Indians. And in comes Arshad Tafedar. Somesh Prabhudesai was going at a non-striker's end. The danger and for him, and direct hit costed a wicket. That was a short ball. That was a short ball. That was a rank hop here from the bowler Firoz, and batsman had ample of time. Rami is there hitting beautifully a pull shot in the backward of fine leg region for a magnificent six. Certainly we have seen this total which was posted here, 75 is the target. I thought it would have been somewhere around 50 to 60. But 1 over, that expensive over from Arshad Dafedar, made this 50-55 total go to around 75. So that's how the difference was. But now is no point in talking. They have to chase this down. Still not a big total. It can be chased on a flat belted wicket. A good comeback here from the bowler Firoz Sheikh. So predominantly an offside field. There is no fielder deep on the offside. This time way outside off stump. Wide signal here by umpire. Yes, easy signal. So that you have to win this one. Otherwise it makes very, very difficult for the teams. Oh, this will be a catch. Fielder underneath and catch dropped. Oh, once again a frivolous mistake here. He was into the position, and such mistakes are going to pay them heavily. And that too of a batsman, Ramiz. Good batsman who will have been back in the pavilion. A chance created here by Firoz Sheikh, and fielders are not taking the chances of the bowlers, not only this team. This time an easy shot on the legs. He just had to find a gap and finds it easily for a boundary. So the over which would have fetched 2 wickets for Dharsaka Sunrisers. Now the runs are also flowing and leaking. What does the bowler do? He creates a chance and then gives away 4 runs, adding insult to the injury of the bowler. Score moves on to 13 runs. First over in progress. They didn't have a very good start, run out on the very first ball, but they are coming back strongly. This is in the air. This might be one more 6. Very nicely hit here. Oh! I hope everything is all right. I think we just take a little time here, and organizers, please have a look at him. Please have a look at him. So we are a little bit scary there, and a 6 given away here. So that takes the score to 19 runs. I hope the fielder is all right. We'll definitely have a look at him, and we'll ask about his health consistently, continuously. It was very, very risky there. It's the second time that we have seen. I don't blame the organizers, but sometimes the fielders, no one to be blamed here. But this happens. You tend to give all out as a fielder, trying to take the catch there, and just goes for 6 runs. But effort, I will give 101% for the effort from the fielder. Ijaz Qureshi.
A very, very important player. Big player, big name. But Firoz Sheikh over turned out to be very costly. A great start, although a wicket loss in the first match, but they are coming back strongly through Ramiz. Now Arshad Dafidar. Gaurish Nagvekar has been brought from the far end. He was very costly against Al Zargam Royal Challengers. Now he has to bowl a pretty decent over, as the first over turned out to be costly. That's a good start. That's a good start. He wanted to lift it in the covers. But bowler here, Arshad Dafidar, starting off slightly expensive as far as bowling is concerned, but he can always come back strongly. He has got this second opportunity to showcase a talent in batting. He can very well score a 20 or a 30 and get his team close to the victory, and the job will be well done. So once again towards the fine leg region, the ball is racing towards the fence, but half stopped by the fielder. Good effort, and just 2 runs given away. This outfield is lightning fast, and the ball that is used here for this tournament is full toss ball, which just flies across on the turf. Not easy for the fielders, but good effort. The efforts are being given by Dar Sakar. Must win encounter, must win in the sense to stay in the race. Qualifiers, who doesn't want to play a qualifier? It's a jam-packed crowd, especially when the light comes into effect and the sun goes down. 21 is the score. Second over in progress. This is in the air, also in the gap. 4 runs. Well, he didn't get the timing that he would have liked. He required a much better timing. We saw a shot from Pradeep Patil yesterday, that no-look shot. He tried that same shot, almost a flick no-look shot, but went for 4 runs. Nevertheless, a good result here for the batsman. Okay, परत एकदा अनाउन्समेंट. अहमद खान केकेजीचो ओनर. KKG outside edge and catch dropped. Ajit Moite, the last man on this ground to drop a catch. Maybe the excitement, maybe he was jubilant and trying to celebrate much before. And I don't know, but it just popped out of the hands. Such a good fielder, not having a great time here in this tournament so far. But a big man, no short of talent, Ajit Moite. The chances are not being taken. This is the second time they have dropped the catch. This is wonderful flick of the wrist straight to the fielder, and will get a single. He wanted the second. Denied here by Ramiz. He's going to take a strike first time in this over. Last ball of the second over takes the score to 26. Ramiz playing on 18 of 5 and Arshad playing on 7 of 5. Gaudesh so far pretty decent, just gave away 7 runs in the 5 balls that he bowled. All the updates coming on TennisCricket.in. Sports Ninja are the title sponsors. Here comes Gaurish against the left-hander. And that dot ball will finish over number 2. Still the score is at 26 for the loss of 1. And KKG so owner Ahmed Khan and प्राइज अनाउंस केल्ले आसा की जो कोण 2 हातान कॅश धरतलो ताका 100 रुपया आणि 1 हातान कॅश धरतलो जाल्यार 200 रुपया. आणि कोणाकूय जर तर जेन्ना तूं कॅश धरतलो जाल्यार कमेंट्री बॉक्सार येवपाचो आणि अंकलाक कॉन्टॅक्ट करपाचो. आमी आसा कमेंट्री बॉक्सान फक्त कॅश धरपाचे निमित्त, आणि हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले जाण कॅश धरात भायल्या ग्राउंडा भितर न्ही. सो दिस इज फॉर द स्पेक्टेटर्स. तशेंच आयचो एक बरो जो लंच आशिल्लो तातूंत म्हाका दिसता बांगडोय बरो आशिल्लो, बांगड्या सीजन, आनी बांगडो जबरदस्त आशिल्लो. फीश करी भितर बांगडो बरें आसल्यार जेवण बरें जाता. आनी हो बांगडो दिल्लो आनी स्पॉन्सर केल्लें जें सगळें नुस्तें आसा तें परत एकदां अहमद बाब खान, कारण काल ताची टीम जबरदस्त परफॉर्म करून क्वॉलिफायरान टॉप स्पॉट केलो. आनी म्हाका दिसता काल ताणें बांगडो दिला, फाल्यां म्हाका दिसता तो पापलेट हाडटलो.
सॉरी पापलेट न्ही खंय विसवण. Now let's see why umpire has called as the organizers. Something must have come in the umpire's mind. Well, the same bowler who bowled in the first power play cannot bowl in the batting power play. That's a simple rule. So you got to bowl a different bowler. And Karim Bhai and Muzaffar are having a look. Maybe the sprinkler is on and the water is coming out, something like that. ज्यांना आम्ही हिंदीन सांगतात, मराठीन थोडी गोष्टी जातात, इंग्लिशीन जातात. सो आमची मायभास आमची अस्मिताय कोंकणी. सो बारीकशे एक कोंकणीन कॉमेंट्री कारण पब्लीक डिमांडी आसा. जैताक जाय 75 रन आणि सध्या स्कोर बोर्डार लागिल्लो आसा 26. 49 रनाची गरज. जवळजवळ 12 रन्स पर ओव्हर जिखपाक जाय इन 4 ओव्हर. 4 ओव्हर उरल्यात. 2 ओव्हर बॉलिंग घाल्ली आसा आणि बॉलिंग येतलो आता विशाल गावडे. फुडली मॅच जातली ती अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्स आणि अमेझिंग दोन्ही टिमींनी एक मॅची आपल्याली जिखिल्ली आसात. आता पळोवया ही मॅच इम्पॉर्टंट कारण जो मॅच जिखतलो ताका चड बरी संदी आसा क्वॉलिफायर्स करपाक कारण दोन्ही टिमी तगडी आसा, स्ट्रॉंग आसा. आता स्ट्रायकर आसतलो तो बाब अर्शद दाफेदार. उखलून मारला. कॅच जावपाक शकता. दोग जाण फिल्डर पोना धांवता आणि कॅच बरी धरल्या. सुंदर कॅच. फिरोज शेख एक बरो फिल्डर कॅची पोना आशिल्लो. इजी कॅच नाशिल्ली. बॉल मातसो पयस वतालो तरी पूण ताणें बरी रनिंग केली आणि एक सुंदरशी कॅच धरिल्ली आणि अशे तरेन अर्शद दाफेदार परत एकदा आपल्या तंबून वापस परत वता. दुसरी विकेट गेल्ली आसा आणि स्कोर आसा 26. एक बरी सुरवात केल्ली आसा बाब विशाल गावडे आणि पयलेच बॉल ताजो बॅटिंग पावर प्लेक ताका संदी दिल्ली आसा बॉलिंग घालपाची ताज्या कॅप्टनान आणि ताणें पयल्याच बॉलान एक विकेट काडिल्ली आसा. एक बरो कमबॅक करता हांगा धार सकाळ सनरायझर्स. सो हांगा एक आता नवो बॅट्समॅन येता तो अनिकेत राऊत. आउट स्टेशन प्लेयर आणि एक SI इंडियन्स. एक बरी इनिंग्स खेळटा रमेश आणि अनिकेत राऊत आणि एक हांगा जर पार्टनरशिप बिल्डअप जाली एक 25-30 रनाची जाल्यार जैत जिखपाक चड पयस उरपाना. आणि पळोवया ही कॅच काय ना. अपील तितली स्ट्रॉंग नाशिल्ली आणि अंपायरान नॉट आउट दिलो. पंचायत म्युनिसिपालिटी जेन्ना हांगा टुर्नामेंट घडयल्लो एक 3-4 वर्सां फाटीं तेन्ना एक आउट स्टेशन प्लेयर अलाउड आशिल्लो आणि तेन्ना तो फर्स्ट आउट स्टेशन प्लेयर आशिल्लो तो बाब अनिकेत राऊत हांगा खेळटा SI इंडियन्स टिमी. पळया एक आखांताची उखलून मारल्या आणि बॉल गेला जवळ जवळ 30 मीटर फाटल्यान. उंच आणि पयस असो हो सुखो सुंदरशे बॅट स्विंग हांगा दाखयता अनिकेत राऊत आणि पयल्याच बॉलाक मारता दुसऱ्या बॉलाक मारता आपल्याचो पयलो सुखो आणि स्कोर गेल्लो आसा 32 रनाचेर. जिखपाक 43 रन उरल्यात.
तिसरी ओव्हर चालू. पहिली बॉल एक बरो घाल्लो, विकेट घेतिल्ली, मागीर डॉट बॉल, मागीर सोको. आपल्या टिमीक स्वताक ह्या कॉम्पिटिशनाक जर तर एलिमिनेशन क्वॉलिफायराक जर पावोवपाक जाय जाल्यार हांगा जैत सामकें काळाची गरज आसा ह्या दोनूय टिमीक. आनी म्हाका दिसता फायट तगडी एक जबरदस्त झुंज चालू आसा दोगांय भितर. बॅट आनी बॉलर्स. परत एकदा बॉलर येता आपल्या बॉलिंग मार्कार. परत एकदा उखलून मारला. हो सोको काय कॅच. म्हाका दिसता परत एकदा सोको. 2 बॉला 2 सिक्सर. बॉल वायट नाशिल्लो पण ऑफ सायडीन भायर शफल जालो आनी एक सुंदरसो एक हाफ पुल हाफ हुक म्हणटा तसो शॉट स्क्वेअर लेगाच्या दिशेन मारिल्लो आसा आनी एक सोको. ह्या सोक्या फाटल्यान स्कोर धांवत आसा आनी पावला 38 रनाचेर. असा इंडियन्सान म्हाका दिसता खुबसो क्राउड हाडला, सपोर्टर हाडला, पूण सपोर्टर सगळे थंड पडल्यात. मॅच बरी चालू आसा. जर आवाज आयलो बरो वाजोवपाचो जाल्यार मजाय बरी येतली, रंग बरो येतलो. आनी कॅच जावपाक शकताली पूण म्हाका दिसता मातशी पयस उरली. तरी पूण एक रन मेळटलो. स्कोर पावला 39. तिसरीच ओव्हर चालू आसा. एक बरी सुरवात, बरी पार्टनरशिप आनी बरी इनिंग्स खेळटा अनिकेत राऊत. म्हाका दिसता जे वाजोवपाक हाडल्यात तेय बी मॅच पळयतात. परत एकदा बरो बॉल, बरो यॉकर, रन आउट चान्स आशिल्लो आनी चुकलो तो मुकलो. कारण जर मारिल्लो जाल्यार आनी एक विकेट मेळटा आशिल्ली आनी फक्त जाय आशिल्ले डायरेक्ट हिट. पूण बरो एक क्विक रनाची ऑपॉर्च्युनिटी संद आशिल्ली आनी ती संद घेतल्या दोनूय बॅट्समॅनान. अशे तरेन तिसऱ्या ओव्हरीचो खेळ जाल्लो आसा आनी स्कोर जाल्लो आसा 40. जैताक जाय 35 रन आनी उरल्यात 18 बॉल म्हणल्यार 3 ओव्हरी. म्हाका दिसता म्हज्यो 3 ओव्हरी सोंपिल्ल्यो आसा आनी हांव तुमची रजा घेता आनी फुडली जी सुत्रां आसा ती सुपूर्द करता आमचो सिनियर कमेंटेटर बाब अशोक नायक सर. तुमी येयात आनी फुडली तुमच्या मधुर आवाजान जो तुमी हिंदीन कमेंट्री करता ती लोकांक कळोनी. थँक्यू, धन्यवाद करिश. कोकणी, हिंदी, इंग्लिश आणि थोडीशी मराठी ऐकूया. 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. 18 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आणि या 18 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी अजूनही करायच्यात विजयासाठी 35 धावा. गोलंदाजीत बदल होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून. एक सुरेख फटकेबाजी, मैदानात 2 षटकार, आतापर्यंत एक चौकार फलंदाजीत रमीसच्या बॅट मधून या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतोय. आणि दुसऱ्या बाजून मात्र अनिकेत सुंदर साथ देतोय. अनिकेत राऊत 2 षटकार 13 धावावर वैयक्तिक फटकेबाजी करतोय. समोर मात्र फातोडा स्टेडियम कडून या ठिकाणी गोलंदाजीत बदल होतोय. 4थ्या षटकाला प्रारंभ होतोय मैदानात आणि बहुधा सज्ज होतोय तो गोलंदाजी मार्कवर एक वेगवान गोलंदाज गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू. पुलरलेनचा चेंडू, एक जोरदार अपील, पंचांकडे अपील होतंय कॉट बिहाइंड साठी. पुलरलेनचा चेंडू ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न, समोर मात्र डावकुरा फलंदाज सर्वेश कर्णधार. एक जोरदार पंचांकडे दात मागितली जाते परंतु पंच मात्र अपील फेटाळतायत. एक निर्धाव चेंडू, राइट आर्म राउंड विकेट. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो गौरेश नागवेकर. और बहुत दूर से हमारे बिल्कुल अजीज दोस्त अल्लाह बख्श का आगमन होता हुआ, जो बिल्कुल उस्मान पटेल के बिल्कुल फैन है, वो अल्लाह बख्श का आगमन होता हुआ सांगे से आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से. अल्लाह बख्श. सुंदर फटका, फाईन निघाला. 2 क्षेत्ररक्षक बघूया त्या अगोदर चेंडू फाईन लेग बाउंड्रीवरनं जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय फेक होते यष्टिरक्षकाच्या दिशेने.
2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतोय. तो 42 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रमेशच्या खात्यात 2 धावा. रमेश सज्ज होतोय, सामना करतोय गौरेश नागवेकरच्या गोलंदाजीचा. ओव्हर पे चेंडू, एक लेफ्ट फटका, गगन पुचंबी षटकार, डीप मिड विकेटला चेंडू, सीमा पार, षटकारासाठी 6 धावांसाठी. आक्रमक फटकेबाजी मैदानात रमेश, दुसऱ्या बाजूने अनिकेत राऊत. टोलेजंग षटकार वायडेश लॉंग ऑनला रमेशच्या बॅट मधनं गौरेश नागवेकरच्या गोलंदाजीचा खरपूस समाचार घेताना धावफलक मात्र वेगात पुढे सरकतोय. 4थं षटक, सामना जिंकण्यासाठी टोटल 75 धावांचं आव्हान मैदानात. पाठलाग होतोय एसआय इंडियन्स क्रिकेट संघ. एक सुरेख फलंदाजी फटकेबाजी मैदानात दिसते. 48 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4थं षटक सुरू असताना मैदानात कर्णधार सर्वेश यष्टीरक्षक थोडासा बदल करतोय मैदानात. क्षेत्ररक्षणात राईट ऑफ राऊंड विकेट पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर गौरेश नागवेकर. एक जमनीलगतचा अवैत अलॉंग दी कार्पेट ऑन ड्राईव्हचा एक सुंदर फटका, लॉंग ऑन बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक सहजगत्या एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. सुंदर क्रिकेट आजचा दुसरा दिवस या स्पर्धेचा. साऊथ गोवा प्रीमियर लीग पर्व दुसरं 2023 कालचा पहिला दिवस. 2 संघ क्वालिफाय होत्यात कालच्या पहिल्या दिवशी. आज मात्र दर्जेदार मातब्बर खेळाडूंचा भरणा या स्पर्धेत. आणि बघूया सरते शेवटी शेवटच्या टप्प्यात, रात्रीच्या टप्प्यात 2 संघ कुठले हे क्वालिफाय होत्यात या आजच्या दुसऱ्या दिवसात. 14 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 26 धावा. सुंदर या ठिकाणी स्कोरिंग गुणलेखकाचं काम विराज तेंडुलकर. आणि ऑनलाईन स्कोरर आमच्या सोबत या ठिकाणी शिवम आणि त्याचबरोबर कुणाल. आमचे साईड या ठिकाणी स्क्रीनवर अतिशय सुंदर प्रक्षेपण TennisCricket.in मधून या ठिकाणी आम्हाला बघायला मिळतोय. बऱ्याच वेळा रिप्ले ही बघायला मिळतोय या मैदानात. ओव्हर द विकेट राईट आर्म गौरेश नागवेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. समोर मात्र बऱ्याच वेळानंतर अनिकेत राऊत. ओव्हर पिच चेंडू खेळायचा प्रयत्न कव्हरला, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. यष्टीरक्षक सर्वेस बाकीचं काम पूर्ण करतोय. क्षेत्ररक्षक सिलिमिड आपला शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला. त्यानंतर पुन्हा एकदा गौरेश नागवेकर थोडासा महागडा ठरतो या ओव्हरमध्ये. परंतु एक गडी नक्की बाद करावा लागेल भरपूर या मॅचमध्ये कमबॅक करण्यासाठी. आणि बघूया कशा प्रकारे या षटकाची आपल्या स्पेलची सांगता करतोय. 4थं षटक, 75 धावांचं आव्हान. टोटल स्कोर झालाय तो 49 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रनअपला चुकतोय. ऑन साइडला डीप स्केवर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाईडेश लॉंग ऑन. ऑफ साइडला एक लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर क्षेत्ररक्षक, एक शॉर्ट थर्डमॅन, एक गलीला, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला, एक शॉर्ट फाईन लेग. असं क्षेत्ररक्षण मैदानात आपल्याला दिसतंय. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, एक ऑफ स्टंपवर थोडासा खाली जातोय चेंडू. एक सबमरीन डिलिव्हरी गौरेश नागवेकरची निर्धाव चेंडू. सांगता होते ती 4थ्या षटकाची. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 49 रन 2 विकेट पर. आने वाले 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 26 रन, 12 बॉल्स 26 रन. 12 चेंडूंचा खेळ उरलाय. या 12 चेंडूत 26 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी एसआय इंडियन्स क्रिकेट संघासाठी. यानंतर लगेचच सामना होतोय तो अमेझिंग सुपर जायंट्स विरुद्ध. पुढील सामना होतोय तो अल दरकान रॉयल चॅलेंजर्स या 2 संघादरम्यान. दोन्ही टीम सामन्यासाठी अगदी रेडी रहा. अल जरकम रॉयल चॅलेंजर्स या 2 संघादरम्यान अमेझिंग हे 2 संघ आमने सामने येत आहेत. यानंतरची लगेचच सामना होत आहे. दोन्ही टीम अगदी सज्ज राहा या मॅच साठी. वळूया पुन्हा एकदा मैदानात. 12 चेंडू उरलेत. 12 चेंडूत 26 धावा असं समीकरण सामना जिंकण्यासाठी. दोन्ही संघादरम्यान एक चुरशीची लढत आपल्याला मैदानात दिसते. परंतु सरतेशेवटी बघूया कुठला संघ हा सामना विजय संपादन करतोय.
ओ गणाघाती फटका रमेशच्या बॅट मधून चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी. 11 चेंडू 20 धावा. सामना थोडासा जवळ आलाय. जो सामना 12 चेंडू 26 धावा तो सामना अगदी जवळ थोडासा येतोय मैदानात. SI इंडियन क्रिकेट संघासाठी उरलेत 11 चेंडू आणि 11 चेंडू 20 धावा असा सामना जवळ येतोय. रमेशच्या बॅट मधनं निघतोय तो चौथा षटकार. अनिकेत राऊत 2 षटकार 13 धावावर. समोर मात्र गोलंदाज मोहित गावकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुढे सरसावतोय डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑफ लावलाय चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी. आणखी एक सुंदर षटकार आपल्याला दिसतोय मैदानात रमेशच्या बॅट मधून. दोन मोठे फटके. मोहित गावकर थोडासा महागडा ठरतोय मैदानात. समोर मात्र रमेशची घणाघाती फटकेबाजी. वैयक्तिक 40 धावावर. आखू टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका डीप फाईन लेगला रमेशच्या बॅट मधून आणखी एक उत्तुंग षटकार 6 धावांचा चौकार 4 धावांसाठी. 2 षटकार 1 चौकार आतापर्यंत रमेशच्या या बॅट मधून आपल्याला दिसत आहेत. मोहित गावकर जे वैयक्तिक पहिलं षटक संघाकडून 5वं षटक. धावफलक मात्र पुढे सरकतोय तो बरोबर 65 धावा. विजयासाठी हव्यात 10 धावा. या 10 धावांसाठी उरलेत अजूनही 9 चेंडू 9 गेंदे और 10 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए. ओ मिस टाइम फटका. बघूया एक साधा सोपा झेल. सरते शेवटी मोहित गावकर एक झेल टिपतोय आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये. आपल्या गोलंदाजीवर कॉट अँड बोल्ड बसतोय. 3रा हादरा SI इंडियन क्रिकेट संघाला. परंतु ज्या कामगिरीसाठी फलंदाजीसाठी निवडलं होतं घेतलं होतं ती कामगिरी मात्र रमेशच्या बॅट मधून आपण बघतोय. एकंदरीत 5 षटकार 2 चौकार आपल्या खेळीत टोलवत 40 धावांचे एक सुंदर खेळ 44 धावांचे एक बहारदार खेळी हे मैदानात समाप्त होते. रमेशची बसतोय 3रा हादरा. परंतु एक मोठी भागीदारी 3ऱ्या गड्यादरम्यान SI इंडियन क्रिकेट संघासमोर 65 धावा. टार्गेट 75 धावांचं. अजूनही हव्यात 10 धावा आणि या 10 धावांसाठी उरलेत 8 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी. कर्णधार मैदानात दाखल होतोय. बहुधा तो संदेश ठाकूर बॅटिंग करण्यासाठी. पहिला सामना गमावल्यानंतर या सामन्यात नक्की दबाव होता SI इंडियन्स. त्याचबरोबर धाडसाकर दोन्ही संघ पहिला प्राथमिक सामना हरतायत. ही महत्वाची लढत होती दोन्ही संघादरम्यान. आणि बघूया काहीतरी गोलंदाजीत अजूनही चमत्कार घडतोय मैदानात धाडसाकर क्रिकेट संघाकडून की दुसऱ्या बाजूनं अगदी वाटचाल जे मैदानात दिसते SI इंडियन्स क्रिकेट संघाचे त्या कामगिरीत कर्णधार मैदानात बघूया काय करतोय. ऑफ टेम्परचा सुरेख चेंडू अचूक लाईनवर फलंदाजाला नक्की अडचणीत टाकणारा एक निर्धाव चेंडू. या निर्धाव चेंडू बरोबर 5वं षटक अजूनही सुरू. आपल्या स्पेलची अंतिम चेंडूवर या ठिकाणी गोलंदाज राईट आर्म राऊंड डेकर सज्ज होतोय तो मोहित गावकर. 7 चेंडू बाकी अजूनही आणि या 7 चेंडूत 10 धावा 7 गेंदों का खेल और 10 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए. एक जमने लगाचा समोर ड्राईव्हचा फटका. परंतु आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण. एक अवघड झेल टिपायचा प्रयत्न सुंदर होता परंतु शेवटच्या टप्प्यात चेंडू हातातून निसटतोय. चांगल्या समाप्ती करतोय. जो सुरुवातीला महागडा ठरत होता पहिल्या 3 चेंडूत 16 धावा 2 षटकार 1 चौकार. त्यानंतर बऱ्यापैकी कमबॅक एक गडी बाद करतोय.
रमीसला माघारी परतवतोय आणि त्यानंतर लागोपाठ 2 निर्धाव चेंडू सामना येऊन ठेपतोय. 6 गेंदे और 10 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए. 6 चेंडूत 10 धावा सामना जिंकण्यासाठी SI इंडियन्स क्रिकेट संघासाठी. नेक्स्ट मैच अमेजिंग सुपर जायंट्स और अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, इन दो टीमों के बीच में. दोनों टीम बिल्कुल इस ओवर के साथ मुकाबला शुरू होगा. आपके लिए दो जानकारी. आखिरी ओवर चेतन परब सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी पर. इस बार टॉप एज लगा, गेंद हवा में निकले बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. देखना होगा, 1 रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के पास 2 रन जुड़ते हुए टीम के स्कोर के खाते में. 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 67 रन. अभी भी आने वाले 5 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 8 रन. 5 चेंडूत 8 धावा सामना जिंकण्यासाठी. SI इंडियन्स विरुद्ध धाड साकळ सनरायझर्स, दोन्ही संघ आमने सामने. चौथा सामना आजच्या दिवसातील लगेचच 5वा सामना. एकंदरीत 10 सामने. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस. त्या अगोदर बघूया हा सामना कसा संपतोय. लाईनला बरकटतोय, लेग स्टंपच्या बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही धाव संख्येत पडते. ऐन मोक्याच्या क्षणी गोलंदाज थोडासा लाईनला बरकटतोय. चेतन परब एक अवांतर चेंडू धावफलक पुढे सरकतोय. आणखी एका धावेने टोटल 68 3 विकेट पर. आडव्या बॅटनं एकेरी धाव. शॉर्ट पाईन लेगला क्षेत्ररक्षक, एक सिंगल, दोन्ही फलंदाज. एक लढत नक्की चुरशीची दिसतोय मैदानात. सामना शेवटच्या बहुता क्षणापर्यंत उत्कंठावर्धक, उत्कंठा वाढवणारा मैदानात दिसतोय. 4 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. 6 धावा, 4 गेंदे और 6 रन मैच को अभी भी जीतने के लिए. 4 गेंदों में 6 रन मैच को जीतने के लिए. 4 चेंडू बाकी आणि 4 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी 6 धावा. संदेश ठाकूर सज्ज होतोय, डावखुरा बॅटर मैदानात. एक दर्जेदार चुरशीचा सामना दुपारच्या 17 नंतर. चेतन परब आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय फातोडा स्टेडियम कडून. समोर बॅटर संदेश ठाकूर. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू शॉपालवर टोलवायचा प्रयत्न, हलकाच अपील होतोय पंचांकडे. जी धाव नव्हती ती धाव घ्यायचा प्रयत्न, कदाचित प्रयत्न होता. स्ट्राईक साठी ही धडपड होती नक्की, परंतु परतावं लागेल. चौथा गडी तंबू मध्ये परततोय. संदेश ठाकूर धाव बाद होतोय. SI इंडियन्स क्रिकेट संघाला बसतोय. आणखी एक हादरा. सामना थोडासा आणखी पुढे सरकतोय. उरलेत अजूनही 3 चेंडू या सामन्यातील. या 3 चेंडूत करायचे आहेत सामना जिंकण्यासाठी 6 धावा. 3 गेंदे और 6 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए. न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान पर. यासिन सिंगनगुट्टी, मारुति हुग्गी. मारुति हुग्गी न्यू बैटर मैदान पर. मुकाबला अभी भी जारी. क्या गेंदबाज कोई चमत्कार करेंगे इस मैच में, यह देखने वाली बात होगी. अब तक तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर चेतन परब की ओर से. जो मैच लगभग आसान लग रहा था पिछले ओवर तक, लेकिन उस मैच में बहुत ही शानदार मुकाबला हो रहा है. मोहित गावकर आखिरी 5वें ओवर में 2 लगातार डॉट गेंदे और संदेश ठाकुर जो 3 गेंदों का सामना किया, एक भी रन नहीं बना पाए और उनके जगह पर मारुति हुग्गी मैदान पर. इस बार फिर से थोड़ा सा मिस टाइम शॉट. एक फुल टॉस गेंद थी जिस गेंद पर लगभग मुकाबला समाप्त
हो सकता था लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ, बल्ले का भीतरी किनारा लगा, विकेट कीपर शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद निकली, बहुत ही शानदार फील्डिंग, 1 रन बन गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल हो चुका है 70 रन। आने वाले 2 गेंदों का खेल बाकी और 5 रन मैच को जीतने के लिए, 2 चेंडूत 5 धावा सामना जिंकण्यासाठी। दाद देनी पड़ेगी दोनों टीमों को, बहुत ही शानदार क्रिकेट। एक ओर से दाड़ साकड़ सनराइजर्स तो दूसरी ओर से एसआई इंडियंस, बहुत ही कांटे का मुकाबला। पिछला मैच थोड़ा सा एकतरफी जरूर रहा था लेकिन ये मैच क्रिकेट का पूरेपूर आनंद देता हुआ, मनोरंजन करता हुआ मैदान पर। 2 गेंदे 5 रन, 2 चेंडूंचा खेळ बाकी, सामना जिंकण्यासाठी 5 धावा। किस तरह से होगा इस मैच का जो कि निर्णय, बस इस गेंद के बाद लगभग, लेकिन मैच जीवित रहेगा आखिर गेंद तक, ऐसे कुछ संकेत। ओ इस बार खराब गेंद, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल आराम के साथ मौका मिला, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 6 रन के लिए और यहीं पर मुकाबला जीतती हुई एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम। बल्लेबाजी 44 रन उन्होंने बनाए, वो रमेश मैन ऑफ द मैच इस मैच का, रमेश मैन ऑफ द मैच इस मैच का। So now I would like to request the senior most player of GCC Cricket Club Fathoda, Mr. Ashutosh, and even requesting Mr. Sandeep to kindly come at the presentation arena to give away the man of the match trophy to the player who has been most valuable player in this match. Requesting Sandeep, the core member of GCC Fathoda, to kindly come and do the honors jointly along with your owner, Mr. Sandeep, with jersey number 33 on his back. Magta Sandeep Bab, जे GCC चे एक कोर मेंबर असत, ते मातशे हांगा माचे कडेन येवचे। संदीप बाब, मागता बाब आशीष मातशे हांगा माचे कडेन येवचे। तुम्ही जॉइंटली आशुतोष बाब हांच्या बरोबर हे इनाम भेटयतात। मागता आशीष जे GCC चे एक मेंबर जावन आसात, मातशे हांगा माचे कडेन येवचे आणि मॅन ऑफ द मॅच इनाम भेटयतात आमचे सिनियर मेंबर आशुतोष बाब आणि त्यांच्या वांगडा आशीष हे हांगा जॉइंटली हे मॅन ऑफ द मॅच इनाम भेटयतले। So man of the match of this match, Ramesh, will be taking the man of the match trophy from the hands of our senior most member of Gauti Cricket Club, Mr. Panchanan
and he will be joined by another senior member of the team, GCC, none other than Ashutosh. So requesting both the dignitaries to kindly be present at the presentation area as the most valuable player of the match, Ramesh, is already here to receive man of the match from the hands of the guest. So now at the presentation area, here the most valuable player of the previous match being honored with the man of the match trophy by the guests at the occasion. So what a valuable knock that Ramesh has played for his team, 44 runs and a wicket where he has bowled the final over and have restricted the high scoring match. Okay, Ramesh, how are you feeling to play in Goa? I am so happy. First time ആണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വലിയ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുന്നത് ഔട്ട്സൈഡിൽ സന്തോഷം. And what was actually was the plan in the run chase as a 75 was the target. So what was going through in your mind? ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും കളിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. Yes, definitely. We may not have understood the words, but we know your feelings that at a moment match was going away from you and captain gave you the ball and you have bowled a decent final over. You have given the minimum runs and taken a wicket. After that 75 was the target and you have come to bat. You played till the end. Hope you continue with the same form. Best of luck, my dear boy. Welcome to Goa with the man of the match trophy. That's all from the presentation. ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं परदीन काजी और उन्हीं के साथ अमय दामशिकर, गेंदबाजी में जिग्नेश पटेल और कमेंट्री बॉक्स में एक बार रुक करते आइए आगे का हाल सुनाते हुए माइक्रोफोन पर सागर गोसावी के साथ। आइए सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। So here we go with the next match. Ulster Royal Challengers versus Amazing Super Giants have won the toss and they have decided to bowl first. So first over in the progress, bowled by Jignesh Patel, a boundary, a couple of runs and a boundary and a wide. That takes the team total to 11. Power play over in act. Meanwhile, here's a fancy cricketing shot, guides the ball towards the fine leg. Keep fielder from the circle, Amit Naik, another big name in tennis ball cricket. So if anybody wants to test drive the electric bike, then a free test ride is available. You can contact Zubair, who is roaming with the electric bike, just number 15 on his back. Meanwhile, a flick shot, there was a chance of catch. Quick collection from the fielder. Throw was intact, but shy at the non-striker's end. That makes batsmen to survive. Ferdin Kazi, if they have to take that wicket, it would have been a priceless wicket because we have seen the capacity and the hitting from Ferdin Kazi. He's an elegant batsman, has strokes in the different areas. He can put the ball and he plays the elegant, decent cricketing shots as well as the modern era's cricketing shots. Meanwhile, Amey Damsegar, the lazy elegance, I must say, because if we look at the stance and the style of Amey, it looks to be very lazy, but he is a sleeping giant.
Don't wake the giant and ask for trouble. Meanwhile, this is what I was talking about. Chance of catch. Fielder very quick on his feet. Not getting the proper connection. And the big guy takes the catch. Has run a couple of yards towards his left. Ame could not take the ball from the middle of the bat. Manages to give a simple catch. But Darshan has to make lot of effort to grab it. First wicket back to the pavilion in the power play. And on to the final delivery of the power play. So after completion of one, it's 14 for the loss of one wicket. DJ, it's time for you to entertain the crowd in the evening. For the loss of one wicket. So as the batting power play is a call from the batting team. Faldin Kazi on the striking and what a strike through the covers. As only three fielders can be placed outside this circle. Amazing Super Giants have introduced the prolific all-rounder outstation Darshan Bandekar with the ball, and the first ball goes towards the covers for a boundary. Another full pitch delivery straight to the fielder at the mid-wicket, slight fumble. Quick single has been taken, a good throw. Better collection from Darshan. Made it look so simple, but this is not that simple that the way it was made to look. Meanwhile, a single that takes the team total to 19. Second over in progress, and this is the batting power play. Single brings Karan More on the striking end. Pace delivery, definite swing and a miss. Ball travels at an immense pace straight to the keeper. Matin Khan doing the job of a wicket keeper. Collects the ball quite comfortably. Another shuffle towards the off-stump, plays straight down the ground away from the bowler to take a single and to bring Faldin Kazi at the striker's end. With that single, team total moves to 20. So far, a better batting display shown by Karan. More knows that Faldin Kazi is a hard-hitting batsman, and he is at the top of his form in this year, has won many individual prizes. Meanwhile, a pull shot in act, but ball has been hit towards the gap between mid-off and long on. Meanwhile, a couple of runs. Look at the running between wicket. These are the plenty of things that are to be learned by the youngsters. As if the boundaries are not coming, then you should keep the windows and the doors open for every opportunity you are getting. Run hard, take the runs, and move the scoreboard.
Again a decent glide, I must say. Just pushing the ball towards the point fielder and quick onto his feet. Takes a single to conclude over number 2. So after completion of 2, score is 23 for the loss of 1 wicket. DJ. Apali to bowl from the stadium end. He was brought in the second over, but as the batting team had decided to take the batting power play, so soon the captain of Amazing Super Giants have handed over the delivery to Darshan Bandekar. A mixed over which has been considered as the batting power play. Here we go with the third. Apali Kalangudkar, what a strike away from the fielders. The fielder was kept for the switch hit, but playing the cut shot into the vacant zone. Faldin Kazi showing his class, showing his talent at that boundary, takes the team total to 27. Have got an energy drink to get more energized, but that is not the story out in the middle. Meanwhile, a dot ball, which is a rare occasion as far as the batting is concerned. Lovely strike towards the covers, fielder under the ball, wonderful catch, good save. Guru Shant, as per his name, kept his calm, waited for the ball to land in his hand, and as he judged that he might be going after the boundary rope, puts the ball inside the boundary line. So we have to watch whether it was a comfortable save, as all eyes on the big screen. So here, third umpire is having a keen eye on that effort. So looks to be okay. It's a safe, a wonderful effort from Guru Shant. The third umpire has a keen eye. It is safe as per the third umpire. Ferdin, please continue, as we are in front of a big screen. Good save, definitely saved. 5 runs for his team. These are the valuable 5 runs that have been saved. The single takes the team total to 28. Apali, so far decent over. Again, this is a decent square cut away from the fielder, and ball also traveled the distance quite comfortably. Wonderful strike. It looks to be as if this is a leather ball cricket going on, and decent cricketing shots are into act after a very long time, which is
A rare scenario in tennis ball cricket, but treat for eyes to watch, and even a wonderful hit over the point. Score moves to 34. Karan More on the striking end, following the footsteps of his partner. Straight down the ground towards the long off region to take a single, and that will bring Faldin Ghazi on the striking end. He has hit beautiful sixes in the previous match, but now all the boundaries have been scored, not a single six yet to be seen from the bat of Faldin Ghazi. In a hot scintillating form and continuing the hammering. And look at that strike, as I have mentioned about the six, and this is a big six from Faldin Ghazi. That six takes the team total to 41. So after completion of 3, it's 41 for the loss of 1 wicket. As the 3 overs have been completed. So it's time for me to take a break, and I would like to invite our senior partner Ashok Ji Naik to kindly update about the things happening out in the middle in your preferred language. थैंक यू सागर। 3 ओवर समाप्त हुए और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। फरदीन काजी बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाए हुए 4 चौके अब तक बल्लेबाजी में, 1 छक्का लगा चुके। करण बोरे के बल्ले से 1 छक्का, 8 पर खुद के व्यक्तिगत थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। और इसी बीच कवर पर हल्के से खेला था, रनआउट का खतरा लगभग बन गया था मैदान पर, लेकिन हाथों से गेंद फिसली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर रुका हुआ 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमीर दामसिकर बिल्कुल सस्ते में 0 पर, लेकिन ये साझेदारी बन रही है मैदान पर। और इस बार बाहरी किनारा, कवर पर मौका, कैच का, गेंद आखिर में हाथों से छूटी, कैच छूटा, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। जिग्नेश पटेल बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, ये लगभग मौका होना चाहिए था, हाथों में एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग ने साथ नहीं दिया। और इसी बीच में जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 42 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड विकेट लेफ्ट आर्म, एक बिल्कुल यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर मतीन खान के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर अल जरगम क्रिकेट टीम। सामने मुकाबला अमेजिंग। छोड़ा, इस बार बल्ले को हटाया, जाने दिया, फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, अंपायर ने बाएं फैला दी, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन मिला स्कोर के खाते में। अमेजिंग सुपर जायंट्स मुकाबला अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स, इन दो टीमों के बीच में। दोनों टीम बिल्कुल तगड़ी है आज के दिन के दोनों टीम, और देखना होगा आखिरकार यह मुकाबला किस तरह से होता है दोनों के बीच में। पुल करना चाहते थे, एक लेग कटर, बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया उस गेंद ने। पुल करना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चूके। विकेट कीपर ने सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट किया, स्टंप्स को बिखेर दिया, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज। कोई रन नहीं, एक बार फिर से कोई नुकसान नहीं, लेकिन स्कोर बोर्ड पर तो स्कोर वहीं पर रुका हुआ 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी, चौथे ओवर का मैदान पर चलता हुआ जिग्नेश पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। ओवर पेज गेंद, बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए।
ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर एक बहुत ही तगड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। ये मिस टाइम शॉट, मौका बनेगा विकेट कीपर गेंद के नीचे। जिग्नेश पटेल सफलता दिलाते हुए अपने टीम को। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एक बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी, चौके छक्के की बरसात मैदान पर, बौछार मैदान पर। फरदीन काजी दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। एक अच्छा टोटल 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर जिग्नेश पटेल को मिलती हुई सफलता, ये दूसरी कामयाबी इस मैच में। एक दर्शकों के लिए बिल्कुल जानकारी है दोस्तों, आप है तो मजा है क्रिकेट का, लेकिन एक बात जरूर नोट कीजिए, क्योंकि जो रिकामी खाली बोतल है शायद इधर उधर मत फेंको। आपके आसपास अगर कहीं डस्टबिन है तो निश्चित रूप से उस डस्टबिन में जो कि वो बोतल फेंको, क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है फील्डिंग के लिए। जब बाउंड्री लाइन के बाहर जो कि फील्डर जाते हैं तो शायद वो उनके लिए भी खतरा बन सकता है, तो ये बात बिल्कुल आप नोट कीजिए। रुक करते हैं मैदान पर एक बार फिर से, जो कि 4 ओवर और 4 ओवर के बाद 49 रन टोटल, 5वें ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी में परिवर्तन। गुरुशंत जेल को बिल्कुल मेंडिस के नाम से जाना जाता है, वो गेंदबाजी पर गुरुशंत चिखलगी खुद का जो कि पहला टीम का 5वां ओवर सामने से डोर वाले छोर से। बाहरी किनारा लेती हुई गेंद शॉर्ट हैंडमैन पर, फील्डर एक सिंगल, एक रन के साथ, इसी के साथ 50 रन जो कि पूरे होते हुए 2 विकेट के नुकसान पर। 50 रनों में 38 रनों का योगदान फरदीन काजी का, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। करण मोरे और उन्हीं के साथ न्यू बैटर मैदान पर श्रेयस कदम। फुल टॉस गेंद देखना होगा, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को आते उठाते थ्रो करते, बहुत ही सुंदर थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में बाउंड्री लाइन से एक्स्ट्रा कवर से 1 रन मिलता हुआ स्कोर में सिंगल के साथ 51 टोटल, 51 रन 2 विकेट पर। पहला विकेट 14 पर, लेकिन एक उसके बाद अच्छी साझेदारी बनी, जो कि दूसरा विकेट 49 पर श्रेयस कदम न्यू बैटर जो कि मैदान पर। आड़े बल्ले से खेला ऑन साइड पर कारपेट के साथ, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को आते उठाते एक सिंगल फिर से जो कि बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, कहीं ना कहीं बड़े शॉट बिल्कुल जो कि रोक लगा दी है गुरुशंत चिखलगी ने, बिल्कुल मेंडिस के नाम से जाना जाता है। और सामने दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। देखना होगा आखिरकार 6 ओवर के बाद कितना टारगेट रखते हैं सामने। मिले हेलीकॉप्टर शॉट मिड विकेट पर, फील्डर सामने, बिल्कुल हाथों में गेंद निकलती हुई, तीसरा धक्का लगता हुआ मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम को। बहुत ही अच्छा क्या जीत चुके, अपना पहला मैच जीत चुके दोनों टीम, दूसरा मुकाबला खेल रही है और निश्चित रूप से दूसरी जीत जिसकी होगी शायद आज का सफर थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन फिलहाल देखना होगा मैदान पर इस छठे ओवर के बाद क्या स्कोर खड़ा कर देती है न्यू बैटर और एक आते हुए मैदान पर। सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर गुरुशंत सफलता, न्यू बैटर नवदीप गावकर। कुछ आवाज बिल्कुल सुनाई दी थी, लेकिन गेंद को
कैरी नहीं कर पाए थर्ड मैन पर फील्डर, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। आते आते बड़े शॉट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भीतरी किनारा लगा था विकेट के पर और शॉट थर्ड मैन पर फील्डर, लेकिन उनको बेट करती हुई गेंद तेज रफ्तार के साथ थर्ड मैन बाउंड्री पर, चौका 4 रन। नवदीप गांवकर ने अपना खाता खोला इस 4 रन के साथ और स्कोर आगे बढ़ा 56, 56 रन 3 विकेट पर। बढ़िया शॉट ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल, 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। दर्शकों के लिए एक बार फिर से जानकारी, के जी सर अहमद खान जिनके ओर से आपके लिए इनाम जारी है। जो दर्शकों के लिए, एक हाथ से अगर आप कैच पकड़ोगे बाउंड्री लाइन से बाहर तो आपको मिलेंगे 200, अगर दोनों हाथों में से कैच पकड़ोगे तो मिलेंगे 100 रुपए। एनर्जी ड्रिंक जो गेंदबाज के लिए रखा है महेश भाईडकर, जो अभी अभी जो कि 2 ड्रिंक्स बोतल के हकदार रहे। और इसी बीच खेल रुका हुआ मैदान पर, स्कोर 57, लॉस ऑफ 3 विकेट, 57 रन 3 विकेट पर। 5वां ओवर समाप्त, आखिरी ओवर, और देखना होगा कमेंट्री बॉक्स की ओर से अंतिम ओवर में दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए इस अंतिम ओवर में सनील सावंत क्या रन बनाएंगे इस ओवर में, क्या गेंदबाजी होगी, क्या विकेट मिलेगा, क्या 2 बड़े शॉट निकलेंगे बल्लेबाजी में, बस आने वाला समय बताएगा। सामने टॉस जीता अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम ने, गेंदबाजी फील्डिंग करने का फैसला मैदान पर, और आखिरी ओवर का खेल मैदान पर शुरू होता हुआ। छोटी गेंद हुक किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप स्क्वायर लेग से मारे का से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। in 63 रनों पर सनील सावंत का स्वागत किया एक शॉर्ट पिच गेंद पर, बड़े शॉट के साथ बल्लेबाज सामने स्ट्राइक एंड पर नवदीप गांवकर 11 रन पर खुद के व्यक्तिगत, आते आते बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए मैदान पर। फिर से शायद ये रिप्ले देखने को मिला, बिल्कुल वही गेंद और वही शॉट रिप्ले देखने को मिला मैदान पर, और एक बार गेंद ओवर की समाप्ति के बाद थोड़ा सा कम लग रहा था स्कोर बोर्ड पर टोटल, लेकिन इस 2 शॉट ने बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया टीम को। 2 बड़े शॉट, सनील सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट, अब राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ फुल टॉस उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक गजब का छक्का 6 रन के लिए। तीसरा छक्का, 18 रन थोड़े महंगे साबित हो रहे इस ओवर में। सनील सावंत एक बार फिर से, जो शुरू में थोड़ा सा राउंड विकेट पिछले गेंद पर, अब एक बार फिर से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 75 लॉस ऑफ 3 विकेट। और एक बार उड़ाया वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, गेंद 6 रन के लिए।
लगातार बैक टू बैक 4 छक्के, कहीं मैच का ये ओवर बन न जाए मैदान में। अल जरकम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के लिए 4 छक्के लगते हुए 24 रन इस ओवर में बनते हुए और स्कोर एक सम्मानजनक टोटल सामने। दोनों टीमों की ताकत है वो है बल्लेबाजी, लेकिन देखना होगा आने वाली 2 गेंदों पर क्या होता है मैदान पर। एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर सनील सावंत, इस बार अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन और मिला अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में। चौके के साथ नवदीप गांवकर ने अपनी शुरुआत बाद में सिंगल और लगातार 4 छक्के मैदान पर। एक शानदार मुकाबला दोनों के बीच में। यह मैच बिल्कुल रोचक होगा, कड़क होगा, रोमांचकारी होगा, कोई संदेह नहीं, क्योंकि दोनों टीमों की ताकत है वो है बल्लेबाजी। ओ बल्ले से लगी, बिल्कुल आवाज तो सुनाई दी थी, लेकिन विकेट कीपर के लिए मौका नहीं बना। 1 रन दूसरे के लिए पलटे, नॉन स्ट्राइकर इन पर निशाना सही लगा, रनआउट और जो कि और एक विकेट दूसरे रन के प्रयास में। चौथी कामयाबी मिलती हुई अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को, लेकिन एक शानदार साझेदारी बनी जो चौथे विकेट के बीच में। स्कोर टोटल 83, लॉस ऑफ 4 विकेट, 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो आखिरी गेंद पहले इनिंग की, ओ बहुत अच्छी गेंद, बल्लेबाज को बीट किया इस गेंद ने। रनआउट का बिल्कुल एक विकेट निकलता हुआ मैदान पर, 5वां विकेट। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 83, टारगेट रखा 84 रनों का। शानदार बल्लेबाजी की फरदीन काजी ने शुरू में बनाए 38 रन, और आखिर में जो स्लॉग ओवर में बिल्कुल तोड़फोड़ की बल्लेबाजी होनी चाहिए थी वो की। 4 छक्के, 1 चौका लगाया नवदीप गांवकर ने। सनील सावंत आखिरी ओवर में बहुत महंगे साबित हुए। ये ओवर कहीं ना कहीं मैच का ओवर न बन जाए, ये बिल्कुल सोचती होगी अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम। 83 टोटल, टारगेट रखा है 84 का, 84 रनों का मैच को जीतने के लिए। दूसरी इनिंग की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कॉल कर रहे आने वाले मैच के लिए दाड़ सकल और ऑक्सफोर्ड दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अगला मैच होगा जो ऑक्सफोर्ड टाइटंस और धाड़ सर्कल सनराइजर्स के बीच में। दोनों टीम प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। दूसरी इनिंग की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए सर हरीश काकोडकर के साथ। दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से कॉल, ऑक्सफोर्ड टाइटंस और धाड़ साइकिल्स सनराइजर। दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। नेक्स्ट मॅच ऑक्सफोर्ड टायटन्स आणि धार सकाळ. ऑक्सफोर्डाचे जे प्लेयर्स आसात जे डगआउटान तांकां कॅप्टन आणि ओनर
आणि कॅप्टन्स धार सकाळ सनरायझर्स आणि ऑक्सफर्ड टायटन्स मातसो बेगीन टॉसाक यो. एक बरी मॅच ही जावपाक शकता कारण दोन्ही टिमी आपल्या एक एक मॅच जिखिल्ले आसात आणि अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्सान एक बरें टार्गेट दिल्ले आसा जे पयलीं दिसताले की मातशें कमी आसतले पण लास्ट ओवर जी गेली ती टोटल अल जरगमाच्या फावरात गेल्ली आसा आणि आता अमेझिंगाक एक बरे रन चेस करचे पडटले म्हणल्यार 1400 रनाचे एक बरो डिसंट टोटल आणि ही जी मॅच कोण जिखता तांकां चड चान्स आसा क्वॉलिफायर्साक पावपाक. ती 2 विक्टरीज जातल्यो प्लस फुडल्यो ज्यो मॅची आसा ते तांकां तितले डिफिकल्ट जावपाक शकना. पळोवया कोण फुडें पावता तो अल जरगम रॉयल चॅलेंजर्स काय अमेझिंग सुपर जायंट्स कारण दोन्ही तगड्यो टिमी बॅटिंग स्ट्रॉंग टीम्स जर आसा जाल्यार ह्यो दोन्ही टिमी आसा ह्या ग्रुपां भितर. So crucial match here. Let's see this run chase. Al Sargam versus Amazing Super Giants. Just going within both these camps and see the scenario, how they are feeling. A pressure match. Big support here for Al Sargam Royal Challengers. In comes the first ball. There is a man in the covers region, so we'll get only a single. Starts off with a single here. And both the camps are very close by. Both the camps are very, very close. So wonderful field here on this ground, and the sun is going down. Let's see whose chances go down after this match and whose chances shine brightly. Zamir Bhai is walking around. He is very happy as his SI Indians team has won the previous encounter. So happy faces. This is in the air, wonderful switch hit, ball is racing towards the fan. Ahmed Damsekar and Rohan, great effort. Oh, once again, the holdings, but I guess here the fielder is all right. What an effort this is from Rohan Salgaonkar. I always thought he's going for 4 runs, and now it has been appreciated by Sabir Bhai, Ajay Khewat, the captain. कैप्टन ऑक्सफर्ड टाइटंस और धारसाकर सनराइजर्स दोनों टीम कैप्टन हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. And lots of tension. The Dhol and Tash for quite a long time now. Nobody is beating it. बहुत देर से यहाँ पे जो यहाँ पे ढोल और ताशे लाए गए हैं वो आप थोड़ी ठंडी है, कोई बजा नहीं रहा है. क्या टेंशन है भाई? And that's a lovely one. What a switch hit. This is fantastic batting here from the batsman. Rajat. What a classy shot. Rajat Kudarkar getting a 6. The previous one also could have gone for the boundary, but that was saved. So Naru feeling confident? Yes, he is saying he is feeling confident. The KM is upbeat. They have still got very good players in this rank, very strong batting lineup.
Afali Kalangudkar, Jignesh Patel, Amit Naik, Darshan Bandekar, the big man. They are pretty much okay. They feel that they, with the strong lineup that they have, they can chase this down. Al Zargam will certainly feel they need wickets if they have to stop them. लास्ट कॉल दोनों टीमों के कैप्टन के लिए, ऑक्सफोर्ड टाइटंस और धाड़साकड़ सनराइजर्स, लास्ट कॉल आपके लिए। ऑक्सफोर्ड टाइटंस के कैप्टन आ चुके कमेंट्री बॉक्स के सामने, तो धाड़साकड़ कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए संपर्क करें। This is once again very nicely bowled and very well fitted in bowling. Rajat Kudakar and Sumit Dongre. Sumit Dongre played a very good runs, not out in that previous match. Handy knock from him, but the target was not much. This is India. This will be taken and first. Oh, dropped it. Oh my God. This was such an easy catch. How can you drop this catch? And who is that? Last man, Rohan Salgaonkar. I feel for him. He is such a good fielder, and well, the batsman will take it, and also I am there in Amazing Super Giants. They say very well, sometimes we also drop it, and one drop for us, so nothing great here. So meanwhile, here we are ready for the toss. Two captains out in the middle. Actually, on the days, Mukhtar Kadri representing Oxford Titans, and for Darsagar. And that's maximum. Or is it in the air? It's in the air. Catch taken now. Tails is the call. Actually, Sarvesh winning the toss, yet to open the account at that points table. So what is going on in your mind? एक बात बताओ, जो विकेट गिरी है अभी, ये जो बीट बजा रहा है, वो कौन सा बीट बजा रहा है? Stick them within a limited these runs. नहीं, कौन सा बजा रहा है? ये म्यूजिक कौन सा है? So you are up against a big team, Oxford Titans, which is led by one-man army, popularly known. That's a nickname for Mukhtar Kadri. So what will be your frame of mind in this game as you are yet to open? Definitely, we would like to win this match and start our campaign for this tournament. So we would like to restrict them within 70 and chase them down. Okay, best of luck. Thank you. So, smiling face, and not to ask much from you because you have played a lot many cricket, much before we could be on this earth. So, what is your plan now as you are asked to bat first? This is third time I'm losing a toss, and I'm batting, not an issue. Now, maybe one batting will be on morning only, morning day session only. Let's hope for the best 36 ball we have to play now. No prediction for me, you know it very well. Till now our batting has been not click. Let's hope for the best. We are waiting for this match only to click the batting. So definitely there will be some figure in your mind as of what will be the best total that you will be able to defend against that Sagar Sunrises. No, they're having a good batting lineup because they're having a Samarth, they're having Ajit Mohit, they're Ijaz Qureshi. Then I cannot tell the figure because best 36 ball, that is important for us. After that, we can tell what is the score. Yes, definitely. Best of luck as Sunrisers are yet to open the account and Titans want 2 more points. Ashok sir, score. So news from the center, Darsagar Sunrisers have won the toss in the evening and they have decided to bowl first. 10. Score 10. So is the new batsman. Rajat Kudakar has played 2 switches, both connected very nicely. This was short, pulled away nicely. Is it going for 4 runs? Stopped inside and should get 2 runs.
Good piece of fielding by the fielder at the cow corner region. Ball was way too short. When you consider around 83, 84 runs is the target, some 16 runs per over or 15 runs, 14, 15 runs. So if anything less than 15, 15 runs, I think the bowler has done a good job. Once again, full length ball played nicely in the covers. The man will come from the deep. There is also a batting power play. Depends upon when it will be taken by the team management. But they have got a very good batsman still. Jignesh is there, Roshan Manekar. So they will take come or maybe the batsman out in the middle guys going to decide the time. So far pretty decent here. And I saw that Al Zargam and Indians, but many of the supporters were there. But right now, those are not there. Some are missing. And a wide signal here by the umpire. 14. Tensed here. This was a slow ball, a very nicely bowled. Matina wanted to play that in the square leg region, but the ball came way too slow. Change of pace here by the bowler. The crowd really building up. You can see from the entrance there. This is a very important match for these two teams. And this should be 4 runs. Yes, wide full toss and easily taken to task. This was a loose ball and does not miss on that. Ashok sir score 18. So score moved on to 18. 8 runs have come off this over so far. Much fuller tried his hands but getting just a single in return, which will get Rajat Kudakar on strike. We have seen even if you keep wickets in hand with good batsmen number 4 or number 5 and over number 5th and 6th, if you keep around 30 runs or 35 runs, it's still possible. But sometimes if the bowlers are bowling well, it makes life difficult for the batsman to hit those big sixes and the pressure piles up on the batsman. This should be wide. Bowler is trying to concentrate outside of stump. This seems to be the idea. There is one man in the deep covers, one at long off, 3 men patrolling the backward of point region. 1 or 2 dot balls. It will be a happy camp here right now behind me, and 1 or 2 sixes. Both the camps are behind me. Amazing Super Giants. Rajat once again facing the next ball. Oh, what a magnificent hit. The ball came so low. Ample of time here. Opportunity for the miss on that. Magnificent hit. 26 total. After completion of 2 overs, the score is 26. So what was a 10 run first over? Now 16 runs have come of this over, making it go to 26 for the loss of 1. Irfan Baba, कशा असा मूड? ना ना कशा दिसता कशा आता मॅच तुका दिसता खंयच्या वाटेर वतली कित्याक 2 ओव्हरीन अजून काय सांगपा जायना. काय सांगपा जायना. बरो टेन्शन आहा न्ही, भरपूर टेन्शन आसा कॅम्पा भितर. कोण काय उलोवपा सोदना. यासीन बसला फोकसाक म्हण सकयल आनी मॅच पळयता. Really tense out. Everyone
everyone is concentrating on this match at the moment, and they know that each and every ball they got to see what is happening in the field. So now a field change being prompted by the bowler Ron Salgaonkar. Experience coming from us. Pardon. And a very good talented bowler. Bowling all-rounder for this team. They require the services of their bowlers in this match now. This is very nicely played and 6 runs. One shot by Mateen. This is much better shot than the previous one. This is straight down the ground with a straight bat. Looking so good, Mateen. He's a powerful striker. Score moves on to 32 with the 6. Now the bowler will be under pressure because the 6 has been hit of the very first ball. He's going for the switch hit, and the bowler was smart. He bowled down the leg side. So this battle is certainly the second day on Saturday. 32 is the score. This time played down the ground. Are they going for the second? Rajat comes in fast, but the fielding is also quick. Restrict them for just a single. Taking the score to 33. 33. Third over in progress. Of the very first ball is an advantage to the batting side. If the next 1 or 2 odd balls they can get the singles and take the scoreboard moving along, they can get a boundary in between. So at least they should count this on to more than 12 runs per over. Very nice fielded. What an effort from Sabir. Otherwise, this could have been 5 runs. Wide here, so 2 runs to the total. Taking the score to 35. Oh, this was a full toss ball. He premeditated it, going for the sweep. If he had played a normal shot in the square leg or mid wicket, he could have got a sixer or a minimum a boundary. 36 the score, moves on to with that single. So far the match is even Stevens. I told you it's around 14 to 15 runs per over required. Right now they are going at around 13 runs per over. This is once again down the ground. Should be a boundary. No. Just a single. Once again another single. Rohan Salgaonkar, apart from that first ball, has bowled decently. Single takes the score to 37. Oh, was it taken? What happened over there? What has happened? Maybe the ball has hit the wickets and the bails have not come out of the grooves. But flick shot was tried here, but after completion of 3 overs, the last ball is the dot ball. 37 for the loss of 1. And I'm in the camp of SI Indians. Other SI Indians are a sister concern. So, Zamir bhai, एक बरी मॅच चालू आणि म्हाका दिसता जो टार्गेट आसा तो डिसेंट आसा. 3 ओव्हरींग 37 रनाची गरज आसा. तुका दिसता जी बॉलरिंग आता घालतलो तुका तकलेन तूं आशिल्लो जाल्यार कॅप्टन कोणाक बॉलिंग दिता आशिल्लो? नवदीपाक दिता आशिल्लो अशें तुमचें म्हणणें. म्हाका दिसता जो सकाळच्यान तुमी येदो व्हडलो काडला
भरपूर सपोर्ट आसा दोनूय टिमीक. सकाळी स्टार्ट जाली तेन्ना आवाज सामको जोरान चालू आशिल्लो, पण म्हाका आतां खंय तरी दिसता की ज्या टायमार सांजचे आवाज जावपाक जाय आशिल्लो तो आवाज मातसो कमी आहा. आवाज चालूच आहा, तशें कांय ना. रोखडेच तुका आवाज आयकूंक येतले आनी बरें मॅच चलता, इंटरेस्टिंग चलता. रोखडोच आवाज येलो. आवाज चालू करता, ना जाल्यार ते बंद आसता. कारण थंयच्यान पळयता की तेय मॅच पळयता, तेय भितर आसात आनी आमी रावल्या केन्ना काय वाजयतले, मजा येतली आमी म्हणून. पण मॅचूय बरी सुंदर चालू आसा. स्कोर 37. दोन्ही टिमी स्ट्रॉंग आसा, कारण एक बरे बॅट्समॅन अजूनय दर्शन बांदेकर, अमित नायक बॅट्समॅन अजून अमेझिंग सुपर जायंट्साच्या कॅम्पान आसा आनी ते व्हडली व्हडली सिक्सर ताक दवरतात. सो तुका दिसता की तुजी ही जी आता मॅच चालू आसा कितें आसतलो, तुका की मॅच कोण जिखतले? दोनूय टीम सामके स्ट्रॉंग आहा, सांगपाक शकना. तेंगे जाय बॅट्समॅन सोडला. आतां मेन बॉलर तर इज गिव्हिंग दॅट शकता. हरीश सर, बॅटिंग पॉवर प्ले 18 बॉल 47. 18 balls 47 is the equation, where Zamir Bhai, owner of SI Indians, is telling that match is even Stevens. They also have got very good batsmen down their ranks, but if 2 overs come handy over here of around 12 to 13 runs, and if last over somewhere around 20 plus is required, then the match can be well coming into Al Zargam's favor. That's exactly what he's saying. Was it an outside edge? So everyone is watching this match intensely as this is going right down via camp of Oxford Titans here. Vasuraj Madar and KKG is also there. Wish you good luck for tomorrow's match. This is wide signal here by umpire. And Sharjah boys. Sharjah boys are also here. This is a great team. This is a big team here. Sharjah boys, they have come to watch this team. And yes, they are enjoying this match. They are totally enjoying this match. Ashok sir, score. So no one there. Magnificent shot once again. 6 runs. And I'm coming back to the camp. I had a good time with all the spectators and the camp. Everyone is intensely watching this close battle between bat and ball. And suddenly a 6 here. Ajay Kewat trying that line outside off stump, but it was hit across the line for a beautiful 6. The timing Mateen is having right now, going off the mid of the bat. Suddenly it has uplifted the spirits of amazing super giants. They needed his services. He is coming in form at the right time. Over to Ashok sir. ओ बढ़िया शॉट, इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर. एक नजाकत भरा छक्का स्क्वायर लेग बाउंड्री पर. थैंक यू हरीश सर. ये ताकत है इस टीम के, दोनों टीम की हम चर्चा कर रहे थे. जो ताकत है वो दोनों टीम की है बैटिंग बल्लेबाजी, और वही बात मैदान पर एक लाजवाब शॉट डीप स्क्वायर लेग पर छक्का लगाते हुए मैच आ चुका. स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 51 और बची हुई अभी भी 15 गेंदों का खेल बाकी, और जीत का लक्ष्य 33 रनों का. 15 गेंदों में 33 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को. बॉलिंग मार पर अजय केवत.
दो छक्के इस ओवर में, चौथा ओवर मैच का। मुकाबला बिल्कुल एक शानदार हो रहा है मैदान पर। रोमांचकारी पहला विकेट बहुत जल्द निकला था, लेकिन उसके बाद अच्छी साझेदारी। बढ़िया शॉट इस बार ऑफ ड्राइव का, फील्डर है मौजूद। पहले रन लेने के लिए निकले थे नॉन स्ट्राइकर एंड से, लेकिन जैसे ही देखा मिड ऑफ पर फील्डर है तैनात। बिल्कुल सही सोच, अपने बढ़ते कदमों को रोका। रनआउट का खतरा बन सकता था मैदान पर, और यह शायद ऐसे मोड़ पर इस वक्त ये बहुत ही बड़ा धक्का होगा रनआउट के रूप में। विकेट अगर चला गया तो अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को। स्लोअर वन, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। हेलो, और दर्शकों में बिल्कुल कैच को पकड़ा है आफरीदी। आइए हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, आइए प्लीज। इस बार ऑफ साइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है। एक सिंगल बनेगा स्कोर के खाते में, तो इस इनाम का पहला हकदार रहते हुए आफरीदी जो इनाम रखा है के अहमद खान, जिन्होंने अगर एक हाथ से पकड़ोगे तो मिलेंगे 200 रुपए, अगर दोनों हाथ से कैश पकड़ोगे तो मिलेंगे 100 रुपए। और पहला इनाम लेने वाला ये आफरीदी हमारे कमेंट्री बॉक्स में। के जी आफरीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आफरीदी आपका। के जी अहमद खान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं मैदान पर। स्कोर 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और जीतने के लिए 26 रन, 12 बॉल 26 रन। 12 गेंदों में 26 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। बहुत ही शानदार मुकाबला मैदान पर चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। अच्छा मैच मैदान पर, 4 ओवर समाप्त, 2 ओवर का आखिरी खेल बाकी। 12 गेंदों का 26 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से। फातोड़ा स्टेडियम की ओर से एक महत्वपूर्ण ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर खुद का दूसरा, टीम का 5वां रोहन सालगांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर। फुल टॉस गेंद, इस बार थोड़ा सा अधूरा हिस्सा लगा स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में। जब तक डीप स्क्वायर लेग से आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। खेल बाकी 11 गेंदों का 25 रन, मुकाबले से दूर। दोनों टीम शुरू का 1-1 मैच जीत चुकी है। अगर जो जीतेगी वो दूसरी जीत होगी इस मैच में उनकी, और देखना होगा किस तरह से समाप्त होता है ये मुकाबला मैदान पर। इस बार स्लाइस किया गेंद को ऑफसाइड पर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 1 रन, और लगभग कवर पॉइंट बाउंड्री पर। थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, एक शानदार थ्रो सीधा हाथों में, और अंपायर की उंगली आसमान की ओर। रनआउट के रूप में दूसरा विकेट चला निकलता हुआ मैदान पर। अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम का न्यू बैटर जब तक आते मैदान पर जुड़ जाते हैं हमारे डीजे के साथ, सुमधुर संगीत के साथ। डीजे
गेंदबाजी राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, सामने बिल्कुल हाथों में गेंद और सफलता और एक मिलती हुई मैदान पर। मैच बिल्कुल रुख बदल रहा है मैदान पर। खेल बाकी 9 गेंदे 24 रन। की गेंदबाजी पर वो शॉट लगभग निर्णायक दिखाई दे रहे मैदान पर, लेकिन देखना होगा मुकाबला जब तक समाप्त नहीं होता। मैच के बारे में बात करना थोड़ी सी गलत बात होगी। 9 गेंदे 24 रन, अभी भी मुकाबले जीतने के लिए दर्शन बांदेकर और दर्शन बांदेकर का साथ देने के लिए न्यू बैटर जिग्नेश पटेल आ चुके हैं मैदान पर। रोहन सालगावकर बहुत ही किफायती गेंदबाजी, 5वां ओवर, खुद का दूसरा ओवर, दूर दूर जमाई गई फील्ड, दर्शकों की भारी संख्या में तादाद मैदान पर। आप सभी का एक बार स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से सम्मानीय अतिथि जो मान्यवर कक्ष में, और यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग में पर्व दूसरा 2023, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। ओ दूसरे प्रयास में बिल्कुल बाहरी किनारा लेती हुई और एक बड़ा धक्का लगा टीम को। संकट में लगभग दिखाई दे रहे हैं जो कि अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम। बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर का, फरदीन काजी बल्लेबाजी में और उसी के साथ फील्डिंग में विकेट कीपर। बहुत ही अच्छा कैच, जिग्नेश पटेल आउट होकर वापस और दर्शन बांदेकर अभी भी मैदान पर। बस बहुत कुछ उम्मीद दारोमदार होगी इस खिलाड़ी के ऊपर बल्लेबाजी पर, क्योंकि ये दमखम है इस खिलाड़ी में। कई बार जो कि बड़े बड़े शॉट लगाए हैं, हाल ही में बिल्कुल सांगेम प्रीमियर लीग में सबसे लंबा जो कि छक्का लगाया था वो ये खिलाड़ी इस मैदान पर, और उसी पर दारोमदार। लेकिन दूसरी बात जरूर है, रोहन सालगावकर इस ओवर में अपने टीम के लिए बिल्कुल किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या ओवर निकाल रहे हैं अब तक ये जो 5वां ओवर, इस ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल अभी भी बाकी। और सांगेम प्रीमियर लीग के दूसरे हीरो अमित नाइक आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। और बड़ा शॉट मिड विकेट पर, लेकिन सामने फील्डर के हाथों में रोहन सालगावकर और एक सफलता दिलाते हुए अमित नाइक आते आते बड़े शॉट में फंस गए और मिड विकेट पर कैच देकर विकेट नंबर 5वां वापस निकलता हुआ और हैट्रिक मुकम्मल की इस बार इस मैच में। जरा जोरदार तालियां रोहन सालगावकर हैट्रिक मुकम्मल करते हुए। मैच बिल्कुल आ चुका है आखिरी पल में, 24 रन अभी भी जीतने के लिए। और पहली हैट्रिक टूर्नामेंट की, 7 गेंदे और 24 रन मैच को जीतने के लिए। 7 गेंदों में 24 रन मैच को जीतने के लिए। यह गेंद रोहन सालगावकर की काफी निर्णायक होगी इस मैच में। हैट्रिक मुकम्मल की, सामने नरेश असोंडेकर कप्तान टीम के आ चुके हैं। और अगर अमेजिंग की मैं बात करूंगा, अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा नहीं पड़ेगा, मैच जीवित हो जाएगा, मैच ऑन हो जाएगा। नहीं तो आखिरी ओवर में 24 रन सामने दर्शन बांदेकर के लिए बात तो बिल्कुल आसान नहीं होगी इस मैच में। बिल्कुल ढेर सारी इनामें है, उसी के साथ जो गेंदबाज के लिए बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक रखा है वो सिर्फ बोल्ड लेने वाले गेंदबाज के लिए रखा है। एक बार फिर से जानकारी, 5वें ओवर की आखिरी गेंद, 7 गेंदों में 24 रन, नरेश असोंडेकर स्ट्राइक पर।
ओ उड़ाया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन सामने फील्डर के हाथों में वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। क्या ओवर रहा ये रोहन सालगांवकर का। 4 विकेट चटकाए इस ओवर में। आखिरी ओवर 6 गेंदे 24 रन। मैच बिल्कुल आखिरी पल में आ चुका है। न्यू बैटर मैदान पर अपाली कलंगुटकर। जो मैच बिल्कुल 4 ओवर के बाद आसान लग रहा था, उस मैच में रोहन सालगांवकर ने बिल्कुल जान की बाजी लगा दी मैदान पर। 4 विकेट चटकाए, क्या गेंदबाजी की। मैच में बिल्कुल कमबैक किया। मैच आ चुका है आखिरी मोड़ पर। 6 गेंदे 24 रन, लास्ट ओवर टू गो। और बॉलिंग मार पर निहाल बिंड दिखाई देते हुए सामने, जो कि बल्लेबाजी के लिए दर्शन बांदेकर आ चुके हैं साथ देने के लिए। न्यू बैटर अपाली कलंगुटकर। आखिरी ओवर कांटे का टक्कर बिल्कुल मैदान पर दोनों टीमों के बीच में। एक मैच पहला मुकाबला जीत चुके हैं दोनों टीम। एक मिनट को जो जीतेगा ये दूसरी जीत होगी मैदान पर, लेकिन किसकी होगी अभी भी मैं कहूंगा मुकाबला 50-50 का है मैदान में। 2 डॉट गेंदे, 2 अच्छी गेंदे, 1 विकेट। मैच बिल्कुल जो कि बनेगा, लेकिन अगर पहली गेंद पर बड़ा शॉट तो प्रेशर होगा गेंदबाजी पर। ओ शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, दर्शन बांदेकर एक गगनचुंबी छक्का वाइड लॉन्ग ऑन पर 6 रन के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद इस बार, और दर्शन बांदेकर इस गेंद को कहां छोड़ेंगे। बहुत ही तगड़ा शॉट, ताकत टाइमिंग का इस्तेमाल, एक लाजवाब छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर गेंद। और आप रिप्ले पर देख सकते हैं कितनी दूर गेंद निकली है, जो कि मैदान से बाहर। मैच बिल्कुल फिर से आ चुका है। 5 गेंदे अभी भी बाकी। 5 गेंदे और 18 रन अभी भी मैदान में मैच को जीतने के लिए। अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम। दर्शन बांदेकर स्ट्राइक पर। इस बार कारपेट के साथ क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे। मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते, और ये बिल्कुल जो कि अपाली कलंगुटकर को मालूम था इस मैच को अगर जीतना है तो सामने स्ट्राइक देना पड़ेगा दर्शन बांदेकर को। फिलहाल 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। 4-17 4-17। चार गेंदों का खेल बाकी मैच का, और जीतने के लिए 17 रन। न्यू बैटर सनील सावंत मैदान पर। और फुल टॉस सामने बॉलर के ऊपर से दर्शन बांदेकर हवाई फायर करते हुए सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। दिल की धड़कन बिल्कुल तेज करने वाला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ। मैच के शुरू में बिल्कुल हरीश सर ने भी बात की थी, दोनों टीमों की ताकत है, वो बैटिंग है, बल्लेबाजी है, और वही बात मैदान पर साबित होती हुई। 3 गेंदों का खेल बाकी, और 3 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 11 रन। 3 चेंडूत 11 धावा सामना जिंकण्यासाठी। शायद खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ। दर्शन बांदेकर बिल्कुल अपने बैट को शायद चेंज कर रहे हैं।
जो बिल्कुल दो बड़े शॉट लगे थे। अपने बॉलिंग बात पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक बार फिर से अगली गेंद लेकर निहाल बिंड। यह गेंद बिल्कुल निर्णायक है मैच की। अगर वापसी हो सकती है तो इस गेंद पर, अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट लगा तो आखिरी दो गेंदों पर बिल्कुल मजा आ जाएगा इस मैदान पर। और सामने इस बार खेला गेंद को देख रहा होगा, पहला रन बड़ी तेजी के साथ वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है। दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, रनआउट का खतरा। सनील सावंत को लौटना पड़ेगा, लेकिन जो धड़पड़ती हलचल थी मैदान पर दर्शन बांधे करके स्ट्राइक अपने आप पर रखने की, वो सफल हुई मैदान पर और बिल्कुल आ चुका है मुकाबला। 2 गेंदे और 10 रन। दो गेंदे 10 रन, मुकाबला आ चुका है। बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया रही थी। फरदीन काजी ने बनाए थे 38 रन, आखिरकार 30 रन बनाए थे नवदीप गांवकर ने। मैच को बिल्कुल वापस किया रोहन सालगांवकर की गेंदबाजी ने मैदान पर। क्या कौन होगा हीरो या दर्शन बांधेकर अगर मैच को समाप्त करते हैं तो बस वो ही दावेदार हो गए इस मैच में। न्यू बैटर मैदान पर, 8वां विकेट वापस और उड़ाया इस बार वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर दर्शन बांधे करके बल्ले से और एक बेहतरीन छक्का 6 रन के लिए। जिस मैच के लिए दर्शक सुबह से इस दोपहर से मैदान पर जुड़े हुए हैं, अब वो मैच मैदान पर दिखाई देता हुआ। बिल्कुल हाल ही में बिल्कुल सांगे प्रीमियर लीग में यही खेल किया था, इसी तरह से मुकाबले को जीता था। लेकिन मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मैच में जीत किसकी होगी, क्योंकि क्रिकेट का खेल है। ऐसे मुकाबले बहुत हो चुके हैं। आखिरी गेंद पर छक्का लगा है और आखिरी गेंद पर 2 रन जब चाहिए थे वो 2 रन भी नहीं बने हैं। मुकाबला आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो और 4 रन जीतने के लिए। मैच का कौन होगा हीरो? रोहन सालगांवकर दर्शन बांधेकर, लास्ट बॉल टू गो और 4 रन मैच को जीतने के लिए। दोस्तों जरा जोरदार तालियां, ये मैच अगर आपको पसंद आ गई हो तो। ये देखो, ये क्रिकेट बिल्कुल है, ये क्रिकेट है दोस्तों, ये क्रिकेट का कमाल है। मैदान में शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अब रिप्ले पर जरूर देखिए किस तरह से गेंद थी। मैं तो कहूंगा मौका था इस गेंद पर और बिल्कुल खुशियों का इतिहास मैदान पर दिखाई देता। बहुत ही शानदार मुकाबला समाप्त हुआ। हार जीत होती रहती है, लेकिन जो मैच होना चाहिए था हरीश्वर, वो मैच मैदान पर हो चुका है। ग्राउंडार सपोर्टर्स वचपा जायना, ग्राउंडार सपोर्टर्स ना भायर रावन एन्जॉय करा, तुमच्या टिमीक रावात। हरीश्वर, हरीश्वर, मैन ऑफ द मैच रोहन सालगांवकर। मॅन ऑफ द मॅच रोहन सालगांवकर, मॅन ऑफ द मॅच रोहन सालगांवकर। जमीर बाब, जसे आम्ही सगळे लोक हांगा चित्ताले आणि टेनिस क्रिकेटाचेर जे लायव्ह मॅच चलताली तेही चित्ताले की ही मॅच जबरदस्त जातलीच, कारण दोन्ही ऑर्डरीचे जे बॅटिंग ऑर्डर आशिल्ली ती
दस्तगीर बाय आणि संदीप बाब माचे रेयात ह्यो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड आसा तो तुमी दिवपाचो आसा. रोहन साळगांवकर, प्लीज कम अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच प्राइज. रोहन साळगांवकर फ्रॉम अल जरगम. दस्तगीर बाय तो डायनामिक रॉयल्स जे आतां क्वॉलिफाय जाल्ले आसा ताजो ओनर, तशेंच संदीप एक इम्पॉर्टंट मेंबर ऑफ GCC. रोहन साळगांवकर मातसो यो आनी तुजे मॅन ऑफ द मॅच प्राइज घेवन वच. So meanwhile, that's the beginning for the match, and the call has been given for the third umpire as to check whether it was of the age. Ball, if the ball has landed outside the playing area, that is, the concerned third umpire is giving an hawkeye. So ball has been landed outside the pitching area, and that makes Shahid to survive. As this will Rohan matso वयर. No ball and a free hit. So single in form of extra to open the count, as well as license for Shahid. Requesting the 12th man of that circle to kindly report at the commentary box. रोहन तशें धांवपाक मेळना, धांवपाक कोणाकूच मेळना आनी हांव कोणाक धांवपाक दिना. सो इतले सुंदर परफॉर्मन्स तुवें केला, 4 बॉलां 4 विकेटी काडप. सो अशा मनशाक आमी सोडपाक शकना. एक बरी मॅच जाली रोहन, आनी दिसतालें की टार्गेट बरो डिसंट आशिल्लो. नॉर्मली तूं खंयच्या टुर्नामेंटाक खेळटा, खंयच्या टिमी खेळटा आनी ह्या टुर्नामेंटाक सुद्दां खेळ्ळो तेन्ना तूं सदांच एक ओवर घालतालो. कितें डिसिजन जालें की सेकंड ओवर तुका दिली? कॅप्टनान म्हाज्यार विश्वास दवरलो आनी म्हाका सेकंड ओवर दिली. हरशीं म्हाका दिसता दुसरो बॉलर घालतालो आनी तो एक क्रुशल टायम आशिल्लो, कारण 26 रन जर पळयले तांची बॅटिंग भरपूर आशिल्ली, 9 विकेटी आशिल्ल्यो हातान आनी जबरदस्त शॉट मारिल्ले आसा आनी 9 विकेटी हातान आशिल्ल्यो. तेन्ना ती मॅच म्हाका दिसता 70-30 जी तुमचे ओपोनंट आशिल्ले अमेझिंग सुपर जायंट्स तांची मॅच आशिल्ली. तुका त्या टायमार तुजें इंटेंशन ते ओवर घालपाची कितें आशिल्लें, कितें प्लॅनिंग आशिल्लो तकलेन? प्लॅनिंग काय नासलो, मॅच जिखपाक जाय आसली. हांवें होप धरलो आनी बॉलिंग घातली. होप धरलो आनी बॉलिंग घातली. फील्ड सायड तुवें स्वता फील्ड केली काय एक कॅप्टन नाजाल्यार आनी कोण जो सिनियर मेंबर आसा तो सेट करपाक तुका हेल्प केली काय तूं स्वताक तुजी फिल्डिंग लायली त्या ओवरीन? कारण ज्यो कॅचीस गेल्यो त्यो हातान गेल्यो, सेट फिल्डिंग बरी आशिल्ली. किपर म्हाका विचारून सांगतालो आनी हांवें किपराक विचारून फिल्डिंग लायल्या, म्हाका जाय तशी फिल्डिंग लायल्या. हांव जसो बॉल घालतालो तशी. आनी ही मॅच जिखपाक तुका इम्पॉर्टंटच आशिल्ली, कारण ही जिखली जाल्यार तुमकां एक बरी संद मेळ्ळी आतां फुडल्या क्वॉलिफायराक वचपाक. कारण अमेझिंग सुपर जायंट सद्या तरी म्हाका ह्या दिसता ऑन पेपर सगळ्यांत स्ट्रॉंग टीम आशिल्ली. सो एक बरी विक्ट्रीशी दिसना तुका, ही जिखपाकच जाय अशी? हय. सो हय म्हणलें आनी काबार करता. रोहन केन्ना काय हरेश आपल्या सोडटा आनी आपूण आपल्या गावटां वता अशें जाल्लें आनी ताका सुटका मेळिल्ली आसा आनी ताणें सुटकेचो निश्वास घेतिल्लो आसा म्हजे कडल्यान. देव बरें करूं रोहन, बरें जबरदस्त परफॉर्मन्स तुजें. So as the post-match presentation was on, and a big hitting have been witnessed out in the middle. First over, power play over in act. So quality batting to be seen out in the middle from Shahid. He was lucky on the first delivery as the ball was delivered outside the pitching area, which was called a no ball immediately. And that was a healthy age, so that made him survive. And now he is looking more and more dangerous. A big six, 2 boundaries from his bat so far. That takes the team total to 17. Meanwhile, a lovely drive away from the fielder towards the cover point region. No filter in act, and that's a boundary. 21 on the board, still first over in progress. So this is the actual meaning of power play.
as a power hitting is on. 21 on the board. Still first over in progress. That's a not able to deliver in the evening. Meanwhile, plays watchfully, cuts the ball only towards the cover point fielder to get a single, and that concludes over number 1. So after completion of the first over, Oxford Titans are 22 without any loss of wicket, and Sarfraz Nawaz is yet to face the ball. DJ. So Firoz Sheikh has been ordered to deliver the second over of the inning. And the call from the umpire is that it is going to be a batting power play over. So only 3 fielders can be kept outside the 30-yard circle as per the rules of batting power play. Shahid is on the striking end. So far he has done all the run scoring in the first power play over. And now at the striker's end. Definitely will be looking to get some decent total. First delivered plays watchfully. Yorker has been guided towards the cover point fielder. Strong throw, equally well backed up from the fielder from the deep square leg. No chance of any further run. So with that, team total moves to 23. And now Sarfraz Nawaz is on the strike for the very first time in this match. He has to wait for 7 deliveries to face the ball. Second over in progress, batting power play is on. Sarfraz is also a very shrewd all-rounder. Let's see what he can do, what impact he is going to do in this match. Low full toss, guides the ball away from the fielder, which has been brought inside his circle, and gets a boundary for his team as well as for himself. That boundary takes the team total to 27. So the flow of boundaries and leakage of runs continues as the full tosses and the overpitch deliveries have been punished by the batters of Oxford Titans. A word of advice from the senior partner to Firoz as how to carry on with the proceedings, and with advice, Firoz decides to come round the stumps. So that will create an angle for the right-handed batsman as a left-arm bowler trying right round the stumps. Definitely lawful toss, equally well played. There's chance of a run out. Good throw was needed. Throw was not quick. You need to be very much alert, and you have to be very strong while throwing from inside the 30-yard circle to get a run out. Meanwhile, survival for Sarfraz Nawaz. Team total moves to 28. Second over in progress. Firoz the bowler. Short pitch delay, asking for trouble. Look at that strike. Shahid Sheikh onto his back foot as if he was predetermined that this is going to be a shot. Sixer to take. Lovely cover try. Fielder is been placed to patrol the fence. Meanwhile, a good pickup and a throw from the captain. I beg your pardon, is a vice captain of the team, Mohit Gaukar. A good prospect, but still yet to show his talent in the second edition.
Meanwhile, a big swing and a miss. Sarfraz Nawaz are trying to join the party along with Shahid Sheikh. A dot ball to complete over number 2. 35 on the board without any loss of wicket. So here we have Shri Satish Pujari as a guest enjoying the match from the podium. In fact, right in the middle of the stage along with his co-partners and his friends, enjoying this moment, enjoying this beautiful game of cricket. The match is played between Oxford Titans and Dartsagal Sunrisers. Dartsagal Sunrisers captain, after winning toss, have decided to bowl first. And let's see till what his decision is correct for the team. Meanwhile, Oxford Titans are in a race of getting as much as possible. That's what was the demand of the captain. After the completion of 2, it's 35 without any loss of wicket. Third over in progress. And now vice captain is on the roll. Mohit Gaukar with the ball. Shahid Sheikh on the striking end. This is going to be an even contest between the bowler and the batter. Let's see who is going to top in this contest. So far, most of the hitting is done by Shahid Sheikh. And now it is a challenge in front of Mohit Gaukar. Can he soak up the pressure and try to get a breakthrough? Meanwhile, first hit has a chance been created, but a good hit. Even not a convincing strike, but still ball goes miles away from the boundary rope. Sixer to welcome Mohit Gaukar. With that, team total moves to 41. Third over in progress, and Oxford Titans are on the verge of getting a mammoth total. 41 on the board. Mohit Gaukar feeling the hit in the cool evening as a powerful hitting is on. Short pitch delivered. There was a chance as the ball was hit in the air. Not getting the proper connection. Are they running for the second? Good throw from the fielder at a short wide leg. Just a single takes the team total to 42. So now Sarfraz Nawaz on the striking end. Two local lads against each other. So far a 6 and a single. Now it's a time for Sarfraz Nawaz to get some connection. The stage is set. Pressure is on the bowler. Can Sarfraz optimize in this situation? Meanwhile, wanted to cut. That's googly delivered by Mohit Gaukar. 2 is the call. They are running very hard. Sarfraz is very quick onto his feet. And meanwhile, there was a chance for the third in the bargain. 3 runs have been taken. This is wonderful skill from the batters. Running first run very hard as per the basics of cricket. And even if there's the slightest chance, they are grabbing their hands on that opportunity. 3 runs takes the team total to 45. On to his back foot, lovely delivery considered, although that was in the hitting zone of Shahid Sheikh. Shifting near the guideline towards the off stump. No connection, makes the ball to travel safely to the keeper. So dot ball seen after a very, very long break. Low full toss, chance of a catch, but fielder was kept inside the circle, ball racing away from the fielder. And finally wins the race. Boundary to mark on the scorecard. That boundary takes the team total to 49. Just a run short of half century for the team. 49 on the card. Shahid Sheikh taking all the proceedings in his hand and doing the hammering out in the middle. Another good delivery. Ball has been hit onto the legs. Uphill. Maybe has kissed the edge. There's the signal from the umpire. Up goes the finger. Shahid with a pretty handsome knock walks back to the pavilion. A wicket taken into the third over. That concludes over number 3. So after completion of 3,
49 for the loss of 1 wicket. As 3 overs are completed, let's hear to our senior partner in the commentary box requesting Ashok Jinaik. So Harish Kakodkar will be joining for the next 3 overs. The man who can even make a quiet person to speak about what he's thinking. That is the personality that is going to deliver for the next 3 overs. I think so after 3 overs, the score is 49. Pretty good total, and maximum scoring has been done by Shahid. In comes the new batsman, Bhushan Goy. चार बॉलांचेर सिक्सरी कोण मारता जाल्यार 1111 रुपयाचे इनाम जमीर अहमद बाबान दवरला. तशेंच 2 सिक्सरी कोण मारता 2 बॉलान खंयचोय बॅट्समॅन ह्या ओव्हरीन. आणि पहिली सिक्स मारली आसा, पहिली सिक्स मारली आसा. 1000 रुपया लागीं येतात. 500. सो 500 रुपया 2 बॉलां 2 सिक्सरी मारल्यो. 500 रुपयाचे इनाम लागू केल्ले आसा. आणि 500 रुपया बरे आसा. हांगा विकेटच गेल्ली आहा. सो चप्पू बॅक इन द पॅव्हिलियन आफ्टर स्कोरिंग 1 6. आणि हे प्राइज बाब एंथोनी डिनीज हांगा बशिल्लो आसा. ताणें स्पॉन्सर केल्ले आसा. देव बरें करूं एंथोनी बाब तुमकां फ्रॉम USA. Right now the score is at 55. 6 runs has already hit by one batsman, but he's out. So एक ओव्हरीन खंयच्याय टायमार जर तर एक बॅट्समॅनान 2 सिक्सरी मारल्यो जाल्यार ताका ते 500 रुपयाचे इनाम घोशीत केल्ले आसा. अशें ना की 2 बॉलां 2 मारपा जाय. तशेंच 4 बॉलां 4 मारले जाल्यार जमीर अहमद 1111 रुपयाचे इनाम घोशीत केल्ले आसा. तशेंच अहमद खान हाणें जो पयलीं सांगिल्लें की जे क्रावड आसा भायर स्पेक्टेटर्स, तुमी एक हातान कॅच धरली जाल्यार 200 रुपया, 2 हातान कॅच धरली जाल्यार 100 रुपयाचे इनाम लागू केल्लें आसा. सो प्रायजां भरपूर आसा. प्लेयर्सां खातीर आसा, स्पेक्टेटर्सां खातीर आसा. येदो मोठो टुर्नामेंट आनी म्हाका दिसता भरघोस अशी इनामां ऑर्गनायझर्स आनी जे हांगा मानेस्त पळोवपाक आयल्यात त्या मानेस्तांनी सुद्दां उर्बा वाडोवपाक ही इनामां घोशीत केल्ली आसा. देव बरें करूं सगळ्या जे स्पॉन्सर्स आसात जाणी आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा तांकां परत एकदां फिरोज शेख. That's a quick delivery. Wonderful quick fast ball here from Firoz. So started badly, but now he has come back strongly by taking a wicket. After completion of 4 overs, the score is 56 for the loss of 2.
Now it's time for the fifth bowler. In fact, the fourth bowler bowling the fifth over. Next match will be played between Al Zargham versus SI Indians. So Vishal Gavde has come on to bowl from the far end. Oxford Titans have to win. In fact, both the matches have been lost by Dharsaka Sunrisers. They will also like to win. You never know. One team or three teams might end up with 2 wins each. It's highly possible. Still, they are in the race. There was a full toss ball. You could have put it anyway. This is a time when the sun goes down and the light will come into effect slowly. This is the fifth over. This singles takes the score to 57. We are on a Saturday night. Slowly the buzzing will be more noise will be there of the supporters. Lots of people are doing the jogging and watching the match as well in between, enjoying the moment. This is one of the biggest, not one of the biggest, but it's the biggest ever to be held in Goa, with the prize money and the setup that it has been. And slowly one of the generators has been switched on, and you can see the lights here from the left side of the commentary is slowly getting on. Oh, magnificent, humongous strike. It's over to Cow Corner region, and that's the 6. Wonderfully hit here by the batsman, none other than Pritham Bari. This was rightly pitched up into the slot and stand and deliver. You cannot bowl in the slot to this batsman. You got to have the variations. Vishal Gavde nowadays, you can see even Gaurish Nagwekar is one of the paciest bowler you can find, but he has been also hammered and he has not found his groove. It's not about the pace, it's about the variations. Rohit Salgaonkar, you can see he doesn't have that much of pace, but he's smart. He knows where exactly to bowl to which batsman. Keeper also stand in front for Rohan, and he perfectly lands the ball in the right areas. This is in the air. This should be a catch. Fielder coming underneath. This is a difficult catch, and he drops it. Well, that sums up the story for Dharsaka Sunrisers. Well, the bowler creates an opportunity and catch is being dropped, whereas other team players, they have not dropped many. It is this team, Dharsaka Sunrisers, they have dropped so many catches that they are into this big hole just because of their fielding. This is nothing ball, but he has not timed it well, but power enough. Enough power. Short ball asking to be hit and hit it nicely. So the 6s have come in this over, what they were waiting for. Supporters. Score moves on to 71. 71 for 2 in 4.5. One ball still remaining of Vishal Gavde's over. This is once again in the air. This might be a catch. Will this be taken or will it land safely? Landing safely, 2 runs taken. So nothing has gone right here for them. Dharsaka Sunrisers. It's the batting, the bowling and the fielding. They have not clicked at all. Ajit Moite is one of the top players, but he is yet to find his rhythm in this tournament. After completion of 5, the score is 73 for 2. 1 over left, and Pritham Bari and Bhushan Gore are playing on 9 of 4 balls each. म्हणल्यार इनाम घोषित केल्ले आसा. 2 सिक्सरी फक्त एकच प्लेयरान मारपाक जाय. 1 ओव्हरीन जाल्यार ताका 500 रुपयाचें इनाम. तशेंच जमीर अहमद बाबान 1111 रुपयाचें इनाम घोषित केल्लें आसा. जे कोण 4 बॉलां 4 सिक्सरी मारतलो, कित्याक 4 बॉलां 4 सिक्सरी नवदीपान मारिल्ल्यो आसा, पूण मातशें अनाउन्समेंट लेट आयला. आतां कोण मारतलो 4 बॉलां 4 जाल्यार ताका तें इनाम फावो जातलें. 73 for 2. Last over. Al Zargham Royal Challengers आणि SI Indians मातशे टॉसाक येयात. मातशे टॉसाक येयात दोन्ही कॅप्टन. दिस इज द फर्स्ट कॉल.
So once again, this tennis ball cricket is a short format, it's just 6 overs, and there is no option left here for the batsman than to swing the bat widely for those sixes. It's just sometimes you get the right position and you connect it with the speed spot of the bat. Sometimes you get inner half, sometimes you get edges. The intention is to go for 6, and intention has turned into a fruitful result here from Bhushan Goli. Well, this ball is flying out of the ground when both these batsmen are playing for Oxford Titans. The happy camp right now, Oxford Titans. 80 is touched here. 80 for 2 in 5.2. This is once again turning out to be a very, very big total. Once again, high, humongous. This is super hitting, and somebody was going for to take that 100 rupees. Well, the catch taken by Pendal. So if the catch is taken by Pendal, 500 rupees. Ahmad Khan. 500 rupees for organizer. And they won the same ball. 260. So 500 is going to Bhushan Gole. Bhushan Gole 500 रुपया मिळल्या सा. कोणे कॅच धरल्या? कोणे कॅच धरून Bhushan Gole on fire. He goes for the third one. He gets the third one. Oh, Bhushan Gole. 500 रुपया लागू झाले असा. आता मागे दिसता अनेक 500 लागू जातले आणि 1111 रुपया बी लागू जातले जर या बॉला 6 मारता. 3 sixes, hat trick from Bhushan Gole. Can this ball go for 6 runs? Chetan Parab, score moves on to 92. 100 up on the cards. Amazing batting here from Oxford Titans and Bhushan Gole. This is it very nicely. This is a helicopter shot finding the gap. The fielder racing towards the ball, and Zarmir Ahmed almost took 1,111 rupees from his pocket, but he kept it back in his pocket. So 1-1-1-1 is saved, but definitely 500 going in for Bhushan Gole from Anthony Babb. This is high and long. That jumps it up. Rollicking lead, and 101 is the target, right? Or 100 is the target? 101 is the target. So you can collect this 500 rupees Bhushan Gole later on. So at 101 is not a small target. If Dharsakar Sunrisers have to still wait and stay in the hunt for the qualifiers, they have to chase a mammoth total, big total in this third match. So till then I am handing over the mic to Ashok Naik sir, and it's time for the toss. SI Indians amazing and all Zargam Royal Challengers matcha tossa केल्यात. प्लीज आमचे आम्ही परत 8-2 matcha जाम पडतात. सो तुम्ही मातशे अंडरस्टँड करा. कॅप्टन अजय तसोच कॅप्टन ऑफ SI Indians मातसो बेगीन टॉसा घेयो.
So now the toss is about to happen between challengers and Indians. Requesting both the captains to kindly come for toss. So requesting the guest for the toss ceremony, Shri Satish Pujari, to kindly be present for the toss. The toss is about to happen between SI Indians. And Al Zargam Royal Challengers. So both the captains, please kindly come for toss, as guest is already waiting for the captains. Captain of SI Indians, as captain of Al Zargam Royal Challengers, is already at the toss ceremony area. Requesting the captain kindly double up, as the guest is already with the coin. So it doesn't look nice to make the guest wait, as the final call is already given. So just a minute. A minute more for the captain of SI Indians to report. So we're waiting for the captain of SI Indians. Please double up, as the guest is already arrived for the toss ceremony. So now Al Zargam Royal Challengers are top of the table at the moment if you look at the points table. And captains are so we have the guest Satish Pujari, proprietor of SR Fisheries, for the toss ceremony. So the toss is going to happen in the presence of the guest Sri Satish Pujari, proprietor of SR Fisheries. Now it is going to be a spin of coin. Hits is the call. Hits it is, and a look at the celebration of the captain for the toss. So what is your call? We're going to bowl first. So what is actually in your mind, because you already are table toppers? So what are your plans in this match? So we're going to bowl first, so we'll restrict them almost by 40-50 runs, because at night time ball not travel more. So our bowlers last match they bowled very well. Rohan and then Nihal was last over was very crucial. He bowled very well. So we'll try to restrict them 50 or 60 runs. And even you have a similar face that has come to take the toss. Anyways, best of luck for your demands from your team. Maruti, टॉस आपके फेवर में नहीं हुआ, लेकिन अगर आप टॉस जीते तो आपका फैसला क्या होता? फील्डिंग ही था, और ये भी आपके लिए एक बहुत क्रूशियल मैच है, क्योंकि आप एक मैच जीते, 2 पॉइंट्स है आपके पास, और अगर आपको इस रेस में रहना है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैच है आपके लिए. वी विल गिव आवर बेस्ट. And what is the total in your mind that you are going to set, as you are asked to bet first? 70 to 80. Okay, let's see. All the best. Meanwhile, it's time for a small capture as a memory of this tournament.
News from the center. Captain Ajay Kewat winning the toss and immediately have decided to bowl first.
जाल्यार तुम्ही हांगा माटवा कडेन संपर्क साधू शकतात. तुमकां फ्री टेस्ट ड्रायव्ह हांगा मेळटली. जी इलेक्ट्रीक बायक आसा इमो बायक आनी तेजे जे हांगा जे डीलर आसात आलोलिया तेय हांगा माटवान उपस्थित आसात आनी तेंच्यांनी जे मॅन ऑफ द सिरीज जे आमकां रेड कलर एक बायक इलेक्ट्रीक बायक वयर दिसता ती तेंच्यांनी हांगा ह्या टुर्नामेंटा खातीर स्पॉन्सर केल्ली आसा. सो इवन जर ती बायक कोणाक घेवन दिसता जाल्यार हांगा फायनान्स ऑप्शन्स अवेलेबल आसात. तुम्ही अवश्य जो हांगा जो अकाउंट जो काउंटर आसा थंय कॉन्टॅक्ट करात आनी जर डिटेल्स कितें आसा जाल्यार माटवान भितर सरून हांगा जो डीलर आसा तो बाब हांगा आसा. सो तेकाय तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून आनी कितें जर जाय जाल्यार विचारूं शकतात. देव बरें करूं. थैंक यू सागर. तो पहली गेंद पर बहुत ही शानदार शुरुआत मैदान पर धाड़ सकल क्रिकेट टीम की ओर से. इस बार लेग स्टंप पर ये हल्का सा अपील. फाइन लेग पर गेंद निकलती हुई स्क्वायर लेग से आते जब तक फील्डर एक रन पूरा किया दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. थ्रो जब तक पहुंचता लेग बाइज का इशारा और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर. एजाज कुरैशी और उन्हीं के साथ अजीत मोहिते ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर दाड़ सकल सनराइजर्स क्रिकेट टीम के और से एक बड़ा टोटल है सामने 101 रन का. शाहिद शेख ने बनाई 40 रन, भूषण गोले ने बनाए 35 रन. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की ओर से. और देखना होगा यह मुकाबला किस तरह से होता है. प्रीतम बारी अपने बॉलिंग बार पर. छोटे गेंद कट किया इस बार हवा में गेंद बिल्कुल कवर पॉइंट पर एक बहुत ही शानदार कैच और इसी के साथ पहला विकेट वापस निकलता हुआ. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्क्वायर कट किया था कवर पॉइंट पर लेकिन बहुत ही चुस्त चौकर ने फील्डिंग और पहला विकेट इसी के साथ दाड़ सकल सनराइजर्स क्रिकेट टीम का वापस निकलता हुआ. अगर बात की जाए दाड़ सकल क्रिकेट टीम की, पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा, दूसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा और सामने से अगर ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की मैं बात करूंगा, पहले मैच में जरूर हारी थी ये टीम लेकिन इससे पहले जो कि पहला मुकाबला सुबह का जीता, दूसरे मैच में हार, यह मुकाबला उनका तीसरा चलता हुआ. जीत बिल्कुल जरूरी है मैदान पर. सामने दाड़ सकल क्रिकेट टीम को अपना जो कि पॉइंट टेबल पर खाता खोलना पड़ेगा लेकिन एक पहला बड़ा विकेट एजाज कुरैशी 4 रन बनाकर अजीत मोहिते और उनका साथ देने के लिए न्यू बैटर मैदान पर. न्यू बैटर मैदान पर मोहित गांवकर. आने वाला मैच होगा जो 7वां मुकाबला SI इंडियंस और उन्हीं के साथ मुकाबला होगा अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का. फिलहाल एक बार फिर से इस मैदान पर रुक करते हैं. सामने से प्रीतम बारी एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को और न्यू बैटर आ चुके हैं मोहित गांवकर. इस बार लोअर फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग पर फील्डर एक सिंगल बन गया स्कोर में. लेग बाइज का इशारा अंपायर का और एक रन इसी बीच में स्कोर के खाते में. सदगिरी नाइक, सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, असलम शेख और शिव शरण उर्फ बाबू दाभोलकर, ये 4 अंपायर जो कि साउथ गोवा प्रीमियर लीग ये दूसरे पर्व में इस मैदान पर. सामने अजीत मोहिते, एजाज कुरैशी 4 पर एक चौका लगाकर एक अच्छा शॉट था लेकिन कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद था. बहुत ही शानदार कैच. प्रीतम बारी अपने बॉलिंग बार पर सामने से दूर वाले छोर से. और अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ. गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. पावर प्ले का ओवर अभी भी जारी
मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, दो फील्डर है। ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम शानदार बल्लेबाजी कर चुकी है, एक बड़ा टोटल विशाल सा स्कोर बना चुकी है। आगे निकलकर लगभग लोअर फुल टॉस गेंद, हल्के से खेला गेंद को ढीले हाथों से, और जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, और इस पावर प्ले के ओवर में स्कोर रुका हुआ 8 रन पर, 1 विकेट के नुकसान पर। छठा मैच आज के दिन का, आज बिल्कुल सही समय पर पहला मैच जो शुरू हो चुका था, और आने वाले 4 मैच अभी भी बाकी है मैदान पर। लेकिन अगर ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी छोर पर अगर धाड़साकल सनराइजर्स की मैं बात करूंगा, बैटिंग पावर प्ले का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर से अंपायर का, तो धाड़साकल सनराइजर्स के लिए बिल्कुल मुकाबला निर्णायक है। 2 मैच हार चुके हैं, ये लगभग इस मैच में किसी भी तरह से जीत हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल होगा आज के दिन में इस मैदान पर उनका सफर। ऑक्सफोर्ड टाइटन एक जीत एक हार, ये तीसरा मैच, एक मैच जरूर बाकी है अभी का, लेकिन उससे पहले इस मैच में बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा। पहले ओवर का खेल समाप्त, कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी परिवर्तन, भूषण गोड़े आते हुए गेंदबाजी पर, खुद का पहला बैटिंग पावर प्ले का यानी दूसरा जो पावर प्ले का ओवर वो लेकर कमेंट्री बॉक्स के ओर से। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई मैदान पर, कल की तरह बिल्कुल भारी संख्या में भारी तादाद में मैदान पर दर्शक दिखाई देते हुए। ओवर पिच गेंद बाहरी किनारा, इस बार कवर पॉइंट पर मौका कैच का, फील्डर मौजूद गेंद के नीचे, और दूसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ धाड़साकल सनराइजर्स क्रिकेट टीम का। डीजे शॉर्ट ऑन पुल का शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। समर्थ गावस आते आते बड़ा शॉट, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और उस गेंद पर तगड़ा प्रहार। भूषण गोड़ सफलता दिलाते हुए अपने टीम को, लेकिन उसके बाद आकर एक बड़ा शॉट आगाज करते हुए मैदान पर, स्कोर 14 रनों पर आगे बढ़ा 2 विकेट के नुकसान पर। खेल दूसरे ओवर का जारी, और टॉप एज लगा इस बार, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलते हुए, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, गेंद निकली डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। यही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि सफर लंबा है, मंजिल दूर की है। 101 रन का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। अगर इस टोटल को पार करना है तो बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैच में। 2 विकेट, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज एजाज कुरैशी और उनके बाद अजीत मोहिते। अच्छी गेंद, शानदार क्रिकेट, सम्मानजनक खेला, मिडॉप पर रन लेने के लिए निकले थे, लेकिन जैसे देखा मिडॉप पर सर्कल पर फील्डर तेजी के साथ गेंद पर आ रहे हैं, बिल्कुल रनआउट का खतरा लगभग बन सकता था। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। भूषण गोड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, नॉन साइकिल रन पर बैटर है मोहित गावकर। फुल टॉस, लेकिन इस फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए।
बीट करती हुई बल्लेबाज को ये गेंद सामने बिल्कुल शरीर पे लगती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पैरों पे सामने बिल्कुल गेंद लगती हुई। एक मौका जरूर था फुल टॉस गेंद पर समर्थ गावस के लिए, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। स्कोरबोर्ड पर टोटल 18 रन 2 विकेट पर। शॉर्ट पिच बाउंसर और वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। ये बाउंसर था बिल्कुल, अंपायर थोड़ा सा इशारा भी कर रहे हैं एक 1 बाउंस के लिए। 1 रन मिला स्कोर के खाते में, अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर आगे निकला 19 रन पर। 19 लॉस ऑफ 2 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर मैच का, और भूषण गोले अपने बॉलिंग मार्ग पर। बढ़िया शॉट, इस बार देखना होगा फील्डर है मौजूद काउ कॉर्नर पर, सामने बिल्कुल गेंद हाथों में निकलती हुई वाइड लॉन्ग ऑन पर, और इसी के साथ और एक सफलता मिलती हुई। बल्लेबाजी में 35 रन भूषण गोले, और उन्हीं के साथ गेंदबाजी में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 2 सफलता हासिल करते हुए, एक छक्का एक चौका लगाकर समर्थ गावस खुद के व्यक्तिगत 10 रन बनाकर वापस, और टीम को लगा तीसरा धक्का। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर दाड़ साकड़ क्रिकेट टीम जो पीछा करते भी 101 रन का टारगेट है सामने जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से संकट में दिखाई देती हुई बल्लेबाजी में। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए समर्थ गावस, शायद उम्मीद बिल्कुल जो कि जगाई थी अपने टीम के लिए, जिस तरह से आकर 2 बड़े शॉट लगाए थे, लग रहा था कि आज एक बड़ी इनिंग खेलेंगे, दर्शकों के लिए बिल्कुल यादगार इनिंग रहेगी, लेकिन वो आउट होकर वापस, और मोहित गावकर का साथ देने के लिए और एक न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान पर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 19 पर 3 विकेट के नुकसान पर। आज बैटिंग ऑर्डर को बिल्कुल जो कि थोड़ा सा बदलाव किया है कप्तान ने दाड़ सर्कल सनराइजर्स क्रिकेट टीम की ओर से, और बॉलिंग मार पर, लेकिन उससे पहले न्यू बैटर आ चुके हैं मैदान पर, गौरेश नागवेकर। और बढ़िया शॉट, इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेके तरफ गेंद निकलती हुई, गेंद चली गई बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार एक टाइमिंग था इस बार इस गेंद पर, लाजवाब टाइमिंग, और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 25 टोटल स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर सामने से जो कि गेंदबाजी पर आ चुके बॉलिंग मार पर, खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर प्रीतम बारी। और बहुत अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, कोई खास समझ नहीं पाए इस गेंद के बारे में। एक सिंगल बनता हुआ स्क्वायर लेग पर, विकेट कीपर आते स्क्वायर लेग अंपायर के सामने गेंद को उठाते, थ्रो करते नॉन सेकंड एंड पर, जब तक तब तक 1 रन जुड़ता हुआ लेग बाइट के साथ स्कोर के खाते में, और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 101 का टारगेट है। शाहिद शेख की शानदार बल्लेबाजी, 40 रन, भूषण गोले 35 रन 2 विकेट, और सामने बल्लेबाजी दाड़ सकड़। फुल टॉस गेंद फ्लिक किया खूबसूरती के साथ, देखना होगा पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, 101 का टारगेट है, हर ओवर में बिल्कुल एक 2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैच को आगे बढ़ाने के लिए दाड़ सर्कल सनराइजर्स क्रिकेट टीम को। इस बार कवर पर खेलना चाहते थे, बल्ले पे लगी टिप्पा खाने के बाद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहले ओवर में पावर प्ले में एक सफलता मिली, ये दूसरा ओवर, पहली गेंद पर बड़ा शॉट, बाद में कमबैक प्रीतम बारी का अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने से फातोड़ा स्टेडियम की ओर से। मिस टाइम शॉट, एक बिल्कुल जो कि विकेट कीपर शायद मालूम था कि गेंद से दूर है, और जब तक गेंद को कलेक्ट करते कोई रन नहीं, एक बार फिर से थोड़ा सा मिस टाइम शॉट जरूर हुआ था, बल्ले पे ऊपर लगी थी गेंद,
लेकिन गेंद बिल्कुल सामने नहीं निकली गेंदबाज के पास या विकेट कीपर के पास। शॉर्ट ऑफ बॉल का शॉट सामने बॉलर के ऊपर से फील्डर है मौजूद और जब तक मिड ऑफ से आते गेंद को उठाते फील्ड करते। एक रन फिर से जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 28 रन 3 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, यानी 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 73 रन। चौथे ओवर की शुरुआत और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए सागर गोसावी के साथ। सागर 1 मिनट सर, आइए सर जुड़ जाते कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से सर हर्ष काकोडकर के साथ। So just 28 on the board in 3 overs. Asking run rate has climbed up to almost 24 runs per over, which is very, very difficult here for any team. Almost 12 sixes are required in 18 balls. Well, in light ball I have seen this happening, but in heavy ball getting 12 sixes of 18 is almost close to impossible, difficult here. And this might be the first 6 out of the 12. And the youngster was in chance of getting 100 rupees, but he says let's not take the cash. If anything had happened to the hands, he would have lost more money on that. So he was very, very safe. 1-6 here against Sarfraz Nawaz. Mohit Gaukar with a good hit down the ground. Can they keep on scoring those sixes? They have to continue the juggernaut. So lovely shot, wonderful timing, back foot punch on the extra cover region for a boundary. There was no man in the deep covering that extra cover region, and he takes a good shot at that and finds the gap as well. Taking the score to 38. Good start to this over. Can he make that happen? He is the man of the series, player of the tournament in the first edition of SGPL, and Dharsaka Sunrisers are the runners-up of the first edition of South Goa Premier League. But whichever team has performed well the last season have not performed well this season, and whichever team have not performed and not done well, they are doing very well this season. So it's up and down in cricket. Sometimes you are on top, sometimes you are at the bottom. Once again shuffling across and trying to play that slog sweep. Bowler was also smart, just giving singles. So if anyone, any of the bowler bowls the batsman out, clean bowls, then he's going to get an energy drink. Wildfire. This is totally sponsored by Wildfire. Wonderful energy drink, and this is in the air and up and over for 6 runs. Slightly taller man could have taken that catch, but you cannot blame the fielder over there. It was way too short. Ample of time opportunity to rock onto the back foot and hit it beautifully. You can see on the screens. Short ball came way too slow. The batsman was ready, and in goes the ball outside the fence for 6 runs. With the 6 score moves on to 45. Still too much to ask for from Mohit and his partner Gaurish Nagvekar. This time this might be catch. Will it be taken? No, just landing in front of the fielder, falling in no man's land. There is no other option here for the batters. They just have to go after the bowling each and every ball and just hope that everything connects. Going for the switch hit. He was well on the ground before the ball had arrived.
You should make your intention for that switch it little bit later so that the bowler also does not come to know. But here dot ball to finish over number 4, and the score remains at 46 for the loss of 3 wickets after completion of 4. Next match. This is India. Who is going to take this catch? The fielder from covers region comes and takes an easy catch, and one more wicket going down in trying to get a 6. So all happening easy for Oxford Titans at this stage. They will certainly going happy after this match, as it will be second win under the belt for them. And it will be all over for Dharsakar as they are going to lose the third match. Finally, Oxford have to play Al Zargam in the second last match of the day. That's going to be important. But here, the next match, Al Zargam captain Ajay Kewat has won the toss, deciding to field first against SI Indians. In comes the left-hander Babal Zore. He was in the squad in the previous edition as well. So Vishant Naika, the owner of Dharsaka Sunrisers, wanted him once again in his squad. And here is an opportunity for the youngster talent from Dharbandoda Taluka. So Vicky comes. Vicky has bowled very good so far, and that's the reason why he was required in the team to keep the balance as far as bowling was concerned. And I was doing the auctions, and Mukhtar Qadri wanted him in the side to fill up this place for the 4th and 5th bowler. Going for the switch hit, that's the shot he likes, but when the bowler is so smart, understanding and watching the batsman till the last moment, it makes it even more difficult for the batsman. So trying some stunts here, the batsman, 2 dot balls in a row. Not a single run given by Vicky so far in this over. So no connection whatsoever. It's all happening too easily. No battle, no fight from Dharsakar Sunrisers. I feel here the sun has gone down and the hopes are also gone down of Sunrisers. This is in the air. Will it be 6 runs? He timed it very well. That was short and pulled it away nicely. Vicky does not have pace to hurt that ball and a batsman with the short ball. Ample of time for the batsman to rock onto the back foot and build it magnificently over the backward square leg region for a 6 run. So it is all coming too late. Once again trying the big shot, but only 1-6 in that over. A pretty decent over from Vicky. He is magnificent so far in this tournament for Oxford Titans. And the score is on 52 for the loss of 4 wickets, and the runs required is 49 in 1 over. So next, Al Zargam versus SI. That is going to be the 7th match of the day. Requesting both the teams to be ready once this over and this match gets over soon. Please take the ground as fast as possible. The counter of Shagun Hotel is on the left side.
who are also the co-sponsors along with many of the sponsors for this tournament. The title sponsors SportsNinja.in, co-sponsor CEZ, owner Mushtaq Bab Ahmed, who was there watching the matches, sitting here. And then Shagun Hotel, they are also the co-sponsors, supported by US Pizza, Amstrad, 6 Star 6, Wildfire Energy Drink, Al Barkha Hotel, Ehab Interiors, SES Engineering, Usha Stores, Alstone, Star Fisheries, Edmund Fernandez, Akash Fish Mill, Quality Exports from Kukalim, Just partner Savli Goa, Decorators Gauri Radio, Light and Screen Surbi. And a wide signal here by the umpire. Niket Gaukar is a replacement player here for Bala Shankar from Sangam. He is also hailing from that same region. So he is in the Oxford Titans camp and bowled pretty decently so far. So you can certainly say he is being a good replacement and has been definitely a value addition to the side. Just a leg by signal here. So just the formalities left. You are going ahead with just a few balls left, 4 balls left to be precise in these innings to get over. And we have to wait for the signal. No ball, I feel. No ball it is from umpire Babu. 2 runs to the total. That was a full toss ball. And no connection, just a single down the ground. So lights have come into full effect. So we are certainly going to see some exciting matches, and the environment, the aura, the euphoria will carry on. Ah, humongous. What a strike, the big one from the left-hander. 260 so far from his bat, and he is showing that he can strike it big. Has got a wonderful swing of the bat, and anything in his slot, he's not going to miss one. This time it's in the air, and he strikes once again. 4 runs, 1 bounce for 4 runs. Actually, both of these players, Niket and Babal Zore, play for the same team, so both know the strengths and weaknesses of each other. Now in SGPL, they are playing for a different team. They play for Shan Strikers from Sangam. And that's a wonderful ball to finish here for Niket. Block hole delivery just outside off stump, and congratulations to Oxford Titans for an easy victory in the end. It was a huge total posted on the board by their batsmen, and then for the bowlers it was way too easy to defend it. So it's the second victory for Oxford Titans in 3 matches, and man of the match, the player of the match is definitely going to be a all-round performance, none other than Bhushan Gole. And here it is, Amani Events and Production by Anand Badri. So if at all you require any photography, videography of any of your events, you can definitely contact Anand Badri, a truly professional, and he is there giving his wholehearted 100% for any of the contracts that he signed. So Bhushan Gole, please come and take your player of the match award from Satish Pujari. सतीश बा पुजारी तुम्ही हांगा आसात, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता मातशें येयात आनी एक सुंदरशा परफॉर्मन्सा खातीर भूषण गोले ऑलराउंड परफॉर्मन्सा खातीर प्लेयर ऑफ द मॅच भूषण गोले.
So man of the match of the previous match, Bhushan Gore, accepting the man of the match trophy from the hands of the guest. So Bhushan, congratulations for man of the match. Okay. And even there's a cash prize. Please give it to Bhushan Gore for hitting those 2 sixes from 2 deliveries. भूषण कसं वाटतंय गोव्यामध्ये खेळायला, कारण हा एक डिफरंट फॉर्मॅट आहे. नॉर्मली आपण गोव्यामध्ये डे नाईट हा जास्ती तेवढा परिचित नाही, पण साऊथ गोवा प्रीमियर लीगमध्ये प्रथमच असं मला वाटतं की आपण हा खेळलात. कसं वाटलं इकडे? पहिलं तर माझं हे सेकंड इयर आहे. लास्ट इयर पण आम्ही खेळलो होतो, पण यावर्षी अजून बरेचसे चेंजेस केलेत आयोजकांनी आणि कमिटी मेंबर्सचे मी थँक्स म्हणेल की एवढं चांगल्या दर्जाचे टुर्नामेंट इथे घेतले त्याबद्दल. आणखी ही तुम्हाला एक मच निडेड विन होती, मॅच जिंकायचीच होती. तर कॅप्टनने काय सांगितलं होतं जेव्हा तुम्ही बॅटिंगला तुम्हाला पाठवलं होतं? मुख्तार सरांनी सांगितलं होतं जास्तीत जास्त रन्स करा आणि ॲक्च्युली आता बघितलं तर टीम गेम झाला आमचा. असं नाही की बॅट्समनच खेळतो किंवा बॉलरच करतोय, तर सगळ्या मिळून खेळल्यामुळे आम्ही जिंकलो. आणखी काय पॉझिटिव्ह आपण घेऊन जाल या मॅचमधून, कारण अजून एक मॅच बाकी आहे, आपल्याला पण टेबल टॉप करायचं आहे. टेबल टॉप करण्यासाठी पुढची मॅच जिंकणं खूप गरजेचं आहे. ॲक्च्युली पासून बघतोय प्रत्येक टीम आणि प्रत्येक प्लेयर्स हा क्वालिफाय होण्यासाठीच खेळतोय, तर आम्ही पण 100% प्रयत्न करू. Okay, best of luck and all the best for the future match. That's the man of the match, Bhushan Gore, for his beautiful batting. So as the captain of Al Sargam Royal Challengers have decided to bowl first after winning the toss, inviting SI Indians to bat first. And 2 openers out in the middle, Somesh Prabhadesai and Ramesh, the man of the match in the previous match, all the way from Kerala, that is playing as an outstation player in this tournament. So let's begin this match. This is crucial match for both the teams, as Al Zargam are unbeaten in this league format. Is it going to be the first surprise in this tournament? The time will and the tide will tell us of this course of the match. Satish Yadav, all the way from Maramagoa, is with the ball from the stadium end. Lower full toss guides the ball, could not get the proper connection. Equally well fitted at the short fine leg region. So first delivery of the power play goes as a dot delivery. Another low full toss that has been missed by Somesh. Maybe the floodlights. That is not the usual occasion for the most of the batters of Goan soil, as hard ball cricket is played mostly in the day. Satish Yadav with the ball as a left-handed batsman
is on the striking and still he decides to come over the stumps. Meanwhile, another good delivery slightly outside the off stump near the guideline. Good creeping from the all-rounder. So again, it is a dot delivery. Just a single from this over. Again, slightly outside the off stump. Wide is the immediate call from the umpire by stretching his arms. And that extra takes the team total to 2. Decent over. This has been bowled so far by Satish Yadav. Not giving much room for the batter to go really after the bowling. 3 dot balls in this over. Another good delivery, well played. There's a chance of a catch. Fielder running after the ball. Not able to get, but definitely will save couple of runs for this side. 2 runs for Ramesh as well as for his team SI Indians. Team total moves to 4. Final delivery of the power play over. So far, this is a decent over. Just 4 runs. Wonderful strike straight to the field. Oh my dear, couple of inches above the hand. Extended hand could not held on. Another welcome boundary on the very last delivery of the power play over. That sums up the total to 8 without any loss of wicket. So there is a small meeting out in the middle as a whom to give the ball to bowl the second over. So captain takes the ball in his hand and takes care of the proceeding. Second over bowled by Ajay Kewat. Full up pitch delivered. There's appeal. Strong appeal from keeper as well as the bowler, and up goes the finger. First wicket. Captain strikes in the second over on the very first delivery. Somesh back to the pavilion at the score of 8. DJ. Multiple role in this tournament. Sometimes he's the coordinator, sometimes supporter, sometimes a professional photographer, capturing all the moments for this tournament. So meanwhile, Ajay Kewat takes the first wicket in the second over. Aniket Raut is a new man in at the striker's end. Will be facing Ajay. Ajay right arm round the stumps. Another heave and a miss. Lovely bowling continues from Ajay Kewat. Wicketkeeper standing close to the stumps so that there's no chance for the batsman to shuffle down the track. Good piece of work behind the stumps as well. So good strategies applied by Al Zargam Royal Challengers.
Another lovely delivery, change in pace, equally well kept behind the stumps. So far, not a single run considered in this over by the captain. Captain leading from the front, setting an example for his fellow bowlers as how to carry on with the proceedings. And these dot balls definitely will boost the confidence of the other team members as well. So far, boundaries, runs are dried up. Another strong strike along the carpet. They are just settled for a single. That single takes the team total to 9. Now Ramesh is on striking end. All hopes, all eyes on Ramesh. Can he get some runs from this over? That is a big question in front of the spectators. So let's see whether he can get some runs. Second over still on. Captain setting the field for himself, wants his fielders at the proper position to avoid the boundaries and the catches to be taken. With that confidence, here we go with the next delivery. Change in pace. Ball travel to the same fielder where the captain has shifted the placement. This is a sign of a clever bowler. And with that, a single, team total moves to 10. Final delivery of the second over. Aniket Raut is on the striking end. So far both the batsmen are quiet with that bat. Another good strike along the carpet. Looks to be batsmen are not in a hurry. They know which bowlers to target. Maybe that must be in their mind, and that concludes over number 2. So after completion of 2, 11 for the loss of 1 wicket. So this is a crucial match even for SI Indians. If they win this match, then definitely they will be getting another 2 points and they will be in the contention. So meanwhile, the signal from the umpire towards the commentary box is that this is going to be the batting power play. So captain immediately hands over the ball to Rohan Salgaonkar, who has changed the course of the match in the previous encounter, where 9 wickets were in the hand, and he came and took 3 wickets in that over. And 3 crucial batsmen were sent back to the pavilion. Aniket Raut on the striking end. Let's see what he can do. A shrewd bowler in action from the stadium end into the batting power play over. Meanwhile, the first delivery goes out of the park into the night sky and finally lands out. With that big 6, score moves to 17. Finally, some power hitting. Can we see switch? It is the attempt. Good keeping continues from Fulton Kazi, who has done a just job with the bat and now showing his wicket keeping skills behind the stumps. All the safety gear helmet is on. Another good Yorker slightly outside the off stump. Look at the reaction from the wicketkeeper Fulton Kazi. Quick onto his feet. Reflective batsman, reflective fielder, reflective keeper as well. Having a very good eye sight. Another Yorker, White Yorker. One is a call. The jump run out. Direct hit would have put curtains for Aniket.
I beg your pardon for Ramiz. But that's would have been another situation. Rami survives only if they have to hit the stumps, and definitely second wicket would have been back to the pavilion. Now the left-handed batsman on to the striking end. A challenge in front of Rohan Salgaonkar will be high on confidence as he is the man of the match, has bowled beautifully in the previous encounter. So let's see whether he can continue in the similar fashion as a left-handed batsman have arrived at the striker's end. Ramesh also man of the match of the previous match. So two valuable players against each other. Lovely bowling continue from Rohan, even for the left-handed batsman as well. Knows which are the right areas, and let me tell you, Rohan Salgaonkar is also a name that have won many best bowler prizes under his pocket, playing even out of Goa in the interstate tournaments. And recently, if any team is going to participate out of Goa, then definitely Rohan is included. Meanwhile, a lovely delivery ball going away from the batsman, a dot ball to end the batting power play over. So after completion of 3, score is 18 for the loss of 1 wicket. And now, as per the public demand, हल्का सा अपील और विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकलती हुई। विकेट एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग बार पर अब मात्र दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान दिखाई देता हुआ। ये फुल टॉस गेंद, लेकिन फायदा नहीं मिला।
फिर से एक थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा, गेंद चलेगी पहले बाउंस के बाद विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है तैनात, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और अनुष केरकर अपने बॉलिंग बार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं महेश भाइडकर। और गति में परिवर्तन, पुलर लेन की गेंद, हल्के से गेंद को ड्राइव किया, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री, तेजी के साथ आते गेंद को लपेटते अपने हाथों में, गेंद को फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना खाता शुरू किया महेश भाइडकर ने एक सिंगल के साथ। और बड़ी देर से जो स्कोर रुका हुआ था 18 पर, वो थोड़ा सा आगे निकला। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। सामने जो कि फील्डिंग अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम की। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर रमेश, और इस बार थोड़े से वाइड यॉर्कर पर गेंद, राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए अनुष केरकर, और एक बिंदी गेंद और एक डॉट गेंद के साथ फिर से वापस आते हुए अपने बॉलिंग बार पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का, फील्डिंग करने का फैसला, और बहुत ही अब तक का अगर इस मैच के बारे में बात की जाए तो लगभग जकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को। ओवर का खेल, रोहन सालगावकर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। क्या टर्निंग पॉइंट रहा था उनका ओवर, मुकाबला आखिर में दर्शन बांधे करने लगभग करीब लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर मैच छूटा हाथों से। बढ़िया शॉट, थोड़ा सा ऑन द राइट खेला, पहला रन बड़ी तेजी के साथ कॉर्नर पर फील्डर, लेकिन उतनी तेज निकले फील्डर, दूसरे रन की शंका को समाप्त कर दिया मैदान पर। एक रन जुड़ गया, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट पर। डे नाइट का क्रिकेट का सुरभि लाइट्स, शब्बीर भाई जो जुड़ चुके हैं, हमारे डीजे मैन, बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम दीपक कुमार, और ऑपरेटर थोड़ा सा जो कि बदल हो चुका है ऑपरेटर के साथ, दीपक के साथ। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, गेंद खड़ी हो गई, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, 2 फील्डर अगल बगल में, लेकिन आखिरकार गेंद हाथों से छोटी। जब तक गेंद को कलेक्ट करते, थ्रो करते, तब तक रन बनता हुआ स्कोर के खाते में 2 रन, और 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 22 रन पर। TennisCricket.in की पूरी टीम, गौरव सावंत इस टूर्नामेंट के साथ, और उसी के साथ जीसीसी पातोड़ा के सभी टीम के मेंबर पिछले मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने से इस जो कि टूर्नामेंट के आयोजन के साथ जो कि जुड़ चुके हैं। हर एक का बिल्कुल जो कि मेहनत, और उस मेहनत का फल बिल्कुल मैदान पर दिखाई देता हुआ। बहुत ही सुंदर आयोजन, शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। सामने एक बार फिर से अगली गेंद, राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर, छोटी गेंद, इस बार ये बड़ा मौका बना, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, नो मैच लैंड में गेंद निकलती हुई, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर के खाते में जो तीसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा था, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा बल्लेबाजी को। और इस बार ओवर पेज गेंद, ये मौका बनेगा, देखना होगा विकेट कीपर खुद निकले गेंद के नीचे, कैच को दबोचते हुए सफलता मिलती हुई, तीसरा धक्का लगा टीम को।
जो संकट में थी अपनी टीम उसको थोड़ा सा संकट से बाहर निकाल रही है, लेकिन वहीं पर फिर से एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को रोहन सालगांवकर सामने से बॉलिंग मार पर और न्यू बैटर मैदान पर। फुलर लेन की गेंद सामने ड्राइव किया, हवा में हल्का सा गोता लगाया, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते हुए और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 13 रन की एक छोटी सी इनिंग, 2 चौके लगाए रमेश ने, आउट होकर वापस तीसरे विकेट के रूप में और न्यू बैटर मैदान पर सुब्रत गांवकर। और बढ़िया शॉट मिड विकेट पर, गेंद तारामंडल में डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, एक गजब का छक्का 6 रन के लिए। न्यू बैटर मैदान पर आते आते बड़ा शॉट, बिल्कुल सीएम ट्रॉफी, बड़ी तो ट्रॉफी रही थी, उस ट्रॉफी में बाइक का हकदार रहे थे वो खिलाड़ी अब मैदान पर आते आते बड़ा शॉट लगाया 6 रन के लिए, स्कोर आगे बढ़ा टोटल 32, 32 रन पर। 5 ओवर का खेल, एक अच्छा ओवर, एक विकेट मिला, 10 रन जरूर दिए लेकिन एक विकेट को चटकाया, 2 ओवर उनका कोटा, 17 रन और एक विकेट मिली रोहन सालगांवकर। अंतिम ओवर का खेल जारी, कमेंट्री बॉक्स की ओर से नेहाल बिंद दिखाई देते हुए अपने बॉलिंग मार पर 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए स्कोरिंग में, और देखना होगा ऐसा इंडियंस आखिरकार 6 ओवर के बाद कितने रनों पर जो कि पहुंचते हैं, सामने कितना टारगेट रखते हैं। ऑप्टम से बाहर थोड़ा सा लाइन पर बट के अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 33 रनों पर। ऑन साइड पर बढ़िया टाइमिंग इस बार, लेकिन सामने बिल्कुल मिड विकेट के फील्डर के हाथों में गेंद निकलते हुए शानदार कैच और एक विकेट वापस निकलता हुआ। बिंड को एक बड़ा शॉट, लेकिन उसके बाद में मिड विकेट पर विकेट कैच को पकड़ा और स्कोरबोर्ड पर टोटल 33 रन 4 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल जारी। अपने टीम के लिए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा शफल हुए तो ऑफ स्टंप पर गेंद निकली, लेग स्टंप को छोड़कर बाहर, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। आने वाला मैच होगा, दोनों टीम कैप्टन आइए टॉस के लिए, अमेजिंग और दार्ट सर्कल के बीच में अगला मैच होगा। दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से टॉस के लिए संपर्क करें। अमेजिंग सुपर जायंट्स और दार्ट सर्कल सनराइजर्स। पुलर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर छोड़कर निकली इस बार, बिल्कुल खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन बीट हुए उस गेंद पर और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 34 रन 4 विकेट पर एसआई इंडियन क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। बढ़िया शॉट इस बार हाफ वाले पर लेकर एक गजब का टाइमिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बिल्कुल कोशिश थी फील्डर की, बहुत ही शानदार फील्डिंग, डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक सुंदर फील्डिंग, एक बेहतरीन कैच और इसी के साथ सफलता मिलती हुई 5वीं।
बाउंड्री पर बिल्कुल सीमा रेखा पर एक बहुत ही शानदार कैच। मारुति हुग्गी वापस और न्यू बैटर मैदान पर। नेहल बिंड बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, एक पुलर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल बीट करते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोरबोर्ड पर टोटल वहीं पर रुका हुआ 34 रन 5 विकेट पर। आखिरी ओवर का खेल अभी भी जारी मैच का। बाहरी किनारा लेते हुए लेकिन नो मैच लैंड में लगभग गेंद गिरती हुई, और जब तक डीप एक्स तक और बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 35 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर एसआई इंडियन क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करती हुई मैदान पर। चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, एक स्लोवर वन लेकिन बहुत जल्दी पिक किया। देखना होगा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर 1 रन, दूसरा रन होना चाहिए था लेकिन कोशिश नहीं हुई मैदान पर। एक सिंगल पर बिल्कुल संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, और इस टोटल जो कि स्कोर हो चुका है 36 रन टारगेट रखा है। Next match, it will be between Amazing and Dhar Sakal. Amazing captain आणि Dhar Sakal captain Matsuyo. Captain of Amazing, captain of Dhar Sakal Matsuyo. So 37 is the target set in 6 overs here by SI Indians to Alzargam. Doesn't look to be a difficult one. ही मॅच जी आहे ती 6 षटकांची आणि 37 धावांची गरज. ओपनिंग बॅट्समॅन ओपनिंग फलंदाज जी सलामीची जोडी येत आहे ते आहेत फरदीन काझी, ज्यांनी सुंदर
फटकेबाजी केली आहे या मैदानामध्ये. एक चमकता सितारा आम्ही म्हणू शकतात या SGPL सीझन 2चा. आणि फरदीन काझी याला मॅन ऑफ द सिरीजची एक कार वॅगनार पण मिळाली आहे. म्हणजे त्याचा जो टॅलेंट आहे त्याच्या एक भारी कामगिरी, त्याला इथे पण साजेशी कामगिरी तो करत आहेत. एक उभरता सितारा आम्ही म्हणू शकतो या क्रिकेटच्या मैदानामध्ये. आणि फरदीन काझी परत एकदा संदेश ठाकूर एक चांगला ऑलराऊंडर या गोव्याचा. आणि इकडे जर बघितलं तर याचा इंडियन्सचा जो टोटल आहे तो जास्त नाही. आणि मला वाटतं ज्याप्रमाणे एक भरभरून फलंदाजी जी आहे ह्या टीमची अल-झरगमची, जास्त वेळ होणार नाही. आणि हा आहे रिव्हर्स स्वीपचा फटका आणि या फटक्यामुळे मिळणार आहे 4 रन. आणि ओपन जो केला आहे अकाउंट, जो हा चौकार आहे, सुंदरसा चौकार पॉइंटच्या दिशेने. फरदीन काझी फक्त 37 धावा पाहिजे. आणि बघूया पुढचा चेंडू. सागर उंच गेला आहे चेंडू आणि घेतला आहे हा झेल. पहिली विकेट घेतली आहे SI इंडियन्स. आणि सुंदर गोलंदाजी जो करत आहे एक चांगला खेळाडू, चांगला ऑलराऊंडर संदेश ठाकूर, नामवंत खेळाडू गोव्याचा. हरीश सर, दाट सकळ, थँक्यू सर. तर नाणेफेक जिंकून फलंदाजी स्वीकारली दाट सकळ. सर हरीश सर, प्रेक्षकांसाठी काही तुम्ही नक्की प्रश्न विचारू शकता. आणि प्रेक्षकांसाठी या ठिकाणी एनर्जी ड्रिंक, जर अचूक प्रश्नाचं उत्तर असेल तर त्यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी एनर्जी ड्रिंक पुरस्कृत केलंय. खूप खूप धन्यवाद. अधूनमधून ज्या ज्या वेळी नक्कीच आपल्याला वेळ मिळेल त्यावेळी नक्कीच प्रेक्षकांची पण संवाद साधूया या स्पर्धेत. मी जाणार प्रेक्षकामध्ये जाणार, पण मला सध्या मलाच एनर्जी ड्रिंकची गरज आहे. नक्की तुमच्यासाठी पण असेल. जर ही मॅच जिंकली अल-झरगमने तर मला 3 मॅच मध्ये 6 गुण होणार. आणि जवळपास निश्चित करणार, पण निश्चित होणार नाही कारण आणखी पण भरपूर कॅल्क्युलेशन्स आहे याच्यामध्ये. ते आम्ही तुम्हाला सांगणार ही जेव्हा ओव्हर समाप्त होते. धाव फलकावर लागले आहेत 5 धावा, 1 चौकार आणि आता 1 रन. करण मोरे स्ट्राईकवरती, अमेय धामसेकर खेळणार आपला पहिला चेंडू. परत एकदा एक चांगला फलंदाज अमेय धामसेकर जो व्ही मध्ये खेळतो, लॉंग ऑफच्या दिशेने. आणि कव्हर्स मध्ये पण फटकेबाजी करण्यास एक उत्तुंग कामगिरी करतो. बघूया परत एकदा, फक्त 1 धावा, 6 धावा धाव फलकावर अजून लागलेले आहेत. परत एकदा स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न तेवढा सफल होत नाही, फक्त 1 धावा मिळणार. आणि 1 षटकाच्या नंतर धाव फलकावर लागले आहे 7 धावा आणि 1 विकेट बाद झाली आहे. ती म्हणतात ती फरदीन काझी यांची. ह्या एवढ्या मोठ्या जो टुर्नामेंट साऊथ गोवा प्रीमियर लीग, याला आम्हाला जे स्पॉन्सर्स लाभले आहेत ते म्हणजे टायटल स्पॉन्सर्स आमचे sportsninja.in, तसेच को स्पॉन्सर्स इमो आणि DG.com, ज्यांनी मॅन ऑफ द सिरीजची इलेक्ट्रिक बाईक आणि एक सायकल इकडे स्पॉन्सर केली आहे. अर्षद दाफेदार गोलंदाजी करण्यात येत आहे. दुसरा षटक. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त आणि क्षेत्ररक्षणात बदल होत आहे. 4 क्षेत्ररक्षक 30 गजच्या आत आणि 5 खेळाडू बाहेर.
अजूनपर्यंत हर्षद दावेदार जसं नाव आहे त्याचे साजेशी कामगिरी करू शकला नाही आणि बघूया या मॅचमध्ये काय दुसरं काहीतरी दर्शन घडवून आणतो. गोलंदाजीमध्ये परत एकदा स्लोअर गेंदबाज गोलंदाजी करण्यात आणि फक्त मला वाटतं फक्त एक रन रिस्क पण घेत नाही फलंदाज. फक्त एक धाव फलकावर जोडत आहेत आणि या एक धावेनंतर स्कोर बोर्डवरती लागत आहे फक्त 8 धावा. पाठलाग करत आहे 37 रनांचा 6 षटकामध्ये. मला रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न पण विफल. जास्त काही प्रेशर नाही फलंदाजावरती कारण जो टार्गेट आहे तो काही जास्त नाही 6 रन्स प्रति ओव्हर. परत एकदा कट शॉट आणि हा दुसरा फलंदाज बाद पॉइंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. कट शॉट पण फिल्डर तिकडे होता आणि त्याने आज एक सुंदरशी झिल टिपली आणि दुसरा विकेट गारद. मला वाटतं अमेद अमचेकर परत एकदा पॅव्हिलियन में परतून जातोय. जास्त काही केलं नाही फक्त एक धावा खेळून पॅव्हिलियनच्या दिशेने. आणि सर जर कदाचित हा धावसंख्येचा कमी धावसंख्येचा सामना नक्कीच आहे मैदानात, परंतु दुसऱ्या बाजूनं गोलंदाज चांगली कामगिरी करतायत, क्षेत्ररक्षक साथ देत आहेत. आणखी एक दोन गडी जर झटपट बाद झाले तर ही कमी धावसंख्येचे सामने सुद्धा एक नक्कीच चुरशीची लढत प्रेक्षकांना नक्की बघायला मिळू शकते या मैदानात. पण जी फलंदाजी जर आम्ही बघितली झरगमची ती मला वाटतं एकदम मजबूत आहे. 7, 8, 9 जे फलंदाज आहेत ते बॅटिंग करू शकतात. जर गरज भासली तर मला वाटतं षटकार पण खेचू शकतात असे फलंदाज आहेत या अल झरगम टीममध्ये. नवदीप गावकर ज्यांनी एक जी ओव्हर होती पिच मागच्या मॅच मध्ये त्याच्यामध्ये 4 षटकार 4 चेंडूमध्ये खेचले होते आणि विजय आणला होता आपल्या संघासाठी. परत एकदा हर्षद दाफेदार एक सुंदर गोलंदाजी इकडे फक्त आला आहेत. 1 रन या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आणि विकेट पण गारद केली आहे. परत एकदा अशोक सर जसं काल पण होतं का की जो जसा लाईटचा इफेक्ट आला होता तेव्हा जो स्कोर होता तो जवळपास हाच होता म्हणजे 30, 40, 50 धावा आणि आज पण मला इकडे मला तेच दिसत आहे. बरोबर काल पण संध्याकाळच्या रात्रीच्या सत्रात कमी धाव, परंतु सर शेवटचा सामना मात्र एक मोठ्या धावसंख्येचा झाला या मैदानात. आपण कॅच होऊ शकतं बघूया. फिल्डर जातो आणि झेल टिपलाय सुंदर झेल आणि तिसरी विकेट गारद. इकडे फलंदाज येत आहेत आणि जात आहेत आणि स्कोर बोर्डवर धावफलकावरती फक्त आहेत 8 धावा आणि 3 फलंदाज गारद. म्हणजेच सर आपण म्हणू शकतो की एक सुरुवातीला वाटत होतं की सामना सोपा आहे, कमी धावसंख्येचा आहे, सहज विजय संपादन होईल, परंतु दुसऱ्या बाजूनं मात्र कौतुक करावं लागेल गोलंदाजीचं, क्षेत्ररक्षणाचं. ते अगदीच म्हणजे प्रयत्न तर सुंदर मैदानात होतोय आणि 3 गडी भराभर तंबूमध्ये परतत आहेत. दिवसाच्या सत्रात मला वाटत होतं की चेंडू थोडा बॅटवरती येत आहे आणि आता वाटलं तर बॉल थोडा जेव्हा ग्राउंडवरती पिच होतो तेव्हा थोडा स्लो येत आहे बॅटवरती आणि मला वाटतं की फलंदाज आहे त्याला थोडी मुश्किल होत आहे इकडे. बरोबर सर, कारण हवामानात थोडासा गारवा सुरू झालाय आणि त्याचमुळे आउटफील्ड पर नक्की या ठिकाणी अतिशय गार, अगदी थंडगार. कदाचित त्याचमुळे असेल की विकेटवर टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा स्लो येतोय, फलंदाजांना तो टोलवण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागतात. बघूया सामना सरते शेवटी कशा प्रकारे या 2 संघांदरम्यान होतोय मैदानात. कधी कधी कमी धावसंख्या असलेली मॅच फार इंटरेस्टिंग होऊ शकते, त्याचा प्रत्यय येतोय आम्हाला इकडे. तिसरा गोलंदाज तिसरा षटक घेऊन येत आहे महेश बायडकर. इकडे कव्हरच्या दिशेने मारला होता हा आणि रनआउट. बघूया रनआउट होत आहे. एक मोठी अपील, डायरेक्ट हिट
आणि अंपायरने सिग्नल केला आहे थर्ड अंपायरला. बघूया डायरेक्ट ही त्यानं आणखी एक विकेट घेऊन देते की नाही. सुंदर क्षेत्ररक्षण इकडे. जेवढा चांगला फटका तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण. आणि बघूया आमचे तिसरे पंच सदगिरी नाईक या ठिकाणी TennisCricket.in च्या बरोबर जोडले गेलेत. काय घडलंय बघूया या ठिकाणी. आपण LED स्क्रीनवर पण नक्कीच बघू शकता की हा जो प्रयत्न होता नॉट आउट आहे आणि फलंदाज क्रीज मध्ये आत. 2 धावा धाव फलकावर जोडणार आहे इकडे आणि धाव फलकावर 10 धावा. तिसरं षटक चालू आहे. करण मोरे आणि अनुष केरकर सध्या बॅट्समॅन. आणि इकडे मला वाटतं ही पण विकेट आहे आणि आणखी एक खेळगडू येत आहेत आणि जात आहे आणि हा जो सामना आहे तो रंगतदार स्थितीत, कारण 4 जे खेळगडी आहेत ते बाद झाले आणि धाव फलकावर लागले आहेत फक्त 10 धावा. गोलंदाजाचं कौतुक नक्की करावं लागेल या सामन्यामध्ये, कारण जो सामना कमी धावसंख्येचा प्रतिस्पर्धी संघ अतिशय सहज जिंकतोय, परंतु त्याच सामन्यात मात्र गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक जीव ओतून कामगिरी करतायत. बघूया चौथा हादरा बसतोय आणि नवीन फलंदाज कुठला येतोय मैदानात. बघूया कोण फलंदाज येतो, कारण श्रेयस कदम पण अजून आहेत पॅव्हिलियन मध्ये. कोणाला पाठवता जर बॅटिंग प्रॅक्टिस देत आहेत लास्ट मॅच साठी, पण मला वाटतं नवीन फलंदाज निहाल बिंद नवा फलंदाज क्रीजवरती. महेश भायडकर ज्याला कोरगाव एक्सप्रेस म्हणतात, सुंदर गोलंदाजी केली आहे, पण इकडे जे धाव फलकावर लागले आहेत फक्त 37 धावा आणि 37 धावावरती गोलंदाज यांना अचूक मारा करून विकेट्स पण कंटिन्युअस घ्यायला पाहिजे, नाहीतर ही मॅच एकतर्फा व्हायची शक्यता आहे. पण 4 विकेट्स ऑलरेडी गारद. सुंदर लेग ग्लान्स. क्षेत्ररक्षक फक्त 1 धावा इकडे जुळणार धाव फलकावर. 11 धावा. एक प्रयत्न आहे आमचा की जे मराठी व्ह्यूअर्स आहेत त्यांच्यासाठी मराठीमध्ये आम्ही कॉमेंट्री करू, कारण बरोबर सर, नक्कीच हा प्रयत्न आणि प्रयत्न अतिशय सुंदर आहे. परत एकदा सुंदर शॉट, फक्त 1 धावा लॉंग ऑफच्या दिशेने. इकडे डावखुरा फलंदाज अनुष केरकर ऑफ द मार्क विथ अ सिंगल. अजूनपर्यंत तिसरा जो षटक चालू आहे फक्त 1 चौकार बघितला आहे, तो पण फरदीन काझीच्या बॅट मधून. हे सुंदर शॉट, अप्रतिम शॉट आणि डायरेक्ट स्क्रीन वरती काय सुंदर षटकार खेचला आहे निहाल बिंदने. बराच वेळ मोठा फटका अगदी आवश्यक होता, कारण थोडंसं रन रेट पण वाढत चाललं होतं आणि कुठेतरी अडचणीत होता संघ. या षटकारानं पुन्हा सामन्यात थोडीशी आगेकूच पुढे करतोय हा संघ. सुंदर लेग ग्लान्स फिल्डर तिकडे. क्षेत्ररक्षण चांगलं एकदम अप्रतिम आणि थ्रो पण बॉलरकडे महेश भायडकर. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त आणि 3 ओव्हरच्या षटकानंतर धाव फलकावर जोडले आहेत ते 19 धावा 4 विकेटच्या मोबदल्यात. एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में हरीश काकोडकर के साथ, जो उनकी जुबान अंग्रेजी के साथ. उद्याच्या दिवसात नक्कीच हरीश सर प्रयत्न असेल आमच्या समालोचकांचा, इंग्लिश त्याचबरोबर हिंदी, मराठी आणि कोकणी कॉमेंट्री नक्कीच क्रीडा रसिकांसाठी असेल. परंतु त्या अगोदर मात्र एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में सर.
हर्ष काकोडकर के साथ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 37 रनों का लक्ष्य यहाँ पे इस टीम ने रखा है अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स के लिए। और 4 जो बल्लेबाज है वो वापस जा चुके हैं, लेकिन जो एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा शॉट जो खेला था वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा यहाँ पे निहाल बिंद का, क्योंकि कवर्स के दिशा में यहाँ पे शॉट खेलना काफ़ी मुश्किल होता है। और बहुत ही सुंदर टाइमिंग वहाँ पर अनुष किरकर द्वारा, निहाल बिंद द्वारा। यहाँ पे अच्छा कट शॉट, लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और उस मिस फील्डिंग का फायदा लेंगे यहाँ पे बल्लेबाज और 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। रमीज यहाँ पे एक पहली बार मुझे लगता है गोवा में हमने उनको देखा है, और ऐसा इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। यहाँ पे अच्छा राउंड कारपेट खेला हुआ ये शॉट, सिर्फ 1 ही रन जुड़ सकता है खाते में, और इस 1 रन के जरिए फिर एक बार स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। मैन फ्रॉम केरला परफॉर्मिंग इन गोवा। मल्लपुरम एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं रमीश, कोरगांव एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं महेश भाइडकर, और सुंदर यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं यॉर्कर लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर। और एक अच्छा मैच होता हुआ, हालांकि लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन दर्शक फिर भी डटे हुए मैदान में देख रहे हैं, और ये कैच हो सकता है। और यहाँ पे और एक मौका, इसको भी लकवक लिया है यहाँ पे फील्डर ने, और 1 विकेट का पतन होता हुआ 5वीं विकेट जाती हुई अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स। इक्कीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए और 5 विकेट, यानी कि 14 गेंदे बाकी, और चाहिए जीतने के लिए 15 रन। 14 गेंदों में 15, फिर भी मैच इंटरेस्टिंग। ये होता है क्रिकेट। अभी और 2 विकेट्स अगर यहां पे गिर जाते हैं तो ये लक्ष्य जो है वो उतना आसान नहीं होगा, काफी दबाव होगा। जो आने वाले बल्लेबाज है उनके ऊपर काफी दबाव महसूस करेंगे वो। अगर ये और अच्छी जाती है और 1 विकेट यहां पे आती है तो ये तगड़ी फाइट होगी यहां पे बल्ले और गेंद के बीच में। आनंद बद्री द्वारा 2 दिन में काफी अच्छा यहां पे माहौल, अच्छी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और उनका अभी जो लक्ष्य है वो जो और 1 मैच बाकी है ऑक्सफोर्ड टाइटंस की, उनके ऊपर लक्ष्य केंद्रित। काफी बढ़िया प्लेयर भी रह चुके हैं और खेलते ही है भी है बड़े बड़े मैचों में, खासकर लेदर बॉल में जो होता है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स वहां पे खेलते हैं। अगली जो मैच होगी वो अमेजिंग सुपर जायंट्स और धारसकार। अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर सिर्फ 21 रन, यानी कि 16 रन अभी भी बाकी, 13 गेंदों में 16 रन। रमेश की काफी उम्दा गेंदबाजी, यहाँ पे एक सटीक गेंदबाजी, और कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं यहाँ पे किसी भी बल्लेबाज को अपनी बाहें खोलने का। यहाँ पे ये देखिए पूरी जो लेग साइड के ऊपर डाली हुई, और शॉर्ट मिड विकेट भी रखा था वहां पे कप्तान ने, और एक बढ़िया ओवर, सिर्फ मुझे लगता है यहाँ पे 2 रन दे चुके हैं और 1 विकेट भी हासिल कर चुके हैं इस चौथे ओवर में। और अभी भी स्कोर बोर्ड के ऊपर 21 रन और 5 विकेट का नुकसान यहाँ पे अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स, यानी कि आखिरी जो 2 ओवर्स है वहां पे जीतने के लिए लक्ष्य है वो 16 रनों का। 12 गेंदे और 16 रन। और जब ये मैच खत्म होगी तो मैं दर्शकों के बीच में आऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा आपको। 12 गेंदे और 16 रन, और यहाँ पे वाइल्ड फायर
बैटिंग पावर प्ले यहाँ पे ले चुके हैं बल्लेबाज। सो देखना चाहेंगे यहाँ पे गेंदबाज कौन आता है ये बैटिंग पावर प्ले डालने के लिए। संदेश ठाकुर को तो डालने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो 2 पावर प्लेस होती है वहाँ पे 2 गेंदबाज डालने जरूरी। और अरशद दाफेदार यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। 16 रनों की दरकार यहाँ पे जीत के लिए जलगम रॉयल चैलेंजर्स। और दर्शकों के बीच में आऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा और अगर सवाल का सही जवाब दे सके तो आपको मिलेगा एक इनाम जो वाइल्ड फायर की ओर से दिया गया है, एक एनर्जी ड्रिंक। तो तैयार रहिएगा, थोड़ी देर में आपके बीच में मैं मौजूद रहूंगा, हरीश काकोडकर। सो कुछ तो इस टूर्नामेंट के बारे में, कुछ क्रिकेट के बारे में। और यहां पे अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, यही गेंदें करते हैं ज्यादातर स्लोअर गेंद, एक स्लोअर लेग कटर। रनिंग उनकी काफी उम्दा, लेकिन जब क्रीज पर आते हैं तो एक स्लोअर लेग कटर जो खासियत है इनकी, ज्यादातर गेंदें स्लोअर लेग कटर डालते हैं। सिर्फ 1 रन आता हुआ इस पहली गेंद पर अरशद दाफेदार। जीत के लिए चाहिए 15 रन और 11 गेंदें बाकी, 11 गेंदें शेष। अभी भी अच्छा मैच, हालांकि लो स्कोरिंग मैच है लेकिन दर्शक अभी भी देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट पर। और यहां पे मुझे देखना चाहेंगे अंपायर का सिग्नल क्या होगा। ये डॉट गेंद कहते हुए अंपायर, क्योंकि शफल हो चुके थे बल्लेबाज, अगर शफल हो चुके हैं तो अंपायर भी अपने जो राइट्स है उस पर सही। फिर एक और एक गेंद, राउंड विकेट अरशद दाफेदार। ये शॉर्ट गेंद थी और इसको उड़ाया ग्राउंड के बाहर दर्शकों में, और यहां पे मिलेगा और एक छक्का, बहुत ही बड़ा हिट। काफी बुरी गेंद थी यहां पे अरशद दाफेदार द्वारा और इस छक्के की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 28, यानी कि और 9 रन दूर। 9 गेंदे और 9 रन। अभी क्वेश्चन थोड़ा अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स के पाले में आता हुआ। अगर ये छक्का नहीं आता और एक डॉट गेंद आती तो मुझे लगता है बल्लेबाज भी काफी प्रेशर में आते। श्रेयस कदम यहां पे, और यहां पे फुल टॉस गेंद, और मुझे लगता है श्रेयस कदम यहां पे जो लोअर ऑर्डर में आते हुए वो काफी बढ़िया हो चुका है अल सरगम के लिए। 2 गेंदे और 2 छक्के, और मुझे लगता है एक प्राइज भी दिया था 500 रुपए का, वो इनाम के भी हकदार होंगे। 500 जो इनाम घोषित किया था उसके भी हकदार, लेकिन 3 रन यहां पे जीत के लिए रॉयल चैलेंजर्स को। और मुझे लगता है जिस तरह से श्रेयस बल्लेबाजी कर रहे हैं वो आसान सा लक्ष्य अभी होगा। 8 गेंदे बाकी, सिर्फ 3 रन, उतना मुश्किल नहीं, सिर्फ एक ही ओवर चाहिए थी यहां पे ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और उसको लगता है श्रेयस कदम आसानी से हासिल कर पाएंगे। ये भी शॉर्ट गेंद, उसको उठाया और खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। यहां पे मिलेगा सिर्फ 1 रन। इस 1 रन के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। जीत के लिए सिर्फ 2 रन यहां पे दूर अल सरगम। यहां पे आएंगी आखिरी गेंद अरशद दाफेदार की, इसको उड़ाया गैप में और ये चौका हो सकता है, और इस तरीके से जीत चुके हैं ये मैच अल सरगम। हालांकि कुछ पलों के लिए ऐसा लगा ये मैच आखिरी ओवर पे जाएगा, लेकिन ये तीसरी जीत 3 मैचों में अल सरगम रॉयल चैलेंजर्स, और ये दूसरी हार तीसरे मैच में। सो अगर टेबल देखा जाए तो पहले पायदान पर यहां पे सीमित होंगे अल सरगम, लेकिन अगली मैच जो है वो काफी अहम अमेजिंग के लिए। अगर अमेजिंग यहां पे जीतती है तो 2 जीत होंगे उनके पास, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 4 टीमें अभी भी जिंदा इस टूर्नामेंट में, जो कि अमेजिंग, ऑक्सफोर्ड, ऐसा इंडियंस और अल सरगम। और प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार यहां पे, हालांकि बहुत ही लो स्कोरिंग था, तो यहां पे प्लेयर ऑफ द मैच जाएगा
निहाल बिंद को, जिन्होंने अपने एक ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी और एक छक्का लगाकर 9 रन निकाले थे। सो निहाल बिंद आ जाइए और अपना प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेके जाइए। जसो आता हांव क्राउडामध्ये येता, जसो टाइम मेळा बारीक बारीक क्वेश्चन आसतले, पळोवया कोणाक प्राइज मेळटा। चड डिफिकल्ट ना, वायल्ड फायर। सो म्हाका दिसता हो क्राउड लागीं आसा। क्वेश्चन कोण पयलीं आन्सर करता तांकां आसतलो। ह्या टुर्नामेंटाक मॅन ऑफ द सिरीज प्राइज आसा, ती बायक आसा, ती कोणें स्पॉन्सर केल्या? येवन मायकाचेर सांगपाचें, पयसुल्ल्यान सांगल्यार प्राइज मेळपाना। मॅन ऑफ द सिरीज एक बायक स्पॉन्सर केल्ली आसा, ती बायक खंयच्या कंपनीन केल्ली आसा ताचें नांव सांगचें। ओदोचान सांगता, एनाउन्स करता, त्या खातीर लक्ष दिवपाक कॉमेंट्रीक। क्वेश्चन सिंपल आसा, यो सांग, बेगीन सांग, नाव सांग, नाव सांग, बेस्ट सांग। परशुराम। कोण परशुराम तो? परशुराम राजपूत। तुझे नाव सांग मरे। किती क्वेश्चन क्या वो तो सुनया भी नहीं मैं। क्वेश्चन मॅन ऑफ द सिरीज बायक आसा, ती इलेक्ट्रिक बायक, ती स्पॉन्सर कोणे केल्या? ताजो स्पॉन्सरर कोण? मॅन ऑफ द सिरीज जी बायक स्पॉन्सर केल्ली आसा ती थंय आसा, ती कोणे स्पॉन्सर केल्ली आसा? इजी आसा क्वेश्चन सामको। कोण पयली येता ताका हे वायल्ड फायरा तर्फे प्राइज आसा। कोण येता बेगीन बेगीन मायकाचेर येवन सांगपाचें आपल्या नाव आनी आन्सर। इरफान। इरफानान केला, ओके इरफान, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। नेक्स्ट तुजें नाव म्हणल्यार तूं गडगंज जसो सद्या फामाद जाल्लो आसा, तुवें दिली ना ती, नेक्स्ट वर्सा तुजे कडल्यान बायक घेवया। रॉंग आन्सर, सागर गोसावी। येस, एनीवन? बायक कोणे स्पॉन्सर केल्या? तुझे नाव कितें बाब? सागर। तुझे नाव सागर, आन्सर कितें? इमो। येस, एब्सोल्युटली रायट। सागराक हे प्राइज वता, असो वता नाका? कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका वायल्ड फायरा तर्फे। वायल्ड फायराचो काउंटर हांगा आसा। हो आशिल्लो पयलो क्वेश्चन। दुसरो क्वेश्चन परत एकदा ह्याच क्राउडाक। सेकंड क्वेश्चन, मॅन ऑफ द फायनलाक एक बायक आसा स्पॉन्सर, ती कोणे स्पॉन्सर केल्या? बायक एक आसा, ती कोणे स्पॉन्सर केल्या? मॅन ऑफ द फायनलाक बायसिकल एक दिल्ली आसा, सायकल, ती कोणे स्पॉन्सर केल्या? ऑर्गनायझर्साक अलाउड ना, ऑर्गनायझर्साक वेगळे क्वेश्चन घेवन येता। आसा कोण हांगात लागींच आसा? मैच इस मैच का निहाल बिंड। कोण? बायक आसा ती पळय। तो हरीश सर मैदान पर थोड़ा सा रुक करते क्या खेल शुरू होता हुआ, मैच शुरू होता हुआ मैदान पर, और दोनों टीम 12th मैन क्वेश्चन सांगिल्लो आसा, आन्सर म्हाका तुमी येवन सांगपा जाता, अजून पर्यंत ओपन आसा। सर एक मिनट, हरीश सर प्लीज आइए जरा मैन ऑफ द मैच के लिए, क्योंकि मैच शुरू हो चुका है। एक लोअर फुल टॉस गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेकिन एक सिंगल तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ रनों का खाता मैदान पर शुरू होता हुआ मुकाबला आज का 8वां अमेजिंग, और उन्हीं के साथ धाड़ सकल, ये दो टीम आमने सामने इस मुकाबले में। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी करते हुए सामने से। आताचे मॅन ऑफ द मॅच आसा ते जीसीसीचे आदले अध्यक्ष मुझफ्फर बाब, तशेंच
आणि एक प्लेयर मजर बाब शेख ऑल द वे फ्रॉम दुबई. श्रेयस कदम मातसो हांगा यो. श्रेयस कदम, there is a cash prize for you. Mazhar Sheikh all the way from Dubai and Muzaffar Sheikh, ex-president of GCC. Yes, man of the match. I have already announced Nihal Bind. So Nihal, please come and collect your man of the match prize. Special for the tournament, he has come all the way from Dubai, and here is the man of the match awardee, none other than Nihal Bind. निहाल एक बरें परफॉर्मन्स जालें, बरें परफॉर्मन्स जालें आनी म्हाका दिसता एक लो स्कोरींग मॅच जाल्या. सो 2 विकेटी जे आतां तुका मेळ्ळ्या तुका, कारण जी बॉलिंग अटॅक जी पळयली ती जाल्यार अजरगमाची मातशी कंपेर्ड टू तुमची जी बॅटिंग आसा ताच्या परस बॉलिंग मातशी वीक आसा. सो तुजें हें परफॉर्मन्स तुकाय लिफ्ट करतले आनी टिमीकूय लिफ्ट करतले अशें दिसना. स्टार्टींग फर्स्ट 2 गेमींतली रिदम मेळनासली म्हाका, पण कंटिन्यूस घातले म्हणून आतां 2-3 मॅची आतां बरी पडटा बॉलिंग. सो कॉन्फिडन्स मेळ्ळा म्हाका बी आनी टिमीकचो म्हाजेर. तुज्या जर तर तुजी बॅटिंग आनी बॉलिंग तूं एज अ ऑलरावंडर म्हणून आसा जाल्यार तुजो स्ट्रॉंग पॉयंट कितें, बॅटिंग काय बॉलिंग? बॉलिंग. बॉलिंग तुजो स्ट्रॉंग पॉयंट म्हणल्यार तूं एक बॉलिंग ऑलरावंडर असो ह्या टुर्नामेंटाक घडयता. आनी तुका दिसता की 3 मॅची तुमी खेळ्ळा आनी 3 मॅचीक जैत मेळयल्ले आसा. सो एक बरो मोमेंटम तुमी खेळला, पूण अजून पर्यंत तुमी पावना. सो तुका कितें दिसता की लास्ट मॅच जी आसा ती बी क्रुशल आसा. सो परफॉर्मन्स करपाक तुमचे कितें प्लॅन्स आसा, स्ट्रॅटजी आसा नेक्स्ट मॅचीक? ना सर, एवरी गेम आमी न्यू गेम कशी घेता, एवरी गेम जिखपाकूच जाय तशें घेता. अशें ना की खंयची गेम लास्ट गेम अशी आसा म्हणून. एवरी गेम इम्पॉर्टंट आसा. आनी कितें डिफरन्स दिसलो तुका, कारण दिसाची मॅच आनी रातची मॅच सदांसजी गोंयान फ्लडलायट टुर्नामेंट जायना आनी येदो व्हडलो टुर्नामेंट जाल्यार घडोवन येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो कितें डिफरन्स दिसलो दिसाचो आनी रातचो? एडजस्टमेंटाक प्रॉब्लेम जाता काय दिसाचे बरें आशिल्ले आनी रातचे ओके आशिल्ले? दोनूय आसा बरें. एक्चुअली आमकां ऑर्गनायझरांक थँक करपाक जाय की आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा असले फ्लड लायटा अंडर खेळपाक बी. सो थँक्स SGPL. आनी इतलेशे डिफरन्स ना, फक्त बॉल मातसो कमी ट्रॅव्हल जाता नायट टायमीर. ओके, बॉल मातसो कमी ट्रॅव्हल जाता. गुड लक टू यू इन द नेक्स्ट मॅचीस. तशेंच श्रेयस कदम हांव रिक्वेस्ट करता, हे 500 रुपयाचे इनाम, कारण 2 बॉलां 2 सिक्सरी मारिल्ल्यो, ह्या खातीर ताका हे कॅश प्रायज इनाम फावो जाता. श्रेयस कदम जे अनाउन्स केल्ले एंथोनी बाबा ऑल द वे फ्रॉम USA. So congratulations to the winners. Congratulations dear for a wonderful performance. So it's bye from the presentation and the arena, and I'll be going into the crowd. थैंक यू सर. और इस बार अल्टी पल्टी बहुत ही शानदार टाइमिंग, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, फील्डर गेंद पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते खुद कप्तान अब मोर्चे पर. ओपनिंग जोड़ी में सर्वेश सामने उन्हीं का साथ देते हुए लेफ्ट हैंडर बैटर एजाज कुरैशी. पावर प्ले का पहला ओवर, जिग्नेश पटेल गेंदबाजी करते हुए और स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान से. थँक यू अशोक सर. परत अनाउन्समेंट लागीच आसा. मॅन ऑफ द फायनल आसा ती बायसिकल, ती कोणे स्पॉन्सर केल्या? सायकल आसा स्पॉन्सर केल्ली आसा, ताच्या स्पॉन्सराचें नांव जाय. जुबेर, तुजें नांव कितें बाब? तालुकान सांगला जुबेर. जुबेर तुवें स्पॉन्सर केल्या बायक बायसिकल? ना खंय ना ना तुका अलाउड ना. राव रे मातशें क्रावडांक हें करून सांग 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 कोण आसा बेगीन. मातशें सुद्दां एफर्ट घेना तुमी, मातशें सुद्दां. तुजें नांव कितें बाब? समी. समी. आनी समीन आन्सर केल्ले आसा DGCOM. एब्सोल्युटली रायट. हे समीक वता एनर्जी ड्रिंक, हे घे तुका वायल्ड फायरा तर्फे एनर्जी ड्रिंक तुका परबी. थैंक यू सर. बीच बीच में
कमेंट्री के साथ मैदान पर भी जुड़ जाएंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन, दर्शन बांदेकर आ चुके हैं। खुद का पहला बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का, और जो 2 पावर प्ले का खेल, पहला पावर प्ले का, उसके बाद दूसरे से 5वें तक की बैटिंग पावर प्ले का ओवर, और वो लेकर दर्शन बांदेकर खुद का पहला, टीम का दूसरा। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, गेंद थोड़ी सी खड़ी हो गई, मिड विकेट पर फील्डर सामने, बिल्कुल हाथों में गेंद, और सफलता मिलती भी दर्शन बांदेकर को। थैंक यू सर, हरीश सर। बिल्कुल सवाल जवाब बीच बीच में आपके साथ होने चाहिए मैदान पर, हरीश सर। और आणि एक क्वेश्चन परत एकदा वाइल्ड फायर एनर्जी ड्रिंक क्वेश्चन आता या सपोर्टर्स जांगा जे बशिल्ले आसा मॅच पळोवपाक। आयच्या दिसाक एक हॅट्रिक जाल्ली, एक हॅट्रिक ती कोणे घेतल्या त्या बॉलरान नाव सांग, मायकार येवन नाव सांग, तुमच्यान सांगनाका। पयली कोण येता? येस, तुझे नाव? बैरू माणपो वळखता? आन्सर नाव सांग। रोहन एब्सोल्युटली, रोहन साळगांवकारान 4 विकेटी घेतिल्ल्यो आणि हे तुका वता एनर्जी ड्रिंक। बेगीन सांग आन्सर, बेगीन सांगता ताकाच मेळटले। येता परत एकदा येता आणि क्वेश्चन्स घेऊन। थैंक यू सर। न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं अजित मोहिते, आउट होकर वापस एक चौका लगाया कप्तान ने, सर्वेश ने, और 7 रन पर खुद के टीम का स्कोर 8 रन 1 विकेट पर। सामने दर्शन बांदेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सफलता हासिल करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर, और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और गेंद उनके ऊपर से चली गई इसी बारिका से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, आते आते हाफ वाली पर लेकर एक अच्छा टाइमिंग। थोड़ी से शुरू में ऐसा लगा कि शायद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर के लिए मौका बनेगा, लेकिन गेंद बहुत दूर, और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओ ये मौका बनेगा, फाइन लेग पर शॉट, फाइन लेग पर इस बार टॉप पिच लगा, मिस टाइम शॉट, एक पुल करना चाहते थे जो ऑन साइड पर, लेकिन दर्शन बांदेकर दूसरी सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए। हरीश सर एक बार फिर से जुड़ जाते हैं आपके साथ। बिल्कुल, जो कि धाड़ साकड़ के लिए ये टूर्नामेंट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। बोलिए। आणि एक क्वेश्चन, सामको इजी क्वेश्चन, या टुर्नामेंटाचो टायटल स्पॉन्सर कोण? SGPL 2.0 एडिशन हाजो मेन टायटल स्पॉन्सर कोण? ऑप्शन ऑप्शन ओदोच्यान सांगा, सगळ्या बोर्ड मारिल्ले आसात, म्हाका दिसता सामके इजी, तुमच्या दोळ्या मुखार आसा, कोण पळयना। तुझे नाव कितें बाब? नवाज। आन्सर कितें? शगुन। एब्सोल्युटली रॉंग। टायटल स्पॉन्सर हांवें म्हणल्यार टायटल स्पॉन्सर। न्यू बैटर मैदान। हरीश सर, कमेंट्री बॉक्स में सिर्फ 3 ही जो कि और 2 आपके हाथों में है, तो टोटल 5 है बचे हुए। और इस बार गेंद, ये मौका बनेगा, मिड विकेट पर फील्डर दर्शन बांदेकर तीसरे विकेट की तलाश में, लेकिन गेंद हाथों से छूटी। कैच का मौका बना था, लेकिन दिन की बात रात की बात अलग होती है। आखिर में जो कि बिल्कुल सामने जब गेंद आती है तो बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई देती है, और वही परेशानी होती है फील्डिंग में। जजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, और लगभग थोड़ा सा मैं तो कहूंगा दर्शन बांदेकर और एक विकेट सफल सा मिल सकती थी। इसी बीच में एक सिंगल बाबल जोरे खुद के व्यक्तिगत 5 पर, एजाज कुरैशी उनका साथ देते हुए 1 पर, और टीम का स्कोर 19 रन 2 विकेट पर। तेज गेंद पुल किया बड़ी खूबसूरती के साथ, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर एजाज कुरैशी के बल्ले से, जितनी तेज गेंद उतना तेज बल्ला घुमाया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए छक्के के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पर। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ दूसरे ओवर का। जुड़ जाते एक बार फिर से हरीश काकोड़कर के साथ।
गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से होता हुआ, बहुत ही शानदार शॉट। एजाज कुरैशी 7 पर, बाबल जोरे एक चौके के साथ 5 पर, सर्वेश 7 रन बनाकर, अजीत मोहिते 6 रन बनाकर, 2 सफलता दर्शन बांदेकर को, एक कैच, तीसरी से सफलता। लेकिन यह बिल्कुल एक हिस्सा है क्रिकेट का, ये बातें होती रहती जाएगी मैदान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन देखना होगा, कौन आते हैं बॉलिंग मार पर, जो अपाली कलंगुट कर दिखाई देते हुए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो मैदान पर दिखाई देते हुए गेंदबाजी पर। खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर राउंड विकेट राइट आर्म अपने बॉलिंग मार पर अपाली कलंगुटकर। और अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे इस बार शॉट, लेकिन थोड़ा सा स्लोअर वन गेंद, ज्यादा फ्लाइट दिया था इस बार और बल्लेबाज को बीट किया इस गेंद ने। गेंद विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और अपाली अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर तीसरा ओवर मैच का चलता हुआ 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार लेग स्टंप पर यह गेंद देखना होगा, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, बल्ले से लगी गेंद और जब तक एक रन पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में। 2 लेफ्ट हैंडर बैटर एक ओर से बाबल जोरे, सामने अब एजाज कुरैशी और बॉलिंग मार पर अपाली कलंगुटकर। पिछली गेंद पिछले ओवर में बहुत ही शानदार एक तगड़ा शॉट एजाज कुरैशी की बल्लेबाजी में। बढ़िया शॉट, एक शानदार कवर ड्राइव, बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर एक सिंगल, दूसरे के लिए जरूर पलटे, थोड़ा सा थ्रो थोड़ा सा जो कि दूर हो गया और जब तक बैकअप करते गली पर फील्डर, दूसरा रन मुकम्मल किया इस बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन दूसरे रन की बिल्कुल संभावना नहीं थी, लेकिन थ्रो थोड़ा सा दूर हो गया विकेट कीपर के पीछे। एक अच्छा शॉट बल्ले के बीचों बीच हाफ वाली पर लेकर, इस बार ऑन साइड पर खेला, गेंद उतनी दूर नहीं थी लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं था शॉट्स के और लेग पर। विकेट कीपर तेजी के साथ निकलते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बड़ी तेजी के साथ पूरा किया। एक साझेदारी की सख्त जरूरत है क्योंकि खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। और बेहतरीन शॉट इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, लेकिन सामने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात था फील्डर, उनके हाथों में गेंद। आप एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिप्ले में किस तरह से ये गेंद थी, किस तरह से शॉट खेला था और बाउंड्री लाइन पर जो फील्डर मौजूद था उनके हाथों में गेंद। देखिए आप एलईडी स्क्रीन पर किस तरह से ये खेल हुआ मैदान पर। पिछली गेंद पर छोटी गेंद पुल किया और मिड विकेट पर फील्डर। म्हळ्यार आनी एक क्वेश्चन येता हांगा आसा, क्वेश्चन असो की आयच्या दिसाक एका प्लेयरान 4 बॉलां 4 सिक्सरी मारिल्ल्यो, 4 बॉलां 4 सिक्सरी, त्या बॅट्समॅनाचें नांव कितें? हांगा यो आनी नांव सांग, फूल नांव सांगपा जाय। तुजें नांव सांग पयलीं, वळखता तूं प्लेयर? सतीश तोकले, आन्सर सांग। एब्सोल्युटली रायट, नवतांत गांवकारान 4 बॉलां 4 सिक्सर मारिल्ल्यो, बाळीचो प्लेयर आनी हे जे वायल्ड फायरान स्पॉन्सर केल्ले आसा एंट्री वता सतीश बाब टोकले, ऑल द वे फ्रॉम दारबांदोडा। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। एक चौका लगाकर बाबल जोरे आउट होकर वापस, टीम का तीसरा नुकसान और न्यू बैटर मैदान पर मोहित गांवकर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, ऑफसाइड पर हल्के से डिले आते से पुश किया गेंद को कवर पर फील्डर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर जब तक आते पहली गेंद पर अपना खाता खोला मोहित गांवकर ने। 1 रन अपाली कलंगुटकर
तीसरा ओवर जो कि टोटल और स्कोर रुका हुआ 10 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बोलिए सर। थँक यू अशोक सर. असो आसा आनी एक सद्या एक आसा हातान आनी हांव तुमकां आनी एक क्वेश्चन विचारता. हो जावन आसा साऊथ गोवा प्रिमियर लिगाचो सेकंड एडिशन. क्वेश्चन असो आसा की फर्स्ट एडिशन जालो ह्याच ग्राउंडार सगळ्यांनी पळयल्लें आसा आनी म्हाका दिसता खूब जाण हांगा फर्स्ट एडिशनाक आशिल्ले आनी सेकंड एडिशनाक आसा. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट फर्स्ट एडिशनाचो कोण ताचें नांव कितें सगळ्यांनी सांगलें जाल्यार प्रायज वचपाना. प्रायज येवपा जाय जाल्यार मायकार येवन नांव सांगपा जाय आनी आन्सर सांगपा जाय. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट. येस तुजें नांव. सिद्धेश शेर्लेकर. सिद्धेश शेल्लेकर नाव. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट फर्स्ट एडिशन. एब्सोल्युटली रायट. मोहित गांवकर हे वायल्ड फायरा तर्फे एनर्जी ड्रिंक जे आसा तुका फावो जाता. परबी तुका कॉंग्रेच्युलेशन्स. Thank you so much. Nice tournament and nice organization. Ever in Goa. थँक यू व्हेरी मच. जशे ऑल द स्पेक्टेटर्स आनी हांगा बशिल्ले आसा तुमी आमकां अशें मोटिवेट करतात जाल्यार खूब बरें दिसता. कारण एक बरो व्हडलो टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडला आनी लोकूय हांगा खूब जमिल्ले आसा. हांव येता फुडें येता आनी आनीशी खुबशीं इनामां आनी क्वेश्चन घेवन येता. सो मातशे बारीकशे तुमी जे हांगा स्पॉन्सर्स आसात नाल्यार आनी कोण आसात तांकां स्टडी करात कारण स्क्रिनीचेर आमी सगळे दाखयतात. जिग्नेश पटेल गेंदबाजी पर खुद का दूसरा ओवर. लोअर पुलटास गेंद हल्के से गेंद को ड्राइव किया. कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. 2 रन पर खुद के व्यक्तिगत मोहित गांवकर एजाज कुरैशी ने एक बड़ा शॉट लगा चुके हैं. अब तक बल्लेबाजी में बहुत कुछ दारोमदार रहेगी उनकी बल्लेबाजी पर और स्कोर आगे निकलता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 8वां मुकाबला चलता हुआ. आज के रात के 2 मैच अभी भी बाकी है. फुल टॉस गेंद हवा में थोड़ी सी अपेश गेंद जरूर थी लेकिन फील्डर से बहुत दूर थी और जब तक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते फिर से एक सिंगल जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में. दाट साकड़ क्रिकेट टीम सामने बल्लेबाजी कर रही है. आड़े बल्ले से स्वीप करना चाहते थे इस बार लेकिन बिल्कुल बीट हुए उस गेंद पर. दाट साकड़ की हम बात कर रहे थे. पहला मैच हारी, दूसरा मैच वो भी छूटा, तीसरा मैच वो भी छूटा. आखिरी मुकाबला चौथा मुकाबला हो रहा है उनका अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के साथ. बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर एक बहुत ही शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर लेकिन गेंद को बिल्कुल रोक नहीं पाए. गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए. बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार. दूसरा छक्का एजाज कुरैशी के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर. बहुत ही शानदार टाइमिंग. लेकिन होगा फिर से एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में. 1 रन सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 40 पर. खेल समाप्त होता हुआ और एक ओवर यानी 4 ओवर का और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर. दाट साकड़ सनराइजर्स क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला जारी अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के साथ. गुरुशंत चिखलगी उर्फ मेंडिस गेंदबाजी पर. खुद का पहला टीम का 5वां ओवर स्कोर हो चुका है 4 ओवर के बाद 40 रन. कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शमीम जो कि जरूर स्वागत है सर आपका. गुरुशंत सामने से राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर. मोहित गांवकर 3 पर सामने स्ट्राइक पर 2 छक्के एजाज कुरैशी बल्लेबाजी में. 5वें ओवर की शुरुआत मैदान पर और हल्के से टैप किया. बहुत ही शानदार क्रिकेट. एक बेहतरीन शॉट थर्ड मैन बाउंड्री पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर.
44 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 44 लॉस ऑफ 3 विकेट, 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शायद जाते जाते एग्जिट कोशिश तो होगी दाड़सागढ़ क्रिकेट टीम की, क्योंकि आज के 3 मैच लगभग हार चुके हैं और कोशिश होगी इस मैच में शायद जीत के साथ वापस लौटे। हल्के से फिर सेट स्लाइस किया था गेंद को, लेकिन फील्डिंग मौजूद। शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड करते थोड़े से हाथों से दूर गेंद निकले, गली पर फील्डर वो साथ निभाते हुए और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। 101 रन के साथ से स्कोर टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी, जब मौका मिल रहा है तो बड़ा शॉट लगा रहे हैं एजाज कुरैशी, और सामने अब मोहित गांवकर सामना करेंगे अगली गेंद का। गुरुशंत बॉलिंग बार पर। और इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद के नीचे, और बिल्कुल बड़े इत्मीनान के साथ उस कैच को हाथों में लपेटते हुए सफलता मिलती हुई चौथा विकेट, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर दर्शन बांधे कर गेंद को हाथों में कैच करते हुए चौथी सफलता। आउट होकर वापस 3 पर कूद के मोहित गांवकर। गुरशंत को मिली सफलता, जो पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए खेल जारी 5वें ओवर का, और स्कोरबोर्ड पर टोटल 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाला मैच होगा जो आज का 9वां मुकाबला ऑक्सफोर्ड टाइटंस और एएल, जो कि आने वाले मैच खेलेगी एएल झरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। दोनों टीम टॉस के लिए दोस्तों कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। न्यू बैटर मैदान पर। समर्थ गावस हल्के से इस बार पीछा किया तो ऑफ स्टंप पर इस गेंद को अपील हुआ अंपायर की, और कैच के लिए विकेट कीपर का और गेंदबाज का, लेकिन बिल्कुल कोई असर नहीं था उस अपील का अंपायर के ऊपर। एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। गुरुशंत चिकल की गेंदबाजी पर 5वां ओवर मैच का जारी, अभी भी स्कोरबोर्ड पर टोटल 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 छक्के अब तक बल्लेबाजी में एजाज कुरैशी, एकमात्र बल्लेबाज सामने से बिल्कुल गेंदबाजी का प्रतिकार कर रहे हैं, और समर्थ गावस आ चुके हैं मैदान पर। बड़ा शॉट देखना होगा, गेंद वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर सामने बिल्कुल फील्डर के हाथों में, और समर्थ गावस आउट होकर वापस। आप देख सकते हैं रिप्ले एलईडी स्क्रीन पर, सुरभि लाइट्स शब्बीर भाई, और जरूर देखिए किस तरह से यह शॉट खेला था समर्थ गावस ने, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बिल्कुल हमारे लाइट के पोल है उसी के साथ जो फ्लैग है बिल्कुल जो कि मैदान पर, थोड़ा सा दोस्तों अगल बगल में बैठे, आपका साथ बहुत जरूरी है। आप है तो बिल्कुल मजा है इस क्रिकेट का आपका होना, तो दोस्तों थोड़ा सा सहयोग जरूर करें। जो इलेक्ट्रिक पोल है वहां पर बिल्कुल थोड़ा सा हटकर दूर, और जो स्क्रीन है बिल्कुल उस स्क्रीन से थोड़ा सा अगल बगल में बैठे। थैंक यू। और सामने जो साइड स्क्रीन है दोस्तों, वो थोड़ी सी बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए परेशान कर रही है, तो साइड स्क्रीन से थोड़ा दूर हो जाइए। वो बिल्कुल साइड स्क्रीन जो कि खिलाड़ियों के लिए है, आप उसके अगल में बगल में थोड़ा दूर होकर बैठिए। तो न्यू बैटर और एक मैदान पर आते हुए सफलता गुरुशंत चिकलगी को, और बिल्कुल स्क्रीन के सामने जो बाइकमैन है, दोस्तों आपसे गुजारिश है प्लीज थोड़ा सा दूर हो जाइए वहां से। तो न्यू बैटर मैदान पर विशाल गांवकर, एक अच्छा ओवर, 2 सफलता गुरुशंत को मिलती हुई। पहली गेंद पर चौके लगने के बाद स्कोर वहीं पर रुका हुआ 45 रन। खेल समाप्त हुआ 5वें ओवर का, 5 विकेट के नुकसान पर 45 रन। आने वाला ओवर होगा आखिरी ओवर, और एक बार फिर से हम कॉल कर रहे हैं आने वाले मैच के लिए। आइए ऑक्सफोर्ड टाइटंस और उन्हीं के साथ मुकाबला होगा अल झरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का। दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए। टॉस के लिए आखिरी ओवर का खेल बाकी है, और उस ओवर के साथ टॉस होगा अगले मैच का। अंतिम ओवर नरेश असोंडेकर गेंदबाजी पर, हमारे
साथ ही कमेंटेटर सर सागर गोस्वामी जुड़ चुके हैं। चलिए दोनों टीम कैप्टन आइए, टॉस हो जाएगा और नरेश असोंडेकर अपने बॉलिंग बार पर, कप्तान टीम के। बढ़िया शॉट इस बार, बल्ले के बीचों बीच कवर पर फील्डर मौजूद है। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन कैच, दौड़ लगाकर एक अच्छा कैच और सफलता पहली गेंद पर आखिरी ओवर के नरेश असोंडेकर को मिलती हुई, लेकिन दाद देनी पड़ेगी फील्डिंग की। बहुत ही शानदार कैच जो टेक्स्टा कवर पर तेजी के साथ आते हुए, और एक सफलता विकेट मिला जो कि टोटल छठा विकेट अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है जरूर उनके लिए। तो हमारे कैमरामैन और उन्हीं के साथ हमारे कमेंटेटर टॉस के लिए बिल्कुल जुड़ चुके हैं। अमेजिंग की हम बात कर रहे थे, पहला मैच जीत चुकी है। दूसरे मैच में क्या कांटे का टक्कर रहा, आखिरी गेंद पर मुकाबला जारी रहा, वो मैच हाथों से छूटा। ये मुकाबला तीसरा 10वां मैच, अभी भी उनका जो आखिरी मैच है वो बाकी है, लेकिन उससे पहले देखना होगा ये मुकाबला बहुत कुछ निर्भर करेगा। न्यू बैटर मैदान पर मुकुंद कटेकर न्यू बैटर, नरेश असोंडेकर अपने बॉलिंग बार पर, पहली गेंद पर सफलता अपने टीम को दिलाते हुए कप्तान। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान नरेश असोंडेकर। आखिरी ओवर का खेल जारी और देखना होगा कि कितने रन बना लेती है इस आखिरी ओवर में। So here we are with the toss of the next match. Two captains out at the days for the toss. ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर एक शानदार शॉट, 6 रन के लिए गेंद। Call. Tails it is finally a toss in favor of Mukhtar Qadri. So what is your decision, the gentleman? Yeah, we like to field first because they having a good best batting lineup. Let's up for the best 36 ball we have to put, and if we win only we are inside, others we are out. So definitely both the teams are trying to be at the top of the table. So this is going to be a very good contest. So Mukhtar Qadri, after winning the toss, immediately decides to field first. Best of luck for you, captain. Do your homework. Meanwhile, Ajay, I think this is the first toss that you have lost. But still, this is a very good match. And what are you thinking at the moment? For night time, it is not like that. Before it was morning time. Now the 60-70 run is good target. So we will looking to only the 60-70 run for batting first. Our batsman is good, so we'll try to score at least 70 run to put on the target on against them. And definitely the dew factor will be something that will be bothering you as the match you are going to play. Yeah, dew factor will be there, but for last match our bowlers bowled very well, so we'll looking at same performance against with them. So hopefully we'll see. Okay, anyways, best of luck. So now it's time for a team of, captain's photograph with the officials. So best of luck both the captains. Meanwhile, the news from the center. Oxford Titans captain Mukhtar Qadri winning the toss and immediate decides to bowl first. थैंक यू सागर। टोटल स्कोर हो चुका है 53 और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 54 का। 54 रनों का टारगेट। अगले मैच का टॉस हो चुका है। दूसरी इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर जुड़ जाते हैं। आइए सागर गोस्वामी के साथ। आइए सैगी, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में।
एक कळवणी आसा जर ग्राउंड्समॅन हांगा आसा जाल्यार कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन मातसो येवचो ही मॅच जाल्या उपरांत मदीं जो ब्रेक टायम आसतलो तेन्ना मातशें जें कितें पिचेर जें करपाचें आसा हांगा मातशें मार्कींग करपाचें आसा मातसो डस्ट आसा तोय सायडीन काडपाचो आसा जर ग्राउंड्समॅन हांगा आसात जाल्यार मातशे कॉमेंट्री बॉक्सा कडेन येवचे तुमकां इन्स्ट्रक्शन्स हांगा आमचे जे टुर्नामेंटाचे कोऑर्डिनेटर आसा ते दितले. So meanwhile 54 is the target from 6 overs. So here we are having a replica of Usman Patel all the way from Sangay. If anybody wants to click the pics, then he is available for a sweet memory. Similar looks, even follows Usman Patel for each and every moment. So now we are into the second innings, as 54 is the target against Amazing Super Giants. So here we can see the Orange Army onto the field. Captain having a final word with the teammates as how to carry on the proceedings in this run chase. Just 54 required from 6 over, that is 30 legal deliveries. I beg your pardon, 36 legal deliveries and 54 runs to get. But this calculation looks to be very simple, but as the night is on, the floodlights are on, and even the dew factor will come into act. This target may look a little difficult if there is a decent bowling from the fielding team. Requesting openers to kindly take your guards as two openers out in the middle for Amazing Super Giants. Rajat and Sumit Dongre and Rajat Kudalkar. So here's a small hurdle of Dart Sakal team discussing and trying to execute the plan that they have planned before entering the ground. So even two umpires out in the middle. Shiv Charan Davolkar, popularly known as Babu. There are two Babus who are doing the duty of umpire. One is now the third umpire at the moment. And his partner is none other than Sadgiri Naik. So two officials out in the middle to take the charge of the further proceedings. So stage is set for the run chase. First over is the power play over. Let's see whether this is going to be power hitting, as the target is of 54 runs from the 6 overs. 36 deliveries, 54 runs to get. This looks to be a very easy task for Amazing Super Giants. This is a most balanced team if we look at the teams that are participating in this tournament. Gaurish Nagvekar with the ball in his hand. With the umpire's call, here we go into the run chase. The first delivery about to be delivered from stadium end. Short pitch cuts the ball, pierces the gap between point and the cover point fielder.
welcome boundary to start the proceedings. This is the strength of the opener Sumit. Cuts the ball finer away from the fielder. Opens the account with a boundary. So exactly half a century more required from here on for amazing Super Giants. Full up his delivery, plays cautiously a drive straight to the mid of fielder. No chance of a run. Knows that it is a stiff target. So don't want to take any risk. Don't want any run-outs. This is a wonderful strategy that we can see from outside the ground. Low full touch engine pace, equally well fielded, chance of a run out, direct hit would have mattered, but Sumit is very quick onto his feet, completes a single out in a flash, and with that team total moves to 5. And with that, Rajat is on the striking end for the very first time in this match. This is a league format, you have to play against every team. So different bowler, different strategies. Let's see what is going to happen now. Wonderful strike, straight over the bowler's head. No chance for any fielder. This is a beautiful strike. The boundary takes the team total furthermore to 9 runs. Rajat with a decent cricketing shot on the up over the bowler's head. No chance for any fielder as this is a power play. Only 2 fielders are kept outside the 30-yard circle patrolling the fence. And there are lot many gaps that we can see outside the 30-yard circle. Change in pace, equally well played, switch it in act, slight fumble. That will allow both the batters to take another single. And with the single, team total moves to double digit, that is 10. 54 is the target, power play over is still on. Sumit Dongde is on the striker's end. Another good delivery, pacey delivery, wanted to cut the ball. Ball bouncing at the very last moment, making it difficult for the batsman, and that concludes the power play over number 1. After completion of first over, score is 10 without any loss of wicket. And in this, both the batsmen are playing at the individual score of 5 runs each. So decent start in the run chase. So now the second over of the inning will be bowled by Firoz Sheikh from the swimming pool end. Marking his run-up, left arm sensation. We have seen him bowling decent deliveries in the previous half of this day. As this is a day-night format. Now this is a different situation. Now this is a different scenario for the teams. They have to change their strategies. So let's see what is going to happen out in the middle. Second over in progress. Firoz Sheikh with the ball, left arm over the stumps. Oh my dear, ball takes the leading edge of the bat, travels quickly to the third man boundary. No chance for the keeper, neither for the fielders as the short third man was kept little wider. And the welcome boundary on the very first delivery. That boundary takes the team total to 14. This number reminds me of the beautiful day that is going to happen in this month where people will be coming together to celebrate. Another good delivery, but down the leg, some stretch of arm by the umpire. And that a lovely day is moved by 1 run. 15 on the board.
So Rajat shuffling slightly outside of them. Good throw. Shy at the striker's end. If it was a direct hit, then definitely there would have been curtains for Sumit. With this single score moves to 16. Firoz Sheikh gradually onto his runner mark, left arm over the stumps as two right-handed batsmen are out in the middle. Different game, different strategies. There's a connection slightly away from the bowler. Meanwhile, that will give a chance for the batsman to take a single. And with the single, score further moves by another run to 17. Second over in progress. Still batting power plays with the batting team. So Firoz Sheikh in the hunt of a wicket. Is he going to get a wicket on this delivery? Lot of many things are being cashed by the spectators as well. Lovely delivery, equally well played, cautiously towards the cow corner region. Flick of the wrist, strong wrist into act. Takes a single to move the scoreboard to 18. Another fuller delivery, there was a definite sound, but maybe bat hitting the deck. The wide has been cancelled as it was off the bat. After hitting the bat, the ball bounced in front and then travelled to the keeper. Another good delivery straight onto the legs. It was a toe breaker, but a bat came in the middle, and second over concludes with a dot delivery. So after completion of 2, it's 18 without any loss of wicket. So now this is going to be the batting power play. That's the signal from the umpire. Rajat will be at the striker's end, and this is going to be a challenge for the bowler, who is going to take the responsibility in this batting power play, as only 3 fielders can be plotted outside the 30-yard circle patrolling the fence, and even there will be more vacancies outside the 30-yard circle. That will be easy task for the batsman. If he connects in those vacancies, more runs will flow. But let me tell you, at times, if a bowler is shrewd, then this power play can turn in the favor of the fielding team. The same scenario we have seen when Rohan Salgaonkar was bowling. That was a batting power play. 3 fielders were plotted outside the 30-yard circle, and in that bargain, Rohan Salgaonkar has considered a beautiful over, taken 3 wickets. Is it going to happen in this match? And another prospect with the ball to bowl into this batting power play. Mohit Gaonkar, a strong character who was a player of the tournament last edition. Now with the ball, Rajat in front of him. Shuffle down the track. There's a chance of a run out. Slight fumble from the fielder allows both the batsmen to complete a single. That single moves the scorecard by 1 run, and the team total moves to 19. Third over in progress. First delivery goes for a single. 19 on the board. Again, wanted to cut, but I have sensed that this is going to be called a wide. The guess was right. Wide is the signal from the umpire. Team total moves to 20. ग्राउंड्समॅन जर हांगा ग्राउंडार आसात जाल्यार मातशे रेडी रावचे. ही मॅच जातकीर तुमकां जर तुमचो कितें काम आसा तें करपाचें आसा पिचीर. Meanwhile, a good strike, straight to the fielder, good throw, slightly fumble from Mohit. If he has to collect right in front of the stumps, then definitely curtains would have been seen for Sumit. A single taking the team total to 21.
Shifting his balance onto the back foot, pulls the ball towards the square leg region for a single. This is a wonderful gesture from both the batters. Knows that this is not a big target. 36 balls, 54 was required initially. And now they are 22. Third over in progress. More 3 overs to be bowled after this over. Good cut shot. There was an attempt. If the fielder had to hold on at the point, and definitely first wicket would have been back to the pavilion. That's not the scenario. 2 runs to the total. Sensible batting from the batters. Knows they are right after the required run rate. Couple of runs takes the team total furthermore to 24. Meanwhile, along the carpet, away from the fielder. Couple of steps to collect the ball and a couple of runs as well. With this couple of runs, score moves to 26. More than half of the required target has been scored into the batting power play over. Another good strong strike along the carpet. Direct hit would have mattered. And Ashayad this time will give a chance. Is it going to be a boundary? Definite effort. But in vain as ball wins the race. So we have to wait as how many runs to be added to the total. 5 runs as a single was taken. And after that it was overthrow. A boundary. So 4 plus 1, 5. Score moves to 31. More 23 runs required. So I believe this match is going to get over soon. So giving little rest for Ashok Ji Naik as he will be giving details later. Sir, you can take rest. As now as the batting power play has been in the favor of the batting team. Team total moves to 31. More 23 runs required from 3 overs. Firoz Sheikh will be bowling second over his scored and the 4th over of the inning. 23 more required. Can these two batters finish this match in this over itself as amazing super giants are chasing the target of 54 runs. Short pitch delivery, a heave, no connection, pacey delivery onto the body line. First delivery goes as a dot delivery. A challenge is set up by Firoz Sheikh in front of the 2 openers. Let's see whether they can connect. Just 4 sixes away from the win. Can amazing finish off like the name that has been kept for the team. Can they be the giants in this match? Low full toss has been hit towards the cow corner region. Fielder from the mid wicket gets the ball quite comfortably. Throw was slightly wavered, but good backup. Saves for more runs. Just a single, more 22 runs required from here on. 4th over in progress. More 2 overs to be bowled after this over. Short pitch delivery, there's a better connection. Fielder watching the ball sailing past towards the wideish long on region. First 6 connected. Team total moves to 37. 38, I beg your pardon. $16 more required. Rajat Kudalkar strikes. Can he connect one more?
Ball slightly deviating away after hitting the deck. Wanted to cut the ball. No correction whatsoever. Leaves the ball to travel safely to the keeper. A 6 and a dot. And now the pacey delivery. Wide shocker. No reply from Rajat. Just watching the ball, maybe thinking what just happened. No idea as how the ball traveled safely to the keeper. Another good delivery. Low full toss has been placed. Wideish in the wideish long of region. Good fielding, good collection, good throw. A single to end over number 4. After completion of 4, team total moves to 39. More 15 runs required. Amazing Super Giants has a chance to finish on a very high note and grab another 2 points. 12 legal deliveries remaining, 15 runs to get. Let's see who is going to bowl from the stadium end. Mukund, another local guy. First delivery, there's a chance of a catch. Is it going to be held? Fielder at the mid wicket could not stop the ball from crossing the fence, and a sixer. This marks the statement. Second 6 from the bat of Rajat. More 9 runs required. So now the equation is quite simple. 2 sixes and the match is in the favor of Amazing Super Giants. Can Super Giants finish like the Giants in this over itself? Mukund, right arm round the stumps. Another hit, what a hit! Second consecutive hit across the fence over this mid-wicket region. And now just 3 runs required. Can Rajat finish off with a style? Can he replicate another beautiful 6? The time and the few seconds will let us know. Mukund decides to come over the stumps. Similar batsman at the striker's end. Can he make a header of 6s? Connection is done. Fielder under the ball in the hunt of a hat-trick. Rajat back to the pavilion. First wicket taken by Mukund after being taken for a stroll for 2 big 6s. And now chance for incoming batsman to be finish the match on a very high note. Is it going to be the captain? Or let's see. Looks to be Darshan, the all-rounder who has enormous power to hit the ball quite comfortably, and he can clear any boundary at ease. Darshan Bandekar at the striker's end. So here we go. Is it going to be end of the match on this delivery, or Mukund is going to take one more wicket? Short pitch. There was a appeal in an anticipation to just misguide the umpire, but let me tell you, the judges who are at the moment out in the middle are very shrewd. You can't just distract their concentration. 3 runs to get.
Is it going to be the final delivery of this match? What a strike! And take it! Noted down. Dalton Bandekar strikes and the ball disappears into the crowd. What a way to finish this match, and a pocket another 2 points for the team. So let's see who is going to be the man of the match. And the presentation will be done by the senior commentator Ashok G. Naik. सो एक कळवणी आसा दाट सकाळ सनरायजर्स टीमीक हांगा पेंडलान येवचें आनी तुमचे जे सर्टिफिकेट्स आनी जे तुमचे मानधन आसा ते हांगा पेंडलान येवन कलेक्ट करचे. तुमच्यो 4 मॅचीस ज्यो जाल्ल्यो आसात सो हांगा माटवा कडेन येवन तुमचे जे ऑक्शन फीज ज्यो आसात त्यो आनी सर्टिफिकेट हांगा कलेक्ट करच्यो. So man of the match between Amazing Super Giants and Dartsakal Sunrisers is the man who has batted quite comfortably to take his team towards the victory. 32 runs from his bat. Rajat Kudalkar is the man of the match. Kindly come and collect your man of the match trophy. Thank you, Sagi. Man of the match, Rajat Kudalkar. Man of the match, Rajat Kudalkar, kindly come and collect your man of the match trophy at the presentation arena. मैन ऑफ द मैच, आइए रजत कुडालकर मैन ऑफ द मैच के लिए. बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, एक महत्वपूर्ण मुकाबला था. 2 आने वाले मैच अभी भी बाकी है और हमारे आदरणीय सर अमीन भाई जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है. शगुन होटल सर अमीन भाई जिनसे हाथों मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है. मैन ऑफ द मैच का हकदार रजत कुडालकर इस मैच का. एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है रजत कुडालकर. शगुन होटल एसोसिएट स्पॉन्सर अमित सर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद बहुत बहुत. थोड़ी से बिल्कुल जो कि पिच की डागडूजी हो रही है, आनंद सर थोड़ी सी बातचीत चर्चा होगी इस टूर्नामेंट के साथ. आने वाले 2 मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है. शायद कौन भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच के साथ इस मैच के बारे में क्या कहेंगे रजत? बॉल पिच चड बरी हा, बॅटिंग बी सामकी
फक्त तू मेरिटार खेळायला बॉल जायत व्हायला बेटर. इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? ये दूसरा पर्व है, बड़ा टूर्नामेंट है, 3-3 ओवरसीज खिलाड़ी है, तो इस बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का भी मौका मिल रहा है. कैसा लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस मैच के लिए, आप इस टूर्नामेंट के लिए? टुर्नामेंट चड बरो ऑर्गनायज केला. आउटस्टेशन प्लेयर आहा तेंचो मातसो एक्सपिरियन्स आमकां मेळटा, सो तेंच्या वांगडा खेळोन आमी फुडें नेक्स्ट लेवली खेळोंक शकता. थैंक यू. तो और हमारे आदरणीय सर शगुन होटल के एसोसिएट स्पॉन्सर सर अमीन भाई, जिनके बिल्कुल तस्वीर रजत कुडालकर के साथ, जो मैन ऑफ द मैच का 9वां मैच होने वाला शुरू अब मैदान पर. दोनों मैच बिल्कुल महत्वपूर्ण है. एक टीम लगभग पक्की है, लेकिन 3 टीम के बीच में बहुत ही संघर्ष हो रहा है मैदान पर. अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो अमेजिंग के हाथों से एक आखिर गेंद पर जो मैच छूटा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नरेश ससोंडेकर के टीम को परेशान करेगा. और सामने 2 टीम उन्हीं के साथ जो कि भिड़ रही है, शायद एक की जीत के साथ 2 टीमों को भी बाहर जाने का शायद रास्ता तय होगा. लेकिन देखना होगा फिलहाल क्या होता है, किस तरह से जो कि ये मुकाबला आने वाले 2 मैच बहुत ही निर्णायक है मैदान में. हेलो धाड़ सकल क्रिकेट टीम, आइए आपकी टीम पूरी हमारे मान्यवर कक्ष के साथ संपर्क करें जल्द से जल्द. आइए धाड़ सकल क्रिकेट टीम, आपको ऑक्शन फीस है वो कलेक्ट करनी है, तो आइए धाड़ सकल कैप्टन, आपकी पूरी टीम जल्द से जल्द हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें. आइए धाड़ सकल क्रिकेट टीम, धाड़ सकल कैप्टन, आपकी पूरी टीम आइए जल्द से जल्द हमारे मान्यवर कक्ष के साथ संपर्क करें. धाड़ सकल क्रिकेट टीम. So let's look at the points table at the moment. SI Indians are at 2 points. Oxford Titans are at 4 points. Amazing Super Giants at 4 points. Gardsaka Sunrisers yet to open the account. They have finished their quota. Al Zargam Royal Challengers are at 6 points, leading the table. This is the crucial match for Oxford Titans as well as Al Zargam Royal Challengers. If Royal Challengers wins this match, then they will be table toppers with 4 wins, total 8 points. Oxford Titans are just 4 points. This is a much win situation for Oxford Titans. And even SI, if they win their last match, then definitely all the charts will be in a different scenario. So here we go, power play over. Lovely strike along the carpet, away from the fielder, lovely fielding inside the 30-yard circle to stop the ball from crossing the fielder. Meanwhile, a single. 2 openers out in the middle. Faldin Kazi, the most decorative batsman at the moment for Al Zargam Royal Challengers. Along with him, Amit Damsekar. Pitambari opening in the bowling department. Short pitch delivery ball kept little low. No chance for Faldin Kazi, who is in a scintillating form. Takes a blow just above the belly button. As he wraps his tummy, we can
feel the pain. But he is a strong character, will be out of that concern, will be out of that pain. Pritham Bhari delivering for Oxford Titans at the moment. Power play over is on. Another good delivery, Yorker onto the legs. Meanwhile, we have to wait for umpire signal. Definitely, leg buys is the signal from the umpire. Extra takes the team total to 3. Power play over is concern is in act, and this is a concern for either team as only 2 fielders have been plotted outside the 30-yard circle. Amit Damsekar, another elegant batsman on the striking end. Switch it was attempt, but look at the bowling from Pritham Bhari. This is the reason why Oxford Titans have purchased Pritham Bhari in their camp. And delivering at the right occasion. Delivering into the right zone, that makes the life of batsmen difficult at the moment. Beautiful over is in progress. Not giving an inch. Another good Yorker. Equally well played. Ame wanted a single but denied by his partner. Faldin Kazi. Very alert, as that was the final delivery of the power play over. Faldin wants to retain the strike in the second over. Just 3 runs. What an over considered by Pritham Bhari. As I remember his words, still more matches are to be played, and it's my duty to deliver as per the team requirement. Still strong, playing the final match of the league format. Has given only 3 runs. In fact, 2 runs from the bat and a leg by, that will be go in the extras department. So 2 runs from the over, that will go into the account of Pritham Bhari. Total is 3. Bhushan Gola is about to deliver the second over of the inning. Man of the match of the previous match in the league stage. And against him is the most prolific batsman who is in a scintillating form in 2023 as well. Let's see what he can do in this match. Faldin Kazi onto his knees, lock shot in act, and a beautiful 6 over the square leg. Big hit. The talent proving these capacities. And that sixer takes the team total furthermore to 9. Second over, Bhushan Gole feeling the heat out in the chilly night. Change in pace, the chance of catch. Is it going to be held? Bhushan has the chance. Even umpire's mode. He has taken off the uprooted stumps at the non-striker's end. Missed the catch. Luck favors the brave is the saying in the world of cricket. And here, luck favoring the batter. Faldin Kazi. There were 2 chances. One was the catch. Second was the run out as bail was intact on the 2 stumps. Even the third was uprooted. So that shows the luck that is favoring the batter at the moment. So both the matches are going to be very interesting as the night progresses. Oxford Titans are in a hunt of a victory to keep themselves in the race.
Meanwhile, this is a wonderful strike from Amit Damsekar, but only to the fielder at the long on. Bhushan Gole strikes in the second over. First wicket back to the pavilion. As we can feel the coolness as the night progresses. Even that affects the tennis ball as well, which was flying in the afternoon now, as it is little heavy. That keeps the ball inside the boundary rope. And now the batsman has to hit it really hard. You can't just time the ball to get those sixes. So first wicket back to the pavilion. Amit Damsekar at the individual score of just 1 run. So new man in is Karan More. And as per the modern rules, he will be at the striker's end. Karan More at the striker's end. Still, Faldin Kazi is out in the middle. That will be a plus point for the batting team. Cut shot into the act. There's a deep point in act. Meanwhile, 2 is the call, and look at the running between the wickets. This is absolutely fantastic. Couple of runs that takes the team total to 12. So many things may happen after this match. Another slog sweep in attempt. There is a confident appeal from Bhushan Gole. Denied by the umpire, as a bat was not involved as per the judge out in the middle. So this goes as a dot delivery. So now, as the match progresses, we are going to the third over. An immediate signal from the umpire that this is going to be the batting power play over. Is it going to be power play that is going to be witnessed by the spectators? Or a shrewd bowler will be implemented by the captain, Mukhtiar Kadri, to restrict the power hitting into the batting power play? Lot many things, lot many guesses happening out of the boundary rope from the spectators who are present on the ground, even from the dugout, and even the viewers who are watching this match live, courtesy TennisCricket.in, who are the responsible personnel showing this match live on YouTube with all the updates and the live status of the matches. Oh my dear. Batting power play. And Sarfraz Nawaz, another shrewd all-rounder into the act as far as bowling is concerned. This is a good-looking strike, equally well accepted, and that is the wicket.
All-rounder comes, all-rounder strikes. Karan More back to the pavilion. Wicket into the batting power play. First delivery goes as a wicket, fruitful for the fielding team. As the second wicket goes back to the pavilion. Navdeep is the new batsman out in the middle. He's a very good striker who has struck those 4 decent sixes of the last over that has sealed the victory for the team in the defending match. Meanwhile, strong strike to the covers. Fielder inact. Gets the ball. Even there was a slight fumble, but no chance of second run. A run into the batting power play takes the team total to 14. Shahid Sheikh acting as a wicket keeper at the moment. A word of advice from him to the bowler. And even the mastermind who is at the short fine leg inside the circle, monitoring the match, taking little rest and boosting the confidence of his players. Meanwhile, this is a wonderful strike into the vacant area. Ball goes away from the fielder. Is it going to be held? Not inside the boundary rope, but outside the boundary rope. 4 runs to be added to the total. Boundary taking the total furthermore to 19. 18, I beg your pardon. Faldin Ghazi into the act. As he comes at the striker's end, immediate a boundary is on the scorecard. Can he make this batting power play look very, very big for his team? The time and tide is going to tell us the story in a short while. Sarfaraz Nawaz against Faldin Ghazi. Again a wide shock, equally well played. Defensive approach. Wanted to guide the ball towards the vacant area between short third-man and point fielder. Not getting the direction. Results in a dot delivery. Another good strike. Cover fielder in act but won't be able to catch. What a strike from Faldin Ghazi. The man in form. Look at that strike. Most of the batters want to heave the ball towards the leg stump, but Faldin Ghazi wants to hit the ball wherever it lands. Sixer takes the team total to 24. Third over in progress, 24 on the card. Another good delivery. There's a horizontal bend shot, but straight to the long on fielder, not getting the power behind that strike. And Faldin Ghazi back to the pavilion. Second wicket for Sarfaraz Nawaz in this over. 24 for the loss of 3 wickets.
So now Shreyas Kadam has a march towards the wicket. And that concludes over number 3. First ball wicket and the last ball wicket for Sarfaraz Nawaz. So this concludes 3 overs after completion of 3. Score is 24 for the loss of 3 wickets. And now with the further updates, inviting the most senior commentator who has given his services in the soil of Goa for n number of years, a sweet voice in the national language, Ashok Ji Naik will be giving further updates. थैंक यू, धन्यवाद सागर गोस्वामी। 3 ओवर आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ। बॉलिंग में परिवर्तन, प्रीतम बारी जिन्होंने पावर प्ले में पहले ओवर में गेंदबाजी की थी, खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए और इस बार लेग स्टंप पर लोअर पुल टॉस गेंद बल्ले में संपर्क नहीं, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन अतिरिक्त रन के साथ से स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ एक सिंगल बना स्कोर में और इस 1 रन के साथ टोटल स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 9वां मैच, आने वाला मैच 10वां मैच होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कल के दिन में जिस तरह से बॉल आउट हुआ था, आज बिल्कुल संभावना वही दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी गेंद इस बार थोड़ी सी गुडलेस स्पॉट पर हरकत करते भी लेग कटर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, एक डॉट गेंद निकलती हुई प्रीतम बारी अपने बॉलिंग मार्ग पर। नवदीप गावकर और उन्हीं के साथ श्रेयस कदम, ये 2 बैटर है मैदान पर। और फिर से एक बार उसी तरह से लगभग रिप्ले देखने को मिला। बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम। मुकाबला जारी ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम के साथ। टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए अब तक की अगर चर्चा की जाए, जो चलता हुआ चौथा ओवर बहुत ही किफायती गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी और बड़े अच्छे विकेट जो कि चटकाते हुए शुरू के 3 बल्लेबाज आउट होकर वापस अब तक डगआउट में। इस बार बड़ा शॉट हाफ वाले पर लेकर एक सुंदर शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को थ्रो करते, एक बेहतरीन थ्रो सामने बिल्कुल गेंदबाज के हाथों में। 1 रन रहने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। फरदीन काजी ने बनाए 18 रन, लेकिन अमेय दामशिकर आज बिल्कुल सस्ते में 1 पर, करण मोरे 3 पर, नवदीप गावकर 2 पर और श्रेयस कदम अब सामना करेंगे प्रीतम बारी का गेंदबाजी का। अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन की गेंद निचले हिस्से से लगभग टोस पर लगी बल्लेबाज के। अपने पॉलिथ्रो में तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते, बहुत ही शानदार पहला ओवर रहा। बड़े शॉट पर बिल्कुल रोक लगा दी पहले पावर प्ले के ओवर में प्रीतम बारी ने। खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर जारी रखते हुए एक 10-12 कदमों के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से थोड़ा सा परेशानी इस बार लाइन पर बैठ के, लेकिन बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग विकेट कीपर की। वाइड बॉल का इशारा और 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में अतिरिक्त रन के साथ अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम के। एक चौका, 2 छक्के अब तक टोटल स्कोर में। बल्लेबाजी में जो लगाए थे 2 छक्के और 1 चौका जो फरदीन काजी ने, लेकिन उनके आउट होने के बाद कहीं ना कहीं रनों पर बिल्कुल रोक लगा दी है गेंदबाजी ने, फील्डिंग ने। अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार धीरे धीरे आते हुए प्रीतम बारी अगली गेंद करने के लिए। श्रेयस कदम और उनके साथ नवदीप गावकर, ये जोड़ी मैदान पर। 6 ओवर का मैच, 9वां मुकाबला, आने वाला मैच होगा जो 10वां मैच होगा। बहुत ही ये 2 मैच काफी निर्णायक है मैच में। अच्छी गेंद हल्के से मोड़ा कलाई का उपयोग करके देखना होगा। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन उतनी तेजी के साथ मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को कवर करते, गेंद को उठाते, फील्ड करते और फिर से एक सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। तो दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। आने वाला मैच वो भी काफी निर्णायक है। अमेजिंग क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ ऐसा इंडियंस क्रिकेट टीम आमने सामने होगी।
और देखना होगा फिर से जो कि ये मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है, किसकी जीत होती है इस मैच में। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, फिर से एक बार थोड़ी सी नीची रही, इस बार गेंद कट होकर बाहर की तरफ, विकेट कीपर के हाथों में जोरदार बल्ला घुमाया। एक शानदार ओवर की समाप्ति हुई, एक अच्छा स्पेल मैं तो कहूंगा इस मैच में। प्रीतम बारी का सफलता जरूर नहीं मिली, लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं जो कि मौका दिया उन्होंने बल्लेबाजों को। उनका खुद का 2 ओवर का कोटा समाप्त, खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ और 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर का खेल बाकी, आखिरी 12 गेंदों का कहीं ना कहीं बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम को। सामने बिल्कुल कोशिश तो होगी ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की, जो मुकाबले 2 मैच जीत चुकी है। ऑक्सफोर्ड टाइटंस एक मैच को हार चुकी है। ये मैच उनके लिए भी काफी निर्णायक मुकाबला है। अमेजिंग क्रिकेट टीम की बात अगर करनी पड़ेगी तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है। 2 जीत 1 हार का सामना, उनका भी मुकाबला आने वाला काफी निर्णायक है और उसी के साथ देखना होगा फिलहाल जो कि इस मैच के और फिर से रुक करते ये मुकाबला किस तरह से समाप्त होता है दोनों के बीच में। 5वां ओवर, थोड़ी सी चर्चा हुई मैदान में और आखिरकार कप्तान और खिलाड़ियों के बीच में चर्चा होकर गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए सामने से फातोडा स्टेडियम के ओर से विक्रम दिखाई देते हुए। और बहुत अच्छी शुरुआत, एक पुलर लेन की गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर कट होकर फिर से एक बार बाहर की तरफ गेंद निकलती हुई। जो नेचुरल कटर है, लेग कटर लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों का, वो विक्रम नाइक सामने से शुरुआत करते हुए खेल 5वें ओवर का स्कोर टोटल 28 रन 3 विकेट पर। पुल किया इस बार, बड़े ताकत भरा शॉट इस बार, बहुत ही अच्छा टाइमिंग और देखना होगा गेंद निकलते हुए बिल्कुल सामने हाथों में फील्डर के। एक अच्छा शॉट था, शफल हुए थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी बल्ले के बीचों बीच। जिस तरह से आवाज बिल्कुल सुनाई दी थी तब लगा था कि यह गेंद निकलेगी बाहर सीमारेखा से। आप रिप्ले पर देख सकते हैं क्या बेहतरीन शॉट लगाया था, लेकिन फील्डर बिल्कुल जो कि देखिए किस तरह से एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फिलहाल। और एक धक्का आउट होकर वापस श्रेयस कदम 1 रन बनाकर सफलता मिलती हुई विक्रम नाइक को और स्कोर वहीं पर 28 लॉस ऑफ 4 विकेट, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नौवां मुकाबला, आने वाला मैच अभी भी एक बाकी है जो अमेजिंग क्रिकेट और ऐसा इंडियंस के बीच में होगा। वो भी महत्वपूर्ण मैच है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद जो मैच छूटा था आखिरी गेंद पर अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम के हाथों में, वो मैच शायद परेशान कर रहा है उनके लिए, बिल्कुल मैं तो कहूंगा। फिलहाल रुक करते एक बार फिर से मैदान पर न्यू बैटर आ चुके हैं, नेहाल बिंड आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। बॉलिंग मार पर विक्रम नाइक एक सफलता हासिल करते हुए खेल 5वें ओवर का जारी। और स्कोरिंग की जानकारी के साथ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाए जो कि सर हरीश काकोडकर। अच्छी गेंद इस बार, हल्के से गेंद को खेला ऑफसाइड पर, गली पर फील्डर, एक सिंगल बन गया। बड़ी देर के बाद एक रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिर्फ 1 रन बनाकर श्रेयस कदम आउट होकर वापस। बहुत कुछ दारोमदार थे इस मैच में उनके बल्लेबाजी पर, लेकिन सामने से बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग हो रही है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है। बिल्कुल गेंद के नीचे आते हुए कैच को पकड़ते हुए 5वीं सफलता मिलती हुई मैदान में ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम को।
2 रन बनाकर नवदीप गांवकर आउट होकर वापस खेल 5वें ओवर का विक्रम नाइक को मिलती हुई और एक कामयाबी, दूसरा विकेट चटकाते हुए बैटर है मैदान पर निहाल बिंड और उनका साथ देने के लिए और एक न्यू बैटर आते हुए मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अनुष केरकर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है। चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन, इस ओवर में अब तक 1 रन 2 विकेट विक्रम नाइक और सामने अनुष केरकर सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक मिड विकेट बाउंड्री पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर। शानदार फील्डिंग हो रही है मैदान पर, अच्छे कैचेस पकड़े जा रहे हैं और कप्तान एक बार फिर से शॉर्ट थर्ड मैन पर मुख्तार कादरी फील्डिंग के लिए घूमकर मारना चाहते थे। एक पुलर लेन की गेंद थी, सिंगल, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद को आते विकेट के पर कलेक्ट करते तब तक 1 रन पूरा होता हुआ स्कोर के खाते में। बल्ले पे लगी, बात में शरीर पे लगी, लेकिन 1 रन तो जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर टोटल पहुंचता हुआ 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। खेल 5वां ओवर, विक्रम नाइक अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। अब स्ट्राइक एंड पर निहाल बिंड सामना करेंगे विक्रम नाइक की गेंदबाजी का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, शायद उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ इस बार। गेंद चली गई गली की तरफ, कवर पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लेती हुई गली पर गेंद को फील्ड करते फिर से 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ जिस ओवर में मिली 2 सफलता विक्रम नाइक को और टोटल 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम की। अंतिम ओवर का खेल बाकी कहीं न कहीं और 2 शॉट होने चाहिए स्कोरिंग में। फिलहाल देखना होगा स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 31 रन 31, लॉस ऑफ 5 विकेट। 31 रन 5 विकेट पर अंतिम ओवर का खेल और देखना होगा कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी के लिए कौन आते हैं। ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की ओर से ये ओवर काफी निर्णायक होगा। इस ओवर में रन बनाने पड़ेंगे, कम से कम 2 तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे बल्लेबाजी में अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम को। और अगर सामने से अगर बात की जाए ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की, अब तक जो शानदार गेंदबाजी रही है, जो फील्डिंग रही है, वो इस ओवर में भी जारी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जो रन होते हैं ये बनने वाले रन मैच के रन बन जाते हैं। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन इस आखिरी ओवर में, थोड़ा सा वार्म अप मैदान पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर। तो आखिरी ओवर लेकर निकेत गांवकर गेंदबाजी करने के लिए। ओवर पेज गेंद, बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार शुरुआत अंतिम ओवर में। पहली गेंद पर थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली, हाफ वाले पर एक तगड़ा शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर मिले 4 रन और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 35 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर जब चौका लगता है तो नीचे तरफ से थोड़ा सा दबाव होता है जो गेंदबाज पर। निकेत राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। और ये फुल टॉस गेंद, कमजोर गेंद, देखना होगा ऑन साइड पर गेंद बिल्कुल जो कि सामने
वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतनी ताकत नहीं लगा सके गेंद पर, और सामने बिल्कुल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए विकेट नंबर 6 गिरता हुआ वापस निकलता हुआ अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम का स्कोर वहीं पर 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो कप्तान अब आ चुके हैं मैदान में अजय केवट। आखिरी ओवर का खेल, अगर चौथे और पांचवें ओवर की मैं बात करूंगा, 2 रन बने थे चौथे ओवर में, पांचवें ओवर में बने 3 रन, 2 विकेट चटकाए विक्रम नाइक ने, और इस अंतिम ओवर में देखना होगा क्या होता है। अब तक पहली गेंद पर चौका, बाद में गेंदबाज निकेत का कमबैक एक सफलता, और सामने कप्तान टीम के अजय केवट सामना करेंगे निकेत की गेंदबाजी का। बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद चली गई स्लिप की तरफ, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, और 1 रन स्कोर के खाते में। 36 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 6 विकेट, 36 रन 6 विकेट पर आखिरी ओवर का खेल जारी। और हम कॉल कर रहे एसआई इंडियंस और अमेजिंग सुपर जायंट्स दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए संपर्क करें। आने वाले मैच के लिए जो 10वां मैच होगा, अमेजिंग सुपर जायंट्स वर्सेस एसआई इंडियंस, दोनों टीम कैप्टन टॉस के लिए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर, एक सुंदर शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल दूसरे रन की तमाम शंका को समाप्त कर दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर ने। तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया और थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन और मिला, स्कोर आगे बढ़ा 37 रन 6 विकेट पर। अंतिम ओवर का खेल जारी, निकेत गांवकर गेंदबाजी करते हुए। क्या एक बड़ा शॉट होगा स्कोरिंग में? चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, इस बार स्लोअर वन, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, फुलर लेन की गेंद, और फिर से सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन और मिला स्कोर में, स्कोर पहुंचा 38 रन 6 विकेट पर। तो पहले इनिंग की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल टू गो। एक बड़ा शॉट होना चाहिए इस आखिरी गेंद पर, एक अच्छा टोटल सामने खड़ा करने के लिए ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम के लिए। और देखना होगा निकेत गांवकर क्या करते हैं इस आखिरी गेंद पर, लास्ट बॉल टू गो। और पुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक सिंगल के लिए निकले, लेकिन कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी। आखिरी 3 ओवर में, अंतिम 3 ओवर में एक चौका लगा, और देखना होगा अंपायर का इशारा नो बॉल के लिए, यानी ओवर स्टेप के लिए शायद अंपायर का इशारा हो रहा है। तो तीसरे अंपायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सदगिरी नाइक। आने वाले मैच के लिए हम एक बार फिर से कॉल कर रहे हैं। आइए कैप्टन एसआई इंडियंस और अमेजिंग सुपर जायंट्स, जो 10वां मैच होगा आज का, उसके बाद जरूर जो कि आखिरी मैच है आने वाला जरूर, लेकिन क्या बॉल आउट का भी शायद संभव हो सकता है, यह भी बिल्कुल। और नो बॉल का इशारा अंपायर का, बिल्कुल आप देख सकते ये रिप्ले किस तरह से, बहुत ही शानदार कैमरा वर्क TennisCricket.in की बिल्कुल ये किमिया है। और एलईडी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो टोटल मिले 2 रन मिले टोटल स्कोर के खाते में, स्कोर हो चुका है 40 रन, और आने वाली गेंद होगी, अंपायर का भी इशारा होगा जरूर, जो कि आने वाली गेंद के लिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है अंपायर के साथ, लेकिन बिल्कुल हमारे तीसरे अंपायर ने जांच की है इस गेंद के बारे में, और
अंपायर का निर्णय वो आखिरी बिल्कुल फैसला होगा मैदान पर। दाद देनी पड़ेगी। शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर, बहुत ही शानदार 4 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ, सिद्धेश उर्फ बाबू नाइक, सदगिरी नाइक, असलम शेख, और बॉलिंग बार पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर निकेत गांवकर। फ्री हिट की गेंद, क्या फ्री हिट की गेंद पर एक बड़ा शॉट होगा बल्लेबाजी में। इस आखिरी पल में देखना होगा क्या होता है इस फ्री हिट की गेंद पर। इस बार ऑफ स्टंप पर यह गेंद, वाइड बॉल का इशारा, रनआउट का खतरा। 1 रन मिला स्कोर में, एक रनआउट के रूप में विकेट चला गया। 7वां विकेट निकलता हुआ टॉस के लिए एक बार फिर से एसआई इंडियंस और अमेजिंग सुपर जायंट्स, जो आखिरी मुकाबला आज का 10वां मैच होगा। और एक बार फिर से फ्री हिट का मौका बनेगा बल्लेबाज के लिए। वाइड बॉल के साथ 1 रन मिला स्कोर के खाते में। फ्री हिट अभी भी जारी है इस मैच में, और न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं सतीश यादव। फ्री हिट की गेंद, इस बार जोरदार प्रहार, लेकिन गेंद खड़ी हो गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। 1 रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, लेकिन रनआउट का खतरा मैदान पर, तो सिर्फ 1 ही रन मिला स्कोर के खाते में। तो इसी के साथ एक ही रन मिला स्कोर के खाते में। दूसरे रन के प्रयास में विकेट चला गया रनआउट के रूप में। तो बल्लेबाजी की मैदान में अल जरगम रॉयल चैलेंजर्स क्रिकेट टीम ने, और 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर हो चुका है। सामने ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम के सामने लक्ष्य रखा है जो मैच में, वो है टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है। स्कोर हो चुका है 42, और टारगेट रखा है ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम के सामने 43 रनों का। आने वाले मैच के लिए टॉस के लिए बिल्कुल दोनों कैप्टन आ चुके हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। उन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे हमारे सर हरीश काकोड़कर सर, जुड़ जाएंगे टॉस के साथ। देखना होगा टॉस का बॉस कौन होता है, जो अमेजिंग सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम और एसआई इंडियंस के बीच में। तो टॉस हो रहा है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और टॉस जीता है नरेश असोंडेकर। शायद देखना होगा टॉस कौन जीता है। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में एक बार रुक करते, आइए आगे का हाल सुनाते हुए सर हरीश काकोड़कर के साथ। So now, amazing super giants. The captain Naresh Asoldekar has won the toss and deciding to field first. Al Zargam Royal Challengers are with 3 wins under their belt, and Oxford Titans, if they win, they are going to be with 3 wins under their belt. And if Amazing Super Giants wins their match against SI Indians, they will be under 3 wins under the belt, and it's going to be interesting. It should be a bowl out. Looks to be the scenario at this stage. If I'm telling you how it is going to happen, if suppose considering that Al Zargam are going to lose this match, considering the total that is being posted, Oxford will be with 6 points. Al Zargam will remain with 6 points. Even if Amazing loses the next match against SI, or even if Amazing wins against SI, we have to find the number 1 and number 2 position. So in that scenario, if Amazing wins, 3 teams will be at number 6 with number equal of 6 points, and we'll have ball out with 3 teams. And if Amazing loses the next match, we will still have 2 teams
with ball out, and they have to fight for number 1 and number 2. That's how the situation is. म्हणजे मालवणीत म्हण आहे, बाबा गेलो पंढरपूर, इलो तर वडे, नाही इलो तर वडे. And here it is now, the 9th match, and the target is just 43 runs in 6 overs. Not a big target. And Al Zargam Royal Challengers have to give their wholehearted performance. This group is all wide open. It's absolutely wide open. And there is still a chance for SI Indians as well. If Al Zargam wins this match, then Oxford Titans will be with 2 wins. And if Amazing loses their next match, SI wins their match, then SI Indians will also be in the race if there is a ball out. So all options are open at this stage. But considering the score being posted, 43, which is the required runs in 6 overs, not a big total. Only thing that can win this match here for Al Zargam, we have seen that ball is, even if timed and played with a lot of power, it is not going out of the ground for those 4s and 6s. It's a very cool and calm climate, and that's the reason that the ball just tips in towards the fielder at the boundary edges. Oh, this has been timed here. This will be a 4 runs right up to the batsman, and he plays a wonderful shot for 4 runs over the wide long on the legend fielder. Shahid Sheikh is the best batsman so far in the ranks of Oxford Titans. And I will certainly feel that this is an opportunity here to, the score is not big, and to finish this match as early as possible. He'll go there taking way. This is the class of Shahid Sheikh. The bowling is not a strong point of Al Zargam Royal Challengers. That's the reason why whoever wins the toss, the captain electing to field first. Because if you know the target, if the target is less, they can definitely go after the bowling right from the first ball. And that is exactly what Shahid Sheikh wants to do here. He's going for the switch hit, but he was late on to that ball. Well, what a crowd. We are witnessing one of the best ever tournament to be held in Goa, South Goa Premier League. And it has come to a stage where I feel it is going to be a bowl out. Once again, very nicely timed in the covers region. There is a man placed in the deep, will get only a single. So far 9 runs have come, and I think 9 runs will definitely be enough here as far as the required runs. Still 2 balls left. Still enough crowd. I think this is Saturday night. Goa is buzzing on Saturday nights. What better than cricket? What better than cricket? It's a wonderful cocktail here. Cricket and the game that is being played, the floodlights,
you are with your friends, you are with your the fanatics of the cricket along with the organizers. Today is the night that we are witnessing some wonderful games, wonderful game of cricket, and some smart and intelligent batting here by the batsmen Sarfaraz Nawaz and Shahid Sheikh. Single will finish this over number 1, and the score is 11 without the loss of any wicket after completion of 1. The over was bowled by Satish Yadav. So batting power play has been taken. So it's a little getting cooler over here, and it's the festive season in Goa. Not only the carnival will come into effect. Carnival will be on maybe a week's time, and then it will be in the month of March. It will be the Shigmotsav. The festive season is on in Goa, and lots of tourists have thronged into Goa, and many are on this ground to witness this exciting match. In floodlights, it is all a different experience. In comes Rohan Salgaonkar. This is an outside edge, chance of a run out, direct hit, and everyone misses. Everyone misses. The keeper missed a chance of a catch. The short third man fielder misses a chance at the striker's end, and Rohan Salgaonkar misses it at the non-striker's end. I feel it's a tired day for all the players. You can certainly not blame the players over here. In comes Rohan once again. Once again, slog swept here. Fielder is placed. So batting power play has been taken here by the batting side. Not even a single wicket lost. And Sarfaraz Nawaz and Shahid Sheikh will be thinking that is better to clean this up. I'll tell you the turning point for Oxford Titans. The wicket of Shahid Sheikh, actually it was taken by Darsaka Sunrisers, but then it went to the referral, and then it was turned out to be a no ball, wide signal here by the umpire. Shahid Sheikh was almost going back into the pavilion, but it was a referral against Darsaka Sunrisers, and that was a no ball signal by the third umpire. That was a turning point for Oxford Titans to stay in the race, to stay in the hunt for this, and they are doing a fantastic job. Certainly are the favorites. You can consider, considering the score that has been posted here by Althargam Royal Challengers. This is very nicely timed here in the covers region, only getting a single. So the side who is chasing right now under no pressure, they know the target is not one, just 1 or 2 sixes away, and the asking run rate will deep down to less than 6 runs per over. But you should credit here. Rohan Salgaonkar once again misses it. How well he has bowled. Rohan Salgaonkar, tremendous bowling effort, an all-rounder, a bowling all-rounder for this team, Althargam Royal Challengers. He has done a fabulous job. 2 overs in the previous game, getting 4 wickets of 4 balls. And once again, this time I cannot blame the bowlers. Hardly anything being posted here by the batsmen. This is in the end. This should be 4 runs at least, and gets the 4 runs easily. I am telling all the spectators अजून शगुन जो काउंटर असा तो ओपन असा आणि जेवण जर कोणा घेवपा जाय जाल्यार ते घेवपा शकता आणि अजूनही हांवें जेवण घेवना हांव प्रमोद बाबाक रावला कुपन दिता काय म्हणून This time it's a no ball. This single and a no ball, it will be a free hit of the next ball. The score moves on to 21. So all going smoothly here for Oxford Titans in the second over. Rohan Salgaonkar trying his
best, but this should be a catch. Or is this a free hit? So why that the throw was required, I don't understand. Anyhow, the batsman was not going for the run. He was well inside, and a single taken. That will keep Shai Sheikh on strike of the next ball. After completion of 2, the score is 22 without the loss of any wicket. So looking at the scenario right now, ball out I think will be on. As at least a ball out will be between 2 teams, or a ball out can be with 3 teams. Ajay Kewat, the new bowler, bowling the 3rd over. The captain of the side coming from the far end, bowling from round the wicket. He has been hit for 3 sixes in the previous match, but now he will be thinking both these power plays are off, and I am having a chance and opportunity as the fielders are spread outside. Once again, he is not giving the batsman to swing the bat and just getting a singles. So far the batsmen are getting singles, and they can do the job with the singles. Asking run rate has dipped down to less than 6 runs per over. So the ball out will be on. If Oxford Titans wins this match, it will be a ball out definitely. This is in the air. Has it hit for 6 runs, or is it inside? 6 runs. It has gone high, and it has got a distance as well. Magnificent hit from Shai Sheikh. What a batting performance from this man. So much of noise here. I can't just hear my voice in spite of wonderful speakers being placed by the sound system, Kauri radio, because the pepare is blowing big here for Oxford Titans. Score moves on to 30, and the target is just 13 runs away. Ajay Kewat. Once again, this will be close, but they are completing the single easily here. Single to the total, taking the score to 31. One more ball left in this 3rd over. So all going easy here for Oxford Titans. Not even a single wicket lost. Shai Sheikh once again playing a pivotal innings, crucial innings. Magnificent. Magnificent 6 here. This time is not Shai Sheikh, but it's Sarfaraz Nawaz. Chappu we call him. And Chappu hits a good 6 over square leg region. So there is nothing left in this match. No fight at all. Both the teams will be leveled at 6 points each, and Oxford Titans they will be practicing for hitting the wickets because there are nets at the back, and I know Mukhtar Qadri, the street smarts captain, he would have selected his 5 men by now. And Al Zargam Royal Challengers now, all 4s will be on SI because they will like SI to win and close this once and for all. Either the first position and second position will be sealed for Al Zargam Royal Challengers if SI Indians wins the next match.
And it's all over. It's absolutely all over here for Al Zargam Royal Challengers. And congratulations to Shai Sheikh. Magnificent, classy knock once again during the run chase. This was no fight at all. It was just like one team playing in this ninth match. And Oxford Titans are definitely going to go into this ball out. uh, uh, Vikram Naik, that is Vicky, by taking 2 wickets. But the important part and important juncture of this match was when Fardin Kazi and Karan More was removed. Both are outstation players, both are in good form. And finally, the jury has decided that the player who took 2 wickets, 2 important wickets, and finally handy by scoring 10 runs, it is Sarfraz Nawaz Chappu is the man of the match or the player of the match. Chappu, please come and take your man of the match award. And a wonderful, wonderful match that was. And finally, we are coming to the last match between Amazing and SI. Amazing captain Naresh Saldekar winning the toss and no hesitation in electing to field first. So let's see the batting from SI. Ashok sir. This is the director या टुर्नामेंट आमिर बाब खुंजी. आमिर बाब खुंजी तुमका रिक्वेस्ट आसा तुम्ही हे मॅन ऑफ द मॅच प्राइज दिया आणि मॅन ऑफ द मॅच प्राइज होता आमचो मोगाचो चप्पू सरफराज नवाज. Fantastic all-rounder, very good 2 wickets. Basically, it was of the wickets that he has taken of Fardin Kazi and Karan More, 2 crucial wickets in an important match. विचारता
बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चप्पू। और जो स्कोर था वो काफ़ी लो था, यानी कि बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस। गेंदबाजी में जो फरदीन काजी है बहुत ही बढ़िया फॉर्म में थे, और जो करण मोरे वो भी एक बढ़िया लेदर बॉल के भी प्लेयर है और टेनिस बॉल के भी प्लेयर है। जो 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स थे वहाँ पे, वो क्राशी टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे। हाँ, दोनों काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, पर बोलते ना लक फेवर्स द ब्रेव, तो मैं लकी था कि उनका विकेट ले लिया मैंने। और वही है क्रिकेट, अगर जिसका अच्छा रहता है परफॉर्मेंस वही बाजी मारता है। और ऑक्सफोर्ड टाइटंस, मुझे लग रहा था कि टीम अच्छी थी, और जो मैं मैच देख रहा था कि पिछला जो धार सका सनराइजर्स के बीच में मैच चल रहा था, और आपका शाहिद शेख वहाँ पे आउट हो चुके थे और पेविलियन में वापस जा रहे थे, लेकिन अंपायर ने वहाँ पे रिफरल दिया और वो नो बॉल करार दिया वहाँ पे। और नो बॉल करार देने के बाद शाहिद शेख फिर से वापस आ गए और उन्होंने काफ़ी बढ़िया स्कोर निकाला और आपको मोमेंटम मिला और 100 रन अपने खड़े कर दिए, जो धार सका सनराइजर्स को काफ़ी मुश्किल था। सो मुझे लगता है कि वो भी एक टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे उस मैच में, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में भी है। एक्चुअली उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये टूर्नामेंट 50% आउटसेशन प्लेयर का ही है। अगर वो डिलीवर करेंगे तो ही हम जीतेंगे। ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गोवा में भी बहुत टैलेंट है। 50% मुझे लगता है 70% गोवा में भी टैलेंट है। अगर आप जैसे बंदे आएंगे और आगे जाके ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि स्टेज ये गोवा के लोगों को ही किया गया है, क्योंकि 6 जो प्लेयर्स है वो साउथ गोवा के, 1 या 2 प्लेयर नॉर्थ गोवा के और 3 आउट स्टेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउट स्टेशन प्लेयर ही खेलेंगे। अगर आप आज के मैच में एक अच्छे प्लेयर बन के उभरे हो, और ये मौका मिलता है हर एक प्लेयर को, आगे जाकर मुझे लगता है जो बॉल आउट होगा वो भी गोवा के बॉलर्स को भी चांस है। अगर ऐसा नहीं है कि आउट स्टेशन प्लेयर आएंगे और वो भी विकेट को हिट करेंगे, उतना ही इक्वल मौका होता है गोवा के गेंदबाजों को कि आके हिट करे। सही बात है, एक्चुअली सही बात है कि सबको मौका मिल रहा है। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है साउथ गोवा प्रीमियर लीग ने, तो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और अच्छा परफॉर्मेंस होते रहेगा गोवन क्रिकेट के लिए। अभी भी आज आप पहुंचे नहीं हो, सो आपको क्या लगता है कि मैं मुख्तियार कादरी को जानता हूं कि वो ऐसे कप्तान है कि जो अभी आपको बोलेंगे कि जाओ वहां पे पीछे नेट्स है और जाके विकेट को हिट करो। सो क्या लगता है आपको कि अगर बॉल आउट हो जाएगा आपको आपके चांसेस कितने होंगे? बॉल आउट के ऊपर तो चांसेस नहीं है, वो लक के ऊपर है। जिसका दिन अच्छा रहेगा वो बॉल करेगा। और हाँ, गुड फाइटर है मुख्तार भाई, उनके अंडर खेलने के लिए बहुत सालों से खेल रहा हूँ और अच्छा लगता है उनके अंडर खेलने। और चप्पू ने मुझे लगता है कि शानदार प्रदर्शन किया है। मैं आपको विश करता हूं कि बॉल आउट तो जरूर होगा ही होगा, कि 2 टीमों के बीच में होगा या तो 3 टीमों के बीच में होगा, वो इस मैच के बाद पता चलेगा। गुड लक टू यू इन बॉल आउट। हेलो, थैंक यू हरीश सर। 10वां मैच आज के दूसरे दिन का। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं और ऐसा इंडियंस क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर सोमेश प्रभु देसाई और उन्हीं के साथ रमेश, ये जोड़ गोली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। अंतिम मुकाबला 10वां मैच, शायद संभावना जरूर है बॉल आउट की, लेकिन उससे पहले देखना होगा ये मैच किस तरह से समाप्त होता है। पावर प्ले का पहला ओवर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप पर यह गेंद, फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, लेकिन तब तक 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 22 का इशारा अंपायर का, एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ ऐसा इंडियन क्रिकेट टीम आगे बढ़ते भी 2 रन पर। स्ट्राइक पर बैटर सोमेश प्रभु देसाई, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रमेश, और पहला ओवर जिग्नेश पटेल। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर गेंदबाजी करने के लिए सामने से दूर वाले छोर से हल्के से इस बार कट किया गेंद को, एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। रनआउट का खतरा लगभग था, लेकिन फिर से 1 रन मिला स्कोर के खाते में। बाल बाल बचे वहां पर, अगर सीधी गेंद स्टंपों पे लगती तो लगभग खतरा बन सकता था बल्लेबाज के लिए। और 1 रन जुड़ गया,
एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, जो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, तेज गेंदबाजी। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी कर रहे, ओपनिंग जोड़ी रमेश और उन्हीं के साथ सोमेश प्रभु देसाई। और बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ओवर पिच गेंद हाफ वाले पर एक बहुत ही शानदार कवर ड्राइव, रमेश के बल्ले से निकलता हुआ चौका और इन 4 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 7 रन बिना किसी नुकसान से। बहुत कुछ उल्टा फेर हुआ आखिर में इस, जो कि आज के दूसरे दिन रात के इस टीमों के बीच में। फुल टॉस, ये बिल्कुल खराब गेंद, कमजोर गेंद और इस बार एक बेहतरीन शॉट, गेंद निकल गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। फुल टॉस इस बार शायद यॉर्कर करना चाहते थे, वहीं पर गेंद जो कि लगभग फुल टॉस पर मिली और रमेश ने एक और तड़ाका दिया मैदान पर, बड़ा शॉट लगा 6 रन के लिए, एक चौका जो कि इससे पहले एक बेहतरीन कवर ड्राइव, उसके बाद एक खराब गेंद, कमजोर गेंद पर एक छक्का लगा और खुद का व्यक्तिगत उनका स्कोर 10 रन, सामना करते हुए अगली गेंद का। हल्के से इस बार डीले हाथों से कवर पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, शानदार विकेटों के बीच में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की। तो पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ मैदान पर और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल एक अच्छी शुरुआत निश्चित रूप से कहनी पड़ेगी, बिना किसी नुकसान से 14 रन टीम का स्कोर। अंतिम जो कि 10वां मैच मैदान पर, अमेजिंग सुपर जायंट्स जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया, एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया और देखना होगा आखिरकार इन दोनों के बीच में किस तरह से यह मुकाबला समाप्त होता है। तीन जीत एक हार ऑक्सफोर्ड टाइटंस क्रिकेट टीम की। अमेजिंग, पहला मैच जीता, दूसरे मैच में हार, तीसरा मैच फिर से जीता। यह मैच अमेजिंग बिल्कुल काफी निर्णायक होगा। ऐसा इंडियंस की भी बात बिल्कुल अच्छी है, एक शुरू में हार, एक जीत, उसके बाद फिर से हार और ये अंतिम मैच। फुल टॉस गेंद स्वीप किया बड़े खूबसूरती के साथ और जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, बॉलिंग में परिवर्तन अपाली कलंगुटकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर जारी रखते हुए बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने दर्शन बांधे कर दिखाई देते हुए फील्डिंग करते हुए और राइट आर्म ओवर द विकेट राइट हैंडर बैटर के लिए अपाली कलंगुटकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर स्कोर आगे बढ़ा 15 रन बिना किसी नुकसान से। रमेश और उन्हीं के साथ सोमेश ये जोड़ी मैदान पर। और इस बार सफल हुए, बेहतरीन शॉट ऑन साइड पर 5 लेग की तरफ, देखना होगा फील्डर गेंद के थोड़ा सा दूर निश्चित रूप से, लेकिन जब तक गेंद को कवर करते, गेंद को फील्ड करते, 2 रन का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, 17 पर आगे बढ़ा स्कोर, 17 विदाउट लॉस। एक शानदार शुरुआत मैदान पर, मैं तो कहूंगा इस मैच में एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम को। और बढ़िया स्लॉग स्वीप का शॉट, इस बार स्लॉट में गेंद मिली, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद तारामंडल में निकलते हुए सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग इस बार बल्ले पर, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिली और उसी पर एक शानदार शॉट सोमेश के बल्ले से निकलता हुआ, पहला बड़ा एक हिट जो कि 6 रन के लिए और स्कोर आगे निकला 23 बिना किसी नुकसान से। कल के आखिर की बात, अगर मैच की बात करेंगे, बड़ा टोटल बनाया था कल आखिरी मैच में और इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद के बारे में पूरी तरह से चूके सोमेश और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और फिर से एक करारा शॉट, कोशिश हुई थी लॉन्ग ऑन, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोशिश तो बढ़िया हुई थी लेकिन गेंद से दूर, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक अच्छा ओवर ऐसा इंडियंस क्रिकेट टीम के लिए
इस ओवर में 2 बड़े शॉट लगाए बल्लेबाजी में सोमेश प्रभु देसाई के बल्ले से। खुद का व्यक्तिगत उनका स्कोर 15 रन, 12 रन पर रमीज एक चौका छक्का लगाते हुए और शानदार शुरुआत। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के अभी भी एक जो कि एक गेंद बाकी जरूर है। 29 रन थोड़े से महंगे जरूर हो रहे। अपाली कलंगुटकर एक बार धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार पर सामने सोमेश उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। और पुलर लेन की गेंद इस बार लगभग बीट किया बल्लेबाज को अपाली कलंगुटकर ने। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाज 29 रन बिना किसी नुकसान से। तो हम चर्चा कर रहे थे ऑक्सफोर्ड टाइटंस ने पहला मैच जीता, दूसरे में हार का सामना करना पड़ा, तीसरे मैच में फिर से जीत हासिल की, चौथे मैच में जीत। एसआई इंडियंस पहला मैच हार चुकी, दूसरा मैच जीत चुकी है, तीसरे मैच में फिर से हार का सामना करना पड़ा और ये आखिरी मैच जो अपना खेल रही है 10वां मैच कल इस साउथ गोवा प्रीमियर लीग का आखिरी सफर होगा, आखिरी जो कि दिन रात का खेल होगा। लेकिन उससे पहले कल के दिन की अगर बात की जाए 2 टीम क्वालिफाई हो चुके, केकेजी नाइट राइडर्स और डायनामिक रॉयल्स। आज 2 टीम कौन होंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आज के 2 टीमों के बारे में, क्योंकि ये मैच अंतिम है लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल बॉल आउट का शायद आखिर में खेल हो सकता है। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए टीम का तीसरा ओवर लेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर रमीश उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए स्कोरबोर्ड पर बिना किसी नुकसान से 29 रन। और बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, स्लिप पर जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, शायद अगर डायरेक्ट हिट होती तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर रमीश के लिए बिल्कुल खतरा था। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 30 रन पर। शानदार शुरुआत, एक महत्वपूर्ण मुकाबला है। दो हार एक जीत, ये निर्णायक मैच। और हल्के से चॉप किया ऑफसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक बार, लेकिन फिर से सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में बल्लेबाज एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत ही शानदार क्रिकेट, दोनों टीम मालूम है इस मैच में अब बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, जीत महत्वपूर्ण है। अमेजिंग सुपर जायंट्स नरेश असुंडेकर कप्तान टीम के, बढ़िया शॉट, लेकिन उतना शायद जो कि फील्डर को बीट नहीं कर पाई। सामने बिल्कुल गेंद को ड्राइव किया, अपने पॉलो थ्रो में गेंद को उठाते फील्ड करते धीरे धीरे जिग्नेश पटेल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। सिंगल के लिए निकले, और इनाम बिल्कुल जो कि एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम के लिए। और इस बार बाहरी किनारा कवर पॉइंट पर थोड़ी सी ऑपेश गेंद निकली थी, फील्डर गेंद के पीछे 1 रन, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन मुकम्मल किए। तो एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम के लिए इनाम रखा है जो कि लगातार 3 सिक्सर के लिए 1000 रुपए सर जमीर, जिनसे जमीर भाई की ओर से जो कि 1000 रुपए का इनाम लगातार 3 छक्के के लिए। अच्छी गेंद, इस बार पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, आधे ओवर का। एसआई इंडियंस क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है, स्कोर हो चुका है 34 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में शानदार शुरुआत, एक ओर से सोमेश प्रभु देसाई तो दूसरी छोर पर लेफ्ट हैंडर बैटर रमीश। चौथे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सागर गोसावी के साथ। आइए सागर, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में।
₹1000 का इनाम एक बार फिर से ऐसा इंडियंस क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों के लिए लगातार अगर 3 छक्के लगाते हुए और हमारे सर जमीर भाई के ओर से ₹1000 का इनाम मिलेगा। थैंक यू सर। तो आइए एक बार फिर से माइक्रोफोन पर बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का और जुड़ जाते हैं सागर गोसावी के साथ। Thank you, Ashok Ji Naik. 3 overs have been bowled and a decent total so far on the scorecard. 34 without any loss of wicket. So SI Indians are finally making a statement in this match. Could not do much in the initial half of the league, but definitely on a roll. Is it going to be the showstopper? SI Indians, the time will tell us. Somesh and Ramiz are the two openers and both are intact out in the middle. 34 on the card. Darshan Bandekar is the bowler as the left-handed batsman is at the striking end. Decides to come round the stumps. Check. So meanwhile, this is a wonderful inside-out stroke away from the fielder. And that is a welcome boundary on the first delivery in the 4th over. Boundary takes the team total to 38. 4th over in progress, 38 on the board. Go at the moment. SI Indians are marching forward with a healthy run rate of 11 runs plus per over. Another good delivery, pacey delivery into the hands of keeper. Wanted to strike the ball into the vacant region over the mid of fielder. No connection, leaves the ball to travel safely to the keeper. Another pacey delivery, ball takes the leading edge. Missed by the keeper, missed by the fielder and the short third man. That was the pace generated by Darshan Bandekar. Ball travels towards the third man region. A boundary to mark the total to 42. 4th over in progress, 42 on the board. More 2 overs to be bowled after this over. Darshan, the most valuable player for Amazing Super Giants. Score is 42. Meanwhile, there's a decent delivery slightly towards the guideline, towards the off stump, resulting in a dot delivery. Ramiz on the striking end. A 6 and 3 boundaries in this inning. Meanwhile, another chance created by Darshan Bandekar. Catch towards the keeper. And the first wicket back to the pavilion. 42 for the loss of 1 wicket. As we are having our own restrictions as far as the sound is concerned. That's why we have to reduce the volume. So we are following all the norms that have been set by the officials for the general public of the state. Meanwhile, the new man in is Aniket Raut. So requesting the spectators, you can turn on to YouTube channel and you can hear the commentary live over there.
Meanwhile, there's a wonderful strike. Chance of a run out at the strikers and direct hit, oh my dear. Naresh Asoldekar, youngster, striking again a second time, bullseye. Second attempt and a bullseye. What a player, what a captain leading from the front when the wickets are not coming in any cause. Then a run out is the only decisive thing. Strikes at the very opportune moment. Second wicket back to the pavilion, run out. Aniket Raut not even opened his account. There was a misjudge call from both the batsmen. Somesh, the opener, is still out in the middle. And he will be joined by none other than Maruti, I beg your pardon, Harshad Dafedar. If Amazing Super Giants win this match, then definitely the bowlout will be between the three teams, as three teams will be at the 3 points each. And if SI Indians wins, then definitely they are going to be the show spoiler for Amazing Super Giants. So all eyes, very important match. Somesh Prabhudesai at the striking end. Mandis, popularly, that's a nickname for him. Gurushant is the proper name. Meanwhile, couple of runs. Look at the speed of Somesh Prabhudesai. Immediately takes a couple of runs to retain the strike. Couple of runs takes the team total to 44-4. Dangerous jersey number as far as cricketing world is concerned. Virendra Sehwag. Low full toss could not take a maximum advantage out of it. Drives the ball towards the mid-on fielder to take a comfortable single and to bring the incoming batsman Arshad Dafedar at the striker's end. Lovely delivery, slightly outside the off stump, making it difficult for the batter to connect. Wide Yorker. Delivery goes as a .1. Fifth over in progress. Gurushant, the bowler. Another good length delivery, pacey delivery. Look at the pace that ball has traveled to the keeper. Consecutive 2 dot balls in this second last over by Gurushant. Arshad Dafedar not able to judge the pace of the deck. Short pitch delivery gets the connection. Ball takes the leading edge, travels towards the fine leg region. Fielder from the circle gathers the ball quite comfortably, stops the ball from crossing the fence. And meanwhile, couple of runs. Team total moves to 47. Final delivery of the fifth over. This is a good looking strike over the long off region. I beg your pardon, towards the covers. This is a wonderful strike. Sixer. Let's look at the big screen as the replay is on. Strike. And a big six. That sixer will take the team total furthermore to 53 runs. That is a wonderful way to conclude over number 5 as far as batting team is concerned. Now we are into the final over of the inning. 6 legal deliveries remaining in this inning. There are some guesses happening in the commentary box as well as what will be the final total. Some are saying it is going to be 70. Some are saying it is going to be 80. So let's see what will be the final total. 53 on the card.
chocolate boy at the striker's end. Somesh Prabhudesai. I've seen him batting on this very ground in the Municipality Panchayat tournament. He was the main culprit for putting the opposition out of the contention. Meanwhile, a wonderful strike towards the wide is long off. Oh my dear. First delivery goes as a boundary. Fielder could not judge the ball properly. Awkward bounce for him, and a ball travels safely out of the boundary rope. And it's a very surprising thing. Apale Kalangutkar has fumbled, and the ball crosses the boundary rope. Second delivery, big swing, way outside the off stump. Wide is the immediate signal from the main umpire. With that extra score moves to 58. Final over in progress. Naresh Osaldekar, the captain, on the groove. Meanwhile, a low full toss has been guided towards the square leg region. Comfortable couple of runs. They're running for the third. Good footwork. Another chance. And 4 runs on the card. But this time they have to run very hard. Not a boundary, but they ran for these 4 runs. A lot of hard work for both the batters. This boundary, in fact, 4 runs take the team total furthermore to 62. Another low full toss as a big heave. Ball into the vacant area. Just for a single. And the single takes the team total to 63. Three legal deliveries remaining in this over. Naresh Asoldekar with the ball in his hand. Another low full toss, a big heave. There's a deep covers in act. Fumble, and a ball goes away from the fielder. Boundary. That takes the team total furthermore to 67. Final 2 legal deliveries. And the jersey number on the back of Naresh Asoldekar is a date that is remembered by the lovers, as a February month is on, and 14 is the date to be remembered. Switch it, what a connection, oh my dear. Can't believe my eyes that even at this juncture SI Indians can strike. Sixer takes the total furthermore to 73. So one guesswork is correct. Final delivery. Cuts it very hard. A ball goes away from both the fielder. One bounce and ball wins the race. So boundary to conclude the inning. 7 on the card. 78 is the target in front of Amazing Super Giants. So finally, SI Indians making a statement, keeping all the wickets intact. Somesh Prabhudesai has played a wonderful inning. Not out. The opener coming not out, back to the pavilion. Maybe have promised himself that he is going to score the runs, going to mark the statement. Let's see what is going to happen in the second innings. 77 is the total, 78 runs to win. So we'll be back after a very short break in the second innings.
So we are about to begin the run chase. And to start this run chase, two officials gradually marching out in the center. Siddesh Naik, alias Babu, and Sadguri Naik. Dada, Babu and Dada taking the charge out in the middle. So many calculation depends on this match. The people who are closer to the speaker, kindly inform your friends that to watch this match live on YouTube, as because of the restrictions we are not able to increase the sound, increase the volume. And if you want to get all the details, then please watch it live on TennisCricket.in. So the spectators and the players who are close to the speaker will be able to hear. You can call up your friends and ask your friends to watch this match live. This is a crucial match happening out in the middle. No one has expected that 77 will be posted on the scorecard. 78 runs to win from 6 overs. Sumit Dongde and Rajat Kudalkar are the two openers. Sandesh Thakur to start the proceedings in the power play over. So many results are possible. If Amazing Super Giants win this match, then definitely there is going to be a bowl out between the three teams. If SI Indians win this match, then again there will be a bowl out for the top position. First delivery straight to the point fielder for a single. Sumit Dongde takes a single and open account for himself as well as for the team. And now Rajat Kudalkar is on the striking end. We have seen a small cameo of Rajat Kudalkar in the previous match. And now all the hopes will be on this opening pair to get those required runs to be safe and to be the participant in the ball out. There is a big appeal. Sound was clear, and first wicket taken by Sandesh Thakur. Rajat Kudalkar back to the pavilion. One for the loss of 1 wicket. Rajat Kudalkar was a hero in the previous match and now could not do much in this much needed victory. Back to the pavilion on a golden duck. And now Matin Khan gradually marching towards the striker's end. Sandesh Thakur, a very experienced bowler. We have played a number of matches in his cricketing career. Even we may not have said the word cricket more than what Sandesh Thakur has played actually on the ground. So bringing all his experience, 33 on his back and striking in the first over. Meanwhile, Matin gets the connection. Inside edge ball is racing towards the boundary. Fielder after the ball. Is it going to be stopped? A diving effort. We have to wait for umpire signal. Could not stop the ball from crossing the fence. Matin Khan, not a convincing shot, but nonetheless 4 runs for his team. With that boundary, team total moves to 5. 5 for the loss of 1 wicket.
78 is the target. Now 5 runs on the board. 73 more runs required. 5 overs to be bowled after this over. Another good strike. Look at that strike. Even the fielder was deployed. Could not stop the ball crossing quite comfortably over the fence. Lovely strike from the batter. Matin Khan making his arrival with a boundary, and now the statement with the big 6. Team total moves to 11. Sense that this ball has been pitched way outside the off stump. Is it going to be called a wide? Is it going to be a no ball? Lot many things to be considered. Meanwhile, the umpire is checking, and the signal has come towards the third umpire. So now all the eyes on the screen. So let's check whether it has been pitched inside the playing area, or is it been delivered outside the playing area. All eyes on the screen. So we are keenly watching. So decision will be made by the third umpire soon, as a different angle is required. So after checking on the screen, looks to be the ball has pitched inside the playing zone. Now the decision is wide from the main umpire. So extra 2 to be added to the total, and with that team total moves to 12. First over in progress. Matin Khan on the strike. The destructive batsman on to the striking end. A boundary and a 6 from his bat. Another good delivery slightly towards the guideline. No connection, leaves the ball to travel safely to the keeper. 78 is the target. 12 on the board. Meanwhile, a better connection, slightly above the head of the fielder, inside the circle at the mid-on. And a boundary to conclude over number 1. After completion of first over, score is 16 for the loss of 1 wicket. Although Amazing Super Giants have lost a wicket, but they are right after the required run rate. 16 on the board. So more 62 runs required from 5 overs. 30 legal deliveries, 62 runs to get, and definitely lot of pressure will be on either side, as if SI Indians win, then they will be the spoilers for Amazing Super Giants. Still plenty of batting remaining with Amazing Super Giants. More 5 overs to be bowled. So let's see who is going to bowl the second over for SI Indians. So Ramesh to bowl the second over of the inning. Even Oxford Titans are keenly watching this match, as so many things are possible after the result. Beautiful delivery
slightly towards the guideline, a wide Yorker. First delivery of the second over goes as a dot delivery. Still double six is the runs required for Amazing Super Giants. Another good delivery, equally well played, a good strike in the vacant zone between long off and a cover region. Couple of runs to add to the total that will take the team total to 18. 18 is the jersey number of the former captain of Indian cricket team, none other than Virat Kohli. Another wonderful strike in the similar direction. Good fielding, restrict the batsman from running for the second run. Team total moves to 19. Second over in progress, and they are exactly following the required run rate. Matin Khan on the striking end with that single. Switch, it was the attempt, not getting the proper connection unless takes a single by guiding the ball towards the point region. 20 on the card. More 58 runs required. Another good hit. A fielder has been deployed but could not stop the incoming boundary. Lovely strike from Sumit Dogde. Boundary takes the team total to 24. Second over in progress. Another similar fashion strike, but fielder has been placed at the right area. So boundary has been saved. A single to conclude over number 2. So after completion of 2, score is 25. Exactly the current run rate of the chasing team is 15 runs per over, which is much ahead than the required run rate at the moment. So now let's see who is about to deliver in the third over. So a discussion between the batters as a batting power play over is remaining with the batting team. Arshad Dafedar, the bowler, bowling from the swimming pool end. And look at the restless captain of Oxford Titans. Gradually having a stroll, a nice stroll we must say, but all concentration on the match. Big smile on his face, but can feel the pressure of this match. This is the beauty of this game. You can't keep any team out of the contention. Whether they are safe or not, the time will tell us. Arshad Dafedar, the bowler. Third over about to progress. First delivery, change in pace, going away from the batter. And it has been considered as a dot delivery. So these dot balls definitely will put some pressure on the batting team. Arshad Dafedar starts the third over with a dot. Another good delivery, better connection. Is it going to be caught? Simple looking catch. Oh my dear. Fumble and a misjudged catch. Drops in front of the player. Luck.
for the batter. Sumit survives. Matin Khan at the striker's end. Third over in progress. First delivery was a dot. Second delivery turned for a single. Meanwhile, a big give. No connection. Even the ball rests near the keeper. So in this over, a dot, a single and a dot. And all eyes will be on Darshan Bandekar, who is still in the dugout. The most valuable player for Amazing Super Giants. Another good hit away from the fielder into the vacant area, and that travels the distance for the maximum runs. That sixer brings the total furthermore to 32. More 46 more runs required. 3 overs to be bowled after this over. And finally, a big six in this third over from the bat of Matin Khan. Can Matin be the terminator in this match? Is he going to close the doors for SI Indians and keep them safe? Lovely delivery. Look at the reaction of Arshad Dafedar. Clearly indicates that he has missed the stumps by just couple of inches. Meanwhile, after the six, it's a dot delivery. Matin in a hunt of connecting right from the middle of the bat. Let's see whether he can connect in the incoming delivery. Final delivery of the third over. There's a lovely delivery to conclude over number 3, a dot ball. After completion of 3, score is 32 for the loss of 1 wicket. Now it's over to Ashok Naik with the further updates for the live spectators, as the volume has been decreased. So requesting all the spectators to kindly turn on your mobiles, watch this match live on YouTube. And the live telecast is done by none other than a very famous brand, TennisCricket.in, giving all the live updates for the further 3 overs in this run chase. Over to Ashok G. Naik. हेलो, थैंक यू सागर। 18 गेंदों का 3 ओवर का खेल बाकी। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। 46 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। 1 विकेट। रजत कुडालकर 0 पर 0 पर। मतीन खान 2 चौके 2 छक्के और सुमित दोंगड़े बल्लेबाजी करते हुए एक बहुत ही अच्छा मैच मैदान पर चलता हुआ। आज का 10वां स्कोर रुका हुआ मैदान पर 32 रन पर। गेंदबाजी में परिवर्तन। बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर का। और बढ़िया शॉट हाफ वाली पर लेकर एक सुंदर शॉट। लंबा बाउंड्री पर गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका इस बार हाफ वाली पर लेकर ओवर पिच गेंद पर एक बहुत ही शानदार लंबा बाउंड्री पर 4 रन। सुमित के बल्ले से निकला यह चौका, जो दूसरा चौका। सुमित डोंगड़े और उन्हीं के साथ मतीन खान 2 छक्के 2 चौके अब तक बल्लेबाजी में। अपने बॉलिंग बार पर रमीश सामने से दूर वाले छोर से फातोड़ा स्टेडियम की ओर से गेंदबाजी करते हुए, और इस बार सामने बॉलर के ऊपर से और एक बढ़िया शॉट। देखना होगा लंबी दौड़ लगा यह लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर ने। 1 रन दूसरे रन के लिए पलटने जरूर थे, लेकिन जैसे ही देखा लॉन्ग बाउंड्री पर गेंद फील्ड हो रही है, थ्रो हो रहा है और बिल्कुल रनआउट का खतरा
शायद बन सकता था मैदान पर। एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सामने आप स्ट्राइक एंड पर मतीन खान सामना करेंगे रमीज की गेंदबाजी का। खेल जारी चौथे ओवर का। मिस टाइम शॉट देखना होगा अपने पॉलोत्र में, बिल्कुल आराम के साथ बड़े इत्मीनान के साथ उस कैच को पकड़ते हुए रमीज को मिलती हुई सफलता। टीम को लगा, अमेजिंग क्रिकेट टीम को, यह दूसरा धक्का। हेलो, तो दूसरा विकेट वापस निकलता हुआ आउट होकर एक शानदार बल्लेबाजी, 21 रन बनाए मतीन खान ने। आने वाले अभी भी अगर गेंदों की बात की जाए तो 15 गेंदों का खेल और 41 रन। 15 डिलीवरीज 41 रन, 15 गेंदों का खेल बाकी 41 रन मैच को जीतने के लिए। और न्यू बैटर मैदान पर दर्शन बांदेकर। बस इस बल्लेबाजी पर यह मैच निर्भर है। बैटिंग ऑर्डर है इस टीम की खेमे में जरूर, लेकिन ये बड़े शॉट के लिए जाने जाता हुआ खिलाड़ी ये मैदान पर आ चुका है। खेल चौथे ओवर का। सामने रमीज ऑन द राइट खेलना चाहते थे, थोड़ी सी लेग कटर गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही। बल्लेबाज को बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 41 रन अभी भी और खेल बाकी 14 गेंदों का। रमीज बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे, खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए। फुल टॉस गेंद उड़ाया इस बार, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग इस बार। गेंद तारामंडल में निकलती हुई वाइड स्लॉन्ग ऑन पर सीमारेखा से बाहर। दर्शन बांधे करके बल्ले से छक्का, 6 रन के लिए। और कम कर दो। अब बिल्कुल 35 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। हेलो, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद ऑफ स्टंप पर। दर्शन बांदेकर को बिल्कुल मजबूर किया सम्मानजनक खेलने के लिए। तो इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर रुका हुआ टोटल 43 रन। आने वाले 2 ओवर का खेल, 12 गेंदों का खेल बाकी और 35 रन। 12 बॉल 35 रन, 2 ओवर बाकी, 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में अभी भी जीतने के लिए 35 रन। 12 बॉल 35 रन।
And it's a no ball. Score moves on to 47. So Mahesh Bhairkar is bowling in the 5th over. Score is 47. Target is 78. In comes the big man, Darshan Bandekar. We have seen his abilities and capabilities of hitting the big ones. Here he is. Oh, wide signal here. Wide signal down the leg side. Well, the man is of 6 plus stature, and with the capacity of 6 feet plus, you need to bowl in the right areas, because the big man can hit them long, high, and can get the distance, and also can be devastating for the bowlers. Oh, good timing there. Straight to the fielder. He had to be absolutely alert. Not only he is tall, but he can also be quick with the wickets. And you can see that the throw was off the target, and a good backing up by Somesh Prabhudesai, who is a leather ball player. He understands what is backing up. Score moves on to 49. 2 balls have been bowled, 10 balls left. So the required run rate, which every dot ball is going to creep up. Oh, that's a full toss ball. It's in the air and it's taken. It's taken. SI Indians are very happy. They know that the ball has not gone anywhere, and finally they have taken an important wicket of none other than Sumit Dongre, who was playing very, very well. But finally, though it was a full toss, he didn't get the elevation, he didn't get the